They wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, no. I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G.O.D., yeah, wait. I go hard on Southside G, yeah, wait. I make sure that Northside eat. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom, I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dawg. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, hey, no, hey. Someone watching it close, yup, close. I've been me since Scarlet Road, hey, Might go down as G.O.D., yeah, wait. I go hard on Southside G, hey, wait. I make sure that Northside eat, yeah. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah, yeah. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Yeah. They wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. यो व्हाट्सअप चैट वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू लाइव स्ट्रीम। आज हम कर रहे हैं वॉच पार्टी फॉर द डे 2 एंड बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा था मैच में। बैक स्ट्रीम स्टार्ट करने से पहले देख रहा था। सो या मैं फोन पे चैट खोलता हूं, एक सेकंड दे दो भाई। एनएस जीत सकती है मैप। एनएस कैन विन दिस मैप। लेट मी शेयर द लिंक ऑन स्टोरी as well as on Discord. Maybe, right? Of course, and it's official right away. The moment I mentioned that maybe they'd pull the first map off. भाई एक मैप जीत गए ना, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि गॉडल का अभी तक एक भी मैप ड्रॉप नहीं हुआ है। Push it to overtime. It feels like this game is scripted. Literally. Scripted बोल दिया भाई। Like, you know what? We're winning the games too easily. We might as well try to take at least one series close. 1 for 1. Yeah, and then we'll make that a 2 for 1 now. A 2 on 4 or a 3 on 4 scenario.
unfortunately for Ennis. Losing out on those trades, not being able to win those duels out and over. Ennis officials, they're starting to lose out on that confidence. And that's also now starting to be a massive issue for them. Godlike, all they needed was to get a little bit of the lay of the land, and now it seems like they're much more comfortable inside the search and destroy. This nade can be good. Prevail, is he going to find the connection? No, he steps away in the nick of time. Good maneuver, good movement coming in from him, but they still have to take control of one of those sites at least. A is not an option at this point, so have yes, to tag the rotating pages. towards the B, it seems to be the Bhai, best interesting decision चल रहा है possible. match. But you have to watch Not out gonna 3 lie. different points. There's a threat coming in for a very long flank right in your backs. There is also a push down that would come in from mid, and then you also have to make sure that there's no one into the sniper's net where a Bees is just going to stand. So the read of Godlike is just on point and perfect. Indeed. 2v1, and now Godlike once again. All they need to do is isolate the duel against the sniper. He misses that opportunity to capitalize on, and Saksham, yep, disappointed. चैट आवाज से आ रही है ना सब चीज की 6-6 being the scoreline. Here we go, ladies second. and gentlemen, towards an overtime. ओवरटाइम लग गया लेट्स गो Learn and a Bees. ऐसे तो नहीं देंगे मैप ऐसे तो नहीं देंगे गोल्ड वाले मैप Basically, But हाँ. Godlike's back in SND, and all of them are stepping up one after the other, even in this one. Gotta give it to Learns, man. Especially, even in Hardpoint, this guy was doing fantastic. chat खोल लूं. Here, this guy's just performing so well. Learn, being an IGL right now, just feels like this man is an all-rounder. Yo, what's up, Yato? Welcome to the stream. क्या हाल है? First like first chat. Hi, everything fine. Sorted. Here we go. For now, गाइस लाइक कर देना स्ट्रीम को. लेट्स गो. वॉच पार्टी की फुल परमिशन लेके आए हैं. कुछ ऐसा सीन नहीं है. NS officials, if they lose out on this round, this is definitely going to be a big mental breaker. True, they got a hit marker into the control room. So had हाँ भाई बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप है ये वाला भी. So talking about pushing up. NS अच्छा खेल रहे हैं, काफी अच्छा खेल रहे हैं NS. Onto that angle, and that is a very good pick. It becomes even more difficult for NS to flood in the site. Indeed it does. Look at Trunks. He's holding quite an interesting angle. सॉरी कितना लेट. अरे यार लाइट नहीं थी यार क्रिश. अभी भी लाइट नहीं है बट मैंने जस्ट ऐसे जुगाड़ लगाया कि इन्वर्टर पे स्ट्रीम कर पाऊँ. Was trying his best to do something. Was trying his best to pull off some shenanigans. Action nice pick. और पहला शॉट मिस नहीं करता तो ले लेता. आज लेट हो गया. लेट कहाँ हुआ? एक मैच में हुआ है अभी तक. एक मैप हार्डपॉइंट में हुआ है आई गेस. And that is maybe asking too much from him, but at this point Godlike. यस क्या लगता है वाइटैलिटी और गॉडल के सेम नंबर ऑफ विन्स होंगे आज कि क्या सीन है? भाई गॉडल मैप थ्रो नहीं करी है वाला कुछ भी हो जाए. They're maintaining their 3-0 वाला thing. लास्ट बचा है. लास्ट बचा है पल्स. गॉडल ने नहीं दिया मैप. नहीं दिया मैप. नहीं सर. वेल प्लेड गॉडल. वेल प्लेड एनएस. एनएस भी अच्छा खेला भाई. बहुत अच्छा खेला. Let me share the stream on Discord as well. Just playing with the viewers' feelings, playing with our feelings. For a moment we thought that okay, maybe Godlike does actually have a big issue to deal with over here, but then now बाकी मैं उसमें बैठ जाता हूँ डिस्कॉर्ड में ताकि किसी को आना होगा तो आ जाए. Players of NS officials from this search and destroy, and now the upcoming map's going to be controlled, so even that's going to be interesting. मैंने मैप्स भी नहीं देखे अभी. कंट्रोल किस में? चैट कंट्रोल कौन से उसमें मैप में? Because whenever we are talking about the next map, you always know it is going to be super difficult in order to stop Godlike onto that map. But to tweet as well. Again, तब तक हाईलाइट स्टडी ट्वीट डाल देते हैं. मेरे को हंसी आ गया अगर गॉडल नहीं जीते तो दे लिटरली आर ट्राइडिंग. पता नहीं यार. गोल्ड जीत जाएगा आराम से. कमबैक क्रिमिनल्स अवार्ड. यस भाई अच्छा खेले. बट यार एनएस आल्सो वेल ट्राइड. वेल ट्राइड यार. वेल ट्राइड. दे वर क्लोज इनफ टू क्लोज द मैप बट वही है थोड़ा सा. कोई नहीं. That was something that NS, you're playing broke good. the backs of NS, and that is one of the reasons why again we are seeing Godlike up 2-0. Exactly. I mean, look at the scoreboard too, right? Prevail 16, then you've got Neutrino, who's the top fragger from the side of Godlike with 14. But if you take a look at the kill distribution, it's much more better on the Watch side party of D2 Godlike. की tweet डालनी पड़ेगी. एक Every second. single team or every single player, I mean, on this team is actually gelling up well as a well-knit unit. And the fact that they don't even have any kind of reaction on their faces seems like they had the idea, all right, it's fine, even if we are down, we will make a comeback.
We know that we've got the fragging potential and Dreamhack, they got Hyderabad, that on the 23. back of those frags. Yes, you know the rotations were SPS, also good, the adjustments were good. codm LAN. Still, it's just them winning it out. Here we go, ladies and gentlemen. The third game of the series begins now as we Map go कौन सा है? to Standoff. control. Let's go, भाई. Let's go OG with map. standoff. तो अपना OG map Always है. seen that we have to go in for a restart, and that's exactly what's going to happen. here. Rematch This होगा, one, but restart do होगा, not lol. worry, guys. The production's got our back. They will be making sure to set things up real quick and real soon. Gives us even more time to talk about what is going to be the approach of NS into this one. Because again, we've seen control. We know that everyone tries to take control of that side. मैं कि Anthem वालों को Insta पे DM किया, they replied. Let's go यार, अच्छा. The second part, but whenever Good for you're you, man. talking about those defensive setups, you've got such a solid positioning to hold. Yes, there is a possibility of the flanks, but you know Godlike has always been on point to catch all of those flankers off position. And I think so Abhi's, if he Guys, मैं tweet डाल रहा हूँ, wants, फटफट जाके if retweet मार दो he सब लोग, wants, let's he can go. try and pull off a crazy sniper into this one, because there are a couple of points where you can post up a sniper and make sure to utilize it well. Saksham unfortunately wasn't able to play that well in the previous search and destroy. True. I expected so much from this guy, but I guess sometimes you are not really able to perform that well. Not every day is going to be yours, but considering now we're going to kick things off to control, this will be a chance where sort of Saksham needs to pop off, because if that's not going to be the case, then, well, Godlike, once again, for them, it's going to be like an icing on top of the cake. Guys, क्या लगता है 3-0 या एक मैप ड्रॉप करेगी? Prevail should be the one who needs to show What do you his skills, think? because we have seen him perform in the control before. We have seen him doing wonders. But Here as we you go. also कर दिया mentioned, tweet. Pulse, you know, he's also a control Retweet king. मार दो जाके सब He लोग. can basically control a solo part of the map, and he can stop a अब आराम solid से push chatting from करेंगे chat. even against Anthem. We saw how quickly he was able to go यार क्या for those प्रोडक्शन है? leaders. फर्स्ट मैप At भी that रिस्टार्ट point, था. he हाँ, needs to अरे do द थिंग इज exact पता है ये same लोग thing पिंग गैप against ना हो Godlike. या The कोई ऐसा question is, मैच के बीच will में रिस्टार्ट ना they be करना able पड़ to जाए, pull off some इसलिए दे आर crazy डूइंग games? कि स्टार्ट में कर लो, That बेटर is है. going to be super difficult. सही है यार, I लेकिन think so that question will be उसके बीच answered में नहीं करना soon पड़ रहा, enough, तो because it's I better, heard you know. that the game's ready, and we might just be diving deep inside control soon enough. And I want to know your predictions, man. Who do you 3-0 think? मेरे को भी वही लग What रहा do है. you think NS officials has a chance to actually even bounce back? मेरे को भी वही लग रहा है. I will be brutally honest. In the search and destroy, I thought they would be having a solid chance, and they were leading as well. But once that map was dropped, and in such a way, I think so this control is going in the hands of Godlike. Yeah, I as well think that the previous search and destroy was a massive mental break for them. But here we go, ladies and gentlemen. Control's on the way as we're going to kick things off on the Control on this started. map. Let's As go. We've got the players of Godlike in हाँ. front of us already just going for a fiery start. This is looking a little bit too interesting, considering standoff is one of those maps where Godlike can be really good. ओके, एनएस का They पहला have been डिफेंड है. absolutely perfect on all of those maps, and Meltdown was the one where I thought they were a little bit shaky, but still winning all those things. एक का out, and cleanup as मिल of गया now, इनको. they're all B already capture हो जाएगा making a लेकिन. second tick of progress towards the B, and Sign of we control see में that they गॉडल are बाप. moving हाँ towards वही the end. मतलब This time around, इतना they've फास्ट decided भी मिल to गया अभी switch उनको. things up, and that too by a Almost lot. उनको And मिलने वाला है talking अभी. about switching Control things इन पे है up, मैप का. they've also made sure to change गेम the खेलो, gear, ड्रिंक because पियो. 28 and 21 is a life count. लहल. Exactly. मैं यार जस्ट अभी खाना खा के आया, इसलिए भी लेट हुआ थोड़ा. खाना पीना चल रहा था. Not able to sort of find the bodies of the players of Godlike, but at least भाई one लाइक of कर दो, them शेयर कर दो was स्ट्रीम down को. a while लेट्स ago. गो. Prevail was able to get one, but then instantly Prevail gets shut down. Neutrino and Trunks, they return back with a really good duo combination. And look at this, NS officials, they're running W out of दबा रहे lights, भाई and this is गॉडल starting वाले, to be a full massive एकदम. problem. They've only been able भर to रहे get भाई 6 घुस-घुस के. kills at this point, while when you're looking at the other side, एंडी जर्सी और वॉट. अच्छा, पहला बंदा है तो जिसने नोटिस करी भाई. मैं पहन के आया था आज. यस, एंडी की जर्सी है. more seconds to work with another point, and they've also stopped the clock at that, working for the first tick of progress, Stream by buffering? winning the fights on every No part chance. of the map. Indeed. नो चांस ब्रो. 8 to 22. हो ही नहीं सकता. Oh, this is looking tough, man. NS officials, the lifelines faded away from their eyes. This मक्खन तो चल रही है. They just keep on dominating. They just do not stop. यस, चिगर भाई इंस्टा पे फॉलो वॉलो मार लो. लेट्स गो. Can they make it count? OGs, yes, भाई, it's gonna be no. OGs. Godlike, they just got too much of a lead at this point. It's next to impossible to stop these OGs, guys in their baby. tracks. And क्या that's इस पोल it. पे वोट NS कर दो, तुम्हें क्या लगता है officials कौन जीत रहा है? getting picked off. One more to go. And the last वी man फॉर is विक्ट्री found. या फिर दिल से गॉडलाइक? क्या लग रहा Is है? the one to put the final बाकी lead TW into is their also playing bodies well. and win the first round in control, but again फट Godlike Discord join कर starting लूं. the things in the exact same way which they ended yesterday. And it seems to be going into another 3-0 if this is the kind of performance we're witnessing 3-0 from ही है. them. I'm only waiting to see what's going to happen in the playoffs, because just
One more win and they will be moving into the playoffs. That will be 100% qualification. Nonetheless, we're going to see yet again. What? Nice. What's going on? Just look at the kill feed. Godlike भाई just इनको all spawn over trap the मिल गया. place, all across Spawn the trap board. करेंगे भी बैठ के. Even a predator missiles out. It's gonna hunt down that player. I feel so bad for him. Another Pred as well in the meantime because Learn Neutrino, both of them got one from each and Claw pulled out by Trunks. You already know you can't move in from that side angle. Fights being taken, fights being won. What a shot that Guys, like कर दो फटाफट. towards the window. Spawn Even trap. the claw being pulled out from the side of Godlike, as you mentioned, a spawn trap being executed by these guys, and even the Annihilators now starting to be such a big problem. Knife कर दिया भाई. But they're losing out on the lives, and that's an issue. What's दिल से going on? Godlike भी for And this victory. अरे officials, अरे they're getting सही है भाई. grinded hard. Godlike was like, yeah, you guys try to challenge us in search and destroy. We're gonna decimate you. We're gonna dismantle you. खत्म छील दिया भाई गॉडल ने. 24-1 1v24. Godlike is manhandling their opponents. Lol, like they भाई. do not even mean anything. They don't care about anything. I still like the idea coming in from Prevail. He wants to waste the time because 10 more seconds to work. But the question is, will they find him? Yes, they will. He's literally left the device. That's going to be a knife. We're probably going to see a knife. Wait. 2 more seconds. They need to stop the clock. They need to stop the clock. Oh my goodness. No way. लॉल किल नहीं दिया प्रिविल ने. That's it. Done with any, हाँ भाई, Now gonna chill be दिए. switching sides. One last chance for NS officials to establish a comeback. And I highly doubt that's going to be happening anytime soon. Damn यार. That's literally. क्वालिटी कम नहीं आ रही ये वाले चैनल पे It इनकी. seems nigh impossible at this point because the spawn trap रुको was मेरे को just ना out उस too पे early and they still have Nordwin two वाले पे जान दो. already had. That's it. Nordwin वाले पे Now gonna be जान दो. switching sides. हाँ भाई One इसमें last 4K आ रही है chance देखो ना. officials मैं मस्त to 4K आ रही है. establish a उसमें comeback. 1080 भी But I थी. highly doubt What's up that's gonna रवि? be Welcome to happening stream. anytime soon. अच्छा अच्छा ठीक है बिग फैन. ओके सर सर कर लो बिग फैन कर लो हाँ. पहचान लिया भाई मैंने. वेलकम वेलकम यार. लाइक कर दो फटफट स्ट्रीम को. लेट्स गो. फुल वॉच पार्टी चल रही है. Already, I mean, Godlike, come on, have some mercy on your opponents. Stop using the operator skills. भाई You guys गॉडल are छिल already रहा है. winning the game. भून रहा है भाई legit. No, with another war machine out. This अबे दो मार guy is दिया just war a machine से. beast. With how good Godlike is, these guys need to play on a handicap, literally. Someone needs to give these Handicap. guys a handicap. ठीक है भाई. Because it's just unfair to the other teams. They're just straight up dominating. Even a purifier pulled out by a beast. Stop it, Godlike. एक मार दिया. दो मार दिया प्यूरीफायर से. They're not stopping it. Then के kills देख पे 21 kill. Damn. 25 and 17. There's no strategy coming Like into that, this sir. match. Let's go, There sir. is absolutely Welcome, just no sir. way they're thinking things through. They have just decided they're going to take control. अभी तो 6 घंटे of all की the stream है parts bro. of the Full map. मजा They're आएगा. going to go for a Full spawn watch trap. party है. They don't want to waste any kind of time. Permissions and मिल look गई at हैं तो that. कोई ऐसा सीन नहीं But it's being copyright fired and all onto का. the body yet again. And they are taking control of the B though. Wait a second. A few trades coming for them to the favor of NS, but 12 Trades तो and आ रहे हैं 20 is but the difference lead बहुत and है progress gold पे. being made on both the control points. This is what you call the final execution, my friend. Godlike, they've played जीत गई, with their 3-0 food, जीत they've गई played Godl. with their toys, but now they're done. They're here to execute them and exterminate them out of the game. And Godlike Esports. Prevail भाई क्या सीन है? Keep on moving up. They keep on Turn on moving खा up. लिया. How are they even winning these duels at this point? As I told Damn, you, yes man, भाई, these guys Godl should full play on a भर रहा है handicap. भाई. They're winning some impossible duels. It's something that's really just boggling my mind at this point. 3 more lives to go. And Okay, the retweet officials मारो फटफट looking watch party का. like they have got no chance, and they've also lost on the mental of even playing. Let's try to hit 7040 ये stream पे. And also the objective B. रात को Warzone Mobile भी It's करेंगे. onto the list of losing things though still. They're trying to grab something. Claw in the hands of Trunks. ये match के बाद मतलब ये round तो चलो खत्म हो ही गया. He gets one. एक kill रह गया. There's the second one. उसके They're अंदर gonna Discord just join कर hunt लेता down हूँ. Ghost. Trying to make 3-0 something भव्य आ रहा है, मैं आ रहा है. happen. Discord आ रहा है. Wiggle वाले पे आ जा. Claw coming in. I just hope it's not. कह रहा है जिनको टेबल शफल करना. अरे एक्चुअली बे करना चाहिए था तब इंटरेस्टिंग होता. Oh my God, he's getting chased Godlike down. versus Vitality It's होता. a run. अभी वो सीधा फाइनल में दिखेगा. He knows there's a chance he might just be knifed. लॉल. Oh, my Godlike. goodness. मेरे को लगा एग्जीक्यूशन देंगे वे. And this officials. भव्य अपने वाले सर्वर पे बैठा हूँ मैं अपना. विगल वाले पे आ जा रहा है तो. Once again, they get exterminated. It's Godlike. They dominate easily. Ladies and gentlemen, we need to head on to the stage and see what's देखते क्या मसाला exactly देते हैं what अभी we're मेजर looking बिश like भाई over अपने. there. अगर 3 मैप और कोई होता तो मान लेता 3-1 कंट्रोल में स्टैंड ऑफ 3-0. हाँ मोमेंटम बरकरार रखा है, वो पेस बरकरार रखा है, कंपोजर बरकरार है. मेजर भाई के बाल भाई उफ मैं आपसे जानना फैन हो गया. क्या खा के खेल रहे हो आप? क्या सॉरी क्या खा के खेलते हो?
एक्चुअली मैंने इडली खाई थी ब्रेकफास्ट अबे अच्छा, अभी यहाँ घर में इडली खाई है भाई या मेरे को आपने लगा टीम कुछ को ऐसा खाई है? क्रेजी कुछ ऐसा जवाब देगा। काफी अच्छा खेला एनएस ने अभी थोड़ी देर में आता। ओके ओके भाई ट्रोलिंग चालू हाँ ना। मैचेस देखे कल के आई थिंक Gold versus TW अभी नेक्स्ट क्या कि हाउ टू यू नो रीड योर ओपोनेंट्स नेक्स्ट वही है क्या? I would say they did really good and definitely as IGL I had to step up somewhere क्योंकि हारना थोड़ा अच्छी बात नहीं लगती मुझे। हारना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं लगती किसी को नहीं अच्छी लगती ब्रो बट हाँ ये लोग बहुत कंसिस्टेंट है। सर्च एंड डिस्ट्रॉय में आपको Hats off यार, अच्छा खेले। बिकॉज़ वहां पे मैंने देखा कि थोड़ा सा डगमगा गई थी टीम। एक्चुअली आई वुड से कि सर्च एंड डिस्ट्रॉय में मैं शॉटगन चला रहा था बट प्रीवेल वाज अ बेटर शॉटगनर देन मी क्योंकि उसने मेरे को बहुत पेला है and उसने काफी अच्छे से मेरे को रीड किया क्योंकि मैं कहां से रोटेशन दे ये बात अच्छी लगी मेरे को रिस्पेक्टिंग योर ओपोनेंट्स। इजी हो रहा है क्या स्कारफेस भाई? आ जाओ डिस्कॉर्ड आ जाओ आ जाओ आ रहे हो तो। कल तुम्हारी बात कर रहे थे वीसी में बैठ के। बहुत ही बढ़िया थैंक यू सो मच। मेजर वॉर्नर भी सलमान तो तेरे नाम बहुत अच्छी चीज दमाओ भाई। गॉडलाइक की टीम से कि RS कार तो आजा। स्पोर्ट्समैनशिप अच्छी दिखाती है अपनी अपोनेंट्स को भी काफी। हाँ ये अच्छी चीज करी भाई लर्न रिस्पेक्ट करी उसको। और That's good. काम करते हैं न्यूट्रिनो से भी क्वेश्चंस पूछते हैं बाकी अदर प्लेयर से भी क्वेश्चन पूछते हैं उनसे भी जानते हैं जीतने के बाद उनको कैसे सो आ रहा आजा विगल वाले पे हो ठीक है कांग्रेचुलेशन यार तुम तो बार-बार जीते ही जा रहे हो मुझे तो आदत हो गई है ऐसे बोलने की कोई ना वांट टू वॉच। अच्छा 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 कैसा फील कर रहे हो? हाँ TW भी और वाइटैलिटी दोनों मैचअप अच्छा था। 3-1 हो जाता हाँ, हो जाता कैसे बचे मतलब क्या माइंड में क्या चल रहा था उस टाइम पे जब सर्च एंड डिस्ट्रॉय हारते हुए नजर आ रहे थे? कुछ नहीं हम बस इतना देखते हैं कि ओपोनेंट्स क्या कर रहे हैं और अपनी टीम को मोटिवेट करता है कि कमबैक है फोकस करो नेक्स्ट राउंड पे देखो पिछली बार अगर भूल रेज नहीं करते? नहीं रेज नहीं करते कोई नहीं करता टीम में रेज? नहीं करता कोई करता ही नहीं है। यूजुअली मैं और लन करते थे लेकिन वो भी हम छोड़ दिए भाई इतने साल से साथ में टीम तो फिर कम होता ही है सब चीजें। हाँ बट दैट्स गुड। आपसे भी एक आधा सवाल मैं जरूर से पूछना चाहूंगा पहला मैच था भाऊ ऑन टॉप हाँ गया। कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी आगे के मैचेस के लिए कितना तैयार हो? फुल 100%। फुल 100%। क्या स्नाइपिंग करने वाले हो या अभी स्लेइंग के रूप में जाओगे? क्या कौन सा रोल अदा कर रहे हो? आपको क्या देखना है? भाई ये काफी ज्यादा बेहतरीन था। टीम को तो SMG ही देखनी है रन दे भाई देखो वापस में ये लॉल भाई फुल ट्रोलिंग चल रही है बे। आपसे बात कर लो लेकिन अभी टाइम आ चुका है कास्टर्स के पास जाने का उनसे बात करने का। लर्न भाई थोड़ा बेटर जवाब देते भाई। इटली क्या होता है? इटली पावर। ये वाला मैच ओवर टू यू कास्टर्स। Some good bets रुक मैं डिस्कॉर्ड आ जाऊं हूं ना मैं डिस्कॉर्ड बैठा तो हूं मैं स्कार तो दिखा नहीं रहा मेरे को। Really good when it comes to bantering it all around but speaking about the game man the last kill क्रिश भाई आपको भी अच्छा वहां पे पिंग कर रहा है अपना ठीक है ठीक है। stinger for the players of NS officials that's going to be कारफेस कहाँ है तू? ये पे रोल है तो? going to be like a massive nightmare. That is true, and again, since we're already mentioning about the nightmares, this might be the evening they would definitely want to forget, but also learn a lot from, because it will come down. Chat back like कर to दो the फटफट same स्ट्रीम को thing, पुश करो। Anthem versus NS. The ones who win in that match will be moving forward. And What's since up we Arti? already Welcome talked to about stream. क्या हाल moving है? forward, look at how forward Learn has been today. लंच 24-4 गया बे नाइस 5 का केडी चाहिए ना मैंने मैच चाहिए ना 6 का केडी माय बैड 7 का भाई रहने दो। But as we do more forward towards the highlights, Godlike, it was just their domination all across the board. We did not even see Born meet up power, हाँ बे। below 20 lives. भाई एनालिटर से तो भाई 5-6 मार दिया ना वो बहुत सही क्लच था। I saw the life count difference, especially in that last one. I just knew at that point that this is going to be a punching battle. It's going to be a game of cat and mouse, and it will be the one. भाई लास्ट में एग्जीक्यूशन देते हुए मजा आता। To end up punching the last person. It was fun to watch because everyone was having fun at that. But seriously, the one who had the most joy was definitely Godlike. Of course, they're going to have the joy. Who's not going to have the joy when you're just decimating your competition like that, right? When you're just dominating through, just storming through your opponents, not even respecting. सक्षम NS हाँ NS में ही है तेरे को नहीं पता था। When the man was trying to run for his life, which was quite unfortunate. NS में ही है वो। But now, speaking about the upcoming matchup as well, we know it's going to be between NS officials and Anthem. True. And moving in forward from this matchup itself, I highly doubt NS officials' mindset's going to be too good. Again, they've got to just brush it all off. Just like yesterday, they were able to do that. Yes, we saw one of the closest Hardpoint
previously, right? It was 248 and 250, and that closest Dreamhack वाले hardpoint was repost नहीं between मारे Dennis मेरी and story Anthem. So I कल think so they can बात pull हुई थी the exact same पिछली thing बार मारी off, थी maybe. But I'm just going to put the ball in इस Anthem's बार कर देगा court अब तो because they had a very strong read, and if they were able to get that one, maybe we could have seen another close series. I mean, Anthem, they desperately need to win it anyways because बाकी they लाइक सब्सक्राइब lose करते out रहना लेट्स today, गो they'll pretty much be eliminated from स्ट्रीम the थोड़ी top रैंक अप हो tier जाएगी team. और अच्छा It's रहेगा gonna, of लाइक course, मोर be a पीपल tough विल journey जॉइन for us साथ as में well वॉच to पार्टी win करेंगे तो this और मजा because आएगा I don't want to see any of the teams leave, but बाकी वीसीपी पे भी धीरे धीरे अपने बंदे आएंगे तो और डिस्कशन चलेगी अबाउट हु विंस बस तो पता ही है गॉडल जीतने वाला बट हाँ सही बात ये देखो कौन आया है ये हमारे और 5 AM के आईपैड स्नाइपर अंडर एज हैं क्या हाल है कैसा है बेंगलोर का मौसम भाई स्टार पे बोल रहा हूँ मैं देख तो लो स्कारफेस तो तुम्हारी वॉइस ड्रीम जैसी क्यों लग रही थी भाई एक पॉइंट के लिए मेरे को लगा ड्रीम भी आया है से बात हुई थी स्कारफेस भाई ऐसा क्या कर लिया तुमने अपनी आवाज को मेरे को लगा भाई बेंगलोर वाला बंदा है तो ये तो अपना कोलकाता वाला निकला डैम यार सही बोलूं भाई क्या कर रहा है अब हो कैसे गया। चल रहा है होप गॉड विल स्टेज भाई 5 हाँ यार स्टेज 5 जीते तो और मजा आएगा ये तो जीत ही जाएंगे एनएस वर्सेस एंथम इसके टफ बाद- कंपटीशन यस भाई नेक्स्ट किसका है एनएस वर्सेस एंथम और ये लैन हो रहा है तेरे को पता है ना हाँ हाँ हाँ। देख रहा था फिर अगला गॉडल एंथम है फिर वाइटैलिटी टीडब्ल्यूबी आई2के देन आई2के वाइटल कल की सेम मैचअप से अभी इनको करना चाहिए था ग्रुप शफल और मजा आता ग्रुप ए वर्सेस ग्रुप बी करना चाहिए था अन्ना पोड़ा रास्कला भाई कर दो स्ट्रीम ये अच्छा डिस्कॉर्ड पे देता हूँ ना तुम्हें बेटर भाई क्या हाल है हाँ भाई क्या हाल है बढ़िया भाई तुम क्या हाल है बताओ ये लो कर दिया तुम्हारा तुम्हारे याद आ लिस्ट रहा है तो याद आ रही है बे तेरी बाबे क्या सीन है वेरी अरे सस बहुत दिनों से लिया नहीं चलो ओए ठीक है ओए भाई इसको तो हर बार स्कार और भवे एक वीसी में शांत बैठ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता आई वाज एक्सपेक्टिंग वाइटैलिटी टू बीट गॉडलिक बिकॉज ब्रोज इज प्राइम हाँ बट वाइटैलिटी और गॉडल का भी डायरेक्ट फाइनल में होगा ब्रो क्योंकि इन्होंने ग्रुप सेम रखे हैं मतलब ग्रुप ए वर्सेस ग्रुप ए ही हो रहा है ग्रुप बी वर्सेस ग्रुप बी हो रहा है ऐसा सीन एक नहीं बार है बता बोलना ये TWB I2 के दोबारा हो रहा है वही तो बता रहा हूँ ग्रुप सेम है मतलब आज के भी ग्रुप सेम है अकॉर्डिंगली पॉइंट बनेंगे मतलब समझ गॉडल के 4-0 हो जाएगा वाइटैलिटी का 4-0 हो जाएगा बट वाइटैलिटी TWB फिर से एकदम टक्कर का मैच हो सकता है हाँ अब की बार क्या पता TWB ले हाँ हाँ फिर भाई उधर का कंपटीशन हिल जाएगा बट उधर लेकिन कंफर्म इधर तो कंफर्म एंथम बाहर हो जाएगी उधर कंफर्म आई2 के बाहर हो जाएगी जहाँ तक मेरे को दिख रहा है हालात पुराने लाइनअप से खेल रहे हैं क्या सारे हाँ मतलब भाई देख सीधी और एक तो विजय और विज है Starboy। फॉलन है स्टारबॉय है वो वाला लाइनअप है स्टारबॉय फॉलन वो खेलने गए स्टारबॉय खेलने गए हाँ भाई स्टार बॉय खेल रहा है हाँ, अरे द थिंग इज पता है 2 टीम क्वालिफाइड थी बाकी 4 इनवाइटेड थी 4 के अंदर आई गेस TWB गॉडल वाइटैलिटी और चौथी शायद पता नहीं कौन इनवाइटेड थी एनएस हो सकती है मे बी पता नहीं एंथम और ये बेटा क्या चल रहा है गेम में स्विच ब्लेड चल रहा है पता नहीं मैं तो खेली नहीं थे टाइम से एक साल बाद मैं अंडर एज नहीं रहूंगा दैट इज 18 सही यार जिगर भाई ग्राइंड करना फिर और क्या वॉरजोन में भी 18 प्लस का सीन होगा टू बी वेरी ऑनेस्ट पता है वॉरजोन में भी होगा क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी की गेम है yes I2K will take over TWB I guess I mean that's questionable भाई TWB अच्छा फॉर्म में कौन कह रहा है वेरी रियस कॉडम हो जाएगा क्या आ जाओ कॉडम यार अकाउंट ही नहीं है मेरे पे तो पता ही है तुम्हारा भी अकाउंट तुम पे नहीं रहता अगर तुम थोड़ा उस टाइम स्मार्ट रहते नहीं तुम्हें तो रखना है अपना अकाउंट रखो भाई यार मैं कहाँ से करूँ क्या कहाँ से करूँ जहाँ से करते हैं कहाँ से करते हो ये तो दिक्कत है मेरे को पता नहीं है फेसबुक डिस्कनेक्ट मारना होता है बस और क्या नहीं। यार आई एम ओनली 16 कोई नहीं यार कोई नहीं अभी क्रिएटर इवेंट्स वगैरह भी बहुत कुछ होगा भाई वॉरजोन तो क्रिएटर्स का हब है मतलब एज अ गेम उसमें क्रिएटर इवेंट्स बहुत होते हैं अगर तुम पीसी में भी नोटिस करो ना भी हैलोवीन के 3-4 इवेंट चल रहे थे बाहर शायद $10,000 $40,000 वैसा क्या कह रहा है नेक्स्ट मंथ अगर कुछ हो जाता है तो तुम कमीशन रख लेना 500 रुपए का हो जाता मतलब स्ट्रीम पे बातें कैसे कर रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं समझ में नहीं आया क्या नहीं समझ आया अरे मेरा आईडी का कुछ सीन करवा दो भाई मेरे को नहीं पता ये सब आई डोंट नो भाई आई एम नॉट क्या कह रहे हो भाई फिक्स वो थोड़ी है दुकान वाला क्या चालू करा इसमें बोलता है नहीं 17 सही है
क्या लगता है चैट तुम्हें ये मैचअप का क्या लगता है? एनएस वर्सेस एंथम कल भी इंटेंस गया था थोड़ा कंपैरेटिवली। एंथम जीतेगी भाई, एंथम जीतेगी। कल एनएस जीती थी 3-1। मैं एंथम की तरफ हूँ। चलो लेट्स गो भाई फिर वोट पोल में डाल दो एंथम, बट उधर तो एंथम का नाम ही नहीं लिखा मैंने, क्योंकि मेरे को लगा वो राइट टू कैच बाहर होगी। प्रैक्टिकल मैं तो जब भी गॉडल ही करा है। तो मैंने भी करा है, क्योंकि मैंने भी तो करा है गॉडल। सबने गॉडल करा है। 60% गॉडल, 27% वर्टिलिटी, एनएस 13%, टीडब्ल्यू भी 0%। ऐसा कैसे भाई 0% भाई? जिगर भाई आप वोट नहीं करे शायद, आप चैट में टीडब्ल्यू भी लिख रहे हो, वहां पे वोट भी करो। सीधा लाइव चालू कर। हाँ वो डिले हटा दिया मैंने, जितना आ रहा था ना वो 2x कर दिया स्पीड को, डिले हट गया। इंटेंस होगा हाँ भाई, वही क्रिश भाई फुल इंटेंस होगा मेरे को लग रहा है ये वाला मैचअप। अगर लाइक सब्सक्राइब करते रहना, परमिशन लेना आसान होता है ये सब चीजों के लिए। हाँ ड्रीम्स तो फिर गोवा ग्राइंड कर, उसका तो अपना ग्राइंड चल रहा है। वही सही बात बोलता है, स्कार को सब पता है, स्कार को सब पता है ना भवे। अरे मैंने 2 दिन पहले खोला मैंने गेम, मैंने देखा चल रहा है। बाकी गाइस रीट्वीट मार दो जो मैंने ट्वीट करा है, अगर कोई ट्विटर पे है। वॉच पार्टी एनएस और एंथम। विगल भाई नया आईडी बना के आ जाओ, मैं देता हूं आपको, बताओ। नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए। एंथम they said it's not over bro, let's see भाई। अच्छा है भाई if it's not over, मजा आएगा if they like beat NS, क्योंकि थोड़े फिर स्कोर्स दोनों के सेम हो जाएंगे, NS और एंथम के ना क्लोज हो जाएंगे कंपैरेटिवली, तो फिर एलिमिनेट कौन होगा उस पर डिपेंड करेगा। प्रोजेक्ट ब्लस्ट्रेक खेल रहा नहीं यार, मेरे को रिप ऑफ गेम पसंद नहीं है ब्रो, मैं ओरिजिनल वॉरजोन ही खेल लूँगा। एंड वॉरजोन का सीन ऐसे अपडेट डिले हो चुका है, जो अपडेट अभी आएगा वो 2 अपडेट आएंगे ये महीने, एक मेजर आएगा एक बग फिक्स आएगा। तो पहले बग फिक्स आएगा फिर मेजर आएगा, मेजर के अंदर शायद मॉडर्न warfare 3 के साथ वो थोड़ा कोलिंग करे गेम को, तो बढ़िया है। ये सीन है चैट, जो भी वॉरजोन का अपडेट का पूछ रहे थे। रिलीज तो अभी एक्सटेंड हो गया ना, स्प्रिंग 2024 भाई होता ही रहेगा भाई वो। नहीं यार वो इसलिए हुआ है क्योंकि एंड्रॉइड वगैरह सबके लिए लैग हो रहा था, प्लस गेम वाज नॉट रेडी येट, एंड वो लोग मॉडर्न warfare 3 के साथ उसको क्रॉस लिंक करना चाहते हैं, तो आई थिंक जेन्युइन है, मतलब अगर डिले हुआ तो जेन्युइन है, जेन्युइन। भाई फिर तो अभी भी और 1 साल लग जाएंगे। 1 साल का लगेगा, 6 महीने, अप्रैल मार्च के आसपास। पर ठीक है, तब तक अगर अच्छे अपडेट्स आ गए तो वो सही है, वरना मैं पीसी ग्राइंड करूंगा मॉडर्न warfare 3, उसकी स्ट्रीम करेंगे बैठ के भाई, वॉरजोन पीसी। वरना स्कारफेस भाई आके बोलेंगे रोल प्ले करो, रोल प्ले करो, रोल प्ले करो। है मैं ये बोला मैंने कंसंट्रेशन का बोला था। नहीं भाई तुम रोल प्ले के पीछे पड़ गए थे भाई। मुझे अर्पित वाला की याद आ गई, कुछ बोल लो उसके बारे में। नहीं भाई उसकी 2-4 लाइन याद आ रही हैं। कुछ टॉक्सिक लाइन है तो मत बोलो, अपने तक ही रखो वो लाइन है। 4 लोग मिलके इको चैम्बर बना के। अच्छा आगे बोल लूं? नहीं भाई मेरे को नहीं पता, रहने दे। I'm playing it because can't stream Warzone Android right now। हाँ वही एग्जैक्टली वो तो है, बट ये प्रोजेक्ट ब्लस्ट्रेक से बेटर वही है कि तू मतलब Warzone Mobile का ही कंटेंट बना, क्योंकि कंपैरेटिवली तेरे गन्स वंस का सीन तेरे को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। प्रोजेक्ट ब्लस्ट्रेक तो भाई बाहर ही नहीं आएगा इंडिया से। मेरे भाई बोलना, हेयर कट बहुत अच्छा है। थैंक यू यार, इसी बात पे मेंबरशिप लो। अरे इसका नहीं खुलने वाला भाई, एसबीआई अकाउंट हो चुका है फ्रीज। नहीं स्कार बीच बीच में ले लेता है मेंबरशिप, बट फिर इसका ऐसा सीन है, मेरे को लगा स्कार ही ऐसा बंदा होगा जिसकी हाईएस्ट वो मेंबरशिप होगी नंबर ऑफ मंथ्स वाइज, बट नहीं यार, ये बीच बीच में वो ऑटो पे हटा देता है। ये भी धोखेबाज निकला भाई। हाँ भाई धोखेबाज निकला। स्कारफेस भाई याद दिलाते हो इसकी। अरे आगे अपने आगे तेरे नाम वाले सलमान खान। अरे फिर से कल वाली शर्ट नहीं क्या? ओए खड़ा हूं हैदराबाद में ड्रीम हैक में, लेट्स गो मेजर भाई। हाईटेक सिटी एग्जीबिशन हॉल पूरा भरा हुआ है, लगता है अरोड़ा बहुत मजे कर रहे हैं बिकॉज़ यहां पे हम लाइव देख पा रहे हैं। अच्छा थैंक यू यार, थैंक यू, अपने लिए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज बोला है भाई ने, थैंक यू यार। पहला मैच हमारा हो गया और एवरेज मंगा दिया, जैसा ही हमें देखने को मिला कि हां नतीजा वही रहा, ऑफिस में थोड़ी सी बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब टाइम आ चुका हमारा कॉडम खेलते हैं, बट पहले उन बच्चों को मैंने सही है यार जिगर भाई, बढ़िया है भाई। द फाइनल्स खेला, फाइनल्स नहीं खेला यार मैंने, बट उसका मैंने देखा बीटा का सीन है। एनएस वर्सेस अभी अंतम है। व्हाट्स अप गोलू भाई, वेलकम टू स्ट्रीम। क्या हाल है? ए सक्षम भाई, सक्षम बॉस।
पल्स प्रीवेल सक्षम याद है तुझे? याद है किलुआ है हाँ किलुआ भी है गोश्त ये गोश्त भी अपना वो है आरएनटी में जो था गोश्त पे याद है किलुआ तो Warzone Mobile वर्ल्ड रिकॉर्ड पता नहीं यार टाइम जीत पाएगा प्रीवेल मस्ट ट्राई स्टॉक मार रहा है भाई वो तो मारेगा ही भाई और एक्चुअल में गेम में भी वही अकेला मार रहा है फिलहाल तो बेचारे की हाइट है थोड़ी 4 फुट कोई बात नहीं पहला मैच अरे डूबी भाई कहाँ है डूबी भाई नहीं गए लेकिन कमियां डूबी भाई तुम्हारी डूबी में घुसे पड़े ओए इसी बात मत करो भाई फालतू अब ये दूसरा चांस मिल रहा है डुओ कहाँ चैट पढ़ रहे भाई फोन पे यार क्या चल मेरे पास ड्यूल मॉनिटर नहीं है भाई जो मैं ऐसे बैठ के पढ़ पाऊँ फोन पे पढ़ रहा हूँ इतना क्लोज जा रहे हैं हम तो मैं है वो पोटेंशियल और बाकी कोई टीम गॉडल के भाई उनकी टीम खेल रही है लैंड पे वो लैंड पे नहीं है वाह समझ गए अब क्या करना है क्या बोल रहा है गोल्डन के बारे में कह रहे गोल्ड के लेवल की कोई टीम है नहीं उनको इतनी अच्छी टक्कर दे दी हमने तो बाकी टीम्स को हरा सकते हैं वही जो मेजर बोला अगर हम बात करते हैं आपका मैच होने वाला है और अगर हम बात करें एंथम से मेरे को लग रहा है जीत सकती है वापस यार मुझे ये बताओ कि कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट अभी आप फील कर रहे मेरे को लग रहा है एनएस जीत जाएगी चैट तुम अपनी प्रेडिक्शन डालो फटफट चैट में के पहले ही कॉन्फिडेंट रहते हैं हम ये नहीं देखते कि सामने कौन सी टीम है वो भाई क्या बोल रहा है निकालते हैं बाहर बस दैट्स इट कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को जो भी आपको लाइव देख भाई उसके पास शक्ल भी है कॉन्फिडेंस भी है स्कारफिश तेरे पास क्या इट्स ऑल लव गाइस वी आर ऑल कॉन्फिडेंस है ऑल ऑफ अस आर हियर बिकॉज़ ऑफ यू गाइस चलिए तुम्हारा शक्ल नहीं है शक्ल है सॉरी क्या बोल रहे हैं आप है भाई है नाइस कुछ तो है ये देख सक्षम को ऑलराइट थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू आप अपनी सीट पे जा सकते हैं एंड एंथम लेट्स गो जिगर भाई गुड लक फॉर योर टीम भाई अच्छा 3-2 ओके बिल्कुल ही मैं बोलना चाहूंगा 3 कौन 2 कौन बढ़िया तरीके से दिखा नहीं भाई कॉन्फिडेंट है अब बात होती है हमारी सेकंड टीम 3-1 होगा अब बात मेरे को लग रहा है 3-1 जीत जाएगी हां लेट्स सी एंथम बट आई वांट कि एंथम जीते तो थोड़ा कंपटीशन बढ़े मतलब उस वे में देखा जाए तो प्लीज भाई स्टार बॉय ये पता नहीं कौन है आई डोंट नो पता नहीं कौन है ये भी पता नहीं कौन है अरे कौन को नहीं ये तो अपना फॉलन है ये है फॉल अरे ये वाला फॉलन थोड़ी भाई ये अलग फॉलन है क्या ये अलग फॉलन है पता नहीं फिर दूसरा फॉलन है ओके बंगाली कौन है फॉल तो मैं उसके लिए हो गया था उफ भाई पर वो नहीं हुई ना तेरे लिए फॉल तो चुप रहा है ओके डे नंबर 2 ठीक है भाई कैसा फील कर रहे हो आप 3 एंथम ओके लेट्स सी बढ़िया फील कर रहे हैं क्या भाई इनका आईजीएल कौन है बीच खेल रहा है आईजीएल जो अभी इंटरव्यू दे रहा है क्योंकि मोस्टली सारे आईजीएल्स को इंटरव्यू ले रहे हैं ये लोग प्रीविल भी आईजीएल है एनएस का सारी टीम्स जो है वो तैयारी करके आई हैं भाई मुझे बहुत गंदी एक लाइन नहीं शांत रहे इतना कुछ नहीं सोच रहे ज्यादा बस चिल एंड फन करना है कितना भाई ने बोला चिल करने का तो करने का मैच रहेगा आपका रिजल्ट हम लाइक वैसे फोकस नहीं कर रहे लेकिन हम अपना बेस्ट देने वाले हैं आई मीन वही मैटर करता है क्या असर है भाई तू उधर नहीं खड़ा स्टेज पे शांत रहे बेस्ट दिया और अगर आपने एंजॉय करा तो आप तो अपने घर पे बैठा है हां ऑफ कोर्स इंस्टा देख देखता हूं एंड इसी के साथ आप प्लीज चले जाइए हां बिगल एंड लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टाइम आ चुका है नॉर्डविल ने स्टोरी देख ली रिपोस्ट नहीं मारी भाई इस बार सेकंड मैच डैम यार डे नंबर 2 का बहुत ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ चुकी है कंपटीशन भी बढ़ चुका है एंड ये कंपटीशन अब अपने पीओवी से दिखाने के लिए हमारा इंतजार कर रहे हैं हमारे कास्टर्स Let's Man, go. I just love it when Major Beast keeps on saying, ladies and gentlemen, boys and girls. It just always gives me those vibes where I was back in the day on those beaches and just enjoying my life. But over here as well, I'm enjoying my life, ladies and gentlemen, because these teams are definitely ready. We saw Anthem and its officials. Both these teams are on a struggling phase, especially Anthem yesterday. They lost both. अगर मैं होस्ट होता तो बोल देता खड़े रहने का तरीका थोड़ा कैजुअल है It was the exact same scenario, right? So you already know that they are super prepared, but खड़े रहने का तरीका थोड़ा कैजुअल है दोनों ने साथ में लिखा है चीज superb roster. We saw it in the previous game. Yes, did not work out really well for them. किलो भाई ने पुरानी जर्सी पहनी है ये कौन बजा रहा है भाई साउंड बोर्ड मत बजाओ भाई all of them are जेनन है क्या ये people with super potential. और क्या हो गया भाई कैसे पागल हो रहा है step up today in this कि तू है अच्छा Exactly, and they're definitely going to step up because one thing is स्कारफिश भाई क्या सीन है मेंबरशिप लेने गए हो जो माइक म्यूटेड है ले लो यार Godlike themselves ले लो महंगी वाली ले लो महंगी वाली ले लो भाई हां और वो खोलो थोड़ा 8000 वाली ले लो भाई भवे को दे दूंगा 1-2000 And speaking about Anthem, as I mentioned yesterday, it was like a nightmare for them, but I hope they've gotten over that nightmare. ले भाई पैसा छाप रहा है तू भाई डॉक्टर Well, getting भाई मैंने जो लाइनअप एक्सपेक्ट करी थी तो वो है ही नहीं भाई super स्टार बॉय है important whenever you are going forward in the बाकी next सारे day. पता नहीं कौन है We're gonna have a quick look at the highlights as well as to what happened yesterday and why is the reason where Anthem Underdog is talent where है they यार are right now.
I mean, they did वो submit? lose out. It was a 3-1 नहीं, highlight दिखा situation रहे। though, but again, I हाँ, love the समझ fact गया मैं, that इसमें they were showdown able किसने to take चलाई? the first hard point, but it was Summit. And किसी ने नहीं चला चलाई। I'm really excited to see Prevail what's going to चला। happen today. but Prevail ने I switch love bullet चले their bro। performance into that नहीं, one. नहीं। And देखना also right the में। second hard point was super close. So Exactly. the main thing is going to be how well can they Action convert their boss। hard point win into the search and destroy. गाइस बताओ अपनी and प्रेडिक्शन then डालो फटफट चैट में। वीरेश ने डाला 3-2। ये तो जोक्स हो गया है। वेलकम टू स्ट्रीम यार। कौन है भाई, क्या सीन है, क्या हाल अच्छा है? पुराना मैच दिखा रहे कल का। हाँ ये हाइलाइट्स है, वही तो कह रहा हूँ। हाँ कंपटीशन तो दिया था भाई, इस बात नहीं है। वही जीत सकते हैं बाकी हम एक तुमने मैच। जर्सी नोटिस करी जो मैंने पहनी हुई है? जस्ट सिंग। Yes, that is true, but Scarface भाई पे भी है जर्सी। तेरी स्ट्रीम पे तेरी शक्ल कौन देखता है? अबे ओ yes, I can definitely agree. फेस वैल्यू है भाई, फेस वैल्यू। हंस कैसे रहा है बे? Super close. तुम Scarface, Anthem अगर has the chance to do इसके that. फेस की वैल्यू है हाँ तो हमारे फेस की तो फिर पता नहीं कितनी वैल्यू होगी। अबे ओ स्कारफेस तू तो मत ही बोल। मेरा फेस का तो वैल्यू है भाई। अच्छा ओ मैप देखो, मैप देखो, मैप देखो, मैप देखो, मैप देखो। I know, and I know the reason why all of that as well. It's a super open Stand map, off, a great fountain third in map between. है, I love second the vibe meltdown that है। they're sharing right now. Super Summit summer का vibe. है? You want to have a Summit monster in नहीं your भाई। hand and chill down. सबमिट तो बैन भी नहीं करा है कहाँ लेकिन? Exactly, Hasi and है ही नहीं। perfect हटा ही map दिया for क्या? that as well. Again, we'll be moving forward to the भाई, kickoff ठीक है if भाई। things push comes to a show, and then we also have the meltdown search and destroy on which we भाई just यार, saw Summit आता तो मजा आता। NS performing such a great way. सबमिट में देखने मजा आता है। काइन अच्छा प्लेयर है, ऐसा क्या? लेट्स सी। देखो फिर से जोक्स हो गया। कौन है भाई, अब मैं क्या करूँ? वीसी वाले भी रोस्ट करते हैं, तुम भी रोस्ट करते हो। मैं तो टोस्ट बन के रह गया हूँ। बोलना। हाँ मेल्टडाउन बोलते बोलते भाई ये स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं। भाई उनका भी काम है, उनको भी पैसा मिला है बोलने का, बोलेंगे ही। अरे ये बता ना, मेल्टडाउन को फिर से डाला क्या? हाँ हाँ डाल दिया Just looking at मेल्टडाउन the map वापस। that was in front of us, I still ठीक है, feel ले that आले, in हम लोग terms of खेलते हैं search and मैल्टडाउन में। destroy and हाँ भाई याद है, कल हम यही नॉस्टैल्जिया लेते भव्य और मैं बैठ के आरएनटी के टाइम पे ये करते थे, वो करते थे। Anthem has got that ice and they can तब स्कारफेस एलिमेंट में पता नहीं क्या कर रहा था। एलिमेंट में था, एलिमेंट एलिमेंट में था। आरएसटी में था, सॉरी हाँ आरएसटी में था। तो कौन सी टीम है, मैं तो सुनी भी नहीं है। आरएसटी की ओनर वो थी कनिका प्लेस करके, जो है ना, जो भी हाइड्रा में थी, पता नहीं। कॉमेडी कर दिया आपने तो, ऐसा है क्या जिगर भाई? गाइस लाइक करो यार, क्या ये अनफेयर है भाई? 11 लोग देख रहे, 11,000 लाइक तो होने चाहिए भाई। कम ऑन यार, कर दो भाई, 11,000 लाइक कर दो। My king can also be a member to the channel to support and get some exclusive perks. स्कारफेस भाई जैसे मत बनो, बेशरम मत रहो, ले लो मेंबरशिप। इनको तो बोलने पे भी नहीं ले रहे हैं। 30 रुपए तेरे पे नहीं है, बंदी का रिचार्ज करने के लिए 300 है, हैं? भाई के लिए 30 रुपए नहीं है, नहीं भाई। ये बात होगी भाई अभी। Just kidding, भाई। that your opponent is just as good as You have a great if face not for better. RJ. So you definitely can make things happen and make wonders. तो कहना क्या happen. चाहता है? And आरजे Anthem शक्ल नहीं is दिखाता है। probably what they've got this आवाज in अच्छी है mind. तो कहना चाह रहे हैं मेरी, थैंक यू यार। Again, when we are talking आई नो about मेरी आवाज those बहुत maths मधुर है, aspects and the studies मैं भी that they've गाने been गा able to सकता हूँ। do. I've been mentioning NS, yes, they were able to do a Integrity great job Anthem. on Godlike, but Anthem had the हाँ opportunity. इंटीग्रिटी to इनका do it स्पॉन्सर है, एक और against गए, Godlike as well मैंने देखा था as उनका NS, काफी अच्छा and पेज वगैरह बना रखा है इन्होंने। everything's going to start off at They're good. Hacienda, and that is the first hardpoint map. I still feel आवाज आ रही है, आवाज आ as रही है, soon as I आवाज आ see रही है, the आ रही है। hardpoint, I kind of fall अरे, वो लोग into check Anthem's Let's side go, because boys. they have been super solid on the rotations. They've been super भाई solid. 30 भाई का मैं पानी सोच रहा पूरी था portrait खिलाओ, होगा। नहीं मुझे लगता लाल भाई। portrait How होगा। quickly can नहीं you यार। catch those नहीं, flankers? portrait Because छोड़ दिया, Godlike has portrait been छोड़ दिया। super Portrait prepared छोड़ onto दिया। that one. तो तेरी तो बात होती होगी बंगाली होती है। अरे भाई तू नहीं, उसको 2 साल पहले छोड़ दिया। आमी जे तुम्हार। ये देखो आमी जे तुम बोल रहा है। पॉटेट से कुछ याद आ रहा है, मतलब पॉटेट के रिश्तेदार बड़े अच्छे थे, ऐसा तो बोलना चाह रहे कुछ, पता नहीं भाई। भाई मुझे तो पोर्ट्रेट से एक चीज याद आ रहा है भाई, ऐसा नहीं याद आ रहा मुझे। अरे शांत रहो भाई, तुम गेम पे ध्यान दो भाई, गेम पे ध्यान दो। वॉइस ऑफ जियान फ्रॉम डोरेमोन, ठीक है भाई। कौनक भाई, मैं हूँ जियान, हैं? चलो चलो लेट्स लॉक इन भाई। चलो असैसिन करते हैं भाई सबको, चलो लेट्स गो। चैट लाइक कर देना, ये मैच खत्म होने तक 20 लाइक होनी चाहिए, 2 लाइक बचे, कम ऑन लाइक कर दो। याद आ रही मुझे। भवेश कार तुमने लाइक नहीं करा तो तुम भी लाइक करो। कर दिया भाई मैंने। लेट्स गो।
Absolutely, and it's going to be super fun. चलो लेट्स गो गेम पे ध्यान देते हैं थोड़ा शांत रहते हैं हम against NS officials. I will see the same result on a different Hardpoint day. है पहला Or will राउंड we see a change story as the first few picks coming in favor of NS, but the trades are back and भाई forth. बंगाली है विगल कोई बात नहीं इग्नोर कर देना Getting the hardpoint control and getting the first early points on. Now I really love this approach. You have a but great face honestly, for they trolling also have on to social maintain media the control comment over section. these ठीक है भाई upper कीबोर्ड वॉरियर बोल लो Oh, speaking about having the control, 13 and 5. NS जिगर भाई ऐसे बोलोगे यार I mean, you have to start losing out on those duels. It's complete fine though. NS official. मेरे now जिगर के playing a टुकड़े little ऐसे more मत on बोल the भाई back step, but ये still दे- it's अरे not like भाई under वर्ड प्ले है control. भाई Team Anthem isn't really सारी established उम्र yet, में but जोकर it's सब just बने आ it. रहे हैं Considering it's just the नहीं यार वो start तो of nothing उसके but लिए है वो set जो right राइडर now, राइडर but करके है बिग Suction बॉस is में definitely बेचारा doing a fantastic job and dropping भाई down गेम पे the देखो bodies. गेम पे क्या चल रहा है हाँ भाई गेम में ध्यान देते हुए Hacienda is one of those things. If you're going to have the control of the upper floor, you will be able to सक्षम control the भाई map pretty much केयर most of the पैकेज लेके time, घूम रहे हैं because Hardpoint is something that really does matter. And Spread especially आगे when you're going to be having Nice. high ground control, पढ़ते you will पढ़ते be having so much visual बढ़िया information. Predator दो missile was एक locked in, and Starboy was taken out. Death from above. Saksham brings it towards Starboy, and that is the P1. Just in सक्षम अच्छा फॉर्म में खेल रहा मार रहा 29 to 18, not a huge difference though. Still fights being taken. हाँ, Pulse गेम में finish all the people who are making feed those दे रहा rotations तू? in towards the stairs as well. Starboy, नाइस those वन few pickoffs as well, but दे again, बॉल NS कौन रहा है just जिसकी come out फिर on डबल top with डबल those trades every दैट्स single वो time. ना You know that नेगेटिव this garage had been ओ भाई way नाइस too नाइस टू big पिक्स for नाइस टू them, पिक्स but ब्रेक मिलेगा perfect is इनको the spray coming in from Wiz. नाइस वन Grab विज भाई नाइस मार चौथा भी मार प्रिवेल है नहीं प्रिवेल लग रहा है नहीं नहीं विज विज Hurt अरे नहीं takes care of his opponent, gets rid of him, and it's official so far. They've done a ये fantastic prevail है। job controlling the बढ़िया। point. Team Anthem is trying their best to fight back. भाई एंथम अच्छा फाइट बैक कर रही है एक्चुअल में The question is, will they be able to get those? Chat picks अपनी that prediction they need? डालो Because फटफट right chat now, पे। Pulse is the one who is controlling the hill. अरे Yet वो Anthem मेरे कहते ही छोड़ continuously दिया going in था for those contests, and finally they found the picks that they needed. अच्छा मारा, 15 more अच्छा seconds मारा। of scrap ये time अच्छा to next go in rotate the कर रहे हैं, Anthem's way. but उनको I lead think मिल Suns जाएगा। are going to try and take control of the next P3. Because again, you can see all 5 of them just moving forward. Now, here is मुगल भाई something हो that सकता था Anthem कॉम can में try हाँ to यार do, बट right? अंडर एज They वाला can सीन था definitely try जब प्राइम and पे make थी sure हमारी that टीम one or मैं two और भाई people दोनों अंडर एज थे preemptively rotate towards the next one, maybe at the 20-second mark to try and catch them off guard. Because as of now, NS have और got जो every एज में थे single उनको pick तो they अभी needed. भी They've got the numbers खराब on the ही map खेल and they've got the hill under तुम्हारी control. टीम तो पूरी Look अंडर at the kill feed. है A while ago, it's just a बिल्कुल place केयर of पैक और भाई नहीं जो घूमता एज में थी वो भी तो अच्छा नहीं खेल ऐसा रहा था क्या? ना उसको भी हमें निकालना पड़ा So much damage. Oh, तो this केयर could be पैकेज में 2 कोई भी kills. वो आ जाए अलाउड होता है क्या The Sparrow from the side of सही है? Starboy is now मतलब starting बैंड to वाले भी feel यूज कर so पाएंगे फिर तो वीटॉल आ गया तो star player for the team, and मारो it's actually proven up to his सही है? name as well, but eventually वो जो राइडर राइडर है तू भी Yeah, रोज कर ले अरे यार मतलब मीम वगैरह देखता रहता हूँ मैं भी instantly. Ground 5.56 has been one of those Anthem lead ले चुका है। utilized so much lately, and these players are doing a fantastic job in playing with Oh, that but AR Anthem as बढ़िया, well. बढ़िया। Team Anthem now finally they've got the control and they've also got the lead. कोई यूज But नहीं look at करता अच्छा Saksham trying his luck to push up, but instantly gets dealt Oh, with. nice. I love the भाई fact अच्छा that होल्ड all कर the रहे हैं। operators are still being kept on hold for the next sale. P4 is going to be where we're going to see things going rough. And that's Ghost Vibe on पे वो both है, of the ends. The ना, question War is, Machine, which Prevail one पे sets down Sparrow। the opponent's operators? We've got the Sparrows, Annihilators, War Machines, even the Purifiers almost up. ये As soon जीतना as I था was कि लोगों talking को। about that Killua being taken care of in that पहले rotation. So lead this तो is ले ली going to be ठीक-ठाक। probably हाँ। Anthem having that advantage. Though Pulse pulling out the Intense जाएगा ये वाला। already. Annihilator in his hands. Spots a man making it up the ये नहीं stairs. Third War score streak के लिए, Machine okay, 2 okay। now. From the मुझे side दो ही goes स्कोर स्ट्रिक से लाइड है क्या Sparrow अलाउड है there क्या as well. ईएमपी भी यूज Just कर सकते हैं going गैस for the pre-fires, trying to find at least one man around the corner. It's going to be a little bit tough. Kill War speeding Machine would finds lol। one, Nice, too. nice, Does nice। his job beautifully. Now it's the players of Team Break नहीं Anthem होगा। अभी just कितने का है dominating तो and रेट नहीं rolling एज through their 19 का हूँ भाई opponents. भाई, To break get कर a दिया। decent amount of lead so far, but can they sustain that? That's the question. Yes, absolutely. Since the timing अच्छा now break आया है perfect Anthem का वैसे। coming in for Anthem, they're still controlling the hill though. Both of the team अरे members ये are on ए there in the अच्छा। hard point, not Oh, letting nice। opponents take care of it. Nice। But Wiz will be the one to बढ़िया, shut बढ़िया, everything बढ़िया। down. अच्छा खेल रहा है Anthem अच्छे फ्लो पे है Pulling एक्चुअल में the Godlike pull out. Can Kilo find anything more than he already has? That's the question. So low on that HP will be taken down. Fallen by जल गया। Saksham coming in for the trade off, but Cayenne making sure that अरे he is still there Starboy। for the contest. 108 to 65 the score difference. 7 more Spread seconds आ to गया। work with. No one giving him ओके any बढ़िया scrap बढ़िया time. अच्छा जा रहा है Oh, अच्छा जा रहा है Guyot down to 3. अरे अभी भी स्टार Nicely बॉय मार रहा है done. भाई सबसे ज्यादा। हाँ लीड पे है अभी Well, ये but अपनी that's gonna be एंथम denied अच्छी लीड पे instantly.
Stopped in the Hunt track, up red and stopped in EMP the system, grind, okay, but okay. now as we've got Team Finish Anthem Anthem, yeah, अच्छा just खेल रही है rolling भाई. through so far. They're doing a fantastic Not gonna job lie, of बहुत keeping अच्छा their खेल रही है. opponents on the edge, on the bay. Oh, बढ़िया. Saksham as well. He tried his best Trades to आए, way trades down in आए. front, and its officials now really starting to struggle to win these fights. But Guys, Team like कर दो, Anthem is फटाफट doing a like करते रहो, fantastic share job करते in रहो stream playing को, like a well-knit unit, ताकि watch party playing की like a permissions team मिलना easy हो to जाए got यार. each other's back. और भी events Also, होंगे और भी hopefully with करेंगे. floor control, they're actually going to establish that too. All chip member to support the channel. Down the line in the front, and even ground 5.56 in the hands of Proxy. Tried his luck, but got shut down. I love the fact that both the teams are Oh, playing nice, on nice. towards these upper floors because you know how important that control is, and they're not हो जाएगा giving शायद. control of the hill हो to जाएगा. any other one. And for now, NS officials will be the one to grab a few more points after that. Will be quickly traded off as well. The trades go back and forth, kind with the Hunter Killer drone Yeah, finds right. Saksham. That's a Oh, good nice. pick coming Yeah, in. yeah. Last few Man, तुमको scraps मिलेगा again. scrap point In मिल favor of जाएंगे. Anthem, but the question is, can they find Kyan, who is sitting inside the hill? Will be shut down finally from two different angles. Oh, 115 on the board. Close for जाएगा Anthem, भाई, but बहुत now close this जाने वाला है. officials is the one that has got the point control. This is not a good news because easily Again? that can be caught up as well. Man tried his best to sneak in, tried his best Yeah, to can stop do them more. for the points, but eventually, even this man gets taken out of the game. This is where NS officials is now going to be a little bit more desperate, considering Anthem, they get the point control once again, and the problems keep on stacking up for NS officials. This needs to be found a cure for. बढ़िया बढ़िया Damn, बढ़िया. Purify is Anthem probably going पूछ to रहा be है the भाई, cure Anthem for बहुत that बढ़िया situation. As Sparrow is Mono being pulled off, Starboy makes sure that no one's going to be moving in through that one choke point. Coming in from the cars, and that's a good spray down. Chat like कर दो if you haven't already, like कर दो फटाफट. Net देखा तूने pre-net देखा कितना बढ़िया हाँ, वाला. बढ़िया था. Sharper का need अच्छा था वो. Any kind of utility, though still they're sliding into the hard point. They're trying to take control of the hill. The trains go back and forth, yet in favor of NS. Exactly. Goes. भाई कितना close जा रहा है. अभी NS lead ले लेगा यहाँ से, मतलब close कर लेगा. 142 on the board. They can make that a 143. They're Prevail का पोजी अच्छा है. It's just over भाई, and over 146 coming in. होगा भाई, They're able to बहुत establish the control. अबे लेकिन 250 वाला है, 150 वाला नहीं है. Just struggling to breach in. हाँ, हाँ, लेकिन lead तो Finally's done a great job in shutting down those two. ये क्या था? बेचारा. बेचारा सल्यूट दे रहा था. लेकिन लंबा कौन कॉडम अवार्ड नॉट येट यार. कुछ ऐसा डिसाइड नहीं करा कौन भाई. अभी फुल वॉरजोन पे फोकस है एंड पीसी गेम्स पे भी फोकस है जो कॉल ऑफ ड्यूटी के रिलेटेड है. लाइक मॉडर्न वॉरफेयर 2 एंड मॉडर्न वॉरफेयर 3 एंड Call of Duty, Warzone. But mainly Warzone Mobile, as of now. So I guess no value is going to be found at that point. But the War Machine definitely fights a lot. Team Anthem. Oh, they're just mowing down loads in the front, just blowing up the opponents into smithereens. टूट जाती है ना. And this is where NS officials, the struggle keeps on knocking the doors, but then even NS officials, they hit him back, they hit him hard. Operator से निकाल लिए लोग. Tried his best to stop the chain of kills, but for how long, that's gonna be the question. और timing. It's gonna burn down the opponent's Timing भाई. Starboy in the corner just brought down. Even he gets dealt with. Last few scraps. ने angle छोड़ा तभी आ गया. Teams are just not letting it go whatsoever. They're going to leave one or two players off of that point and then move towards the next one. Rotations from both of them Lag हुआ? always. फंस गया. स्ट्रीम क्या क्वालिटी गिराते हैं. No way stream इनका गया. That's gonna be the question. Purifier up close and personal. It's gonna burn down the opponent's corpse, but then Starboy in the corner just. Refresh मारो भाई. इंटेंस मोड पे क्या होता है? Both the teams are just not letting it go whatsoever. They're going to leave one or two players off of that. नहीं यहाँ पे यहीं पे अटका था पिछली बार. हो गया ठीक हो गया. Always perfect. That is the reason why I really love watching the Hardpoint match. हो गया ठीक हो गया. Between these two teams, because look at the way that they're spreading all those points. Again, trades going back and forth. Everyone just trying to control those upper floors because E4 is where things will probably change and the spray. एक HP में change हो जाएगी. Just prevailing onto that one. 125. ये इसमें close हो जाएगा. इसमें close हो जाएगा. इसमें close हो जाएगा. Rolled out a double kill from this guy. Prevail. Mid पे Starboy है लेकिन. In these battlegrounds. Now NS official. The point NS को मिल सकता है इस वाले पे मिल सकता है. now in their court, even the claw being pulled out from Fallen. This man's able to deal with Prevail का nice kill भाई, nice kill. Important kill था वो Fallen का. Mid से इनको मिल जाएगा, break मिल जाएगा. And इसको Anthem को. ओ भाई. What? ये क्या मारा? Outwardly and crazy as it sounds, Annihilator being pulled out for proxy again. Just Damn भाई, अच्छा मारा. Can you find anything more? Nothing.
of value, but the teams definitely चैट क्लोज जा रहे हैं, मैच क्लोज जा रहा है भाई। एंड में सब 20 पॉइंट का गैप रहेगा, 20-30 का मैक्स। Making their way will be traded quickly. Kayan shuts everything Nice. down, and the hill is still in control of Anthem, but only 5 seconds remaining for the rotation. इनको नेक्स्ट जाना चाहिए अभी। But did not really get anything done. Now if किलो that काटेगा kill rotation। 2 in the back, looking forward to make it close. The nade was tossed in. Could have found किलो the मिड से connection rotation काट actually, but सकता है। unfortunately, no, he wasn't really able to do so. Pulsiness in front of us with a Right से ground पड़ेगी। 1.56 in his hands. He tried his best, got one, but then an instant trade always just hits him back. चैट 24 में make sure drop a like and a sub यार, it's very much important। Always able to return back with the trades, and that's something that's actually keeping them in the race. What's up, Master? Welcome। Keeping them on. भाई कितना इंटेंस चल रहा है बे? Sparrow was pulled out. ले गया Anthem, काफी लीड ले गया, काफी लीड ले गया अभी। AFK was the one to pull it out. Absolutely. इसका एनलेटर चोक नहीं करना चाहिए इसको। नाइस शॉट भाई। He just found a slither of that head and Nice was shot, able यार, to hit that out Pulse। perfectly. 4 bullets in the annihilator. Can he get something more? That's the question because he नाइस will- वन, एक और नाइस वन। भाई क्लोज कर दिया। नाइस। उसको पोजी पता है? अरे नहीं। He's an apex predator. Just looking for भाई मैं चाहता हूँ और क्लोज हो भाई। विच क्या बढ़िया। जीत गई भाई, ये एंथम जीत गई वाला। जीत जाएगी। Anthem worked on the communication mistake, that's good। हाँ भाई exactly। दिख रहे हैं अच्छे कॉम्स दिख रहे हैं एक्चुअल में भाई, ट्रेड्स अच्छे आ रहे हैं Anthem के। That is true. Playing in for those exit frags, perfect opportunity for them to make sure that they've got the control of the garage. ये बस रिवेल की बात हो जाएगी। इनका ब्रेक, Anthem's retake was so perfect. इनका एक ब्रेक जो है ना, इनको एक ब्रेक चाहिए जीतने के लिए। अगर ये NS ये वाला निकाल ली ना हार्ड पॉइंट तो क्लोज हो जाएगा बहुत। नाइस किलो, एक और मार, बढ़िया। मार एक और, ये भी मार। ओह क्लच कर रहा है भाई, क्लच कर रहा है। मार एक और। अरे स्टार बॉय नहीं दिखा भाई, क्या इंटेंस हो रहा है, क्या क्लोज हो रहा है चैट ये। नाइस। ये अब एनएस पे ले जा रही है। अभी एनएस को ब्रेक मिल गया ना, अच्छा ये 15 सेकंड ले लेंगे और ये नेक्स्ट प्ले चली गई एनएस हमने क्या तो एनएस क्या एंथम चली गई नेक्स्ट प्ले। नाइस सर, गुड फॉर देम, वेरी जस्ट अच्छा है भाई, दे इंप्रूविंग। That is true. I believe Anthem has decided 25 पॉइंट और चाहिए भाई। get those scrap points in and get भाई अगर 22 पॉइंट। एनएस ये वाला होल्ड रख ली ना तो सही रहेगा। ये परेड क्यों था? नहीं हो गया, नहीं अभी जीत गई एनएस एंथम जीत गई। with that Sparrow and they will नहीं है भाई, प्रिवेल पे है तो देख कंट्रोल। नेवर माइंड। नहीं भाई नहीं, अरे बहुत गंदा मोमेंटम है भाई एंथम। भाई सक्षम का क्लॉ है, 3 मार दिया। नो वे भाई, सक्षम पे प्रेड है, मारना। पूरे स्पॉन पे जाएगी इनके, 3 मरेंगे। अबे परेड मिस हो गई उसकी, ट्रॉफी थी शायद। Penetration is definitely on the point, but then the war machine being pulled out from the side of Ghost. भाई दोनों के पास ऑपरेटर है भाई। वही तो ट्रेड हो रहे हैं। गोल्ड का क्लच देखा मैंने देखा। नेक्स्ट भी गोल्ड का मैच कवर करेंगे। अरे वेलकम टू द शो भाई। 16 सेकंड भाई निकाल लो। ओ भाई क्लोज हो रहा है, 10 सेकंड का गैप है बस। ब्रो नेक्स्ट वाला हाँ, नेक्स्ट वाला जो होल्ड कर लिया ना वो जीत गया। अभी अगर यहाँ पे ब्रेक आ गया तो एनएस जीत जाएगा। अगर ब्रेक कर दिया तो एनएस जीत जाएगा ब्रो। नाइस, एक और मार। नाइस, एक और नाइस वन। पल्स भाई क्या क्लच कर रहा है भाई, क्या क्लच कर रहा है ब्रो। 6 मैन फीड भाई। पल्स भाई अकेला खा रहा है। फॉलन का फ्लैंक आ गया। नो विस्का और मशीन। नाइस भाई, कितना क्लोज हो रहा है ब्रो। जीत गए जीत गए। ओ नहीं कंटेस्टेड है। एक सेकंड के लिए भाई, 1 सेकंड के लिए कंटेस्टेड है। जीत गई। गुड गेम यार, गुड गेम, दोनों अच्छा खेले भाई। गुड गेम यार, गुड गेम यार। फेयर कंपटीशन भाई, गुड गेम यार।
वेल प्लेड भाई। पल्स ने जो क्लच करा है भाई 2 बार, एक बार मिड वाले एचपी पे, एक बार ये वाले एचपी पे भाई, क्रेजी ब्रो, हैट्स ऑफ। एंथम थ्रो, हाँ मतलब थोड़ा उनका कंट्रोल लूज हो गया, आई एग्री, बट स्टिल वो पल्स का चक क्या भाई, एनिमेटर भाई उसने एनिमेटर बहुत सही निकाला, हैट्स ऑफ, एनिमेटर अच्छा निकाला दोनों बार। NS pulling things off in those last few seconds and it Well was played, just यार। recycling भाई एंथम निकाल लेते अगर वो एनिमेटर चलता ना, निकाल down to who would find more value. Split shifted last. I mean हाँ, but still. Oh my god. And then the भाई sixth with the pretty. ऑपरेटर्स के ट्रेड आ जाते हैं ना ढंग से तो फिर शायद एंथम कंट्रोल ले लेता, बट एक बार लूज हो गया ना मोमेंटम तो ऐसा मुश्किल हो जाता है। बाप मैच, हाँ भाई बहुत क्लोज था। रियल तो गॉडलाइक का 6th ऐड हुआ है ना, फिर एनएस में कैसे प्रिवेल ड्रीमहैक के लिए एनएस से खेल रहा है बिकॉज ही वांटेड टू प्ले इन लैन, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, एंड स्टेज 5 वो गॉडल के साथ खेलेगा, सो इट्स गुड क्योंकि प्रिवेल अगर अच्छी फॉर्म में रहेगा और गॉडल उसको खिलाती है तो स्टेज 5 में बहुत अच्छा खेलेगा वो। मेरे को ओवरऑल केडी देखना है बाद में, पल्स कितना मारा है, 50 मारा होगा, 50 मारा है, 50 व्हाट्स अप बेमन, वेलकम टू स्ट्रीम bro. I can get matches into Warzone Mobile, not running at the night. Bro, there's a bug fix update coming soon next week. It will be fixed. Till then you can try reinstalling the game or using turning off the VPN and turning on it. It's a bug, you can't like do anything. I was also facing the same. आगे केडी 54 पॉज करते हैं यहाँ पे, 54 पल्स, 42 घोस्ट, 39 35 31 ओके, सब बढ़िया खेले भाई। हाँ भाई अच्छा खेले, दोनों टीम्स अच्छा खेले, थोड़ा प्रॉक्सी फीड करा कंपैरेटिवली, बाकी सारे अच्छा खेले, लाइक प्रॉक्सी का ओबीजे भी कम है और फीड टाइम भी ज्यादा है, तो उस वे में देखा जाए भी नेगेटिव है भाई। वो तो हो गई भाई। ब्रो देखो याद नहीं भवे, जब हम भी हमारे इतने क्लोज मैच जाते थे, 1 या 2 बंदे होते थे पॉजिटिव वाले, बाकी सब नेगेटिव होते थे क्योंकि सब ओबीजे के पीछे जाते थे कि ओबीजे में घुस जाए जैसे से, जब मैं 2x कर देता थोड़ा आगे हो जाते हैं। अब कौन सा है, वेस्ट इंडी है ना? हाँ अभी एसएनडी होगा, फिर कंट्रोल भाई वो तो किल निकाल लेंगे इनएस का बेस्ट भाई, प्लेयर तो एंथम पे प्रिवेल है प्रो के भरोसा। लिए, यस बट यार पल्स अंडररेटेड है ब्रो, पल्स बहुत अच्छा खेला है इनएस से, नॉट गन लाई। तुझे पता है पल्स पहले आईपैड पे खेलता था। अरे काफी प्लेयर्स यहाँ पे आईपैड वाले हैं जो मोबाइल पे स्विच करे हैं, किलवा भी था। हाँ मोबाइल पे स्विच करने के बाद दे आर परफॉर्मिंग गुड, तो दैट्स गुड भाई। बाकी जो भी स्ट्रीम में मेक श्योर ड्रॉप अ लाइक यार, आल्सो सब वी नीड 2 मोर सब्स फॉर 7.04 कर दो भाई, कोई दो ही लो। क्या चीज? जब मैं लिनक्स में जब वो हो रहा था, हाँ तेरा किलो के साथ हुआ था, आई रिमेम्बर दैट। अरे मेरा भी तो था इसके साथ भाई, मुझे पता नहीं क्यों नहीं करा साढ़े ने बहुत मारी थी भाई। क्या मतलब वहाँ पे नेपोटिज्म हुआ था? नेपोटिज्म हो गया भाई। भाई यही तो कृपा से मेरा प्यार हट गया फिर। लेट्स गो भाई। भाई मेरे को ऐसा फील आ रहा है एसएनडी एंथम जीतेगा, अंदर से ऐसा फील आ रहा है, बट डिपेंड करता है मैप कौन सा है। अगर फायरिंग मेल्टडाउन है प्रिवेल ने जो बोला था ना स्टार्टिंग में कि हमने गॉडल को क्लोज टक्कर दी तो हम किसी को भी हरा सकते हैं। एक सेकंड दियो। अरे वॉर्जोन मोबाइल में स्टार्ट करने जाऊँ तो बोलता है कि कांट कनेक्ट टू सर्वर वीपीएन का। अरे लाइक द थिंग इज अभी एक बग चल रहा है, ये नेक्स्ट वीक अपडेट आएगा उसमें सब फिक्स हो जाएगा। आई नो यू हैड कॉल्ड मी बट द थिंग इज मेरा भी गेम का सेम इशू चल रहा है। ट्राई रीइंस्टॉलिंग या वीपीएन ऑन या ऑफ करके ट्राई करो, वंस यू एंटर द लॉबी वीपीएन ऑफ करके ट्राई कर लो। ये बग चल रहा है जो नेक्स्ट वीक फिक्स हो जाएगा इन द हॉट फिक्स अपडेट जो आने वाला है। चलो लेट्स गो, मैच स्टार्टेड। बाकी वेलकम टू स्ट्रीम यार, लाइट मेक श्योर ड्रॉप अ लाइक यार। प्राइस पूल 12 लाख है ना? हाँ 12 लाख है। देखो कॉल करने वाला था लाइट, बट फिर मेरे को पता चला ये यूनिवर्सल बग है, काफियों का हो रहा है, तो वी कांट हेल्प विद दैट। ओनली थिंग वी कैन डू इज जस्ट वेट। ओह बढ़िया, आया तो आ गया। Locus in the hands of Saksham. सक्षम मस्त एकदम स्नाइप करेगा। प्लांट मिल चुका है, कंट्रोल है साइड का, एक स्लाइड कर चुका है, नाइस शॉट। पल्स देख लेगा पता है इसका एंगल। और job again holding the same place. पल्स ले लेगा लेकिन ट्रेड
So valid Oh, defense are coming they? in from Anthem, but they need to go in for this retake. Viz bhai? Down is just a ठीक है perfect बॉडी retake. शूट चल रहा है Still got enough time to go in for डैम that बॉडी issue. शूट चल रहा I है told you, Anthem is someone that ऐसा has been confidence winning चाहिए their बे duels in Hardpoint, so Smiles. yeah. भाई इंटरेस्टिंग मैचअप कूल थैंक्स नो इश्यूज यार लाइक थैंक्स फॉर हॉपिंग बाय खेलेंगे वॉरज़ोन बस फिक्स हो जाए सब चीजें Highly possible, and if this is the way that they're going to flood him लास्ट with मैच the कौन जीता मैं retakes, मैगी then बनाने yes, गया I था still लास्ट मैच feel that बहुत they've ज्यादा got a क्लोज हो chance गया in this था one. जिगरप्रीत भाई मैं तो कहूंगा रिवाइंड करके देखो मजा आएगा लास्ट के 1 मिनट रिवाइंड करके देख लो भाई पूरी गेम में वैसे तुम्हें जीता सिर्फ NS तो था You know that भाई whenever बहुत you're ज्यादा playing on इंटेंस था meltdown, क्योंकि भाई it's kind of favored on for those attackers. We've seen a lot of people being super comfortable onto that one. Talking Fallen about down. being comfortable, Fallen को prevail yet again on the R9 shotgun. We even saw Learn saying the exact same thing, that he was ये outperforming him देखो in होगा the कुछ shotgun ऐसे करना department. है। So who's going to shut him down? प्रिविल अच्छा कर रहा है That's going to शॉटगन be the question as the bomb goes down yet again. 4v5 हम नहीं खेल scenario. रहे ना भविष्य शायद इसलिए Can Anthem try and मैं pull बोलने it वाला off? था जस्ट किडिंग भाई Ends up on a question मैं भी भूल right गया। now. Suctions दूसरी गाड़ी लेकर हाँ मैं करूंगा देखता हूँ आर्यन बट वही है shut down. करंटली आई एम नॉट इन अ मूड की कॉडम में वापस खेलूं भाई 3v4 scenario. Well, make Yeah. that a 2v4 now. Well, Not looking too good. yeah, As officials yeah. on and over. They've चल slapped भाई, down the 1v3 players of Team Anthem, and I guess with that निकाल लेगा। अरे slap, माँ। even Team Anthem's going to lose out on this round. कौन है What's वैसे in the last निकाल round सकता too? है Even he gets pushed नेवर up. माइंड मुंह पे मुक्का पड़ गया Punch to जीता है death. भाई। Oh, tough. Pushed up and punched गलत बस down, वेपन so, को देख yeah. के फायर किया हाँ हाँ वो तो That's मिस fine, करना that's fine. But we सक्षम ने always गलत have था वो seen शॉट this कोई going नहीं for भाई these kind of 6-7 कंकशन मारो पंच बैग लेके घुस जाओ Were able to हाँ punish क्या? them, but either ways, that's 1 for 1 coming in. Anthem, NS officials, this time around, they could not go in for the retake. Guys, like कर दो, subscribe कर दो, share कर दो, let's go. Coming in because the hit is directly going in towards that B part, and Viz is pushed up towards the A side, and you already know that. कुछ सिम की तरह कह रहा हूँ जब कोई और गेम खेलने का मूड हाँ आई नो आई नो Go down in the next few समझता हूँ seconds as करेंगे well. जुगाड़ Anthem needs to flood in, but it's a 5-5. वो एक कॉर्ड में काफी डाउन But अभी it's गया just gonna touch उसमें through the leg, could not finish him. मेरे को भी मजा नहीं आता टू Unfortunately, but it's वेयर fine now. Starboy returns with I two. like to watch And though, on over, जैसे अभी your मैं boy देख रहा Lennon, हूँ। you miss it, and it's official. It's Nice kill हुआ। just one last guy. बहुत by. गंदा It's gonna make भाई। it down to a 1v2. So this is now an over a possibility of winning the round as well. Oh, this is tough. A 1v3 ये टैप टू scenario. ADS खेल रहा है पता है इसका ADS देखा टैप टू ADS वाला Almost Kilowatt could have found that kill. So maybe it could have been taken down to a 1v2, Yes, but Aryan still bhai. bombs dropping. Now that's a massive issue. He's Pro just to not ask able if to I find can that again sweet just to clear. codm then Just it not would be able to good for find me that or sweet peak of the opponent. अकॉर्डिंग टू यार अगर आपको मजा आता है खेलने में तो खेलो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा अपना अपना ओपिनियन होता है कर सकते हो करना हो तो बट मैं नहीं करूंगा कि मेरे को वॉरज़ोन पे फुल फोकस रखना है एंड आई वांट टू बी द अर्ली बर्ड भाई 3v1 भाई मैं किसी का था तो given any footsteps away. You mentioned this is a good choice, but he's getting wrapped पानी up में गिर from the जाएगा back. Killua's back is quite exposed, but he's ये already क्या था managed to push up. लेफ्ट Find लेफ्ट one, लेफ्ट ओह finds the second one. नाइस ट्राई Unfortunately, gets denied. ऐसी चीजों में स्टारबर्ड It निकाल लेता है was a 3-1 हाँ। situation, so and almost next to impossible to bring it off. स्टारबर्ड ड्यूल्स अच्छे निकालता है वैसे भी हाँ Effort was valiant. Yes, he tried, got one person off guard, but again, you knew that the other one's got his Anthem back. So की lead you है need to अभी get 2 from that spray down and then try and make another rotation in because you can. Back HUB stream new shoot up a like and a sub. We need 2 more subs. Let's go कर दो But either way, we're going to see the exact same thing happening as कुछ NS होता है now क्या are for going to move casual forward gamers? towards the B Discount yet again. group. Just हाँ, like the previous exactly. time, trophy systems are already Except up, so FF they बोल can रहा है भाई। easily go in, तुम get the check bomb बुया planted, कैसे and निकालेगा it फिर? might be again that 5v5 retake. Last time we saw Anthem flooding in through अभी mid तक and टूटा है also क्या through the NN back. streak चल Will रहा है they अभी do तक the strong हूँ exact भाई same thing? Because Stay the strong setup of NS soldiers has been changed this time around. They've already left one player backwards to make sure there's no one coming in from behind. They indeed have left him, but then trades happened on the board. But I know over now, this is going to be favoring the situation. It's going to be favoring the players of NS official. और बताओ चैट तुम्हारा प्रेडिक्शन क्या है मैच का एसएनडी क्या स्कोर से जीतेगा कौन सी टीम They're also playing on the post play. मेरे हिसाब से 7-4 जाएगा He's going to find Starboy as well. So now it's a 1v4. This looks next to impossible to be pulled 7-4 off. with, Shotgun NS score, winning. Doing his shotgun things. What can you expect? But unfortunately, he's not able to one-shot the second अरे guy. भाई हिट मार्क बेचारा मेरे जैसी किस्मत हाँ Through and a great. पावे बोलता था comeback एंड्रॉइड पे हिट whatsoever. मार आते हैं Yet again, है and ना? they need to find their footing. They need to हाँ find भाई their सच बात है playground. बट मेरे Search तो and आईओएस पे भी destroy आते is हैं something that I kind of felt maybe them Skill might issue, not भाई। be very easy for them. But yes, they are making a I think great the effort Warzone out game of is this much one. better than 2v2 codm currently as a Warzone is having is what the scores at all. look like. NS, since they also secure the Trophy previous one, this system time at all, they're मतलब changing समझा things नहीं। up, and I think so. Their choice is pretty decent still. You mean It is ranks going and to be stuff? the area that is वो भी आ stacked up जाएंगे with later. defenders, majority of them that too. 3
They have to go at least 1 for 1 in this part. And also, they need to take care of the bomb because in the previous few rounds, we saw them dropping the bomb, and that is one of the reasons. काफी slow and steady round है ये वाला. सब hold कर रहे हैं pick के लिए. Indeed. Slow, super slow pace game. You need to have it right. Because just look at the scoreline, 2-2. Vitality win, let's see. Struggling on this overall rankings too, man. So you need to play it slow. You've got no other option. But the upcoming game is going to be played against the players of Godlike, so I just feel for the team that's facing them. But for now, this round being played so tactically, being played so patiently. And as I mentioned, it's search and destroy. By R9 use HS और KRM use better. Maybe ban होंगे वो guns. KRM तो चल allowed है. The defenders are doing so far. But R9 is good, bro. Compy के लिए it's good. Perfectly, but now the man in the front might just be isolated, and that's what happens. काफी consistent है मतलब comparatively. Shut down, executed from the game. Side control is now in the hands of NS officials, but as soon as I say that, a return. जो RS करके knee shot का नहीं वो that is banned, I guess. Can still try and make this happen though. They are trying to stack in towards the side. The question is, will the bomb be committed towards that part? I do not think so. And it's official. Because of the early stage. Very long and hefty rotation towards A part, and ये Pulse का character नहीं दिखा रहा था. What's going to happen is exactly happening. Bomb is going down towards the A. So the rotation coming in from NS was by 3v2. Was perfect. सक्षम ने निकाल लिया. और hit mark. Oh my goodness. ये दो मारा सक्षम. Getting 2 in that situation. Collat पड़ा शायद. No one would expect him to play in the control room at that point, but with a shotgun in hand, 1v2 bursted through their bellies. 1v2 scenario. Man moving in with the crossfire बना पड़ा है मुश्किल है. यहाँ से jump pick लेके spot करना चाहिए. And considering he's got the sniper, he really does nice need shot. to connect those shots with pinpoint accuracy. He does that, finds the first one, pulses in the front, pulls out the L-scar. Can he find it? No. Pulse with the Pulse का character invisible दिखा रहा है spectators में ना. Is now going to build the lead. Could be skin download नहीं होगा शायद. Visibility cloak right there. I guess जो भी सिंपली make sure drop a like and a sub यार. For NS 3 and 2. कल भी watch party करेंगे finals की Gold versus Vitality. I think so they've got the decent amount of read, right? They're trying to go in for some good positions as well. They try to go in for a perfect read. Even after that, whenever it comes down to the codm 26 GB का if you download everything. Always catch them off guard. And talking about catching them off guard, Ghost finding Warzone 6 GB का. pushing every Warzone download कर ले. Anthem just so far back of the side. नहीं चल रहा है यार. They can get the bomb down as well. XR कब तक चलाएगा भाई? Oh, even Starboy. अब तो बावे ने भी ले लिया. This is not too good, but then instantly Team NS. Another one with the sniper. iPad पे download कर ले. Was something that was quite impressive. Instant steal back comes into play. Team Anthem. It's a 2-on-1. Team Anthem on the. Prevail का 1v2 है. Prevail can actually prevail to on top. Timing. The man pulls up way too close. Second Oh, shot hit mark. Nice try. Second shot miss कर दिया वो यहाँ. भाई nice try दो, nice try. As well as the disadvantage. भाई कितना close जा रही है अभी matchup. You hit the first one, you get the pick. You Starboy miss का that देख one, कैसे बैठ के खेल रहा है. and you lose the round. That was as close as it could get, and I mean hard every technique single देना chair पे round लंबा that जाता. these teams are playing at this point are just going super close again. Around 6 control chip is room not enough in MP. is where they're gonna go in. Try and exactly. go for that aggression. While on the other side, Anthem still हम खुद going in 90 with पे the 120 पे defensive खेलते setup थे. not changed. 90 पे A lot of 120 things उस time out आया there नहीं था शायद. controlling the mid part, so that one thing is pretty good. Indeed it is. Look at the players now in the positions. सब hold कर रहे हैं bro ये round. Those angles. I like the fact that the shotgun is just holding the entrance. Starboy pick off हो Imagine, सकता है. It's like a present box that you open and out and over a clown appears. It's worse than a clown. Prevail को दिखाओ, Prevail को दिखाओ उसका pick क्या है. Even the snipers are ready. Hit mark. Over there for a while. Kane's taken down solo. All भाई he needs to do is इसको just find pistol one लेके single push. bullet connection on अच्छा एक और बंदा Kane, and है. he will be taken out of the game. It's search and Cover आ destroy. गया These इसको. type of moments really do matter. But Prevail's going to find the second. Interesting हो रहा है ना This man chat. with the shotguns now starting to be a menace for the players of Team Anthem. Starboy taken down, but then once again Prevail looking forward to Prevail inside this situation too. But the man in the front just runs away from this situation. वो भाग गया वो भाग गया वो यहाँ. भाई Prevail का only 4 But है. how fast Wiz ran away from Prevail, it's just impressive. भाई ये लोग Prevail को थोड़ा एग्रो खिला सकते हैं भाई. Shotgun है. He will be able to get the bomb planted. बाकी पता नहीं उनकी टीम के stats I don't accordingly. think so he's going to get anything apart from just a couple of kills. He gets one. Ooh, nice He shot. gets the second. Nice He shot. does! And Come that on, is भाई. just a crazy हो जाएगा adjustment, Winnie 4. catching power है time भाई, while he shot was इनकी, just यही तो power. jumping onto that.
I told you. मार ले दिख गया for the opponents with the shot. एक HP भाई हो जाता भाई. But it's completely fine. Nice try यार. But so far this search and destroy has been बेचारा 2 बार so अनलकी हो चुका पता है हिट मार करके. The long range is Nice try, something nice try. that just could not do the job for him. शॉटगन गेम चेंजर है भाई, गेम चेंजर. अगर वो मर जाता चौथा भी मार लेता. Got that pick. That was a nice try coming in from their side. Either way, is this time around Anthem lead ले ली bro. They again 4-3. moving in towards एक ही तो लीड है. though, going in with a solid hold setup. They're not चलो पढ़ने जा रहे हैं. Okay आर्यन, thanks for joining the stream यार. You mentioned playing it super slow. Make sure to drop a like and share कर देना stream को. Class है. Okay, no issues भाई. रात को मिलते हैं Warzone की stream पे. कोई चक्कर नहीं मेरे भाई. Sniper battle. I want to see how these guys readjust themselves after knowing each other's position, because for a sniper to readjust and repositioning is a big key factor. And for now, the trades did happen back and forth. Kayan took down Prevail. Next Godlike का मैच है चैट, वो भी वॉच पार्टी करेंगे. और उसके बाद Vitality के 3 मैच होंगे, मतलब 2. Officials in a man advantage. Now they can try to play for the trades. Ken and Viz playing together. And I like the fact that these guys are pushing up, playing together. They've got each other's back. Even if one man gets taken down, the instant trade will hit you back. B site can be executed. But still, Team Anthem, they need to stop the planter. Plant goes down. क्या लगता है बाबे? Saksham and Pulse. 2v2. Anthem का है. ये राउंड किसका है? Slowly Anthem. and steadily. They're cooking. Okay. Indeed they are. And it's officials on the defender. Shot है Saksham भाई. But at least now they're going to try अच्छा शॉट दिख गया दूसरा भी. stop this entire post plant situation. ये होल्ड कर लेगा एंगल उसके लिए. लॉल भाई इसको पता नहीं क्या. अरे भाई. I don't exactly know what was going through his कोई head. नहीं, मैं गलती कर दी, सॉरी. Was if he should go in for a long rotation or बाबे पनाती है चैट देख लो. काली जुबान. That is the only problem he faced. That ये वाला मैच जीतेगी NS. अबे. Because again, it just takes only 4 seconds to get लोड दिखा दिया भाई इन्होंने सबके. Damn. Had enough time to go in for a याद है यहाँ से SS ले लेते थे हम कभी-कभी. फिर डिकोड करते थे ये अटैचमेंट कौन सा होगा. Saksham would have just given the information to his teammate and they would have gone in for a sticking defuse. That was it was just got in the position of it was a point of no return at that point. He had to make a play, but either ways that was still a decent try, but a crazy comeback coming in from NS. 4-4. Dead even yet again. Trophy system deployed in the front. But then look at this, Saksham. Oh, intense by intense. Saksham just rains down terror once again against match 3 भी है. And this shotgun's being a big pain in the foot nice for the shot. opponents, but eventually Kane's going to be the one to shut down Killua. इसको SMG भी मिल गई. नेड ओ नेड के ऊपर आ गया ये. Saksham is just doing such a fantastic Saksham 2 मार दिया. Firing on all the cylinders so far. This man has managed to secure a 3K in this round. One more to go. 3 मार दिया क्या राउंड? And his position's compromised too. चौथा भी मरेगा फिर तो. Starboy is pulls out the sniper, and now Saksham will at least try to get a 4K and things on a great note. Fnatic being pulled out of the hand as the secondary weapon. Can Starboy survive this entire situation? Can Starboy survive slow and steady खेल रहा है Starboy. entire wrath against the players? Offense official. क्या लगता है चैट? It seems next to impossible. Well, he's got to get all 4 of them, and he needs to isolate those fights, and that is something that's not going to happen whatsoever. Plus, he needs to pick up the bomb as well, which is right in the middle of the setup coming in towards the boilers. Yep. Where he wants to play, finds Prevail, but the shots are just perfect. 2 bullets flying away, but again, it's a shotgun shell. Most of it flying through the belly. भाई अगर ऐसे 6-6 होगा तो OT हो जाएगा बे. Lead, and this is the problem whenever Anthem is trying to play in towards the B side. OT तक जा सकता है. Try and switch up their speed, maybe going for a pacey hit towards the A, or again go up for a pacey hit towards the B. Oh my goodness, they're going for A, and NS has the exact same idea. Trophy systems are already up, and they're just super ready to receive the hit. They will be welcoming them with just barrages of bullets. Oh, 2 more rounds needed on the board, and speak of Saksham 2 miss कर दिया. Tried his best to connect the shots with the low. Oh boy! It's going to be a flood on the site. The attackers are flooding in and shutting down all the defenders. It's now going to be a 1v3, but even that gets taken care of.
The reposition. देख रहा हूँ ये इनको aggressive खेलना चाहिए थोड़ा। किनको? NS को कि Anthem को? NS को। NS अभी aggressive ही तो गया A पे। चौक हो गया। तो मुझे लगा ये स्टार में वाली टीम ना was able to get those openers. Anthem उल्टा aggressive करके भर दी भाई, shotgun से 2 मार दिया वो काइन making sure that even when they die they provide you a Time lot यार, of अच्छा। information. And then on the back of it you get the क्या लग रहा है chat? Anthem, that 3-2, was a crazy 3-1, adjustment. I thought it was 3-0. NS round as soon as it started, but कौन सी you टीम? can never make a guess whatsoever. एरिथ भी स्ट्रीम कर रही है लाइन इवेंट को, सबको व्यूज चाहिए। अरे द थिंग इज, पता है क्या सीन है इंडिया में? किसी को आई डोंट थिंक परमिशंस वाला सीन था। मैंने पूछा जब मेरे को तभी मिली मेरे को। बाहर तो विदाउट परमिशन कर रहे हैं सब लोग स्ट्रीम में, ऐसा कोई सीन नहीं है क्योंकि दे हैव नंबर्स में भी, दैट्स व्हाई। या वो कॉपीराइट का सीन नहीं होगा उनको इतना, इसलिए मैं तो सेफर साइड के लिए परमिशन लेके कर रहा हूँ भाई, so that we can enjoy, क्योंकि इंडिया में कोई कर नहीं रहा यार। आई थॉट काफी क्रिएटर्स करेंगे टू कवर दिस, क्योंकि लैन हो रहा है भाई, पहला लैन है, बट ये लोग हाइप नहीं कर रहे तो क्या कर सकते हैं। मैं खुद सिर्फ इवेंट के लिए कर रहा हूँ कॉडम, उसके बाद मैं भी वॉरज़ोन चल जाऊंगा। अरे तो वो भी कर रहा है टेक्टोनिक करके कोई एक है, ट्राइब का शायद क्लियर है अभी कोचिंग में, आई डोंट नो। For a very long rotation with the fact that they've still got a sniper hole coming in. Oh my goodness, Pulse being welcomed with a few warning shots. Tries to go in for the reposition, but they've got to find it, because if he still stays in that situation, you know it's going to be a problem, and he has been taken care of. 3v5. This is not looking too good for the players of NS officials. 2v4. Make that a 2v4. Make that a 2v3. A chance to make a comeback. 1v3 है सक्षम का। In this round. Anthem. But even now that's starting to fade away. Anthem with the man advantage looking so comfortable. All they need to do is just stick to that comfort zone. Match taking down way too low. Fallen found that glimmer, and that's going to be more than enough to seal the deal. निकाल जाए भाई, अब ना हारे बस एक मैच ये डाउन एलजी में है लास्ट ट्रेड में। हाँ मतलब वही करंट जो एलजी का रोस्टर है, राइट, सही बोला सही बोला, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। वाचिंग भी नहीं एरिथ पर सैडली मतलब। अरे द थिंग इज इनको खुद प्रमोट करना चाहिए ब्रो, मतलब बट क्या कर सकते हो, दे शुड अप्रोच क्रिएटर्स एंड पे देम टू वॉच पार्टी। मैं तो चलो ऐसे ही कर रहा हूँ बिकॉज़ आई वांट टू। Another pacey play indeed. बड़े क्रिएटर्स को एटलीस्ट पैसा देके कराओगे तो तुम्हारी गेम की वॉचिंग आएगी, वॉचिंग आएगी तो तुम टीओस को दिखा पाओगे। अगर दोबारा हुआ कॉडम को फिर करना, देखते देखते जिगर भाई, देखते नॉट श्योर। परमिशंस लेनी पड़ती है, परमिशंस लेना तभी आसान होता है, स्ट्रीम हैज गुड रीच कि भाई मैं दिखा पाऊँ कि भाई देखो व्यूअरशिप ला रहा हूँ मैं तुम्हारी गेम पे, मेरे को परमिशन चाहिए वैसा, क्योंकि पेमेंट तो मेरे को देंगे नहीं फॉर श्योर अभी के लिए। तो ये सीन है जिगर भाई, थोड़े इनसाइट्स होते हैं, यू नो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। तो क्रिएटर्स को अप्रोच करना चाहिए था। हाँ एग्जैक्टली, देन प्रमोटिंग being the IGL, he needs to prevail in maybe these it's a plan. situations. Wiz, he's so lucky. Oh, nice shot. As I say that, eventually gets struck क्या मारा down. है वहाँ से? That's a really big mistake to peek an angle like that, especially सक्षम when you do 15 not kill know पे the exact position of the opponent's highest sniper. in the lobby. Getting restless, they needed the information, they needed to find where the people were, but भाई ओटी जाएगा कि एंथम क्लोज कर देगा? because on the back of it now, भाई पता नहीं, मुझे अभी भी लग रहा है कि एंथम निकाल दे। Bomb will be planted, but how 4v3 है। the planter get out of that situation? That's the question. मुश्किल है 5v3 है इनका। हाँ 5v3 taken down. 24 more seconds. Clock rises up to 40 seconds as the bomb has been planted now. Fallen gets one pick, but the retake is going to hit in now. It's a 5v3 man. But Fallen found prevail as you 3v3 तो कर दिया। Oh my. 2v2 1v2 trying their best to bounce back, but now it's a 1v2 out of nowhere. Team Anthem in a big disadvantage, and both the players अरे भाई at the overtime. same time, and OT. that's it. To defuse this ये देखिए and also a little bit Body of shoot चल रहा है वहाँ पे देख। check. T-back चल रहा है। For sure, No, dead just and not check just in. pretending. Yeah, T-back चल रहा है भाई। Gun works properly. true. Yeah. One thing that's working properly for them is that retake. अगर plan because it गई was तो so perfect. hard Cutting in from two different angles मतलब and just making their way through brute force. प्लान है तो हाँ समझा बट वही है, could be a plan because they want to push Warzone. That was one of the reasons they could not even bait out Kyan out of that bomb planting situation, but a very pacey hit towards A. And its officials go, they will be able to plant the bomb quickly. But they've got to wait for those frag lineups, otherwise it could be deadly. And also guys like कर दो, share कर दो, subscribe कर दो, we need 2 more subs. फ्रेंड्स को शेयर करो अपने, जो भी कॉड मोबाइल देख रहे हैं मेन चैनल पे उनको बोलो यहाँ के देखे, साथ में डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे, चिल करेंगे।
5v5 retake, as you mentioned. And its officials find the side control so easily, so effortlessly. And as you mentioned, retaking now is going to be really tough because all the gates are being watched by the players of Team NS officials. But Oh भाई, clean wipe कर दिया Anthem ने. You blink it and you miss it. The entirety of NS officials. Imagine, Anthem को एक round चाहिए, बवे. Just as quickly as the start. Defense में वो भी. फिर से overtime होगा. Anthem have been leaving the A side open time and time again, and NS. क्या मतलब अभी Wiz 1v3 में आएगा फिर से? But whenever they set up for that post plant, they do not try and take space preemptively. Scar क्या चला गया? When they took the mid control, Anthem was caught off guard and NS were the ones who won the round. But in this one as well, we just did not see them taking that space proactively. And that is one of the reasons that Anthem gets the mic से अजीब सी आवाज आ रही है तेरे mic से. However, onto this one, as Anthem are going in for those attacks, we've seen them going in for again this default setup wherein everyone just take the space and hold it. They do not push forward. You're gonna see snipers playing the cubbies as well, just like a daily routine every single time we see them playing the exact same. हाँ, weapon inspection allowed है. You learn भी कर रहा था, मैंने देखा था करते हैं. The snipers over here, ladies and gentlemen. And look at this, 7-6 being the score. It's allowed, I guess. To do is win one more. Remote इसलिए allowed है क्योंकि उसमें TP advantage मिलता है. We're going to go to another OT. This will be an interesting one. The plant goes down, and his officials is on the defense. ओ भाई planter मार दिया Wiz ने. एक और मार दिया. सक्षम trade. सक्षम एक और. Considering Saksham's able to find connections like that, 3v3. It's going to be now much more easier. Even the ground fight 156 in the action. Once again, सक्षम trade हो गया. Trade हो गया. 2v2. Prevail ने एक और मारा. Trade हो गया 1v1. Going to be last 1v1. पल जीत गया. अबे यार पागल ही है भाई ये. Anthem लॉल ओटी चला गया. They are not being able to move. भाई लेकिन क्या trades है bro? That is one thing. NS is क्या ही trades है. सक्षम ने अच्छे trade निकाल लिए भाई. 2 down हुए, 2 मार दिए उसने. Anthem, they've been trying to go in for those space hits towards the B. Interesting हो रहा है chat. But their post plant also When regime में speed advantage है बहुत ज़्यादा वाला. ऐसा क्या? I have no idea. 77 is the score line. I guess तो same speed रहता है. भागने की speed सब same ही रहेगा. Situations like these because it just induces so much anxiety. True. That is true. And since you're already talking about anxiety, just look at the situation on the hands of Wiz. Timing. Now getting a shots fired onto his face Saksham right away. He will be ducking down, making sure he gets to keep his life for so long. Proximate playing one. हाँ मैं देखा पिछले मैच में भी उसका KD काफी डाउन था. Indeed they do. Maybe he's panicking. 4 kill पे बैठा है. It's a 4-on-4 situation. We'll make that a 4v3. Scene है ऐसा क्या? Considering Team Anthem is at a man disadvantage and its officials on the advantage and they're already playing. Guys, like, share, subscribe. Godlike match next. Every single player is doing a fantastic job in watching the jump point, but eventually Saksham is missing out on so many shots, but Kilo has got his back, and even Saksham is going to be the one to return back. Kayan. Finally, it's just down in the hands of Starboy. Will it be Starboy going for a map on the defense side that they are going to lose? That's the question because the post round is just brilliant. एक मारा trade हो गया. Crossfire was there, so yes. Starboy gets one. वो नहीं था trade. Crossfire अच्छा था. As well. So that is Crossfire अच्छा था chat. Big win for NS because now they have a chance to close things out, and Anthem are under pressure. NS close कर सकती है अभी. 7-8 being the score line. पिछला मैच भी ऐसी था. Anthem जीता हुआ थ्रो करी kind of. ये भी ऐसे ही गया. They need to make a comeback to keep their lifeline going inside. Kind of good है यार. अच्छा खेल रहे हैं वो. Team Anthem, this might just be the Proxy को थोड़ा step up करना पड़ेगा. Team Anthem lose on this one. Prevail 2 मार दिया. Short गली के घुस गया. बवे जो अपन बात कर रहे थे प्रिविल घुस गया शॉट में चलो 2-3 मार देगा. हाफ आवर में खत्म हो जाएगा गॉडल मैच. बात तो सही है बट क्या करे. स्पीड रन करेगी गॉडल. The attack did look shaky every single time they were able to get the bomb down, but the post plant looked super shaky, and at this point they do not even have the bomb in their hands. And talking about that, man got caught taking a nap. That is true. Wiz finding an opener, and he just made sure that he is put to sleep permanently, at least for this round. Even though Starboy, he also needs to win his own duel. He's got to fight his own demons as well. Kilua holding that angle strong. Wiz, chal Wiz maar. Trying to go in for that flank. If he can find one more opening, then that's going to put the pressure down to NS officials. Indeed it will. They have the numbers advantage as of now, but for how long can they carry? And this peak could be everything. It can either make the round for Anthem or break it. It's an SMG.
It's not going to work that well that far away, so he Trade over needs to mid get up close and personal against the sniper for 3v2. Wiz. All he needs to do is play a quick NS closes. reflex, but no, that gets denied. Team NS भाई officials सक्षम की is शक्ल gonna से be the दिख रहा है one to उसने take कितना the मारा है lead और on थक the गया second बेचारा। game of the series. उसने 18-20 किल मार दिए भाई एसएनडी में। Close as it was, but Nice यार nothing सक्षम। more than that Well played भाई। happened yet Good game। again. NS officials. Welcome to codm land speedrun. Let's kill OTs Enter after Dragon। OTs is what we saw, but लॉल भाई। 97. स्पीडरन तो होगा यार गॉडल NS मैच। officials moving forward now. Yet again, we're gonna have a quick look at the replay because all the trades that came back and forth. 2-0 हो were गया just NS। Super good. That punch was just onto the ego, not onto NS the ego. 2-0 boys। A lot. Giving some bandage maybe, but at this point, whenever you're playing inside the boilers, you know. Okay, stream को like, share, subscribe कर दो भाई। And Kayan Share the stream। has been doing an amazing job even in Trunks ने every बार single round. एक We बार saw him 35 getting मार couple दिया of था frags out एसएनडी there, में। but finally when he was किसके shut down, अगेंस्ट? लाइक no ऐसा one inside of Anthem could कॉम्पी में step कह रहा है ना up. ओटी के अंदर Playing किसके really अगेंस्ट? good as a team. They were getting in those good pacey hits as well. They were getting the bomb downs. Their retakes when they were on the defense side was just किसके against, bro? brilliant. But everything could be said exactly in the same way for NS officials. चैट में as फुल well, गॉडल के because दिल they चल did रहे बे। just as good, if not better. मेन स्ट्रीम पे कितनी वाचिंग Winning आ it रही है? out, closing things at the last minute, making sure that they still keep the lead. 2-0 is the scoreline, and we're gonna quickly have a look as well. I guess 23 राउंड में ओ भाई अगेंस्ट वाइटैलिटी डैम यार। Unshaken. ये मैं कह रहा था देखो सक्षम 19-30. 19 मारा। You can just If you see यहाँ पे पॉइंट टेबल आएगा। Brilliant, but the bomb thing could be बीच said में आया था हटा exactly दिया। not better. Well, because they did रुको अभी आएगा दोबारा पॉज just as करता हूँ। good, if not better. Winning it out, closing things at the last minute, making sure that they still keep the lead. 2-0. हाँ यहाँ पे देखो प्रॉक्सी भाई 4-15 गए हैं। ये थोड़ा इनको भारी पड़ेगा ये चीज़। पिछले मैप में भी थोड़ा डाउन था बेचारा। बाकी काइन वॉज प्लेइंग गुड, अच्छे शॉटगन्स निकाले इसने। इधर देखा जाए तो सक्षम के पिक्स बढ़िया थे, प्रीवेल ने भी अच्छी शॉटगन्स निकाली, बाकी टीम भी पॉजिटिव थी। दैट्स व्हाई दे वन। To shut Saksham down. 4v5 हो गया था भाई एंथम के लिए डायरेक्टली। व्हाट्सअप ऋषि, वेलकम टू स्ट्रीम। क्या हाल है? अपडेट का सीन ऐसा हुआ ब्रो, डिस्कॉर्ड पे मैंने कर दिया क्या बोलते हैं बता दिया डिस्कॉर्ड पे क्या सीन है। अपडेट जो है वो अभी नेक्स्ट वीक वो डिले कर दिया Warzone मोबाइल वालों ने। उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म करा कि नेक्स्ट वीक अपडेट आएगा एंड इट विल बी अ बग फिक्स अपडेट। और यही मंथ में एक और अपडेट आएगा जो मेजर अपडेट होगा एंड दैट माइट लिंक द गेम विद मॉडर्न वॉरफेयर 3 समहाउ। लेट्स सी क्या प्लान्स है एंड हो जाएगा तो अकॉर्डिंगली विल स्ट्रीम अपडेट स्ट्रीम एंड रात को करेंगे Warzone मोबाइल। आज और कल वॉच पार्टी चलेगी दिन में, रात को शायद भी स्ट्रीम होगी, आज भी होगी शायद। दैट्स द थिंग ऋषि भाई। बाकी गाइस जो भी स्ट्रीम में शुड ड्रॉप अ लाइक एंड अ सब। 29-28 early picks going back and forth, still Anthem losing वी on नीड that, वन but मोर there's सब फॉर only 1 7040 minute, भाई, 5 कर दो more भाई। seconds to work भाई with. बहन मामा पापा किसी भी अकाउंट से कर दो। बहुत पहले की बात है। अच्छा अच्छा, थैंक्स फॉर द इन्फो क्रिश भाई। क्रिश भाई फुल अपडेटेड है भाई कॉडम के उससे सही है। And then moving towards the B, and the read has been perfect. NS मैं has थोड़ी done मैं their ओके ओके homework. ब्रो। They're not जिगर भाई letting them move towards the A whatsoever. So तो पानी लेने Anthem जाना है, एक just मिनट changing their जाऊंगा decision, ये मैच के moving बाद behind the जाऊंगा tank, going in जब बीच towards में the B ब्रेक आएगा। just as quickly as possible, and that's going to be a trade. Kayan caught off guard. Goes quickly, winning his trade out only to be traded by Viz and Proxy, standing strong, making sure that they've still got lives in check only for so long as it's 22-19, knifed up in between Prevail. That is dirty, will be shut down by Starboy. 25 more seconds remaining only, and can they stop the clock? That is the question, because do not even talk about the site as of now. They cannot move out of their spawns that well. They cannot. And NS officials once again losing out on that life. That was such a crucial one too. Oh, nice 18-17. NS officials out of nowhere. Now the kills are flowing into them. But still, the disadvantage keeps them continuing for Team Anthem. They cannot afford to have any type of disadvantage, especially at this point in time. Going for the control on the point, but it's not going to matter because NS officials, they're slapping him hard. Clock has been stopped at 12 seconds, so yes, it seems like कंट्रोल चालू हो गया, मेरे को लगा हाईलाइट चल रहा है भाई। वाह, still it's going to take real soon if in case everyone's been taken care of in the का म्यूजिक चल रहा है बैकग्राउंड में, अगले कंट्रोल वो They're gonna हाईलाइट चल deplete रहा है the लमाओ। progress on the T2, and that's a nice long range shot, but only 4 seconds. Proxy takes down Prevail. थोड़ा सा वो करना था 2x। Still, the Vikings are
continuing as Fallen also shuts down Suction. पहला राउंड जीत गया भाई. अबे तो स्पीड रन मार रहे हैं कंट्रोल के अंदर इन्हें वाले. लमाओ भाई. Nice. After Godlike, so you already know the pressure is just super high on it. The question is, can figure out where this is going to be, because attention is being grabbed on both the sides. Nate was good, but everyone's fighting behind the tank. That's gonna be Caster भाई full Eminem. Indeed they do. Look at the kill feed now, just starting to dance back and forth, but at least for the first time, we're seeing NS officials in a disadvantage of the flight count. Even Fallen's able to find Suction out of nowhere, and the players are hitting them hard. Oh भाई trades. NS officials isn't even able to find a single one. They're just stopped in that 28 marker. Highlights के लिए time नहीं बचा. हाँ वही. Do find that one. Prevail's going to be the one to take matters in his own hands. भाई मेरे को एक्चुअली लगा बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बज रहा था कि हाईलाइट चल रहे हैं. Quickly going back and forth. इतनी जल्दी पहला राउंड खत्म भी हो गया कंट्रोल का. Got the life advantage. They have not let NS move on to those control points whatsoever. Clock finally stopped at 36, and A is where the contest is going to come in. Yet again, Viz taking care of Pulse, and a Starboy shuts himself down. Oh, that's tough, but it's completely fine though, as long as you're going to have the advantage. Team Anthem right now, they're definitely क्या मारा बे Fallen दो तीन मारा. Moving up with. And this advantage is something that's really stinging the players of NS officials. If the scoreline gets 1-1, then maybe NS officials can't start feeling the heat. Pulled out by Suction. This can be the game changer, and also the meta-defining move by this guy. 16-11. अच्छी प्रोडक्शन है भाई नॉर्डन की. And this is where everything can be changed. NS officials, they भाई का have a chance to hold things on. But even they can be slipped away from them. 15-6. And NS officials is now starting to lose out on that life count. This is tough. 5 and 15, and again operators for Kyan as well with the purifier. Could not find anything. ये राउंड गया. 1-1 हो जाएगा कवर का. Doing a perfect job. कंट्रोल का. With the weaponry in the hand, he's making sure he does not let them take any advantage. But 2 and 12, that is all. अगर 3-0 हो गया क्रिश भाई तो इनका टाइम कवर हो जाएगा प्रोडक्शन का. बेस्ट ऑफ 5 नहीं होगा ना. Decimated the players of NS officials. None of us saw this coming too. Anthem played this perfectly. They knew when to hold, they knew when to push, they knew who to catch off guard. They had controls on a lot of these choke points. Absolutely, and this just seems to be so defense-centric that whenever it's either Anthem or NS on that defensive side, they do not let the opponents come into that control point whatsoever. Trophy system was out, Praise back and forth, Sparrow in hand, making sure next Godlike match, make sure you share the stream. Let's see. Strong. And his effort is just valiant. He gets one more behind the tank, making sure that no one can go in for that flank whatsoever. Also trying to go in for the spawn trap, but the spray down is just as crazy and still not stopping. One man alone, finally he falls. Even indeed he falls, but 27-23, Team Anthem in a disadvantage. Purifier being pulled out by Killua. Let's see if this Purifier is able to find at least something. 2K easily. The man just burns him down, making it look so easy. Killua not even breaking a sweat, also going for the pre-fires around the corner. The entirety of Team NS officials. They were looking like they were dominating, but at least they have still got the advantage. Sparrow in the hands of Starboy. This can definitely be the table turner, and that's what is now starting to happen. 22-17. That is true, but if you look at what NS officials have done, it is that they've forced out an important Sparrow, not just for the side execute, they forced it out so that they could come out of the spawn. And if that is the kind of way they're playing, and they've got the life advantage in their favor, 22-13, they are just unstoppable on this defense. Getting so low, it's barely allowed for the sliver of HP, but he still moves in. Oh, that's just miraculous. Prevail with a 2K, keeps NS back in the race and also in the advantage. This is a massive difference, a stark difference between the score. And now it just keeps dropping low. Team Anthem, they're dropping down on the bodies. This is not too good. NS officials looking like an unstoppable freak of nature. Whoa, wait a minute, alright. 0 seconds to recover. Finally almost done and dusted. Maybe not, it was 0 seconds on the clock. Still, for a few more seconds. Control trying to show signs of life, but only for so long. They did not have the life count in their favor. And as officials just getting a perfect spawn trap in play with the Sparrow, with the Purifier. They made sure that Anthem would need to use their own operators to come out of the spawn, and I mean that was. मेरे को लग रहा है अभी 2-2 हो जाएगा क्योंकि Anthem defense में निकाल लेगा. To make this series a 3-0 as well. Maybe. Just like how Godlike did it to them, and as officials want to do it to the players of Team Anthem, but still Team Anthem have. क्या लग रहा है chat? 3-1, 3-0. And speaking about this entire situation that's currently happening, Team Anthem right now in a bit of a lead. Any of these leads can actually line up to such a great thing in the future.
That is true, but trades 3-1, again, 3-0. back and forth, just as you mentioned, 22 and 23 though. This time around, NS officials just answering back perfectly. They've stopped the clock at 57 seconds only for so long, as it's going to take back down against them. Anti-killer drone finding one. Anthem finally finding their footing as they've developed a life lead of some sort, as Proxy will be able to find a couple of picks off his own. And the flank from Wiz, this needs to be there. He needs to stay alive behind that tractor, only to make sure to find everyone who's rotating from that side. Oh, it seems like it's going to be a 2-2. Oh. Or if I guess this is what's going to happen, ladies and gentlemen. Maybe Nice one, a 2-2 Ghost. is on the way, because so far Team Anthem is doing a fantastic job in holding off the players of Venice off at bay. 25 seconds. And 14-18 is going to be the score line, or at least the life left. And speaking about the life counter, NS officials in a big disadvantage, while Team Anthem, they've got an advantage of 4 lives at least. And even the Sparrow being pulled out from Prevail now is trying his best to get the equalizer, but for how long can Prevail keep it fragging up? Spots the man around the corner. Claw's going to be the one to shut it down. 11-14. This is getting a little bit too close now. Close हो रहा And है. it just seems that NS might be able to get this one in the back. 15 more seconds, Claw in the hand. Can this Oh get my another God. one? Yes, it will. Maybe nothing more after that as Kain shuts him down. But the damage has already been done, because the progress that NS were able to make towards the A is just insane. 9-11 though, still doable. War Machine pulled up as well. War Machine pulled out! The man pushed up so close! What was that? It was like a jump scare for him, but still 7-8. Now this has gotten a little bit too close once again. NS officials, they've established that comeback. Who can actually win this? It's still a big question mark. Nothing can be Bhai, said just 7-7. yet. 77 is going to be the score. And still, both of them are waiting. 7-6. Both of them have the similar amount of life count. What can be done? What can be established now? I don't know. Both these teams just shifted back into a defensive stance. No kills. They used the Pred missile, but it did not find any kind of value, and that might be the worst possible play that could have happened in that Proxy. situation. Found one. 6-5. Still NS officials in an advantage. Claw. Another one can be taken down. 5-4. This is Oh so boy. close. It's neck and neck. But eventually, Team Anthem looking Anthem forward to clutch get kar the diye lead. be. 4-1. Oh, way too close to comfort. Last man's going to be Killua. So much pressure on his shoulders. And yes, it's going to be a 2-2. What a clutch Claw being brought out कोई in that NS जीत situation. जाएगा, That अभी उनका attack है ना? was just what Anthem needed at that I mean, point. defense है But ना? again, Defense in में terms दोनों of round निकाले NS हैं. officials, that is a very important utility, very important operator that was used up in the previous one. Yes, they would be still happy with a macro win, because again, no one has been able to execute those control points perfectly, and NS have been looking flawless whenever they're on that defense, and they will be having their operators up in just a few more NS seconds, bun maybe, sakta hai wala. if not minute or so. So Anthem would मैं still data need पे to किलो utilize रखा the है. operators in the hand of Wiz as well as Starboy to utmost perfection if they want to find an opening. Action देना चाहिए. About using stuff to utmost perfection. NS officials 28-25. Once again on that little bit Guys, of a कौन-कौन lead, stream देख रहे हैं? and Just these drop a top text in leads the can chat, let me actually know. in the future build up to a massive cushion, so Anthem needs to capitalize right here, right now. Do not let the lead being built up. Fallen spotted in the front. The man's hands were busy, and that's why Fallen's now alive. Team Anthem with this disadvantage of 3 lives. They're not looking too hot. They can definitely feel the heat of the moment. 23-21. 23-21. Trades हो When रहे you're हैं. going towards the control point, then it is fairly easy to hold it on. But the main problem is going to that control point. It becomes super difficult. But okay, Anthem moving their attention towards the B as the first tick of progress already logged in. Life count still Close so हो गया. very close. But Starboy with the Sparrow. We were Starboy, mentioning nice. that the operator needs to find the value. तीन मार दिया, This is nice. the best thing he could have चार done. मार Oh दिया. my God! Non-stop. Starboy. Starboy अच्छा clutch Indeed, निकाला. this man is the Starboy of the अरे team. हाँ वो exactly तभी मेरे को लगा NS निकाल 17-18. सकता है वाला. He brought his team back in the race, but NS officials still, once again, they gained the momentum. पांच की They lead है. gained the lead. चार And की lead. everything now and over, it seems like it's going to be in their favor as well. 17-12 being the lives left. NS officials in a big advantage, and yeah, Point drop it's कर लेगा next to section. impossible now to steal it away. The lead's way too strong. Team Anthem, they're gonna crumble down. 3-0 हो जाएंगे. The claw has been shut down though, so again, Anthem might have a chance if in case they're able to pull the operator off of Wiz, but Nah, he's falling time and time Prevail again. 3 मार दिया. 3v15, 4 मार दिया. 2v15, that's a Pred, and it might Red turn भी नहीं out लगेगी. to 0v15. It's going to be NS prevailing 3. ये Prevail क्या कर रहे हैं? देखिए 3-0 from the side Lol, of NS भाई. officials. Godlike Trash did it talk. dirty, but then NS does their opponent dirty.
Team Anthem Nice यार. out of the contention, out of the picture in this series, GG's, ladies NS. and gentlemen. But we need to go to the stage to feel the heat on exactly what the players think. मेजर भाई देखते क्या मसाला देते. I mean, what a fantastic match it was. बहुत ज़्यादा बेहतरीन मैच एंड जो बोला था वो करके दिखाया है प्रिवेल ने एंड जो मुस्कान है अभी इनके चेहरे पे वो बहुत ही ज़्यादा प्राइसलेस है. कैसा फील कर रहे हैं आप? हम तो बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं पर उन लोग का पता नहीं हमें. I mean, उन्होंने भी काफी बेहतर कंपटीशन दिया. बहुत क्लोज गए मैचेस. उसके बारे में क्या कहोगे आप? कंपटीशन तो नहीं कहूँगा पर है, फाइट है टीम में, फाइट है, पोटेंशियल है. पोटेंशियल है. हाँ बिल्कुल वो जरूर से मिला है. ट्रोल कर रहा है. मैं आपसे पूछना चाहूँ कल वाली कहानी रिपीट होते हुए दिख रही है. पहला मैच इतना अच्छा नहीं गया, सेकंड मैच में विजय मिल गई और 3-0. पिछली बार 3-1 हुआ था, अब 3-0 हुआ है. तो ये क्लीन स्वीप हुआ जरूर है. पिछले मैच से कुछ ना कुछ सीखा जरूर है आपने. उसके ऊपर आपका क्या कहना है? हम लोग के हार्ड पॉइंट काफ़ी वीक है फिलहाल, गन फाइट्स वगैरह हमारी वीक है, इसलिए हम लोग कल बहुत क्लोज गए थे इनके अगेंस्ट, पर अभी करा हम लोग ने प्रैक्टिस तो हो गया इनके अगेंस्ट. जो ओवर टाइम जा रहा था, बार बार लगातार आगे बढ़े जा रहा था, उस टाइम पे क्या माइंडसेट था? कैसे अपने आप को संभाला आपने? उस टाइम तो हम यही सोच के खेल रहे थे कि चलो एंथम में पुश करके खेल लेते हैं, बस हो गया. एसएनडी वैसे ही खत्म. हम बस पुश कर रहे थे, हमने ओवर करने की सोची नहीं. हम पुश करे गन फाइट जीती एसएनडी में. एक्चुअल में भी इसने शॉटगन से 2-3 अच्छे मारे थे. ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने बहुत आउट परफॉर्म करे, बहुत बढ़िया खेला है? आपको भवे है वीसी. पल्स ने खेला है. पल्स तो बहुत मारा भाई एचपी में. मैं पल्स ने विश्वास जगाया है मेरा. पल्स भाई ने खेला अच्छा. चलो पल्स से बात करके आते जरा. हाँ जी सर, पल्स सर आप बताइए आपके क्या कहने हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ अभी फिलहाल एंथम को डिफीट करके एंड गॉडलाइक से भी मतलब उतना क्लोज जाना था बट कर नहीं पाए कुछ. बट ज़रूर नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे. नेक्स्ट टाइम पक्का ट्राई करना है. अच्छा इस टाइम गॉडलाइक से लड़ते हुए क्या गलतियाँ कहाँ हो गई? जैसे प्रिवेल ने बताया ऑलरेडी हमारा गन फाइट बहुत ज़्यादा वीक है अभी. ट्राई करेंगे और भी ग्राइंड करेंगे. नेक्स्ट टाइम आएंगे. लेकिन आएगा जरूर से वो वक्त. एंड इसी के साथ बहुत बढ़िया खेले यार. आएगा जरूर से वक्त. लेट्स सी भाई नेक्स्ट लाइन कब होता है. हमारे पास काफी सारे मैचेस जो है वो रखे हुए हैं तिजोरी में, उनको निकालेंगे जरूर से. टाइम आएगा जरूर से, लेकिन उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे कास्टर्स के पास. ओवर टू यू नेक्रो. 4 more games still left over, ladies and gentlemen, from which 2 of them have already been concluded. And those are चलो हाइलाइट्स चलेंगे. मैं 2 मिनट मैच है, ठीक है? बड़े स्ट्रीम लगा दो तो फुल स्क्रीन. It's going to be Godlike versus Anthem. 3-0. I don't want to sound mean while I'm saying it, but as an analyst, as a caster, I need to stick to the stats, and that's what the stats say. Hard pill to the swallow. That is true, but again, we're going to have a look at the scoreboard as well of the previous one. Ghost 32 and 20. On top of the charts every single time. You've just seen him stepping up perfectly, and this is the reason why. Exactly. I mean, speaking about the highlights, right, especially about the last control that we saw, especially a lot back and forth action going on. One round completely being dominated by NS, the other round being completely dominated by Anthem, then NS dominates once again to pretty much just take it home. So in general, it's just so much back and forth action was going on. Team Anthem, they tried their best to fight back, but I guess Team Anthem should really take a look at this matchup as an experience for them, because this is their first ever lane. True. Team Anthem should be happy the fact that they actually got a chance to play over here. They qualified all the way from the depths of hell towards this competition. So Team Anthem have definitely proved themselves. I mean, whatsoever be the result of this LAN, right, the main thing remains always the same, that these are the top 6 teams. Be it invited, be it qualified. You know that they are deserving to be on the stage. And Anthem has been showing that as well. Because no matter what we say, both of those maps were just super close. Even the control one, we just saw how close it was. And I mean, we're talking about close matches. Maybe we're going to have a look at the ones that were not very close, as Godlike would be the ones to take on Anthem in the next match. And I personally feel that, yes, Anthem might have been disqualified still. You need to end things on a very good note, and if you're able to end the show well, even if they're able to grab a few wins against Godlike, maybe at least a map, that is a big win for them. It feels like you're hesitating to talk over here. You really want to say something that might just sound harsh, but you're still holding yourself back. You might as well just say it. I mean, yes, we know that it's a very hard pill to swallow, especially for Anthem and also for all of their fans out there, but yes, there needs to be a lot of brushing up done.
Maybe. I still think that since they were also able to get one map at least from Godlike in the previous SPS, they might be able to do that here as well. One thing is for sure, these guys are going to learn after this experience, and That they're is going to true. come back even more stronger in the future. So all the Anthem fans that are out there in the chat currently, do not hate these guys because they're going through a tough time right now inside True. the tournament. They need your support. They need your love. Just keep on supporting your favorite teams. But with that being said, ladies and gentlemen, now it's time for us to toss to a short break because on the other side is going to be the upcoming game. I'm here. Welcome. थोड़ा ब्रेक ले लिया था मैंने भी 5 मिनट का. अभी गॉल का मैच चालू होगा. लेट्स सी गॉल कितना कम टाइम में स्पीड रन करती है. मज़ा आएगा स्पीड रन देखने में. सो लेट्स सी. डिस्कॉर्ड में मैंने पिंग कर दिया अपने लॉन्डो को, अगर आना तो आ जाए. फुल स्पीड रन होने वाला है मैच. भवे है वीसी. कौन है वीसी अपने में? ओके भवे लेफ्ट. ठीक है कोई सीन नहीं है. कौन है यार चैट में? लेट मी नो. 2 मिनट क्या गया भाई, तुम सब भाग गए. क्या सीन है? कौन है चैट? आई गेस क्रिश भाई आप हो, है ना? कौन है और रिफ्रेश मार दो एक सेकंड. स्ट्रीम पे है क्या? हाँ वॉच पार्टी. अभी गोल्ड का मैच चालू होने वाला है. स्पीड रन होगा. गोल्ड वर्सेस एंथम 4 मिनट में. तो रात को वैल्यू क्यों नहीं आया? मतलब सो गया था क्या? अरे हाँ यार मेरे को पंजाबी का मैसेज हो गया था. आज रात तो मैं आज रात फ्री हूँ. आज कोई पार्टी वार्टी भी नहीं.
वाले और संडे की 3 बजे तक फ्री हूँ। सही है। और फिर मेंटल चल रही है क्या चीज? हाँ यहाँ की DBS। हाँ एग्जैक्टली मेटा चल रही है। डैम यार मैंने नर्फ कर दी होगी। ना ना आ गया। मैंने जीत गई। यस जिगर भाई ने जीत गई 3-0। अभी है गॉडल वर्सेस एंथम, फिर होंगे वाइटैलिटी वर्सेस TWOB, देन TW वर्सेस I2K वर्सेस वाइटैलिटी। ये इन्होंने देख मैच का टाइमिंग देखो, एंथम और गॉडल का टाइमिंग देख कितना कम दिया है भाई। इनको भी पता है क्या स्पीड रन वाला सीन है क्या? इन्होंने सब में आधा घंटा दिया है। TWOB और वाइटैलिटी वाले में 40 मिनट दिया है, नहीं उसमें भी आधा घंटा दिया है। इसमें कम क्यों दिया है बे? 25 मिनट दिया है बस गॉडल और एंथम का मैच का टाइम। अबे ये क्या था? ये स्पैरो की स्किन डाल दी सारों ने, स्पैरो की दी अलग है। बाकी मैचेस में टाइम ज्यादा दिया है। क्या कह रहे हैं? अबे स्किन डाल देगा स्पैरो की भी। हाँ 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 हर चीज की, यस यस हर चीज की स्किन डाल रखी है ब्रो। भाई तूने आईडी की जर्सी देखी स्ट्रीम पे? कि तू स्ट्रीम ही नहीं खोली ना तूने? ये देख आईडी की जर्सी बनी हुई है मैंने भाई। जर्सी आ भी गई? हाँ जी भाई। भाई तुम लोग कितना फास्ट काम कर रहे हो। अरे मजाक कर रहा हूँ, ये वो वाली आईडी की है मतलब हाँ वो तो पता है। लूसी जल्दी कैसे करने लग गया काम? नहीं ग्लोबल लॉन्च के टाइम पे करेंगे सब हरकतें, देखेंगे। भाई जो भी ये भी स्ट्रीम पे चैट में बताओ भाई कौन कौन है। गॉल्ड का मैच चालू होने वाला है भाई, हो जाओ पंप अप, स्पीड रन होने वाला है। तेरे को पता है वॉरज़ोन में आता तो वर्डा खाता था मोबाइल में स्क्वाड के। हाँ पता है मेरे को, तब खेलता मैं वो। बी द आईडी, यस भाई जिगर भाई बी द आईडी। अगर वॉरज़ोन एग्जिस्ट नहीं होता तो कॉडम ही खेलता था पहले। नाम भी है मेरा जर्सी के पीछे। क्या कह रहा है? अगर कॉडम डेड हो जाता था, मतलब वो एक डेड हो गया और वॉरज़ोन एग्जिस्ट नहीं करता तो कॉडम ही खेल रहा था अभी। यप। और कोई गेम नहीं बचती यार मार्केट में खेलने के लिए। और फिर अगर मैं खेल रहा होता तो मैं रिलीजियसली खेल रहा होता तो शायद मैं 9 पे भी होता। वो भी है। 5 4 3 2 हाँ वही एक। Let's go. The Snapdragon Pro Series powered by Samsung Galaxy is brought to you by अपने कॉडम और Warzone Mobile की Samsung Galaxy S23 Ultra, Monster Energy and DHL. हेलो अभी तो आईएनडी पे फुल फोकस है ब्रो। हमारे जो वर्जन के आईएनडी है। आप लोगों का बहुत स्वागत है हमारे दोबारा। तेरे नाम वाले आ गए सलमान खान हमारे मेजर भाई। जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा होता। आज डे 2 था, डे 2 के दोनों मैचेस हमारे खत्म हो चुके हैं एंड दोनों मैच जो रिजल्ट रहे हैं वो रहे हैं 3-0 3-0। जी हां अभी तक तो कंप्लीट डोमिनेटिंग यहां पे दिखाया जा रहा है। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन अब तैयार हो जाइए बिकॉज़ अब रहेगा हमारा थर्ड मैच आज के दिन का। आवाज नहीं आ रही तेरी। I would like to invite मैं चाहता हूं रात को आता हूं। ठीक ठीक एंथम। Anthem. Let's go भाई, Anthem versus Godel. Let's go. मैं ये जानना चाहूंगा आप क्या खेल रहे हैं आज क्या परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं? इतना ज्यादा नजदीकी मामला चल रहा है। कंपटीशन तो आप दे रहे हो लेकिन अब
आपको दूसरा चांस मिला है, क्या लगता है अब इस बार फोड़ोगे? कुछ नहीं, बस छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं, वो अब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो उसमें तो ऑफ कोर्स सभी को हराएंगे। आ गया एक बात नाइस, कॉन्फिडेंस तो है भाई। आपको कुछ मैं एक बात बढ़िया बढ़िया होना चाहिए। क्वालीफाई तो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना, खैर वो हो चुका है, लेकिन अब अगर हम बात करेंगे जो आप यहाँ से लेके जा रहे हो वो है आपका एक्सपीरियंस, वो है एक लैन का एक्सपीरियंस। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के इतिहास में पहला लैन हो रहा है और आप देख रहे हो कि इंडिया में जो लैन है उसका आप हिस्सा भी बने हो और आप खेले भी हो, अपने कॉम्पिटिशन भी काफ़ी अच्छा दिया है, कैसा लग रहा है? अरे फर्स्ट लाइन में ऑफ कोर्स हम खेले हैं तो भाई बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी अच्छा हार के भी गए तो कोई ना, एक सही है यार, मतलब दे आर हैप्पी, अच्छा लग रहा है मेरे को देख के। अभी मास्टर्स भी होने वाला है तो हम उसमें ऑफ कोर्स बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। बेटर परफॉर्मेंस करेंगे, हम भी इंतजार रहेगा आपकी बेटर परफॉर्मेंस का, और अभी जरूर तरीके से आपने एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा गेन करा है एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मैच। आप प्लीज़ अपनी स्टेज पे जाइए, अपनी सीट्स पे जाइए एंड मैं आपसे मिलूंगा अभी कास्टिंग डिस्क पे, नेक्रो वगैरह सब आपसे मिलेंगे। लेकिन अगर बात करते हैं हम अपने दूसरी टीम की, तो दूसरी टीम भी कुछ कम नहीं है, दूसरी टीम ने भी 4 चांद लगा रखे हैं एंड वो टीम ऐसी टीम है जो हारने का नाम नहीं ले रही है, उनको हार शब्द का मतलब पता ही नहीं है कि हार होती क्या है। कोई भी टाइम यहाँ पे गवाए बिना हम इंट्रोड्यूस करते हैं, गिव इट अप फॉर टीम लेट्स गो गॉडलाइक, लेट्स गो, क्लीन स्वीप टाइम, अंबल। हाँ भाई, व्हाट्सअप करण भाई, वेलकम टू स्ट्रीम, क्या हाल है? प्रोसेड आएंगे तो सभी को हराएंगे। हाँ यार, अगली बार तो कोड़ा भी नहीं आ रहा। अरे करण भाई इतना भी सच मत बोलो यार, लॉल। मैं गेस 2 more subs फॉर 704 करवा दो एंड लाइक्स करते रहो भर भर के, इजी होता है मेरे लिए परमिशंस लेना। एंड ये आगे गोल्ड के लोग चेहरे आगे तुम्हारे सामने, इजी कोई क्लीन स्वीप स्पीड रन होने वाला है मैच, देखते हैं। सेम मैच रजिस्टर्ड वाले क्यों? अरे पता नहीं यार, इन्होंने ग्रुप शफल नहीं करे हैं, करने चाहिए थे, मजा आता। ये तो रोज का हो गया, क्या कहना चाहोगे अभी? रोज का हो गया। I think one word for us, दिल से Godlike, keep supporting us and we'll go nice. यार वैसे एक बात बताओ, ये मैं जानना चाहूंगा और इनफैक्ट सभी जानना चाहेंगे बिकॉज़ सबके पास सेम मोबाइल है। जनवरी में मोबाइल मास्टर्स करण शर्मा वो, लेकिन इनवाइट होनी है ना, मतलब आई गेस लैन है यार, वाईफाई पे सेम खेल रहे हो, ऐसा क्या डिफरेंस है तुम लोगों में और बाकी सबको हराते हुए आ रहे हो, क्या अलग क्या कर रहे हो? I think एक ही चीज़ अलग है कि it's always moving forward, क्योंकि हारो या जीतो, लाइक हम लोग कल जीते थे राइट, बट फिर भी हमने कल की मैचेस से कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट किया, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। तो बस यही है कि कीप मूविंग फॉरवर्ड, एनी टीम। करण भाई जर्सी नोटिस करी, जस्ट सेइंग देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लर्न, इसलिए मेरा सिर्फ में जाके मतलब पता चलेगा मेजर। अरे भाई ऐसे क्यों हेट क्यों दे रहे हो यार करण भाई? हेटर हो गया भाई, हेटर। कुछ नहीं, काफी क्लोज मैच था। अभी इसमें कॉलेज लम्बा, ऐसा क्या? लॉल भाई मेरे को नहीं पता था। तेरे को वीसी आने आ जाना, वेगल वाले पे बैठा हूँ। थोड़ा लाइक गेम तो लैंड तो ठीक है, भाई लेट्स गो गॉडल्स मैच। व्हाट्सअप कीरा, वेलकम टू द स्ट्रीम भाई, हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम। ध्यान रखना जरूर से होता है, थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू। आप लोग क्या हाल है कीरा भाई? एंड इसी के साथ अगर हम बात करना चाहेंगे तो अब वो घड़ी आ चुकी है जब टीम एंथम एंड टीम गॉडलाइक वो आपस में compete कर रहे हैं। लेट्स गो चैट, लाइक कर दो, 40-50 लाइक कर दो। टाइम को वेस्ट करे हुए बिकॉज़ टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। यस, व्हाट डू यू नेक्रो? आई मीन सर बोलते हैं नेक्स्ट ईयर कॉडम डेड होगा, बट फिर भी चल रहा है ना। हाँ मतलब वही एग्जैक्टली, आई फील द सेम, बट अभी वही है, टक्कर देने वाली Warzone Mobile इज ऑन द वे। Let's see जो भी होता है। You know what? I want to call Major on the desk over here, dude. I want to have a fun banter segment, but I guess he's just really shy. Major is someone who's shy. That's tough to believe, right? Major, what's going on? Why are you not coming over बुलाओ to the भाई, desk, बुलाओ man? बुलाओ Come बुलाओ over. बुलाओ बुलाओ Wow, भाई। unfortunate stuff, I guess. Major's not अबे really यार, interested to come over. And here he ये is. आता बंदा मिनट। ओके 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 ओके, फिर तुम बताओ सब बढ़िया यार। ये आ गया Major Beast on the desk. मेजर भाई क्या सीन है? He's saying he was not shy, was just really far away, and he was tired. He's, I don't even know what he's trying to say, but you know what? No cardio. सेम फॉर्मेट है क्या? कल भी तो सेम फिक्सेस थे। हाँ सेम फॉर्मेट है। On the desk now, I think so. The desk is going to be blessed, and it's time for us to make the prediction as well. Considering Snapdragon Elite Game 3-0 prediction. Way to go. Even you guys do let us know in the chat. 3-0 भाई, तुम भी चैट में बताओ यार जो भी मेरी स्ट्रीम देख रहा है। But what about you, Messi?
मैं रियलिटी चेक दे रहा हूँ बस ऑफ कोर्स सपोर्ट तो गॉडल को ही है एंड द डे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया यस भाई इंडिया ऑन टॉप ये देखो इंडिया का फ्लैग इंडिया ऑन टॉप भाई मैं बड़े बालों में बढ़िया लग रहे हाँ ना तेरे नाम फाइनल्स भी नहीं होगा फाइनल्स कल होगा आज दो टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी ये ग्रुप से प्रोबेबली एंथम बिकॉज वो 3-0 चल रहे हैं लॉस्ट में बाकी से मैं 2 सब्सक्राइबर्स और चाहिए सो लेट मी नो इफ यू कैन हेल्प मी विद दैट 3-0 हाँ मेरे को भी वही लग रहा है That is true. They need to make sure to get those frags because once they imagine भाई out of the box जाके एक मैप निकालने हैं लोग one as a whole we've seen how Godlike has बड़ी मुश्किल है perfectly in unison. करण भाई ने प्रॉपर प्रेडिक्शन डाली है 250 7-1 3-0 लेट्स सी there were trades going back and forth but कल शायद 7-0 हुआ था 100 below 100 हाँ Exactly. Fair. I mean, speaking about having the back of your own teammates, right? Let's move on forward and take a look at Team Godlike because this team. Bagesh, do be simple make sure to like and sub. You can also be a member to the channel to support. November का मेरा threshold 0 हो गया तो I have to restart that. If you want to support, you can support the channel with that. Memberships ले लो, perks मिलेंगी. Chill करोगे, enjoy करोगे. He's written God-L. And yeah. God-L learn. Combining it more or less like a fun, but either way, that's a fun thing to know. Yes, but one thing that I really want to commend him for is the fact that we have seen a lot of batter from SND they might win. मुश्किल है भाई गॉडल का SND बहुत strong है बहुत. कल 7-0 हुआ था. So much spill of confidence out there, but he gave. विदेश भाई I know मतलब you like that team but थोड़ा मुश्किल है. ये कल के highlights देख लो एक बार. Let's have a look at the Hardpoint highlights of yesterday. Exactly, we've got the day one highlights. Score देखो भाई. Ladies and gentlemen, with how things really look like on day one. SND का score देखो ये देखो 4-0. Stomping atop the players of Team Anthem. One-sided affair. I hope that's not going to be the case today as well. 6-0 7-0 हुआ था. दूसरे ग्रुप में I2K हो जाएगी बाहर हाँ probably. True. Probably क्या mostly हाँ. We saw them going in for that. तो उस ग्रुप से बचेगी TWB और Vitality इस ग्रुप से बचेगी गॉडल और NS. फिर उस उधर से एक टीम हट जाएगी इधर से NS हट जाएगी फिर गॉडल वर्सेस वो वहाँ की टीम. Mid is good, but ending is where they face a lot of problems. So yes, some rushing That's up is needed the to fixture be done. I guess. But looking at this matchup again, it just seems inevitable that God. आज अगर थोड़ा shuffle होते ग्रुप तो I2K बाहर नहीं होता for sure. हाँ they could have given a tough fight to NS and they could have won against Anthem. That's a possibility मतलब. Listen, as I mentioned, Fallen and Proxy really do need to step things up. But yeah, Proxy को step up करना पड़ेगा. Caster ने सही बोला. Proxy भाई थोड़े से हल्के पड़ रहे हैं. Look at the map, Vito, because this is something that's going to be the icebreaker once again. Hardpoint is of course something we're going to kick things off. Map 1 take off, map 2 slums, map 3 raid. भाई submit क्यों जाता है यार? Submit ban कर दिया गॉडल ने. Of course, will be raid in control. I'm really excited to see how raids can be played off. Yesterday we clearly saw how well Godlike was dominating onto that map. No, let's just too strong for what I've heard. हाँ भाई करण भाई full strong है वो तो. Just stop everything around. We have seen that. Same matchups हैं आरे भी थोड़ा और इधर उधर कर देते हैं. हाँ यार मजा आता है interesting रहता है. If they could have shuffled the group. Same matchups हैं. Of the life count and we will just stomp everyone forward and that is their way. As of now. बाकी 40 likes कर दो. 5 more likes to go. And 7040 subs कर दो. 2 more subs to go. तो इस चैनल पे कंटेंट मिलता रहेगा about Warzone Mobile in future. Here and there, they still would be able to win the round, but against Godlike it seems difficult. But that's my prediction, though. I mean, you made your prediction, but I heard that the audience hasn't really made their prediction. Ladies and gentlemen, now it's time for us to move on towards the Snapdragon Elite Gaming prediction. Do let us know in the chat which team do you think is going to be chat में पोल वोल डाला क्या? Do let us know the scoreline. नहीं Do you डाला think ना? it's going to be a 3-0? Do you think so? It's going to be a really close matchup? Let us know in the YouTube chat. But getting back to the conversation once again, right? The predictions can be whatever. From me, it's going to be 3-0 as well, at least from Godlike. That's what the scoreline was yesterday, and we need to stick to the facts. Now, considering we're going to start things off and take off on Hardpoint, it's going to be an interesting affair. But ये लेफ्ट में I2K की टीम बैठी है I guess है ना? We need to thank our sponsor. Thank you so much, Snapdragon Elite Gaming, for sponsoring this event. ये डांटे Insanity ये लोग कौन सी टीम के जर्सी पहने हैं? I2K की है? डांटे तो I2K में क्योंकि लेफ्ट में जो कास्टर है वो इंडियन है. हाँ हाँ इंडियन है. दोनों कास्टर इंडियन है. नेक करो. उसका इंग्लिश एक्सेंट काफी अच्छा है नो. I also want to thank Monster because that's been providing
providing us a lot of energy for the continuous casting, especially you, Necro. I mean, you've been chunking up a lot of monsters out here. I mean, of course, it's something that I love to drink, man. So you guys as well should definitely go ahead and give it a shot because I love Monster Energy, especially when you feel like, oh, you're a little bit down low. Just have Monster भाई इधर भी थोड़ा sponsor. Absolutely, Major Beast, here's one for you as well. And in the meantime, coming back to the game as well, we mentioned that takeoff is going to be the first one for that hard point, but the second one, again, we'll have to focus on that too. अच्छी casting हो रही है, हाँ, I know. We saw how well Godlike was able to outperform Anthem into that one. It not even allowing them to reach those 100 Let's points. go, So bhai. if it goes to map number 4, Insanity भी बैठा हुआ था, the BR one. 3-1, that is one of the reason why I said it could be 3-1 possibility. So the best scenario in this case would be for Anthem to get the first 2 maps from Godlike. Maybe it's asking way too much, but still starting things off from slow, step by step is where they have to look things at. Take off. It's a pretty large map. You know it is an AR dominant map, और and बताओ you know that we have seen a very good performance from Anthem in there. So Chat मेरी tweet भी डाली मैंने about the watch party. If you want, you can retweet that as well. This is going to be the one. Have you seen what Exclamation mark we aren't Twitter. really seeing any HBK 30s? And we generally thought we might just be able to see that gun quite a lot, but this AR is not being used. Instead, we're seeing a lot of Switchblade, which is the SMG. Insanity कहाँ है? बैठा हुआ था अभी इसके पीछे यार, टू के जो टीम वाले बैठे हैं उसके पीछे. मेरे को जर्सी के पीछे लिखा दिखा Insanity. 30 is a weapon that I genuinely thought we might just see used so much, but no, that's not the case. Here we go, ladies and gentlemen. Though Here we go. Of the series as we take बैठ जाओ आराम से chill मार के अभी पॉपकॉर्न ले लो. स्पीड रन होने वाला है. First hard point, gonna open मैं भी पानी पी लेता हूँ. as you can see smokes coming in, and you push the smoke, dry peaks, you'll be finished off by Trunks right away. Raw 5.56 in his hand, Skull making sure he's using the best possible way that gun again in the upper floors. He would not be able to survive that. Trades back Neutrino and forth, but Godlike is the one who's controlling भी है, हाँ हाँ Neutrino भी ये खेल रहा है. आजो जेनी भाई डिस्कॉर्ड ही बैठा हूँ. Welcome to the stream, Jenny. क्या हाल है? बस 40 लाइक कर दो. Team Anthem getting the control as well, just for a couple of seconds. Instantly they get denied. Just look at the way Godlike is playing. Neutrino getting these kills in the hands, and also just keeps on pushing up. Doesn't seem like Heavy this match खेल will be रहा है. stopping anytime soon. Neutrino's just able to find the angles. Starbuck, it just seemed like AFK at that moment, moving backwards without looking left and right, and was punished just हाँ like भाई that. पूरी And kill no feed में matter where Godlike we है. look in this map, we always see Godlike winning out on those duels. Just sheer gunfights is what they're winning at. Now, again, you can use up the strategies, but you need to finish those kills off whatsoever. Anthem grabbing a few points, but not even the last 4 seconds is something they will be able to grab easily. As Godlike's going to take the last one and also move towards the other side. Follow निकाल लिया वो fight, nice. Skulls and Neutrinos just popping off from Godlike. These guys single-handedly are just carrying the team in the back. On the kill feed, you're just going to see Skulls and Neutrino just going at it against the players of Team Anthem. And definitely Team Anthem are struggling massively to win these fights. Yo, Major Beast, welcome to the stream. क्या हाल है? अच्छी कास्टिंग हो रही है, अच्छी होस्टिंग हो रही है भाई, genuinely. और वो तेरे नाम वाला जो हेयर स्टाइल है, ओह मजा आ गया, चैट को भी मजा आ रहा था. Nice यार. I'm happy for you भाई, जो हो रहा है like finally codm का कुछ. All right. No one expected. Nice shots भाई, control लेके बैठे हुए गॉडल वाले, full speed run. 35 and still You should be there. Yes, Hardpoint's been contested. Oh no, looked away. हाँ रही आ रही है. Well, that was something I did. I wanted to यार. Proxy पता नहीं, he's a new player I guess. But वही है, Proxy needs to step up भाई, मतलब last 2 games में मैंने देखा he was थोड़ा down. But he's doing good. Yeah, W है still. हाँ ना भाई, full W. Full तेरे नाम. W. I mean, Godlike just accumulating them back to back and also winning the majority of the fights. The communication flow, one thing is for कोई नहीं मेजर भाई, next time for sure. Warzone का सीन होगा तो Warzone में आएंगे है ना. गेम से अच्छा तो स्टाइल है यार. Can still find more value out of that. Yes, gets a couple of them as well. Skull single-handedly handling entire team of Anthem and making sure they do not let go of the hard point. Trunks का claw निकालेगा भाई, 3-4 निकालेगा. Yeah, exactly. तेरे लिए screenshot हो रहा है ना Dreams? मैं तो साथ में खुला हुआ है. काली जुबान लग गई भाई. Did not check the corner. अरे अरे yes मेजर भाई, keep going यार, अच्छा लगा. But still Godlike they just keep on returning. चार बॉय कट ऑफ हो गया. Points are flowing in. Godlike they're really Follow nice trade यार. भाई अभी लेकिन पूरी किल फीड में गॉडल है, मार रही है भाई. Finally, Anthem finding some kind of value. Abhi is तो निकल गया. Of the hard point, last few seconds of the scrap. Abhi also wants to deny that was shut down. So yes, they'll try to get some points out of nothing at least. But you can. I guess you wish to minimum should drop like and sub. Is just so in possession for the next hard point, as it's going to be opened up in the next 10 seconds.
you already know it's going to be again Anthem trying to pull out By their own maro. operators. They've still got 3 in hand though, but when you look at Godlike, they also have 3, and they're seeing Purify in the hands of Abiz. It's just going to welcome them with a bird. Lots of love need to go, but yeah, for sure, bhai. Keep going, bhai. अच्छा लग रहा है. Good luck to you as well. मचाते रहो भाई stage पे. But unfortunately, no one's going to peek out at the right time. Godlike, look at the amount of kills. Look at the kill feed. It seems like भर रही है भाई Godlike, भर रही है. Neutrino 15, Abiz 15, Trunks 14. Skull guy 16. They're not even able to get any type of kills flowing up in their court. But as soon as I say that, Fallen and Proxy, they returned with 1 each. उस साइड से कौन मार रहा है? विज मार रहा है. Something more than that. Starboy मार रहा है. Skull, good for 1. Finally some trades happening in favor of ECL India पे it is every time Godlike just ऐसा क्या पता नहीं यार. at every single point, and only Anthem getting the The thing is काफी जगह स्ट्रीम हो रहा है ना, तो watching is dividing. कृष भाई going to help you out, close the gap. Yes, मेन चैनल पे तो हो रहा है कॉल ऑफ ड्यूटी के. हां मेन पे अच्छी वाचिंग आ रही थी. 600 800 आ रही थी. बस उस पे क्वालिटी कम आ रही है, तो मैं इस पे देख रहा हूं नॉर्डविन वाले पे. Team Anthem finally, they've got the momentum, they've finally got the control, but can they sustain the control? That's the question. It seems like even the control's now going to start to slip away. Godlike, they just unstoppable. भाई ड्रीम्स अपने दिन याद आ गए बे. Absolute monster. The name is Godlike, but these are monster-like. I mean, they're literally godly players at this point, because look at their aim, always on point. Picture MX9 बैठा था तब chat. Brushing off the dust off their hair, just like you are doing right now. मैं KRM चलाता था. Looking at the trades going back and forth. Yes, again. Anthem is fighting hard and वही scene है losing यार. 3 of the members, so they never have 5 players on the map. And if that is going to be the case, you can't. एक ही अगर स्ट्रीम रखते ना, I would say, but वही स्पॉन्सर्स को भी खुश करना है. अगर एक ही स्ट्रीम रखते तो उस पे सारी वॉचिंग कंबाइन हो जाती. तो could have done ऐसा 1k टच हो जाता, बट वही कल फाइनल से कल हो सकता है. गॉडल वाइटैलिटी दोनों कल संडे भी है. तेरे स्काई स्पोर्ट्स का क्या हुआ? अच्छा मेरे को लगा आज जाने वाला था, मतलब कल जाने वाला था. कल तो वो हो गया, कैंसिल हो गया. ये ग्रू की स्किन बहुत प्यारी है भाई. Warzone में भी गन है, पता है ऐसी. मैं तो गन ही पहली बार देख रहा हूं. ये ग्राउ अभी नहीं आई है, ये Warzone की गन है. ग्राउ 556. जस्ट सिंग. यस कृष भाई. कृपया क्या लगता है 100 से ऊपर जाएगा एंथम का? जीतने का तो चलो मुश्किल लग रहा है साहब. कल इंडिया का मैच भी है. ओ हाँ, कल तो श्रीलंका वो है, साउथ अफ्रीका इंडिया. वन ऑफ द टफेस्ट मैच लोग कह रहे हैं इंडिया के लिए. लेट्स सी. कल बॉलिंग लाइनअप अगर वापस ऐसा खेल लेना मजा आ जाएगा. हाँ यार, शम्मी भाई, सिराज भाई फुल एकदम कोमा दे दिए थे. Indeed, just purifying them at this point, sending them back to Everhell. जिम खत्म हुआ था. I guess hell probably आज ही खत्म हो गया. in the hands, but it's not going to matter. The Predator missiles. 2 सीजन हो गए ग्राउ है, ऐसा क्या? पता नहीं, मैं तो इतना एक्टिव नहीं हूं ना. 161 Godlike, the points flush. भाई लर्न भाई पीछे से बस बैकस्टैब. It just keeps on moving. विज ने लेकिन अच्छा किल मार रहा है भाई. विज किल्स के लिए खेल रहा है, फुल एकदम स्ले कर रहा है. क्या लगता है चैट 100 से ऊपर जाएगा? क्या लगता है? 120 तक जाएगा. ओके ओके. क्या कह रहा है? आइजन कौन है अंदर? आई गेस जो इंटरव्यू दे रहा था, नाम क्या उसका पता नहीं मेरे को. शायद विजी है. बाकी बता देगा कोई ना कोई चैट में. मैंने नॉकआउट्स. हाँ वही. ओह ये किसने एनी मिस करा? लर्न भाई क्या सीन है. डायरेक्शन कल के मैचेस देखा चाहिए था. कल के तो भाई अलग ही वो थे मैचेस. स्पीड रन मारा था कल तो. मेरे को लगा कल वाली स्ट्रीम रिपीट हो रही है सेम मैचेस. नहीं नहीं नहीं. 250 165. ओके ओके लेट्स सी. मेरे को नहीं लग रहा भाई 100 से ऊपर जाएगा. मेरे को नहीं लग रहा अभी भी. मेरे को नहीं लग रहा अभी भी 100 के ऊपर जाएगा. गॉडल रोकने का ट्राई करेगी ब्रो. अपने वर्ड्स पे रहती है. स्क्रैप का मिलेगी. नेक्स्ट पे स्विच करेंगे. वही वो भी गन फाइट्स हार गए. विज बचा है. विज ने एक मारा. लेट्स सी लेट्स सी. चैट बाकी 2 सब्सक्राइबर और चाहिए 7040 के लिए. मेक श्योर यू ड्रॉप अस अप. ये अपने फ्रेंड को बोलो. आल्सो 40 लाइक्स. मैंने बोला था भाई 100 के ऊपर नहीं जाएगा. मेरे को लग रहा था. And we're not seeing Anthem even letting
getting close to that hill because सारे ऑपरेटर निकाल लिए उन्होंने, एक एक करके देखा क्या कोऑर्डिनेशन से निकाले हैं। 5M की तरह नहीं। So close to the winner's wall. No, there's no maybe, my friend. It's just done. Godlike has dominated. They have dominated, their bro. opponents. This is utter disrespect. चल अभी मार, लास्ट किल मार, फाइनल किल। Come on. You cannot even call it disrespect at this point. Let's go. 100 से नीचे। अरे पता है हमारे कॉलेज में वो हुआ था नहीं, स्पोर्ट्स का रिलेटेड, तब अभी देखा मेरे को। मैं कुछ भी नहीं देखा, हवा में प्रेडिक्शन दे रहा था, बट आपकी सही हो गई यार। 100 के नीचे रहा करण भाई। Let's go. This is the way Godlike has performed onto that one, and never mind नहीं अगर prediction yes करण भाई, let's go. We have been mentioning it time and time again how good their fighting is, how good their gun power is. जस्ट सिंह करण भाई, अगर आपको मेंबरशिप का सीन करना पड़ेगा, अगर करोगे जैसे तो 7 तारीख से पहले कर लेना, ठीक है? 7 तारीख से पहले। सब वो मैं नहीं कह रहा कि लो भाई अभी, बट हाँ जब भी करोगे ट्राई करना 7 से पहले हो जाए, वरना कोई चक्कर नहीं, बाद में भी होगा तो चलेगा। 7 से पहले थोड़ा सीन अच्छा रहेगा मेरे लिए। निकाल लिया फिर गॉर्डन। हाँ भाई मेरे को लगा था ब्रो, इन पे कंट्रोल बहुत अच्छा था। गॉर्डन नेक्स्ट लेवल खेल रही है ब्रो अभी। गॉर्डन यहाँ पे, देन वाइटैलिटी एंड TWB, देन NS, देन बाकी की 2 टीम्स। ऐसा हो गया अभी। व्हाट्स अप वैम्पायर, वेलकम टू स्ट्रीम। क्या हाल है ब्रो? आज 9 बजे तुम होस्ट कर दो। लेट्स सी, देखते हैं वैम्पायर भाई, आज देखते हैं रात को क्या सीन है कस्टम्स वगैरह, क्योंकि अभी अपडेट अभी तक आया नहीं है और ना आएगा, तो मे बी आज कस्टम्स ज़्यादा लोग नहीं खेलेंगे। सो दैट्स द थिंग। सो 7 को क्या है? अरे वो नवंबर का अक्टूबर में काउंट हो जाता है, काइंड ऑफ पेमेंट थ्रेशोल्ड वाला सीन थोड़ा ना, तो इजी हो जाता है। ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं 29 रुपए से, बट फिर भी देख लो, पर्ची है। तेरा बैकग्राउंड आ रहा है शायद, मतलब कुछ तो आया मेरे बैकग्राउंड में। तू ही है ना बीच में, और कोई तो नहीं है? कहाँ से आ रहा है पता नहीं। हाँ देख ले, कोई नहीं। हमारे स्कूल में जो रहा वालों के लिए इसी Hardpoint while learn 21 इसी नहीं है। अच्छा अच्छा 19 seconds he was playing the भाई विजने 29 मार दिए। दिए। He was playing the anchor as well, and this is what they have mentioned time and time again, that they can swap up those roles, they can change things. Well played. Whereas Proxy needs to step up. Proxy भाई पंप अप हो जाओ, मारो। You can definitely see the differences in the kill, but still I would say 10:30 टाइम होता है तो स्किप साइकिल की बैंड बज जाती है यार। सीन पता है क्या है, प्लेयर्स भी होने चाहिए ना खेलने के लिए कस्टम्स, यू हैव टू फिल द रूम एज वेल। ये सीन है वैम्पायर भाई। इधर गोल्ड के भरोसा नहीं है। हाँ यार उसको एंथम पे ज्यादा भरोसा है। गॉडर आईडी TWB I2K NS एंथम। नो आई बिलीव NS और एंथम को स्वैप कर दे, NS और I2K को स्वैप कर दे। I2K क्योंकि अपने ग्रुप में काफी मैचेस डाउन जाएगी अभी उनका ग्रुप के हिसाब से। Oh yes करण भाई yes, देख लेना, मतलब अप टू यू। Move on to the next map, that is going to be the search and destroy. अपडेट नेक्स्ट वीक आएगा, अनाउंस किया है। हाँ आई नो, मैंने भी कर दिया, सर्वर में डाल दिया। Anthem are going to strategize. Which best OBG player? हाँ अच्छा खेला। Exact same thing happened and it was a 7-0. And that is something they would not. भाई SND में तुम्हें क्या लगता है? प्रेडिक्शन डालो चैट जल्दी। कल 7-0 हुआ था, कल 7-0 हुआ था पता है? तेरे को क्या लग रहा है? 7-0 ठीक है। हाँ देखते कौन सा मैप है, शायद स्लम्सी है कि क्या है। Everyone knows. Even the audience knows the realistic expectations. But as I mentioned, as a human being, you Even always got Anthem to knows. stay positive and look at the positive side of things, right? At least Team Anthem is getting so much experience. They're up against the best team in India. Krish मैंने बोला 7-1. For that, right? They're on the top stage, and even if you're eliminated at 5th and 6th place, you still get something, some chunk of that prize pool. हाँ ये बड़ी अच्छी बात कही कास्टर ने। 5th या 6th भी अगर बाय चांस आए तो प्राइस पूल तो लेके जाओगे। Since we know this is one of the only 12 लाख टोटल है, बाकी पता नहीं नीचे ऊपर क्या रहेगा। This band of 5 people just playing together. अच्छा एक और चीज चैट, एंथम, NS और I2K शायद ये तीनों नॉन स्पॉन्सर्ड है। So yes, being positive is the key. If I'm not wrong. I2K मतलब थोड़ा फंडिंग करते हैं अपनी वैसा, बट I don't think ज़्यादा वो सीन है कुछ, सब प्रॉपर सैलरीड वाला सीन है। हाँ नॉट श्योर। मैं टीम रैंकिंग कह रहा था, एंथम तो नहीं है, पता नहीं एंथम तो नहीं है। मैं जो डाल रखा हूँ 7-1, लेकिन मे बी 7-0 होगा क्योंकि 7-0 हुआ था। हाँ आई बिलीव 7-1 होगा, मेरे को भी लग रहा है 7-1 होगा। लेट्स सी, एक राउंड तो निकाल सकते हैं। Because right now they seem to be the ones in control.
As it's at least not a lot of man down. They are a man up, if anything. Attack है ना इस Two बार people for Godlike taken out. शायद. That's a good piece of aggression that they were able to pull down from Godlike, because we've seen how quickly they can turn things around and बाकी चैट इसके बाद वाइटलिटी टीडब्ल्यूबी और R2K की भी मैचेस करेंगे वॉच पार्टी, तो मेक श्योर आप लोग यहीं रुको। जीत गया भाई पहला राउंड एंथम, लेट्स गो। Do not fall for this trap, ladies and gentlemen. Every single person watching us on YouTube, do not fall for this trap. Yes, Anthem won that first round. Godlike will probably give like the first 2 or 3 rounds away, and once they get the lay of the land, once they know how things are going to be looking like, once they adjust to that tempo, they will start hammering down the R2K devices I think and coach too. Coach also I don't know. पता नहीं यार। Once again though, क्या एक डिवाइस लेके जा सकते हैं ऐसा सीन है? नहीं स्पॉन्सर्ड डिवाइसेस तो शायद वापस देने पड़ेंगे। डिवाइस अगर देने वाला सीन होता तो भाई सिर्फ डिवाइस मिलने पे खुश हो जाते हैं लोग। S23 है ना? वही 60-70 का तो डिवाइस ही है। Definitely, as they've also got the side control. So अरे सोच उनके लिए कितना अच्छा होगा जो बेचारे उस पे खेलते थे Realme types। is sticking. Anthem needs to make a comeback. मुश्किल ही होगा कि Realme वाला। Not anticipated. XR तो सबको होगा। He's gonna keep his life. Yes, he will. He gets more out of that, and he's 3-7 still alive, Let's see. ticking, making sure he fires those bullets perfectly on the skulls. Indeed, and look जीत गया Godlike at round। the end, he just takes him down. I told you guys, 1-1। do not fall for this trap. Guys बाकी लाइक कर दो यार, we need 3 more likes and 2 more subs। Come on भाई, शेयर करो भाई स्ट्रीम को। To have a smooth sailing in the upcoming rounds. शेयर करो। And ladies and gentlemen, just look at the bottom left corner. You've got the Snapdragon. गॉडल वाइटल हाँ, गॉडल पे तो वाइग्योर करके बाहर का एक कोच है, एंड वाइटलिटी पे भी कोई एक बाहर का कोच है। नॉट श्योर नाम क्या है। And because of that, they're also able to connect some nice shots. Now, no, you blink it and you चूंकि miss it. codm is their coach। That performance meter was no not idea just भाई for कौन है वो, Snapdragon, right? It but was हाँ, also for Godlike. that तो अच्छा है, good for them। Performing. It's over 9,000. Let's go. Anthem still though, they can try and make things, they can try and turn things around. As of now, they just have to make sure to play slow for this aggression. They did a good job in that first one. They can try and replicate the same things from the system taken care of. न्यूट्रिनो एक और अभी मार दिया। Maybe alive. Godlike just stomping every place in the map. भाई full W दबा दिया, full W दबा दिया। Maybe nothing more than that. What is going on? Godlike, they're not even scared of their opponents. Oh, this is just disrespect. कोच ने बहुत मोबाइल की बात कर रहा है, मतलब? They're taking him down in their own home turf. Godlike. कोच तो रहेंगे। ओ अच्छा ठीक है क्या मतलब जो टॉप 2 टीम्स है। अच्छा समझ गए तो बोलना चल रहा है, ठीक है। फिर एक राउंड निकाल लिया तो 2 और निकाल सकते हैं। कम ऑन एंथम, हाँ भाई लेट्स गो। पर मुश्किल है यार, देखना गॉडल का W दबा रही है। Either ways, we're gonna see another few trades going in. Godlike. Though this time around, Anthem a quick on please Warzone Mobile problem button real में sad यार। member, can he pull off this? बाहर का कोच है चूंकि पता नहीं यार। But panic in the hand, he can try. गॉडल W दबा दिया, एंथम Alt F4। Sad. Starboy needs to get up close and personal first though. चैट 12 लोग देख रहे हैं, 12,000 लाइक नहीं हो सकते, 12,000 लाइक नहीं हो सकते। भाई मेरे को चोर की लगी एकदम। Bomb planting. कम ऑन यार 12,000 लाइक कर दो चैट। Ball in their court. Everything's in their court at this point. After this round win, they're going to have 1200 ही कर दो। up. And Team Anthem 120 ही कर दो। They're just going deep से down. नीचे नहीं जाऊंगा। Positions compromised. Starboy's Because stage 5, हाँ। Godlike knows exactly where Starboy's going to be flooding in from. And still Starboy's just trying Starboy, to play come around on. the smoke, trying to play around the vision of the It's your players time of to Godlike, shine. give them a little bit of a deception. Good for one। Learn was tucked in the corner. स्मोक को अभी स्मोक में लेटा जैसे हटने आ रहा था तो चला गया। Godlike's arsenal. पहले जाता तो एक एंगल से बच जाता। Be able to move forward, bring forward. Anthem, can they find anything? That is the question. They cannot always rely क्या on the लगता है star चैट, players. और They राउंड cannot होंगे? always rely Anthem को और on राउंड those होंगे? 3Ks from 1v2s क्या लगता है? and 1v3s. Let's go chat। They'll have to find something to stop this 12 लाख लाइक कर देते, कर दो कीरा भाई, हो जाए। Godlike, Abhi is finding the opener yet again through the ऐसे लाइन देख के just so कब 12 लाइक perfect. करेंगे सब भाई। ऐसे मत करो करण भाई यार, क्या कर रहे हो? 4v5 scenario, ladies and gentlemen. न्यूजीलैंड 401 मार दिया है जी। जीजी है भाई पाकिस्तान को तो। Once again, just looking to flood in the enemy territories, but the man was brought down, throws him off guard. Damn यार। Team Anthem might just make a return inside the game. तो क्लास में देख रहे थे। But now it's a 2v3. Godlike. मेरे मन में एक जोक आया था बट बहुत डार्क हो They've got जाता। the man advantage once again. Looking to make it a 5-1.
looking to stomp on the faces of the opponents. Time is an issue indeed. And that's why Team Anthem needs to make it quick. The man's spotted, and that's it. You blink it, and you miss the situation. क्या लग रहा है चैट? और राउंड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? Trying to peek in the exact same मुश्किल है मेरे हिसाब से तो. But peek not given at the correct time. That is the only reason Godlike was able to come out on top onto that. W दोबारा देख कैसे भाग रहे हैं सब. और ये सब वो ट्रायड स्किन यूज कर रहे हैं वो जो दिखती नहीं. Warzone में होती थी. Black वाली. They just need to step up at this point, and Godlike, they are just so very quick in taking that space. Every single time you see them take the statue control. Nice neutrino. It just should not be Proxy that way. trade लिया. Anthem finding something though. Oh, well, they're finding something. Yeah, definitely they did. Proxy. मेरे को लग रहा है चैट एक और राउंड आ सकता है. 2v3. Oh. Bounce back. अभी 1v3. Definitely possible. Now 1v3. मुझे लग रहा है कर लेगा 1v3. It is still possible. कर सकता But he'll है. need to go for some heroic plays. He misses that first opening. That's now going to create so many problems for him. Considering Godlike is on the defending side, so they do not really need a breach in. They do not have the pressure to try and breach in to try and find the crack instead. इतना नहीं है क्योंकि BR गेम है, but हाँ preferable loadouts होते हैं They मतलब need to make it quick. ऐसा कि loadout based गेम है ना, ऐसा ground loot based नहीं है वैसा. Waiting for the right opportunity to strike. He's waiting for his moment. But hopefully he does not waste a lot of time. Could have found that, but Proxy's quick. ये short hit होना चाहिए था. दो और आएंगे ऐसा क्या? Yes, that's a good run coming in from Anthem. Just as you mentioned, in the previous half as well, they took the first one, did not take the following ones. This one, they probably पता चल जाता है. try and do क्या होगा even मेरा? more Sad than यार जिगर that. भाई. But again, what I want to mention is the fact that near that statue, right, near the B side, every single time, whenever you see Godlike, bomb के पास जाके बैठ गया. they go on with the utility swam towards the choke points. They've got the lineup and they take the round at the space. When they are on the defense, they do the exact same thing. Hello. It just seems like they know how and where to throw those lineups. Hit marker there though. Yo, I'm good, bro. How are you? अच्छा मैं कंफ्यूज हो गया था भाई, क्या हो गया? ये भवे है ना? और भवे भाई, भवे भाई गॉडल स्पीड रन टाइम चल रहा है फिलहाल. भाई दिख ही रहा हो तो पेल रही है. पिछले का क्या हुआ था? 3-0. कौन सा? NS? NS वाला? हाँ 3-0. इसमें 100 भी नहीं बने एंथम के उसमें. हार्डपॉइंट में अभी लास्ट राउंड बचा है. गाइस लाइक कर दो यार फटफट यार. 40 लाइक कम ऑन NH के. भाई इसमें न्यूक कर दे भाई, मजा आ जाए कोई ना कोई ना. कंट्रोल में थोड़ी ना होगा न्यूक. हार्डपॉइंट में होगा. That is going to be great. कंट्रोल में मुश्किल है. Seen them perform super well onto that one. However, trophy न्यूक तो मुश्किल ही है. ओह अच्छा शॉट था. भाई तीसरा मारता है इसका मूवमेंट बन जाता. भाई का मूवमेंट होता. कवर मिल जाता ना मार देता. थोड़ा सा हाँ. ड्रीम्स को भी ऐसे कवर नहीं मिलता था भवे से. भवे शॉट के लेके बैठे रहता था, वेट करता था. भाई देख ले. क्या देख ले? सच्ची तो बोल रहा है वो. गाइस 2v2 क्या लगता है? ये राउंड आ रहा है एंथम का? क्या लग रहा है? भाई निंजा डिफ्यूज के लिए जा रहा है. भाई निंजा डिफ्यूज के लिए जा रहा है क्या? Smoke. हाँ I guess. Everything has been used up and the smoke is just so. बे आरने ले रखी कौन है ये? निंजा डिफ्यूज. निंजा डिफ्यूज. निंजा डिफ्यूज. Taking the game home perfectly. भाई कास्टर्स को पता नहीं चला क्या निंजा डिफ्यूज हुआ है? चल ठीक है फिर. Perfect diffusal just as you अब पता चला. चलो ठीक है. वाइटैलिटी एकदम गॉर्डन के आगे बैठा है. क्या कह रहा है वाइटैलिटी? फर्स्ट में बैठा है गॉर्डन के सामने एकदम. गॉर्डन के सामने क्या बैठा हुआ है? समझा नहीं. जो गॉर्डन के सामने सीट है वाइटैलिटी जो को सभी उठाना. अच्छा अच्छा वैसा हाँ. अभी वाइटैलिटी के नेक्स्ट मैच है, फिर मतलब अभी ग्रुप बी भी करेंगे गाइस वॉच पार्टी. तो बैठे रहना यहीं पे, तुम भी चिल करना और क्या. थोड़ा हो जाते हैं ना ग्रुप्स, मजा आते होते हैं. आज शायद टॉप 4 टीम्स क्वालिफाई होंगी कल के लिए, और फिर 4 में से सेमीज होगा आई गेस. फिर उसके बाद वो होगा फाइनल बेस्ट ऑफ 7 होगा. कल का देखते क्या शेड्यूल है, पता चल जाएगा. कल मैं ऑन टाइम स्ट्रीम कर लूंगा. कल जिम भी नहीं है, संडे है फुल. आराम से उठ के फटफट चालू कर देंगे स्ट्रीम. लेट हो गया थोड़ा. ये ड्रीम्स लेकर है जिम की बात कौन कर रहा है? हाँ भाई रोज जाता हूँ. तू कौन है जो मिस करता है रोज? है कंसिस्टेंट. जब भी देख ले बॉडी देख ले.
हाँ तो भाई तू कब से चेक कर रहा है ये मूवी तो देख। ड्रीम्स की देर से अच्छी बॉडी है। अच्छा ड्रीम्स कब से कर रहा है भाई? उसको भी हो गए 6 महीने। कहाँ हो गए ड्रीम्स? 6 महीने हो गए होंगे यार। घंटा 2-3 महीने हुए हैं, वहाँ पे 2 महीने के हैं, यहाँ पे 1 महीना। हाँ मेरा भी ऐसे ही है, 2 और 1 अभी 3 महीने ही हुए मेरा भी। 3 महीने भी पूरा नहीं हुआ खैर। अपना अपना बॉडी का सीन होता है यार। ड्रीम्स उसने 2 महीने में 1 महीने का ब्रेक ले लिया, ये बहाना मार के कि मेरा जिम बंद हो गया। हाँ तो इधर उधर ट्राई मार रहा था और क्या भाई। कंफर्ट जिम होना चाहिए भाई इंसान का, तभी वर्कआउट होता है ढंग से। जिम में अच्छी मशीन्स होनी चाहिए, ग्लैमर होना चाहिए। तेरा कंफर्ट क्या तेरा कंफर्ट मैं बताऊं क्या? फालतू बता रही हूँ। मशीन से नहीं होता तेरा कंफर्ट। हाँ तेरा कंफर्ट मशीन से नहीं होता। तब तो शांत रहे, गेम पे ध्यान दे। मैच चालू हो गया। दूसरों की लो मेरा बुरा हाल है। लॉल भाई क्या कर रहे हैं? कार्डियो जिम में करके बाद में जिम में ही करता हूँ भाई। बाद में बोल रहा था पार्क में कभी रनिंग हो। अच्छा मेरे को लगा तो गलत कुछ और कॉन्टेक्स्ट पे कर रहे हैं। मेरा ऐसा रहता है मैं जाके साइकिल मारता हूँ 10 मिनट, फिर जो भी उस दिन की एक्सरसाइज होती है फिर वापसी में 10-15 मिनट ट्रेडमिल मार के आता हूँ। जब भी तो इतना पतला है क्यों अभी इतना कार्डियो मत मार। अरे वेजिटेरियन है ना वो भी। हाँ प्रोटीन इनटेक। यस डाइट लेकिन पहले से तो बहुत सुधरी है। पहले तो मतलब बहुत ऐसा कम खाता था। कल तो अर्थ पे गया था। चल एक क्लिप तो बोल विज के शॉट पे ऐसा क्या? मैंने वो क्लिप निकाल लो। खुद रियलाइज करा भाई कल, मतलब खुद देखा मैंने, पता क्या हो रहा है? निकल लिया एल प्रेडिक्शन एफ भाई। क्या कर रहे? रात को मैं बुक पढ़ रहा, पापा आए भगे भगे मुझे लेके गए। वो झुमका होता है, झुमका आवाज कर रहा है धम 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 धम। और भाई क्या हो रहा है? अच्छा न्यूज़ चला कि पता चला। अच्छा हाँ कल तो अर्थक्वेक आया था ना, चैट में भी बता रहा था। इधर इतना फील नहीं हुआ, मतलब फील ही नहीं हुआ इधर तो। यहाँ पे बिल्कुल ही फील नहीं हुआ। तेरे उधर तो कहीं होगा बेंगलोर में। नेपाल में सुना भाई बहुत क्रेजी लेवल का है बे। हाँ वो है ना बिल्डिंग वगैरह गिरी है। हाँ कुछ तो भाई 18-18 में एंथम वाले। हाँ वेजिटेरियन ऑन टॉप। यस क्रिश भाई। Even Godlike is playing too safe at this point in time. The sniper Nice will shot. तुम सोयाबीन खा खा के मर जाओगे भाई। सोयाबीन को चिकन समझ लो तुम। वे प्रोटीन का होगा मतलब। Get shut down प्रोटीन in return. मेरे तो भी ऑल्टरनेट यही चलता है भाई, पनीर टोफू और सोया वो बड़ी आंच होती है। ये ज़नन है। तू तो रात को आने वाला था, अभी कहीं जिम जा रहा था तू बोला। कल भी ये बोला जिम जा रहा हो, गया नहीं। फॉर्टनाइट की मैचिंग चल रही है भाई अभी इसकी। Can he get the third one? That's the question. Ducks in. Make sure he keeps his life. 11 हो गया। Will be taken down. But the Rays are there. Back and forth. Second take of progress. Worked up. Third was being worked up, but will be depleted now. So Anthem are trying to flood in. 7-8. That is super close. भाई close जा रहे भाई ये वाला। Really close. जीत जाएगा लेकिन गॉडल। ए लेना पड़ेगा एंथम को। I mean गॉडल को। गॉडल को गॉडल। और एंथम में पोजीशन अच्छी है अभी। फेयर। और उनको पिक नहीं देना चाहिए वाला। ट्रेड्स हो गए भाई 5 है। Now situation's gonna fall down to 5v5. Both the teams playing it so safe. Make it a 5. Oh boy, 44. Team Godlike as well lose out in that one player. No advantage for them whatsoever as again the trades go back and forth. Proxy trying to take control. Everyone inside the bedroom as well. They need to take control. Proxy. Don finally trying to get a pick of his own. 51 seconds 1v4. How much Flank can पे गया हुआ था Starboy शायद। do? Apparently maybe nothing. Tries to get one. ले गए। But himself has been taken down and the objective has been taken care of. ये इसको क्या इशारा कर रहा है भाई? मिड वाली स्टेज पे आता ना 2 खा सकता था स्टारबॉय। स्टारबॉय बोल रहा है अबे यार तुम जिंदा रहते यार, मैं फ्लैंक लेके ऑलमोस्ट पहुंच ही गया था भाई, तुम सब मर गए यार। इसकी एक्सप्रेशन बता रहा है भाई, उसने ये बोला। कोई नहीं चलो एंथम एक राउंड निकालो। बोल रहे हैं ना मुझे स्टारबॉय की आवाज याद आ रही भाई, कैसे बोलता था ना वो एनएस भी खेला था पता अपने साथ, मिस्टर में भी बहुत खेला है। भाई अभी तो करो भाई लर्न भाई।
Chill भाई. Godlike are the ones who are going to find them. 27 to 21. स्कल भी निकाल लिया अपना ऑपरेटर. अभी इसने जोन मार दिया. भाई स्पॉन ट्रैप चालू. स्पॉन ट्रैप चालू. Show me his POV already at this स्कल point. देख स्पॉन में घुस गया. Doing unstoppable as claw in the hands of front. Make sure that there's no one coming in. Full spawn trap चल रहा है. Spawn trap. भाई अब तो गए, अब तो बहुत बुरे गए. भाई तो लाइफ डिफरेंस देख. न्यूट्रिनो देख स्पॉन में बैठे वहां से वॉर मशीन मार रहा है. Unfortunately, not able to find a lot of value, but it's completely fine when you're कौन छोड़ going देगा? रोज फार्मिंग भाई. Neutrino, solid stuff. स्पॉन में बैठा था. स्पॉन फ्लिप नहीं होता ना इसमें कंट्रोल में. इसीलिए. नहीं वो बंदा ऐसे ही खड़ा हुआ था. पता नहीं भाई. An absolute domination in the second game. I guess Godlike they're just gonna steamroll. इसमें एग्रो ही खेलना चाहिए पता है. स्पॉन ट्रैप मिल जाता तुम्हें. Another 3 डिफेंस बिना कोऑर्डिनेशन के जो looking at if you look at the life count and also कोऑर्डिनेशन at की the वजह से इतना ले time. गए. First take a progress being worked in towards the B. Sandwich कर दिया Has ना. been stopped for few more seconds, but how are you gonna take care of Yeah, those बीच चौक कर दिया. 17 lives that are in the hand of Godlike with only 4? कोई नहीं. Godlike should be easily able to win this try. one. 3 more to go. भाई फैने कभी भी चलती है यार. They're on a अरे अभी countdown. मेटा थोड़ा बैलेंस कर दिया ना. पहले तो सीबीआर चल रहा था पिछले टाइम से. तो लोग फेनिक और स्विच प्लेट चला रहे हैं. किलो भी अच्छा है. भाई बहुत पता तगड़ी है चल गोल्ड रही है. डिस्ट्रॉय करेगी. हाँ यार पता है स्पॉन ट्रैप मिल जाता है गोल्ड को इसमें. पीटर वन शॉट है भाई स्विच प्लेट इस टाइम पे. On the defense side, Godlike just seem relentless, and I think पता है एंथम को भी पुश प्ले खेलना चाहिए अभी. only if they're able to land in those shots, Operator just then like the way Godlike are doing. आने वाला है इसका. But yes, आ गया. when Anthem were on the defense, Dreams तो खेलता है ना अभी भी. too close. So I'm still बहुत कम. optimistic about that shot not हाँ landing. वो तो मुझे पता है तो कम कब खेलता है. बट खेलता है. Try and make play out of it, but whenever he Guys like कर दो यार फटाफट. Godlike, they've only got one utility, one operator to work with, while on the other hand you have 4 Skull. for Anthem. So you already Catches. know the shots might get landed on the नहीं. perfect time though. लोगों ने रखा इसलिए क्योंकि मतलब ऐसा एक्स्ट्रा स्ट्रीक है तो रख लो वैसा. EMP रख सकते हो उसकी जगह. पता नहीं क्यों रखा. गाइस लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो. अभी वाइटैलिटी के मैचेस होंगे. ये भी अलाउड नहीं है. ये भी रखा हुआ है. नहीं वॉन्टर किधर है? ओ इसने यूएवी रखा है. नहीं एक ये भी बट यूज नहीं कर रहा. यूज करेगा तो बैन मिल जाएगा. रैंक लोडेड यूज कर रहा होगा गलती से. And it always comes down to the confidence at this point, and just as you mentioned, they are ये यूएवी वाला न्यूट्रिनो होगा पक्की going बात. down on it whatsoever. As again, look at the trades back and forth, yes, but only in the favor of 3v1 that too for Godlike. 25 Every versus single 12. time they're getting case, they will maybe lose one member, but that's all they're gonna lose. Oh boy. Spread missiles, everything finding just ये so स्पॉन ट्रैप much देख वहीं लेटा हुआ है. value. ट्रंक्स स्पॉन हो रहे मार रहा है. स्पॉन हो रहे मार रहा है. No, saw this coming. That's one with the क्या? nature. Godlike. They're using all the tactics that they can to win this क्या बोल game. रहे? At this point, they're not हाँ going to ओ go अच्छा. on their opponents तेरी आवाज वो होगी जो I mean, खराब हो they गया. weren't too. आवाज कम होगी तो. Only 3 lifeline left. Now the countdown begins. 3, 2. Now just soon enough, it's going to be a 1. One. And one's going to be hit. Khata. Yeah, there we go. Neutrino with a 2K. The Bye bye, final one to close it Anthem. off. Godlike. एंथम फर्स्ट टीम बनती है एलिमिनेट होने वाली. It's चलो घर जा रहे हैं हम वो. seems like it's a golden knife. कर तो नहीं जाएंगे खैर. तीन दिन का उनको मिलता है. अभी एक दिन घूमेंगे फिरेंगे हैदराबाद में. अच्छा. बिरयानी वगैरह खाएंगे. बिरयानी वगैरह खाएंगे. You would not be able to break through this hold of Godlike that they have. पैकेज on डिस्ट्रीब्यूशन you. मैंने मिक्सचर Be it ट्रिपल in लाइक terms एंड of सब यार. pressure, be it in 40 लाइक terms कर of दो. gunpowder, be it in terms of strategy. It has just been awesome. Exactly, ladies and gentlemen, we need to move to the ट्रंक्स की शक्ल देख ऐसा लग रहा है थक गया. नींद आ रही है इसको देख. ऐसा हो गया. टीम गॉडलाइक क्या खेल रहे हैं. मतलब मजा आ गया. ये आई थिंक चौथी बार आपका गया 3-0 राइट. कैसा फील कर रहे हो? आई मीन मैं अभी काफी एक्साइटेड हूँ कल के लिए क्योंकि आई थिंक हम लोग क्वालिफाई हो चुके हैं. 100%. हाँ तो बस मैं चाहता हूँ कि अभी कल फुल कॉन्फिडेंट ये मोमेंटम हम कंटिन्यू करें. बाकी कीप सपोर्टिंग अस. इट्स ऑलवेज दिल से गॉडलाइक. इट्स ऑलवेज दिल से गॉडलाइक. एंड आपको बताना चाहूंगा आप एक मैच पहले ही क्वालिफाई हो चुके हैं और इस मैच के बाद 100% आप क्वालिफाई हो चुके हैं. लेकिन एंथम 100% डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं. आई मीन 4-0. तो फिर तो दोनों बाकी 100% हो ही गया ना. किस तरीके से कौन सी? भी हो गए फिर तो कल हाँ लैंड का फिनाले. कल आपको पता लग जाएगा किसकी होने वाली है वो ट्रॉफी. क्या एक स्ट्रेटजी वाइटैलिटी वर्सेस गॉडल होगा भाई. ट्रॉफी तो मैंने अभी तक देखी नहीं है बट
वो भी अपनी बोलेगा। फिलहाल कोई नहीं दिखाता आपको बैक से। आई थिंक टीम भी ओल्ड गॉडल के बंदे वर्सेस न्यू गॉडल के बंदे। देखो कितना भी कर लो एसएनडी के अलावा बाकी प्रेडिक्शन तो सही था मेरा। सही है यार करना भाई, पर वेगास भाई बहुत खतरनाक, मतलब बहुत कंपटीशन होगा। ऑलवेज ऑन स्लीपी मोड। हाँ वो तो है, मैं देखा स्ट्रीम पे भी सोता रहता था। तो हमेशा से नींद आती है, एक्सेप्ट पड़ता है टू सॉरी शिपमेंट फ्रॉम लॉल भाई। कल तो शिपमेंट बोल दिया। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कल के लिए। ये देखिए देखिए फाड़ देना है। मैंने यार एक बात देखी है, आपका गेम प्ले बोलता है, आप बहुत कम बोलते हैं बट आपका गेम प्ले बहुत ज्यादा ही बोलता है। तो ये जानना चाहता हूँ कि कैसे इतना ज्यादा आपने अपने आप को परिपूर्ण बना रखा है, इतना ज्यादा आपने अपने आप को सक्षम बना रखा है कि आपके आगे सक्षम तो एनएस में है। वो बस मेहनत का, वो बोलते हैं ना कि मुंह से नहीं बोलना चाहिए, दिखा के करना चाहिए गेम प्ले से। क्या बात है, क्या बात है। गिव इट अप फॉर टीम गॉडलाइक, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर टीम। अभी जीत के आए हैं। कोई टारगेट हुआ क्या जो ट्रंक्स ने बोला ऐसा? जीते ही जा रहे हैं, जीते ही जा रहे हैं। ये जीत इनकी खत्म नहीं होने वाली। मुंह से नहीं बोलना चाहिए, गेम से दिखाते हैं। क्या पता ग्रुप बी में हमारे पास कुछ अदर टीम्स हैं जो कि एक ए नंबर गेम प्ले दिखाए और इनको भी कंपटीशन दे पाए। क्या पता। लेकिन उसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी हमारी कास्टर्स से। ओवर टू यू नेक्रो। Well, ladies and gentlemen, those were the games just for Group A, I mean. And then soon enough, we're going to be deep diving into Group B as well. Yesterday, we saw the matchup between TWOB and also Vitality. अगर Dreamhack तो break चल रहा है, 1v1 करेंगे। But then later on, Vitality was the one to sort of take ये it away. देखो भाई, स्क्रीनशॉट दे देना, मैं स्ट्रीम पे दिखा दूंगा। आजा। Before we move on towards guys, let's see. we need to speak हाँ, about obviously what भाई। happened a while ago. Of course, मुझसे तो कुछ और करते। soon enough, we're क्या going बात to कर रहे हो करण we're going to be able भाई? to ओल्ड गॉड से न्यू स्क्वाड। यस भाई, मजा आएगा। You can clearly look at that as well. Trunks with 20. The only one who's coming close to him is Oh, yeah, 30 Skullzy, 19, Learn 16, Nitruna Bees. I just love old Godlike. हाँ यार, मतलब they were good, but वही है, everything happens for betterment. क्या पता अभी दो जगह स्प्लिट हुई है, अगर टीम्स और वाइटैलिटी का प्लेयर्स भी अच्छे हैं साथ में तो दोनों टीम्स परफॉर्म करें इंटरनेशनली। किसी भी एंगल से इंडियन एक्सेंट नहीं है। हाँ यार, बहुत अच्छा कास्टर है ब्रो ये, मतलब नेक्रो ये PUBG मोबाइल पे कास्ट अच्छा करता है, इंग्लिश में ही करता है उधर भी। On cloud 9 and they have been on since दोनों कास्टर्स अच्छे हैं भाई ये वाले भी। game has been a 3-0 not मेजर भाई भी अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं। and again even yesterday we saw them perform just like this on raid। नॉर्डविन की प्रोडक्शन हमेशा अच्छी रहती है। क्या? for those spawn traps using the rockets perfectly for पता नहीं भाई, मैं तो कब से नहीं खोल रहा भाई, देख लो। have been unstoppable। खोल ली मैंने गेम कर ली। going to stop them 2x पे कर देते हैं। maybe TWOB maybe I2K। Well, that's the story for tomorrow, right? If these teams are definitely going to qualify. TWOB, Vitality, they will definitely qualify. Hyderabad, they're not going to qualify. But one thing is for sure, I2K for them, the disqualification or the elimination bracket is sort of looming on top of them. That sword is something that's really going to be putting them in a lot of pressure. I2K बाहर हो जाएगी probably, बहुत कष्ट कर दिया ब्रो। The upcoming matchup is going to be between the players of TWOB and Vitality. Yesterday was super close. और क्या हो रहा है? TV like played with self produce भाई, वो तो कुछ भी कास्टर थी भाई, वो जो भी थी वो no hate, but उसको नॉलेज नहीं थी and she was talking पता नहीं कुछ भी। TWOB all they needed to do was take that one SND map on the firing range which went all the way to 9 and 7. Now that was the first OT that we saw. But before we talk about that, why not have a look over the leaderboard of the Group 1 as all the matches have been concluded there. Group exactly. leaderboard देखो भाई। Let's move forward and take a look at the leaderboard, and one thing is for sure. Round difference देखो भाई गॉडल का 12-12. Who has been eliminated from the bracket, so that's quite unfortunate stuff. But yeah, I mean. NS क्वालिफाई हो गई 2-2 पे भाई। नीचे वाला ग्रुप भी सेम बनेगा पता है, आई गेस 4-0, 2-2 एंड 0-4। बट अगर TWB जीत गई तो फिर वो बनेगा I mean 3-3-0। मैं डाउनलोड कर लेना। हो गया एक मिनट। NS moving forward, but for Vitality, TWOB, I2K, just as we've been mentioning how difficult it is going to be for नीचे वाले ग्रुप में 3-3-0 भी बन सकता है अगर TWB जीत गई। against TWOB or at least मेरे को लग रहा है TWB जीत जाएगी। मेरे को भी लग रहा है, पता है नीचे का ग्रुप बनेगा 3-3-0 और I2K बाहर हो जाएगी। अच्छा हाँ तो मैं कर रहा हूँ TWOB are the ones who will lead the group. This battle is for the one who बट अगर 3-3-0 हुआ because again when we will look at the brackets for tomorrow, Vitality number we know पे हो that गया the फिर one who will be on top of Group A will battle it out against the second team of Group B. ओ भाई ये सही है भाई,
indeed it's going to be super competitive because we've made sure that चलो ये inside मैच the भी बहुत finals, इंटेंस होने we're वाला gonna है have बट the एलडी best वर्सेस teams टीडब्ल्यूबी possible. One thing is for sure, Godlike, they seem like they might just be the और grand गोल्ड तो लव finalists है बट already उससे with how पहले the गोल्ड की momentum's been गॉर्डन looking की like मिलन for कर them. रही So we है just need to find out who's going to be the तो grand एंडी में finalists थे between तब TWOB or हाँ Vitality, I know because these two बी द teams एंडी have भाई been looking on peak performance बीजेएमआई yesterday, का अस्टर थी especially नॉट विन की Vitality, उसमें even बकवास they won those two games. बट They are so बोलने की far जरूरत on नहीं अरे मतलब 2-0 स्टिल यार वाई in टू the overall कॉल standings. फॉर दैट Absolutely. Yes, even though the first एम आई round एम was लव close, ऐसा 3-2, क्या the closest series सही we है have ever had till now in these 2 days. But still, गाइस I 2 am मोर सब्सक्राइबर्स expecting बचे हैं भाई maybe करवा दो TWOB यार to again pull a comeback. That अभी is जाओ अपनी what सोसाइटी I में नीचे always be the वॉचमैन devil's से advocate. करवा So के आओ maybe जाओ they might be या able to कोई भी surprise एकदम all of us. सोसाइटी में कोई भी बंदा है उसको Maybe, पकड़ो because उससे you've करवा got के आओ enough time to research जाओ as well when you go जब तक back to ब्रेक hotel मिलता है rooms. But for now, ladies and gentlemen, it's time for us to toss to a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. ओके भाई ने बोला ब्रेक है तब तक चैट तुम जाओ सब्सक्राइबर उड़ा के आओ और मैं भव्य और इसका मैच देखता हूँ तुम लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं कोई भव्य कर रहा है ठीक है वॉच स्ट्रीम डिस्कॉर्ड पे स्विच करना पड़ेगा एक सेकंड चैट एक सेकंड तब तक फ्रेंडली मैचअप देखते हैं ये देखो आ जाओ फुल स्क्रीन नहीं मार सकता क्या मैं इसको कोई नहीं ऐसी देख लो आवाज़ नहीं आ रही गेम साउंड लेकिन वैसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ और क्वालिटी कितनी गंदी आ रही है स्कोर क्या चल रहा है 4-3 यस चैट ये देखते हैं तब तक अपना मैचअप और यार भाई लोकस लेके शिपमेंट में लेफ्ट से पिक करते हुए उनके मुंह पे ड्रीम्स आ चुके उनको पता नहीं उन्होंने मूवमेंट दी बट मूवमेंट देके शॉट मिस कर दिया फिर एक और शॉट मिस करेंगे शायद मूवमेंट के चक्कर में हाँ एक और शॉट मिस कर दिया फिर थर्ड शॉट मारते हुए ड्रीम्स वहाँ पे चोक करते हुए एज यूजुअल फोन पे ड्रीम से नहीं हो पाता है अरे वो ओ भवे ने एक और मार दिया भवे शोइंग अप व्हाई ही इज बेटर बट स्टिल इज नॉट एज बेटर एज विगल यहाँ पे शॉट मिस करते हुए विगल होता तो नहीं करता चल सेकंड में रिकवरी कर ली हार्ड स्कोप करके बैठा है भवे हट चुका है ड्रीम्स मुंह पे आया और पहला शॉट मिस दूसरा शॉट मिस तीसरा हिट मारकर और फिर ड्रीम्स ने मार दिया भवे किल कैम भी दिखा दिया अगर भाई उसका भी वो देख नहीं पाएंगे वरना कैसे तो पिटा है क्या जब तक ब्रेक है ये सब चल रहा है भागना मत आई नो भवे का गेम प्ले बहुत बेकार है तुम ऐसा बोर हो जाओगे बट हाँ कोई नहीं भागना मत माइक बंद है ना जितना भर सकता हूँ भर रहा हूँ ओ भाई ये क्या मारा ड्रीम में नाइस मैं तो वॉरजोन में भी शिपमेंट ही खेलता रहता हूँ अभी शिपमेंट आ गया उधर भी अरे बच गया हिट मारकर आ गया नाइस शॉट्स चैट क्या लग रहा है प्रेडिक्शन भवे या ड्रीम्स स्कोर 8-6 चल रहा है फिलहाल बताओ भवे और ड्रीम्स चैट में बी या डी लिख दो डीएल की उठा लिया ओके यो व्हाट्सअप इनसेन भाई वेलकम टू स्ट्रीम क्या हाल है वॉच पार्टी चल रही है कॉड मोबाइल ड्रीमहैक एसपीएस की लाइन जो इवेंट हो रहा है वेलकम वेलकम यार जब तक ब्रेक उधर आ रखा है तब तक हम अपने फ्रेंड्स का इवेंट देख रहे हैं ओ भाई विद द मूवमेंट साउंड नहीं है क्या जो ऑन कर सके तुम्हारे वन्यन में मेरी वॉचिंग गिर गई भाई भवे का गेम प्ले इतना ट्रैश है क्या ओ भाई ट्रेन मार दिया अरे भाई का गेम प्ले तो अभी भी है आ गया ओ भाई नाइस शॉट मैचअप को लेकर कितना टाइम है उधर 4 मिनट है अभी कोई कर लो इनका इवेंट देख लेते हैं ओ भाई ऐसा कुछ मार दिया क्रेजी भाई दिखा नहीं रहा तेरा किल कैम यार अरे वो जलता है ना इसलिए ओह फेयर इनफ गाइस नेक्स्ट मैच होने वाला है टीडब्ल्यूबी वर्सेस वाइटैलिटी अपनी प्रेडिक्शंस डाल दो चैट में जी 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 जी
व्हाट्सअप मिस्टर रीबूट, वेलकम टू स्ट्रीम। भाई वॉरज़ोन 1 में मॉडिफाई के मूवमेंट्स कब तक आएंगे? जब गेम इंटीग्रेट हो जाएगा साथ में, दैट इज शायद ग्लोबल लॉन्च के टाइम पे ही आएंगे, बट उससे पहले वॉरज़ोन आएगा दिसंबर में, तो हो सकता है उस टाइम पे ये लोग कुछ क्रॉस लिंक वगैरह कर दें, दे आर चांसेस। बट वही है, ग्लोबल लॉन्च पे थोड़ा कंफर्मेशन दे सकता हूँ मैं कि ग्लोबल पे आ जाएंगे इफ़ द गेम इज इंटीग्रेटेड ऐसा करेक्टली। भव्य फरीदाबादी, ये सिटाची भाई, वेलकम टू स्ट्रीम, क्या हाल है? अच्छी भाई, मोमोज हो जाते तो करो। भव्य बोलता था ना इसको काफी। जब तक अभी वो चल रहा है ब्रेक, तब तक हम वो देख रहे हैं, भव्य वर्सेस ड्रीम्स, जहाँ पे ड्रीम्स लीड ले चुका है एज यूजुअल। स्टार्टिंग में मरता है फिर मारता है, एवरेज गॉडल मूवमेंट, एक दो राउंड देती है फिर एकदम से छिल देती है सामने वाले को। मार 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 भव्य, मार मार मार, छी भाई क्या चोक कर रहा है भाई, 2 लाख लोग देख रहे हैं तेरे को, ये हुई ना बात। यस, 3 लाख हो गया। भव्य राइट निकल गया वो राइट देख रहा है, बढ़िया बढ़िया भाई। भव्य तो कुछ भी बोलते, हाँ यार ऐसा है क्या? डर गया ये बब्बे। खेलता है अभी, पता नहीं, शायद खेलता है। ड्रीम्स तो बहुत कम खेलता है कह रहा था, ड्रीम्स ओ भव्य बीच बीच में खेलता रहता है। ऐसा क्या मार दिया, किल कैम देखते हैं। ओ भाई 360 उसको पर वॉट, नाइस। भाई जब तक ब्रेक है ये तुम ऐसा सड़ा सा 1v1 दिखा रहा हूँ, तो ये अपने यहाँ जो भी चल रहा है उसके बाद विल सी TWB वर्सेस वाइटैलिटी, आज का वन ऑफ द इंटेंस मैचअप्स। भाई फिर से भाई फिर से, भाई ड्रीम तो पेल रहा है बे, नोस्कोप पे नोस्कोप दे रहा है बे शॉटगन मैन को। बवे भाई क्या सीन है, ये पिटाई दिखाने के लिए कर रहे थे 1v1 है? नहीं हो पा रहा है क्या बवे भाई, नहीं हो पा रहा है क्या? क्या सीन है? कम ऑन यार बवे भाई, क्या क्या यार। हाँ बवे भी ट्राई कर रहा है 360 देने का है, नहीं हो पाएगा भाई फिर तेरे से से। वही कहा है। सैड भाई, भाई मैं तो नहीं सहता, मैं तो भाई दिखा देता शॉटगन मैन कौन है, ये हुई ना बात। चैट कितना टाइम रह गया मैच स्टार्ट होने में, रुक जाओ, इनका तो चलता रहेगा। 1 मिनट बचा है ना अभी, ठीक है 1 मिनट बचा है, इनका देख लेते हैं। भाई ओनली शॉटगन, हाँ यार स्नाइपर में NH के। और बताओ इटाची भाई कैसा चल रहा है सब? वॉरजोन कब आ रहे हो? दो मिनट, यस। कबीर वेलकम टू स्ट्रीम, क्या हाल है कबीर? आज NS अच्छा खेली बे, मैंने थोड़ा मतलब आई रिएक्टेड सो मच, मेरे को अच्छा लगा देख के पल्स एंड ऑल की। तो इफ़ यू वांट टू टेक द क्लिप्स फॉर द पेज तुम उठा लेना स्ट्रीम से, नो इश्यूज। पल्स भाई बहुत क्रेजी खेला, नॉट गन लाई, नाइस नाइस। नाइस शॉट। बवे क्या कम बैक कर सकता है क्या? 1.5 मिनट बचा है। एंथम एलिमिनेटेड डेड, हाँ आई नो। वो वाले ग्रुप से प्रोबेबली अभी I2K हो जाएगी, तो इट वुड बी NS वर्सेस TWB एंड वाइटैलिटी वर्सेस कॉडल, या कुड बी द अदर ब्रैकेट्स, क्योंकि फर्स्ट सीडिंग का सेकंड सीडिंग से होना है, तो गॉडल वर्सेस TWB हो सकता है एंड वाइटैलिटी वर्सेस NS हो सकता है फॉर द प्लेऑफ्स आई गेस। कष्ट करना पड़ेगा अरे अरे देख लेना, मतलब अप टू यू। आई गेस हमें 1 सब्सक्राइबर और चाहिए यार 7040 के लिए, लेट्स गो। NS वर्सेस TWB कैसे? अभी वाइटैलिटी अगर जीत गई तो वाइटैलिटी का होगा ना फर्स्ट वर्सेस सेकंड वाला सीन है, ग्रुप A का फर्स्ट और ग्रुप B का सेकंड। भाई अभी तो कोई गेम ज़्यादा नहीं, सब से एग्जाम है एंट्रेंस के लिए ऑलमोस्ट बंद है। ओके, किस चीज़ के, मतलब कॉलेज एंट्रेंस की, मतलब क्या, व्हाट एग्जाम्स? गॉडल वर्सेस सेकंड है ना, तो गॉडल TWB NS वाइटैलिटी, हाँ मतलब NS वर्सेस वाइटैलिटी होगा, वही मैं तेको बोला। 18 सेकंड बचे इनमें, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। भवे 3 पॉइंट,
ड्रीम्स टाइम खेल रहा है बे, देख जीतने के लिए। ओ नाइस नो स्कोप। मैं तो मजे मजे में खेल रहा हूँ, पुश गुज्जा मार गुज्जा के। गुज्जा गुज्जा भाई, 5 सेकंड है, 1 सेकंड। लास्ट शॉट तो चल भवे बाय के बाय लिए। कल मोबाइल पे भी हार रहे लिमो भवे भाई। वहाँ चालू हो गया भी मैच। ओए 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 ओए, शायद 1 मिनट ये तुमको तो स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी। तो बच्चा समझ के छोड़ दिया, अभी तू अबे कॉलेज में अभी आया तो मैच देखो, मैच देखो भाई, अभी चालू हो गया। लेट्स गो। वाइटैलिटी वर्सेस टीडब्ल्यू, अभी वन ऑफ द फाइनेस्ट मैचअप्स आज का। जो टीम जीतेगी दैट विल क्वालिफाई, जो हारेगी दैट विल आल्सो क्वालिफाई क्योंकि I2K है सामने। लेट्स गो जोको। चिरू भाई अलग शर्ट पहन के आया, क्या सीन है चिरू भाई? ठंड लग रही है चिरू भाई को। पहली बात ये कि आप कल से अभी तक या डे 2 रहने वाला है, क्या कुछ बदला है, कुछ माइंडसेट में कुछ बदलाव है, या वही कल की तरह कि भाई जो होगा देख लिया हाँ जाएगा? मास्टर्स बैचलर्स ऑल डन। ओ बढ़िया यार, नाइस। जो हमारा है वही मैं तो मैच शुरू होने की वेट कर रहा हूँ, वही जो हमने तभी स्नैक्स खोलूंगा। सही है यार, बता नहीं सकता, बट बढ़िया बढ़िया। कभी डाल दे स्ट्रीम के लिंक से, वीडियो डाल दे NS के उस पर डालने तो। गेम प्ले खेलने वाले हो अपना, राइट? नेचुरल गेम प्ले, लेट्स गो भाई। नेचुरल गेम प्ले, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। कल भी वॉच पार्टी करेंगे आने वाले जो कल डे 3 की। कल फिनाले है। I2K बेचारी, हाँ यार नजदीक जाते जा रहे हो, खराब लगा। थोड़ी बढ़ रही है, क्या है अभी, क्या चल क्या रहा है अंदर? नर्वसनेस तो नहीं, इट्स जस्ट वेगस ओनली चिल। हाँ यार, वी फॉर वेगस। क्या लगता है कौन सी ऐसी टीम है जिसको हराने में या जिसके साथ कम्पीट यार कुछ खाने को मेरे इधर भी नहीं पड़ा यार। ऑफ कोर्स गॉडलाइक, वही हमारा एंड गोल है। गॉडलाइक के अगेंस्ट फाइनल्स में वी हैव टू विन, दैट्स इट। भाई ने बोल दिया, स्क्रिप्ट में बता दी भाई ने, स्क्रिप्ट में बता दी गोल्ड के अगेंस्ट फाइनल। बिकॉज़ बैक स्टेज में आप भी बहुत ज्यादा खुश हो लग रहे थे, खुश दिखाई देते थे। ऑब्वियसली सारे ही खुश है, बट आपकी खुशी कुछ अलग थी। मैं जानना चाहूंगा इस खुशी के पीछे क्या व्हाट्स अप डू बी, वेलकम टू स्ट्रीम यार, क्या हाल है? तो बंदा पहलवान। ओ भाई जोको भाई डायलॉग पेलते हैं। तो नाइस इंटरव्यू गाइस, आप लोग प्लीज पहलवान जी वहां पे बैठिए, पहलवान जी, एंड हम लोग बात करेंगे अभी, और भी इनसे बातें करेंगे। फोन यार लैपटॉप से चलाया हुआ है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरी टीम को यहां पे स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। गिव इट अप फॉर ओके, TW। एक है भाई, एक है। स्क्रिप्ट लीक कर दी बे मीनो ने यार। कोई नहीं यार, लेकिन आई विश आज TW भी जीती ना भाई, थोड़ा टक्कर का कंपटीशन रहेगा, मजा आएगा। इग्नाइट माय बॉय, शाइन। अबिस, लेट्स गो भाई। स्क्रिप्ट लीक could be in finals too. Yeah, I know. If TWB wins this, they have a good chance. ज़ारो भाई फुल एकदम। हाँ ऐसा लग रहा है डे नंबर 2 है भाई, डे 2 है, डे 1 से मेरे पे आ रहा कमेंट बहुत गंदा आज बट आपका पहला मैच जाने वाला है, वो भी वाइटैलिटी के अगेंस्ट में। और जो FPS गेम है तो आईफोन लूँ या फिर RG 7 लूँ? आईफोन ले लो भाई, आईफोन बेटर। एनी डे आईफोन इज बेटर फॉर गेमिंग। कितने परसेंट चांस? अभी फेवरेट है भाई। यस, परसेंट चांस तो नहीं है, जीतेंगे ही। जीतेंगे मतलब वो तो तय है, तय जीतेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एनईसी के साथ चलिए अगर मैं बात करूं, एक एक करके सबसे बातें कर लेते हैं। सर मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आपके क्या हालचाल चल रहे हैं? We're feeling good. We are confident, I guess. Now we for vitality. Let's go भाई। We for victory होता है वैसे क्रिस्पी, बट ठीक है। I like your hairstyle man। इसके पीछे का राज क्या है? I go to bed, I wake up. And that's it. That's it, by default. It's a by default. एनईसी के साथ चलिए अगर बात करें मास्टर की, ब्रो पिछली बार मिले थे याद है ड्रीमहैक पे, एंड इस बार आप ऑन स्टेज हो, कैसा फील कर रहे हो? Crazy भाई, बहुत excited. Can't wait to perform. Can't wait to perform and man। Let's go मास्टर भाई, पे लो आज। आज के मैच के लिए कल जैसे वाइटैलिटी के खिलाफ है, लेकिन चलिए बात करते हैं अभी ज़ायरो आपसे। क्या हाल है? All good. क्या चलने क्या वाला है, होने क्या वाला है अभी? ज़ायरो ट्रंक्स वाइब्स देता है बे, फुल एकदम ऐसा नींद में मतलब समझ रहे? ज़ायरो है हां, डोमिनेशन का दूसरा नाम ही आपका नाम है। Yes sir. Yes sir। चलिए आपसे भी बात। Yes sir। अरे इग्नाइट कुछ ऐसा क्रेजी रिप्लाई देगा, मेरे को फील आ रहा है। तो क्या एक्सपीरियंस आय आय कैप्टन। सेटअप एंड ऑल तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है, पहला लाइन के साथ। पहले लाइन के हिसाब से बहुत अच्छा सेटअप मिला है। एक्सपीरियंस ही बताइए मुझे, कुछ नया बताइए। कुछ मसाला ब्रो, कम ऑन इग्नाइट। आप मुझे ये बताइए, आपको टीम वाइटैलिटी के साथ एक मंच पे बैठ के खेलने के साथ, उनके साथ कम्पीट करने में आपको कैसा फील हो रहा है? लाइक
थोड़ा अच्छा कंपटीशन मिलता है लाइन पे, लाइक इक्वल पिंग इक्वल डिवाइस, तो बहुत अच्छा, इसलिए अच्छा कंपटीशन। आपने डिवाइस बोला, डिवाइस से मुझे याद है ये एक चीज, इंटीग्रेशन तो है बे, उसमें खेलने का एक्सपीरियंस इसको पता है कैसे प्रमोट करना है। हां बे, S23 अल्ट्रा लाइक सैमसंग का डिवाइस हम लोग खेल रहे हैं अभी थोड़ा और हाथ सेट हो रहा है, लाइक कल तक मेरे ख्याल से सब लोग बहुत अच्छा खेलेंगे। कल डेफिनेटली आई मीन बहुत अच्छा खेलना ही पड़ेगा, बिकॉज उसमें कोई कमी की गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, और थैंक यू सो मच टीम TWOB, आप लोगों का, आप लोग प्लीज अपनी सीट्स पे जा सकते हैं, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मैचअप। एंड ये थी हमारी दोनों की दोनों टीम, बहुत ही ज्यादा तैयार दिखाई दे रही है। एंड अब हम दिखाना चाहेंगे इनका गेम प्ले आप लोगों को, तो बिना किसी वक्त को गुजारे ओवर टू यू कास्टर्स। भाई मुझे भी सुनाई दिया बिना किसी Yo, what's up Aisha, welcome to stream, how are you? For the matchup, but he's welcome, going to welcome. be even more excited than me. Yeah, well, I mean, भाई मजे आने वाले, ये मैचअप मेरे को कुछ क्रेजी वाइब्स दे रहा है भाई, इसमें मसाला मिलेगा ये मैचअप में। But now speaking about the Let's upcoming go. game, as I mentioned, it's going to be between TWOB and their opponents Vitality. Yesterday we saw Vitality taking. Please like कर देना and make sure to drop us up. We need one more sub for 7040. Well, we've been seeing confidence dripping from all of these teams, right? But the question is who stands up to their name and who stands up and proves that their confidence is worth it. So भाई कास्टर लेकिन बढ़िया लगे भाई मेरे को इस बार दोनों। Yes, because both of these teams are evenly matched up. Whenever you're talking about teams battling it out against each other. Thank you so much, ladies and gentlemen. Yes, bhai. Yes, Godlike have had a lot of experience. Anthem a fairly new. Oh, sorry, team. TWOB and Vitality. We have seen both of these teams perform, and that too really well. All good, yaar, all around, and yes, they have been around for a fairly decent time. They've been battling it out. Got the permissions for watch party, and Warzone Mobile will be at night as usual. Customs करेंगे. Considering Vitality were the only sort of nuclear that were against. I'm back. Welcome back, Aryan. क्या हाल है? अभी interesting matchup है Aryan. Vitality versus TWOB. The one who wins will get the upper seed, and जो हारेगा उसको lower seed मिलेगा. So they have to fight Godlike. Yes, that भाई ये पिल्लो घर से लेके आना पड़ता है क्या? नहीं मिलता है वैसे तो, बड़ी अबिस भाई का कुछ ऐसा वो होगा, क्या बोलते हैं अपना फेवरेट पिलो, पिंक पिलो लेके खेल रहा है, पिंक पिलो। स्टेज फॉर कास्टर्स से तो बहुत बेटर है, एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली भाई। जर्सी देखो भाई इनकी भाई। हाँ सैम्स अभी नहीं खेल रहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, ही इज ऑन बेड रेस्ट वैसा। ये भी फोन पता है ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है, ये वो हैक वाला जो ऐप है वो कर रहे होते हैं वेरीफाई वगैरह शायद। ब्रोज भाई का हो गया, ब्रोज भाई चालू कर दिया, मजा आएगा चैट। No matter how close the previous लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो स्ट्रीम को फुल एकदम। That one was kind of one-sided. Exactly, but ladies and gentlemen, 3 मैचअप्स और बचे, तीनों करेंगे वॉच पार्टी। TWOB in front of us, Extincts, Ignite, Master, Zyro, and also we've got Elf on the screen. Now, speaking about Elf, considering TWOB in general has been a really well-functioning team, For now, सही है। how things are going to be looking like today's day. Because बढ़िया अपना choice होता है यार। But currently I'm not having that much fun in codm से यार। they're getting their hands much more. शेष के कास्टर्स तो गांजा फूक के कास्टिंग कर रहे थे, बिकॉज़ न्यूक पे प्रेड बोल दिया। हाँ पता है मेरे को, तेरे को पता है ना वो स्टेज 4 में न्यूक हुआ था, कौन? मास्टर ने 2 न्यूक करे थे स्टेज 4 में, और कास्टर ने प्रेड मिसाइल बोल दिया था, पता नहीं कौन, तो रैंडम टीम थी, नाम नहीं याद। अच्छा हाँ देखा था मैंने, वो एक ने आड़ था शायद। हाँ नहीं टेक ऑफ था एक वाला जिसमें कास्टर ने बोला अ गुड प्रेड मिसाइल फ्रॉम मास्टर। भाई बेचारे 7 चीज को करा था किसने भाई, वो नहीं याद मेरे को, टूर्नामेंट में करा था। 6:30 हो जाएगा। हाँ आई नो क्रिश भाई, लंबी स्ट्रीम चलेगी, उसके बाद मैं थोड़ी रेस्ट लूंगा एंड रात को करेंगे वॉरज़ोन मोबाइल प्रोबेबली। लेट्स सी। इसके बाद तेरी थूत फाड़ूंगा, ड्रीम्स दिख का मतलब इस वाले ब्रेक एक बार तो हार गया था। लेट्स गो। अगेन यू कैन आल्सो रिमेंबर टू द चैनल टू सपोर्ट। लेट्स गो। मोबाइल भी हारा है भाई, बच्चा समझ के, वो तो वार्म अप था मेरा, बच्चा समझ के मैंने थोड़ा क्लोज आने दिया, समझ आया। ओ भाई ट्राई स्टॉक तो इधर हो रहा है बे वीसी में। इसकी जर्सी पे क्या लिखा था, स्टे। अगेंस्ट हेलो ऑफिशियल्स। अच्छा पहला मैप है टेक ऑफ, ओ सबमिट है, सबमिट है, फिर मेल्टडाउन, फिर
क्रॉसरोड एक्सप्रेस समर तक तो जाएगा। हाँ कल भी गया था 3-2 हुआ था। भवे हेलो भवे has not been a map that we've seen between both of these teams. If it was probably Arsenal and Hacienda whenever Warzone 3 टीम क्या है? It's team IND। देखो highlights मिल जाएंगे soon। We played against Bobby and Noah, तो उसकी मैं वीडियो बना के डालने वाला हूँ later। They were very happy and annoyed seeing us destroy them, so वैसा सीन है। Let's see, but they played well, अच्छा लगा। It was good. I'm going to ask you as well as the audience for the Snapdragon map predictions. मैं तो ना मास्टर की जगह कास्टर के घर जाके भाई ये मैसेज में हाइड शो नहीं कर सकता आर्यन भाई, सॉरी। कास्टर फीमेल थी भाई। आर्यन भाई क्या सीन है? एक कॉडम से एक बंदा और उठाया, मतलब बंदी उठी है। ड्रीम्स देखियो चैट में, तेरे को तो दिख रहा होगा मैसेज। हेलो आवाज आ रही है? आ रही है। रोज आर्यन निकालेगा सबमिट में इस search and destroys hard points. How dead even nice nice yes sir. And looking forward even to the control map where it will move to guys come on यार, मेरे को 7039 थोड़ा अड़ रहा है भाई, उसको 7040 कर दो प्लीज, especially on those spawn traps. Exactly, but ladies and gentlemen, before we move on towards the matchup, ladies and gentlemen, let's go DHL. ये राइट में शायद तनिषा बैठी है ना? आई टू के टीम के साथ। And this is where Vitality वो वाइटैलिटी की मैनेजर है। ओके ओके। I think so they can. I really think so they can because मेरे को याद नहीं था कास्टर फीमेल है, मैं तो कुछ का ही नहीं था मेरे। हाँ आर्यन भाई समझ रहा हूँ मैं। दिल्ली से हो ना आर्यन भाई? दिल्ली से हो ना? It's more or less like the same kind of mechanic. You've got to get the locations right. Yes, that is true. But since you भाई इनको यार ये फोटो मिल जाती है ना प्रोफाइल पिक्चर के लिए, बढ़िया लगती है। वो एंथम के कल एक प्लेयर ने लगा भी ली पीएफपी, उसकी फोटो अपलोड हुई थी नॉर्विन के पेज पे, उसकी फोटो आई थी एंथम के प्लेयर की। भाई ने प्रोफाइल पिक्चर बना भी ली। Everything comes down to how well you utilize your operators. True. Speaking about the operator skills, we have been seeing claw being utilized quite a lot. Yes, come on यार, 50 lakhs हो जाने चाहिए। कल फाइनल्स है। That's something we're seeing just being dominated. But now here we go, ladies and gentlemen. The first game of this series begins. This is going to be a competitive one, so do not miss out. Absolutely. TWOB up against Vitality. Into the P1 we go. Here. अरे ये मैच बहुत मस्त है भाई। Okay, that's quite a right side rotation coming in from the side of TWO, maybe to surprise. पता है ड्रीम्स कौन जीतेगा? प्रेडिक्शन मारो चैट, स्कोर क्या और कौन जीत रहा है जल्दी चैट में बता दो सब लोग। एक बंदा बताओ भाई। वाइटैलिटी जीतेगी मेरे साथ। लेट्स सी भाई हार्डपॉइंट टीडब्ल्यूबी तो बहुत तगड़ा है कल। हाँ कल वही मेरे को भी लग रहा है टीडब्ल्यूबी जीतेगा और स्कोर रहेगा 250 to 180 मेरा प्रेडिक्शन। इतना तो नहीं रहेगा, खैर 200 250 कुछ ऐसे रहेगा, पर 3-1 जाएगा, 3-1 3-2 जाएगा। हाँ 3-1 3-2 मेरे को लग रहा है। एसएनडी तो वाइटैलिटी जीतेगी। हाँ एसएनडी स्ट्रांग है इनका। Vitality 250 220 TWB. Okay, Iron ने बोला TWB. Okay. Let's see. They're looking forward to return back the favor. They want to take the point control once again in their hands. And here we go. Vegas nice 2 picks. Control established. And even for them now the points will be on the board. Bros भाई क्या सीन है? Eventually gets Happy Diwali. Happy Diwali Bros भाई। रंगोली बना रहे हो? He might have been in his face for a while though, but no, that's not going to happen. He was able to secure a kill, but the trades go back and forth yet again towards the P2 is where the focus will lie for both of these teams. Stairs control is important, but the most important thing is who gets the closest. क्या बोल रहा है ब्रोज के आगे कौन बोल सकता है? क्या? नहीं मैं बोल रहा हूँ ब्रोज के आगे बोल सकता है ना एक्सेल। And we mentioned this yesterday as well. मास्टर भाई ऐसे खेल रहा है फुल। Super solid onto that one. However, Vitality as of now, the ones who are controlling those कॉम्स अच्छी चल रही है इनके भी। Vitality के भी। Brutal from Bros, but so is from Zyro as he gets a couple of his own. फॉर्म में तो मीनो चल रहा है भाई आजकल, मैं उसको लास्ट कल देखा। A few more trades back and forth. But TWO is still controlling the hill. लास्ट मैच तक गर्म हो गया था। तूने भी ये नहीं देखा, तूने कौन सा था ये? क्या लगता है कौन जीतेगा? I think TWB 3-2. इंटरेस्टिंग हो जाएगा मेजर भाई, 3-3 हो जाएगा फिर Vitality का, है ना? बट Vitality is good enough. दोनों टीम्स अच्छी हैं। तूने अभी पल्स का मैच देखा भाई, एनएस का भाई क्या मारा था अरे बहुत भाई, पल्स बहुत क्रेजी खेला ब्रो, अंडरडॉग इतना क्रेजी प्लेयर वो। मतलब पता क्या था, सुन मैं बताता हूं, एंथम और एनएस की थी ना, एंथम जीत जाती है हार्डपॉइंट बहुत आराम से, बट वो पल्स का एनिलेटर ने जो पूरा गेम चेंज करा है ना बस। उसका एम असिस्ट ऑफ हो गया इसीलिए रंगोली बना दिया, ऐसा क्या? पता नहीं यार।
honest. अच्छा खेल रहे हैं बट दोनों. For TWOB right Close now, जाएगा, बहुत close जाएगा. Hit perfectly. Purifier's gonna purify Soul, and he keeps it moving forward, but unfortunately, two players did flood in, and they shut him down. TWOB, Master of guard पकड़ रहा है together, they're pushing it tandem. मेजर भाई थोड़ा बैंटर कराओ, स्टेज पे मजा आएगा और क्विजी ट्रैश टॉक हो जाए. मसाला मिलेगा सबको ऑडियंस को. बट वो ये थोड़ा अलाउड नहीं होगा गाइस, इसलिए आप वैसा नॉर्मल है सीन है ना. Coming in from both Vitality and TWOB. ज़ायरो ने 2-3 पिक्स लिए भाई, नाइस. And now back and forth since we were going Minho, he Pink has pillow है ना got तुम्हें? on to the hand. भाई तुम लोगों को कोई क्वेश्चन है जो जाके स्टेज पे पूछो टीम से, बताओ चैट. मेजर भाई को बताओ कोई अच्छा ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो टीम से पूछना है. कोई ट्रैश टॉक वाला कोई क्वेश्चन या कुछ ऐसा जो भी लग रहा है, चैट बताओ जल्दी. भाई ड्रीम्स तुम भी बताओ क्या पूछ सकते हैं. इंटरेस्टिंग होने वाला है ये मैचअप. As soon as you mention him, gets a 3K off his own and inside Pulse the तो खेल रहा है hill, he भाई. is standing strong. भाई, full एकदम खेल रहा है. Get a few pred, maybe a hunter killer, but these teams have been देख रहा है performing red so dot लगाने well, लग गए and that's सब. all हाँ. thanks to Yeah, Snapdragon right. performance meter. 120 FPS is exactly what they need right now because this is up close and personal. Indeed it is. You need to have a smooth gaming experience, and that's what Snapdragon provides you. चैट बताओ फटफट मेजर भाई को. In the front. Still, this man with this weapon has been so. भाई क्या क्लोज है स्कोर भाई, क्या क्लोज है. Shut down. This is once again getting a little bit too close to comfort. Now TWOB, they're going to lose out on the lead, but at least they've got the control once again. That is true, but how long? That's going to be the question because Vitality and TW, both of them are continuously going in for those contests. हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है टाची ने. ये पूछो कौन सा सबसे वीकेस्ट लिंक लगता है सामने वाली टीम में. And they're also getting those trades. लिंक तो भाई देख लिंक भाई तू भावे भाई. अबे यार लिंक बोला लिंक के. अबे यार मैच देखो भाई क्लोज हो रहा है. Still, things are looking pretty close. Tough to say. दोनों ने एक साइड का कंट्रोल लिया हुआ है, ऐसा लग रहा है. Who's going to be winning? Who's not going to be winning? TWOB. Abyss takes down Burns, even Master. मुझे भी भाई क्या सुन रहे हो. But then Annihilator pulled out, finds one. लिंक भी सही है भाई. तुम क्या बात कर रहे हो. चैट ये सब थोड़ी ना पूछेंगे स्टेज पे. क्या बच्चों चैट है भाई. ओह भाई ये क्या मारा. Beautifully done. He was missing the ones he was scoping onto, but all connecting nose. दिखा दिया फरीदाबाद का. I mean, भावे justifying. Being controlled, solidified by any क्या of बोल रहा these था teams. जी? Still, it's going back Chat and देख, forth, chat and देख. most of the time has been just left. कहाँ off track. देखूं भाई, मैं No तेरी one stream going देख रहा हूँ even for Discord those पे. traps as Oh. of now, TWOB will be getting the last few 5 बंद seconds. करो चल, रुक जा, बोला कि रुक जा. We are probably going to see देखना a पड़ेगा. dead even matchup for when we'll move. अबे to that ऐसे थोड़ी ना पूछ सकते हैं जिगर भाई. Pulls out the war machine. शोर मिस किया नहीं से ऐसा क्या. चैट भाई One man was spotted now. ऐसी रिएक्ट कर दिया मैंने. अबे ओ गाजियाबादी खुद फाड़ दूंगा. चिल करो भाई. चैट फटफट 7040 करवा दो भाई. That's going to be a key factor. Burns still pulls out the war machine, but भाई then गोहान को ही बुलाओ ना, गोहान को pulled स्ट्रीम out पे by बुलाओ, मजा आ Bros. These guys are पता नहीं कहाँ. working together. Sparrow. Vitality अलग दुनिया में. in for to get the kill. जोको भाई. As the मीनो भाई. Annihilator is now gonna start to ये क्या सीन है. मीनो भाई क्या सीन है. ये क्या सीन था. But he whiffed a lot of shots. बिफ कर दिया. Every single point was just perfectly covered with all of those operators giving a भाई good lead ले pushing गए to बट ये. Vitality, and their objective player could just easily stand in, and Oh, another shit. Sparrow. Oh my God. Jokos is just not ये बीच ending it. कुछ Still अरे got हाँ one वो more बिजी होंगे ना shot वहाँ at पे. it. If anyone dares try to move forward, अरे भाई बिजी होंगे. very कोई close. नहीं. 3 players pushed in together. Imagine that Sparrow. One भाई बट क्या single क्लोज dot जा रहा है ब्रो. finds the वाइटैलिटी 3K. कैन टेक ओवर. Hardpoint. Everything, but unfortunately for him, that was not the case, and sigh of relief for Vitality. भाई पॉइंट As गैप of now, देखो since बस. still they'll be having that lead. Freddy being called in. 15 Can they पॉइंट get गैप है one? बस. Definitely 15-16. will. A double kill with the Predator missile. पता है. मेजर नहीं सुनना करना. मेजर भाई के बाल तो वैसे ही लग रहे हैं. Revenge, though. तेरे नाम वाले फुल एकदम. Is going to be the man to get that one, but I'm then good. instantly gets off हमारे that कुछ shotgun, नहीं नहीं यार. gets off that device and starts striking down the players. The Sparrow कैसे डर जाएंगे. was definitely quite deadly. Even the man. गोहान तो चैटिंग में बिजी होगा. इटाची बोल रहा है. Once again, they're back with the पता है किसकी चैटिंग के साथ इताची Shut बताऊं. down just right away in the भाई meantime. मत करो भाई. Still seeing क्यों किसी की Vitality पर्सनल using लाइफ the वो कर रहे हो perfect स्ट्रीम पे. gunfights, making sure they've got the advantage. अरे नहीं. DM में बता. As all the choke points coming in, Abyss and Master were trying to find some opening. Claw
being shut down. कल TWB को गॉडल तोड़ेगी. I mean, fair. Because again, Vitality will have all those operators up before them, and they will be able to control the hill. कुछ controversial है, but पूछ ले तो मजा आ जाए. नहीं पूछ सकते यार ऐसे. And that's why the players are getting punished. Vitality with this lead, they're just moving in forward consistently. But TWB, they're just not able to find that sweet spot to stop the players of Vitality, because this time it seems like they found a cure. They found a kryptonite to TWB's defense. भाई 10 पॉइंट का गैप. Again, since the trades are going back and forth, we are not having anyone solidifying anything on the hard point. सब पता है, don't worry. Was another hard point. We're going to see another fight happening as of now. Vitality trying to इसकी control बेइज्जती it, making मारता sure that the heaven is also clear. Oh my goodness! What a perfect shutdown to the claw. Master Master gets doubled with the war machine, and Extinct is also following him up. This is not जो कुछ ने दो मारे. ब्रोजनिक मारा. My advantage. ओए ignite पलट के मार दिया. The ball might just be shifting in the favor of TWB, but Vitality gets the point control once Chat again. like करो, subscribe करो, share करो. अभी बाकी तीनों मैचअप्स के भी हम वॉच पार्टी करेंगे. बहुत कट टू कट है exactly हाँ. ओह ऑपरेटर रेस करा दिया. TWB थोड़ी है ठीक, मतलब कर लेती है. अच्छी टीम है ब्रो. That is literally not allowed. What a great play coming in. Everyone jumping in since they've already used up their operators. They've got to go in for those drives. जोकोस heavy यार बहुत अच्छा खेल रहा है. 4 मार दिया. Again, Sparrow being pulled out. Jokos making sure to make life a living hell for TWB. Making joke. Trying to dare step into that hard point. तुम्हारे क्वेश्चन पूछने के लिए अगली बार बुलाएंगे ही नहीं मुझे. 169 points. भाई एक्चुअली भाई कोई ढंग की क्वेश्चन दो चैट यार. मसाला अगर तुम्हें चाहिए तो उसको अच्छी तरह फ्रेम करो भाई. ऐसे थोड़ी ना डायरेक्ट जाके पूछ लोगे भाई. ब्रोस की किल्स. ओ भाई 46 है जी. ब्रोस भाई नेक्स्ट लेवल मार रहा है. 50 मार देगा. 50 के 60 मार देगा. 8 मार देगा. वही विजुअलाइजेशन थर्ड परफॉर्मेंस बिग स्टेज. या एग्जैक्टली आई नो. ऑन स्टेज पूछूं ऐसे क्वेश्चन ऑन स्टेज नहीं पूछ सकते. The rotation have been on point. Vitality trying to find something, but they also have to take care of the people who. अगर दिल्ली लैंड हो सकता है. There are some chances. मेजर भाई अगर ये हुआ तो you know what to do. And क्या करना है ना. आ जाऊंगा मैं, मतलब कर लेंगे ना. एंड वो जो होने के चांसेस है वो कौन से महीने में वो भी बता देना. भाई बहुत बुरा मार रहा है ये तो ब्रोस भाई. भाई ब्रोस अकेला भर रहा है भाई. 53 किल पे है. मार दे भाई. एक और प्रेड निकाल ले. इसकी शायद एमो खत्म हो गई इफ आई एम नॉट रॉन्ग. क्लॉ निकाल लिया. और ओपन में प्रेड निकाल ली. दिल्ली एंड गुड में आ जाऊंगा भाई. काफी लोग आएंगे दिल्ली में तो बहुत ऑडियंस आ जाएगी मेजर भाई. ये भवे भी आ जाएगा. ड्रीम्स भी आ जाएगा. ड्रीम्स अगर घर हुआ उस टाइम. Master still controlling the hill, and we're going to see it being reinforced by both the members from both the teams as Claw is trying to shut down for anyone who's been rotating from the bottom side, but the spray down is just being a menace. It's a chaos, and the trades again going back दिल्ली and में आजा forth. तेरे को बेच दूंगा. आर्यन भाई बोलना क्या चाह रहे हो. क्या सीन है तमीज से आर्यन भाई. भाई विगल जी में रोड का थोड़ी. सॉरी भाई. ब्रोस क्या ब्रोस अलग वो हो रखा है भाई. भाई 70 मार देगा क्या वो. भाई 60 तो है पहले, बट 70 मार देगा भाई. क्रेजी हो जाएगा. दिल्ली वाला सीन तो मजा आ जाएगा मेजर भाई. For themselves, they'll be solidifying their lead, though it's going to be contested only for so long as the trade still fell in their favor. Zyro in the meantime. 56 पे स्टक हो गया बेचारा ब्रोस. लेकिन Things falling it up, and that's just one member. मास्टर ने भी 50 मार दिए. सामने एक्सटिंक्स में भी 50 मार दिए. दिल्ली का ही हूँ. हाँ पता है मेरे को. तो दिल्ली का बेचने वाला माल नहीं है. पर मिलता है. करण भाई क्या सीन है. क्यों तोड़ रहे हो मेरे को. मास्टर की भी 50. हाँ एक्सटिंक्स की भी 50 हो गए. ब्रोस के 60 होने वाले हैं. ब्रोस को 2 1 किल और. ब्रोस कम ऑन 1 किल मार दो. All Vitality needs to do is keep on sustaining हो जाएगा, that, but I guess TWB, they're going to steal it away at the nick of time. And a perfect way to steal it away, reaching up to 200 point mark as well, and 18 more seconds of scrap. Dylan was crazy. Yes. But yes, like कर दें फिर already. Let's hit 50 likes. Previously, as soon as this hardpoint अच्छा रहता है यार. Watch party के permissions and all के लिए easy हो जाता है if the stream reaches good. Be moving their way. 7 more seconds of scrap. They're still going to stop them. No, 61.
47 on the board. TWO भाई 61 now they have got the control in their hands. 62 but still 70 मार दे भाई 10 सेकंड दे दो पॉइंट उनको soon enough the upcoming point will be revealed as well. खत्म कर दो 64 भाई ब्रोस क्रेजी भाई हैट्स ऑफ ब्रदर And also they've got the first game sealed भाई ये तो up. ज्यादा क्लोज गया है मतलब क्लोज तो गया था मैं जितना बोला क्लोज तो गया अभी चैट में किसी ने बोला था 250 220 वाइटैलिटी विनिंग उसका अच्छा प्रेडिक्शन था ऑलमोस्ट क्लोज भाई ब्रोस भाई लेकिन भाई मैड रिस्पेक्ट भाई भाई सोच अब ये ना वाइटैलिटी वर्सेस बॉर्डर होता Not allowed हाँ whatsoever. भाई मजा आता है ऐसा इंटेंस होता तो मजा है भाई फाइनल्स में दिखेगा शायद ये सब ना क्लोज जा सकता है थोड़ा लुक एट मी या क्रिश भाई बहुत अच्छा प्रेडिक्शन था आपका 69 मार देते तो हाँ यार Setup is necessary, but when your opponent is at 239, मेजर भाई अगर चैट में हो तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हो भाई बाद में लाइक मैप 1 का तुम्हारा क्या ऐसा थॉट प्रोसेस था ब्रोस को यार पागलों की तरह खेल रहा था भाई सर खुले सांड जैसे भाई घुस गया था इसमें प्रेडिक्शन लेट्स गो क्रिश भाई डब्ल्यूज क्रिश भाई डब्ल्यू आपके लिए लो जितने बंदे ने मेरे पूरे दिन में निकल इसने जितने बंदे मारे उतने मेरे पूरे दिन में निकलते हैं किल्स लोल भाई ब्रोस गलत मारा हाँ यार it was the overtime, right? No one can deny that. It was literally. ब्रोस ने बर्न्स के किल्स कवर कर दिए ऐसा क्या मैं देखा नहीं अभी आया पॉज करो ये देखो भाई 64 ठीक है फिर 44 42 33 34 ओ भाई केला ले कर है भाई सामने भी 55 सामने 3 जन के 50 है भाई इग्नाइट भाई थोड़ा सा वो हो गया वेगस ओबीजे के साथ 44 मारा 2.5 मिनट ओबीजे 2.5 मिनट ओबीजे हाँ उधर भी 2 मिनट खेला एक्सटेंस भाई थोड़ा इग्नाइट भाई थोड़े से लेफ्ट राइट हो गए कोई नहीं इग्नाइट भाई उधर तो भाई एक्सटेंस ने कैरी करा है इग्नाइट थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो गया कोई नहीं कवर अप करो इग्नाइट भाई पेलो नेक्स्ट गेम just like this my goodness gracious अब एसएनडी में भी एक्सटेंस और जो कुछ है that's the highest kills we've seen so far जो कौन सा स्नाइपर है ना भाई हाईएस्ट नंबर ऑफ किल्स यस अब इटालियन गॉडल है S23 तो उनको आदत सी होगी उस डिवाइस का बाकी सबको परसों डिवाइस मिले ओ अच्छा गॉड इट मेरे को नहीं आइडिया था इस चीज का वेगस ओबीजे हाँ भाई बहुत अच्छा खेला बेस भी 51 मार दिया नाइस यस 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 वही तो कह रहा हूँ टीडब्ल्यू में 3 जन ने 50 मारा है भाई दैट्स गुड तेरा फेस क्या मारा है मैं क्या करूँ भाई फिर आ रहा तो आ रहा है कोई नहीं यार TW ओबीजे पे फोकस करेंगे तो चांस है रहने का हाँ मैं समझ गया भाई क्यों दोबारा किधर है मेरा क्वेश्चन पढ़ो ब्रो आपका क्वेश्चन हाइड हो गया यार अपने आप एक्सटेंड देखने रुचिकर भाई ब्रोस वेगस बंस को गॉडलाइक वर्सेस वाइटैलिटी के मैच के क्या अपने फ्रेंड्स के थोड़ा आराम से खेलेंगे क्या अरे आराम से क्या होता है यार कंपटीशन है यार ये तो कंपटीशन है देखो अगर सामने विगल होता मेरे हां तो वही किसी को भर के मारता भाई मतलब पूछने की जरूरत ही नहीं है मैं चौड़ में आया था 1v1 करने के लिए पिट गया ना देखो पिट गया वो वार्म अप था भाई वार्म अप लेट्स गो भी एसएनडी होगा एसएनडी गोना बी मोर इंटरेस्टिंग भाई ये 3 के बाद ना तेरे टूट पा लूं 3 तो नहीं हो रहा है बाबे भूल जा 3 तो हां यार ज्यादा एक घंटा और पर तू जब उनका स्ट्रीम 2x किया ना मेरा तेरा स्ट्रीम 2x कर दिया अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा जो कास्टर बोला 4x हो गया बेचारे के लिए एवरेज स्ट्रीम वॉचर्स ऑफ विगल अबे यार और इनके ऑर्ग ने दिला दिया था S20 अल्ट्रा फॉर स्टेज 5 दैट्स गुड भाई फिर प्रिपरेशन के लिए अच्छा मैं क्वेश्चन पढ़ ले ऊपर का पढ़ा मैंने पढ़ा नहीं दिलाया था बड़ी पता नहीं है मेरे को आइडिया नहीं search and destroy and TWOB need to win this one to equalize the maps पहला राउंड भाई बैट लगा जल्दी ट्विंस कौन जीतेगा TWOB ये बात चलेगा वाइटैलिटी को साइड मिल गया बट रीटेक कर सकते हैं TWOB strike down the players of Vitality because they've got enough time to get used to the devices and also get used to the strategies against the opponents. Extincts need to be the key. अबे ये हट क्यों नहीं रहा
Of his team, he was popping off in the previous one, so yes, he's warmed up close and personal. He needs to take those fights and win those ones. Stadium think 8-6 vitality winning. ऐसे ही वापस हवा में prediction. ठीक है भाई. TWB का क्या भाई ये तो? On the table. जीत गया. Look at this vitality. What? भाई टेबल टर्न्स हो रहे भाई. कल हार्ड पॉइंट में वाइटैलिटी वीक पड़ रही थी एंड एसएनडी में टीडब्ल्यूबी. आज फ्लिप हो रहा है शायद. सही है ये भाई सब कुछ स्क्रिप्टेड है. वो तो एफएफ के बारे में सब. यस भाई कंचक बुया अज्जू भाई डीजे लोग गए हुए. जस्ट किडिंग. कुछ आइडिया नहीं भाई उसका तो. Maybe we can. TWB. अर्पित बाला की याद आ रही है. Maybe this can be something that can uplift their confidence. क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है Still, भाई? Vitality's just playing so aggressive. They're pressing on it instantly. चैट लाइक कर दो यार. वी नीड 5 लाइक और 50 के लिए और 2 सब्सक्राइबर और भाई. कब से वो पोजीशन देख रहे हैं सामने कौन बैठा है? नहीं मस्त पोजीशन है. But as soon as he scopes out a man was deciding to peek out over there. Bros. ब्रोस घुस गया. शॉटगन कौन चला रहा है? ब्रोस चला रहा है. ब्रोस चला रहा है. But TWB once again they make a swift return back. ब्रोस बचा अभी शॉटगन लेके. लेट्स गो. खुद पे लेगा. हमारे शॉट राइट साइड नाइस. राइट साइड. ओह दिख गया देखो. जरूर दिख गया. हैं जी? ये क्या था? भाई तू वो कर दिया. भाई बर्न्स को उधर ईगो पिक लेना चाहिए था. मतलब उसको दिख गया था वो. कोई नहीं भाई. कॉडम के कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट. हाँ यार कौन? करण बोल रहा है. भाई कॉडम के कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट. Going for a small peek and then move backwards and rebait out of. ए ब्लेजी है अपना लौंडा. गाइस जो तुम्हें वार्जोन मोबाइल के सर्वर में वो दिखा है ना हमारा who manages all the thing. ये बैकएंड में जो खड़ा है TW के भी ये ब्लेजी है. This time around Vitality are कार probably बॉय भाई. हाँ हो गया है ना मैनेजमेंट में उधर. मतलब क्रू के अंदर है. मुझे मेरा नाम उसने मेरा नाम क्यों नहीं डाला? अरे टेड भाई वेलकम टू द स्ट्रीम. क्या हाल है त्यागी? त्यागी भाई की भी मेंबरशिप खत्म हो गई. त्यागी भाई इशारा समझ जाओ. ये देख भाई ये नेटफ्लिक्स बना डोल रहा है. आपकी रहती है ऑटो पेमेंट. तू तो मत ही बोल. तूने तो मत ही ली अभी तक नहीं ली. मैं होता तो मैं एक साइड में ले लेता भाई. अगर मेरे को कोई से बोलता मेरा दोस्त. अच्छा कुछ भी नहीं सोचता भाई. मैं तो यूपीआई की पेमेंट ऑन करा दे. आईओएस में भी लूंगा भाई. उसके लिए तो जुगाड़ लगा सकता ना. एंड्रॉइड से कर ले. एंड्रॉइड में कहां करूं? मेरे को कोई किसी घर में है ही नहीं किसी के पास एंड्रॉइड. वही है रिच प्रॉब्लम चैट. मतलब यूपीआई भी है मेरे उस पे. एक्सक्लेमेशन में यूपीआई. तो कैसे करूं भाई बताना. मैंने ले ली विगल की मेंबरशिप. आयरन भाई स्पेसिफाई करें. मैच पे ध्यान दो भाई. इतना इंटेंस मैच चल रहा है. अरे भाई भाई. ओ भाई ब्रोस पॉइंट्स डेडली डुओ. बर्निंग ब्रोस. लेट्स गो. #burning bros. Just a brilliant Crazy way bhai. and a brilliant adjustment this time around. Facey hits are not working विगल out. हम दोनों का होता क्या होता? बिगली भाव. क्या होता क्या? बिगली भाव. ठीक है भाई. That got Master in an awkward position wherein he was surrounded by a couple of people. Beagle नहीं. Bigal तो कुत्ते का नाम है. Bigal नहीं बगल. Yet again Ignite is ओ the one भाई. found and ओ केला मास्टर बचा है इतनी जल्दी. That's all they were able to find. It's only down to Master 1v4 and Vegas will be planting the bomb. Exactly. Vitality has planted. Hardpoint Blazy. And now the players. Bros और Burns भी भाई है. नहीं भाई नहीं है बट हाँ भाई जैसे पिल रहे. But I highly doubt that's going to be the case. Oh, good pre-fire. Joko's going to be taken down. Sniper was there. The thinking was there. But unfortunately, he faced up against Bros, who's feeling himself right now. 2 for 2 yet again, just as we expected. You know, I really want to say it in that accent, but I don't have that heavy voice. It is just as I expected. But either way, there's something unexpected that had happened right now. So I guess we're going to be having a rehost coming in. Rehost? Technical issues here and there. भाई 2 राउंड जीते थे उन्होंने. Have a rehost of this map. Wow. Anticlimactic though. I'm not sure if this is a good thing or a bad thing for TWOB because they भाई started things उनका off with मोमेंटम great खराब कर notes. दिया भाई. I still I'm think not it's sure. maybe Rehost हो रहा है. because again they will be able to read onto the type of hits that Vitality want to go in for, and they have. और ब्लेजी भाई की एक फोटो ले लेता हूँ. एक सेकंड देना चैट. Rehost of this map. ब्लेजी भाई खुश हो जाएंगे. Wow.
Anticlimactic though. I'm not sure if this is a good thing or a bad thing for TWOB because they started things off on a great note. So लेसी आ गया. हाँ, एक सेकंड देना चैट. भाई की फोटो ले लेते अपने. चलो. भाई मुझे तो वो पुराने दिन याद आ रहे हैं जब मैं एक टीम थी कोई प्रेस्टीज करके फायरिंग का टाइम था. याद आ रहा है कुछ उधर? नहीं यार. रियोस्ट क्यों हो रहा है? पता नहीं, पिंग इश्यूज होंगे मे बी. मेरे को तो अजीब मतलब टिकल का क्या मतलब है पता नहीं यार. मेरे तो नाम के पीछे वही है मैं जो बताया था स्ट्रीम पे कि भाई मेरे भाई का अकाउंट होता था क्लैश ऑफ क्लैंस में डॉक्टर विगल, तो उसमें जेम्स नहीं थे मेरे पास नाम चेंज करने के लिए, तो कैरी फॉरवर्ड कर लिया हर गेम में. फिर डॉक्टर हट गया, वहाँ पे FTW लग गया क्योंकि टीम नेम था एंड 7 डाल दिया बीच में. बंस भाई फुल वो हो रहे हैं. अबे यार क्या यार, इतनी अच्छी शॉटगन चल रही थी, हिट मार्कर नहीं दे रही थी. They hit the players of TWOB back, but imagine if now the start's going to be from Vitality at 2-0 against TWOB, a team that is already under pressure. Mino vibe कर रहा है. Really tough. That is absolutely correct because just as I mentioned all of those points for TWOB, even Vitality would be focusing on the exact same thing. Indeed, they will be. Yo, Ted भाई coming up with the membership. देख रहे हो चैट, ऐसे होता है इन्फ्लुएंस. You need to know how to sell your product. समझ रहे हो? मार्केटिंग हमारी मार्केटिंग पॉलिसी मैं नहीं लूंगा कभी. ये ठीक है. थैंक यू टेड. W हो जाए भाई चैट के लिए, जितने भी मेंबर्स है भाई के लिए W कर दो चैट पे. कहाँ गया हमारा W's? Only to Godlike. So Let's go Tyagi bhai. have an idea that yes, they are super experienced as well. They know what kind of hits Vitality would be going on for, what kind of fights they would be going on for. So even if we are talking about that, we already know everything is being fixed up, guys. So make sure to stay tuned. In the meantime, we'll keep you entertained. We've got Necro. Unfortunately, Major is having a nap onto the chair. Wow, he's having a nap? Yeah, he was. Look at the pillow. Man. Major Beast is like, just get rid of these technical issues, man. मेजर भाई क्या सीन है? Just wanna बैठ के वहाँ पे मेरी स्ट्रीम देख रहे हो? बढ़िया बढ़िया. Let's go. डब्बू कौन मेजर भाई? मेजर बीस्ट भाई कास्टर. यहाँ पे स्ट्रीम देख रहे हैं. हाँ वो चैट में ही तो थे. वही तो पूछ रहे हैं क्वेश्चन क्या पूछूं मैं स्टेज पे जाके. कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो बता दो ऐसा. WS ये 50 रुपए वाले ईयरफोन क्यों यूज कर रहे हैं? कौन पता नहीं यार. उनको जो दिए गए वही यूज कर रहे हैं. बाकी तुम अपने भी यूज कर सकते हो शायद. दैट्स आल्सो अलाउड. Warzone Mobile में अपडेट कब आएगा? व्हाट्सएप रंजन भाई वेलकम टू स्ट्रीम. क्या हाल है? अपडेट जो है वो डिले हो चुका है. एक सेकंड म्यूट कर दो इधर. हाँ अपडेट जो है वो डिले हो चुका है. अपडेट नेक्स्ट वीक आएगा जो बग फिक्स अपडेट है. एंड जो मेजर अपडेट एक आने वाला है वो ये मंथ के एंड तक आएगा. एंड मेजर अपडेट में शायद मॉडिफाई 3 से क्रॉस लिंक हो सकती है गेम. तो ये अपडेट है अभी फिलहाल. जो ये वीक आने वाला था वो नेक्स्ट वीक हो गया स्विच बिकॉज ऑफ पता नहीं कुछ एक्टिविजन के रीजंस है. Considering, yeah, even though it was a rehost, but at least I guess like कर देने फ्रेंड ऑलरेडी. got to know what things might be looking like or how साउंड things के लिए might be होता looking है, like एक in the वीसी के upcoming लिए होता है. battle. हाँ वही. So Vitality might just quickly और readjust उसके this ऊपर thing, नॉइज know कैंसिलेशन how भी to होता be है. adjusted. Vitality knows one thing, and that for sure is that TWB, they have done their research. So now something needs to be done to counter stuff. देख एक तो यहाँ तो वीसी के लिए होता है और एक गेम साउंड के लिए होता है. अदरवाइज ऐसा भी होता है एक ही से वीसी और गेम साउंड हो रहे हैं और ऊपर से नॉइज कैंसिलेशन है. डिपेंड्स. चलो लेट्स गो. स्टार्ट होने वाले वापस शायद. As soon as this matchup is going to move forward, I am still seeing the maps fall into the hands of Vitality. It's going to मेरे को लगा हेडफोन्स नॉइज कैंसिलेशन के लिए होते हैं. हाँ वही प्रॉब्लली नॉइज कैंसिलेशन वाले ही हैं ये. But I am looking forward to what's going to happen in this one as we've got the queue, guys. But guys, we need 2 more subs यार. Come on, let's go. मैच स्टार्ट होने वाला है. Exactly. Whenever you hear that music, you need to know that the game's going to be. गाइस प्रेडिक्शन दो चैट में. रीहोस्ट के बाद क्या तुम्हें लगता है? स्विच होंगी चीजें कि TWB मोमेंटम रखेगा पर से? लेट्स गो. भव्य भाई क्या सीन क्या लगता है? भाई बाजू बाजू का शोर एक होता है. हाँ एग्जैक्टली. शॉटगन के हिसाब से तो भाई देख यही है. वाइटलिटी निकला. ब्रोज ने पहला पिक निकाल लिया. देखा
That's you seeing how Burns और Bros दोनों shotgun चला रहे हैं. not just in this map, even in the previous. सामने Zyro भी चला रहा है. Openers giving an early advantage and then trying to play in with the time. कोई तो काउंटर के लिए रखना पड़ेगा ना. Has been putting bombs in the hand of Burns, so you know this combo of Bros and Burns. Bros को निकाल दिया. Bros, that you love to call them, can decimate the lineup of TWOB. But 1-1 हो same thing चुका है. can be said for Xtinx. Also for Abyss, who unfortunately fell in this first round, but Zyro and he were the ones who were anchors in the yesterday's Hardpoint matchup. बाकी तैयारी रात को वालों खेलना होगा तो बताइयो. So even if you're in the search and destroy, you know that these people have got the potential to pull those 1v3s off. If I'm playing against Vitality, कल संडे है ना तो फ्री होगा इसलिए. I will be really scared of the Burning Bros. But look at Vitality, they're already so deep in. मैं actually hashtag बहुत वायरल कर सकते हैं लोग अपना Vitality वाले. Slowly working around the map. अपने socials पे Burning Bros. And yes, these B hits were the ones that were not working out super well for them. But as of now, their post-plan setups look super solid. Oh my god. Vegas wrap up हो जाएगा. Compromised. Burns was able to find one. Even Vegas Hit was मार. then extinct. दो मार दिए पिस्टल से वो. He finds a 2K for himself. The sniper almost could have caught him. But unfortunately, that's not going to be the case. Vitality with the man advantage inside the round of 2-on-1 scenario. Slowly and steadily, Xtinx looking for to creep up. Pulls out the sniper. Locus in the hands. Needs to go for what? Catches the man atop of No way Xtinx निकाले. Mino is निकाल दिया भाई 1v2. Oh, what a miraculous Good shit, bro. Nice. He literally What's got a very rich welcome back. in this round. ये कितने दिन चलेगा? आज और कल. Looks कल great. भी चलेगा. वहाँ थोड़ी देर The में आ रहा है. moment you thought maybe Vitality is going to be the one to win the first. भाई मस्त क्लच निकाला ना भवे. He just comes out of nowhere. फैनिक मुंह पे दे दिया उसके. And it's not फुल just एकदम. 4, he actually got all 5. It's literally an ace. Wow. ये एस मारा वो. 5 के लिए उसके. Damn. The IGL steps up when it's needed the most. Ace, yeah, bro. W Takes Xtinx. charges in his own hands. He's the primary sniper, but he's also using the Fennec so perfectly. However, talking about using the SMGs perfectly. In the hands of Ignite, the Switchblade Burns seems मार दिया. unstoppable. Own little burn finishes Abyss him off, trades. which has been traded just as quickly by Abyss. Exactly. 2v2. But still, Bro's in contention. Bros पे shotgun है. As long as Bro's is alive, we know what this Bro can pull off. TWOB, a 2v2 scenario, ladies Chat, and make sure drop a gentlemen. like and a sub. We need 2 more subs for 7040. Bros with the 7.04k. shotgun once So again. कर दो भाई. Looking And for yeah, make the we need 2-3 impossible. likes Could have just for winged the 50. outskirts. तो वो भी कर दो. Hoping that someone might just be pushing Abyss? out. And क्या that लगता है? might Abyss just be timing होगा. happening. Timing होगा. Abyss peeked Corner out. check नहीं करा. The patience paying off for Bros. Beautifully done. TWOB once Master again in a they 1v2. find themselves in such a precarious spot. Vitality might just open मुझे लग रहा है an account जोको right here. एंगल चेक नहीं करेगा. Hopper in the hand though. Do they expect Master in this position? That's the question. Oh, time! the timing! Bro, the timing! Jeez, it could not Bhai. have been worse for him. क्या But कॉट best for टाइमिंग है भाई ये. Vitality. Joko's होता है भाई, होता है, हर finishing किसी के साथ things होता है. off as well भाई. in a perfect way. Does not whiff whatsoever. Hard luck यार, And hard luck, another Master. round, this time falling in the hands हमें of तो पता है Vitality, so क्या आ रहा है वहाँ equalize. से. ना उनको वही नहीं वही पता. वही वही वही. The equalizer. 1-1. रिप टाइमिंग हाँ ना यार. Snapper being pulled out कोई as नहीं well कोई from नहीं this कोई guy. नहीं. Xtinx. Still a Ball in 1-1. the back lines was there. Bros get 1. Joko's 2 in the front lines. हर राउंड निकाल रहा है भाई ब्रोज, हर Being राउंड. pulled Entry out flag है भाई full. by Xtinx. Abyss 2 moving ये forward. अबिस की पोजीशन अच्छी है. रैप अप कर सकता है पीछे आके. Plant goes down from the Ignite side. भी आ रहा है साथ में, 2 जन आ रहे. These guys are moving in so fearlessly Sniper pick towards off हो the गया site, Vitality का. but then Xtinx instantly punishes Joko's sniper v sniper battle. Xtinx is going to be Nice, ready to get Vegas. his opponent. Second one found as well. Vegas takes matters in his own hands, picks up that sniper. And he's making sure that there's no Bond one ने coming एक और from मारा. mid, but who's going to watch his back? Trade That's off, the trade off. question. Vegas It's दो going मार to go दिया. back and forth. Ooh. Vegas wins it out for his team in a Nice. 1v2. Nice Vegas, good shit bro. This is the first OT time जाएगा, Vegas जा सकता है, जा goes सकता है. OT for जा the सकता है. sniper. इंटरेस्टिंग है मैचअप. Usually it's Joko's, yeah, they do have ओटी two वोटी तो snipers, नहीं जाएगा, देख लियो. Vegas ब्रोज going वाइटल for टीम it. ने होके भी गोल्ड Definitely वाला was गेम प्ले something दे that I रहा है. did इफ यू not नो really व्हाट आई expect, मीन. but हाँ मतलब they are it's okay. performing well. Vitality, they get the second round on the board as well. TWOB just with the one. Mar, they mar, need to mar. be satisfied. A pre-fire from the sniper. Nothing found. True that. Just playing it slow, playing it safe, and near the Come on, ball guys. as well. With seeing We the will be setup doing coming other in. 2 TWOB matches as well. Watch gotta party. get some adjustments in. I took speed runs. Average lineup coming in. तो वो Burns देखते हैं. though finds one pick. So Vegas now melting again, people. we've हाँ seen यार जेनी भाई Vitality आ जाओ. playing VC आ with जाओ. आ रहे those हो तो जेनी भाई slow फ्री हो तो hits. आ जाओ. So, at this point, Master needs to Wiggle play वाले it उस पे safe. बैठे We हैं. saw him pushing last time. This time around,
Not in the area, but they're giving up so much space in the mid. It opens up the Vegas got possibility one. of a flank coming in. So Extincts. भाई वेगस का वो क्यूकिन वाला एरा याद आ रहा है भाई जिस हिसाब से मार रहा है मूवमेंट दे देके. So close. Joko shuts down Extincts, but then Zyro once again replies back. ये शॉटगन डिफ होगा यहाँ पे. Joko's being taken out of the contention now. Bros मार दिया. We'll make that a 1v3 Just better. Master the last glimmer of hope alive. And of course, the players of Vitality are not going to try to be the sneaky assassins. Going to tuck themselves in the corner and just play for the post plants. It's down to a 1v3. The Phoenix Stings pull that off. And we're asked हो सकते हैं मेरे आसपास interesting modes. Master follow the footsteps of his IG. YouTube chat में members की नहीं हो सकते यार. Unmuted नहीं हो सकते. Shotgun in the hand and ओ भाई. Sweden नहीं होगा I think. Let's see. Just hopping around, picking up. Melt कर रहा है भाई ब्रोस melt. ब्रोस तो भर रहा है. रास्ते में टाइम लगेगा. ओके जेन्युइन कोई सीन नहीं. अभी 2 मैचअप्स और बचे हैं. Winning it out, getting his team to 3. चलिए भाई दाल भात खाओ दाल. ये सीरीज के बाद मैं भी कुछ खाने लेने जाऊंगा फटफट 2 मिनट देना चैट को. ये सीरीज के बाद ये मैच के बाद नहीं. Kills for him. Vitality with 3. Vitality 3 हो कर दी तो गाइस अगर तुम्हें नहीं पता विगल अभी कटिंग पे है. नहीं भाई गेंद पे हो. Shot will be taken. Connection. I'm not इसलिए 6 घंटे बाद वो एक मिल लेता है 500 कैलोरी की. ठीक है भाई. चैट लाइक वेट कर दो शेयर वेट कर दो. Is every TWB player going to be coming in the side from? ट्रेड हुआ फिर से. Yet again it is in 3v3. favor as of now for TWB. ब्रोस ने मारा. वेगस ने मारा. ब्रोस ने मारा. Bros getting ignite. Down to a 2v1. Bros is just frying भाई. भाई जो स्लाइड में भी भर रहा है इधर भी भर रहा है. जो ये स्लाइड एंड शूट कर रहा है बहुत बुरा भाई. He's just frying भाई. This time around going in for another pacey approach towards the mid. Played slow in the previous one. भाई ब्रोस को दिखाओ ना इसका पुश देखते हैं. ऐसे करवाते पुश. Again back and forth. जरूरी है बट ब्रोस मर गया. Favor of Vitality. जो कुछ ले लिया ना ट्रेड. 3v2 ladies and gentlemen. हां तो 2 रह गए ना बस. एक्सचेंज भी ले लिया ट्रेड भाई 2 मार दिया. बर्न्स पे शॉटगन. TWOP. At least now things are down to even Steven Grant. ए एंगल लेके बैठा है वो. Equal fighting chance inside this entire scenario. Vitality with 2v2, let's go. The pressure's on top of the players of TWOP. One thing is for sure. Shotgun versus AR. Sniper versus sniper. They know how to exactly counter the players of Bomb ले लिया ना इन्होंने. हाँ bomb है burns पे. They're straight up just walking into a trap. That's being set up by the players of Vitality. The plant's going to go down without any issues. जो कुछ का है. The side from Vitality has been flawless so far. Just the first round. जो कुछ टावर पे होता तो उस पे रहता एंगल. Completely fine. Now the cracks being sealed up. Burns and Bros or Jokos. क्या लग रहा है? These two guys, look at them. Oh, they're trying to be so sneaky. One guy's trying to rotate around. I guess that's what it seemed like. Actually, अच्छा खेल रहा है. And yes, that's what they're trying to pull off too. TWOP 2. Oh, gun switch करके. That was. Turns around, slaps Joko's in the face. One more man to go in the name of Burns. गया चला हार गया. Extincts with one more 1v4 1v2 भाई. Once again proves out to be the clutch वो master. जो गन चेंज करके मारा ना वो बहुत. भाई बहुत अच्छा मारा वो. हाँ. 2 rounds. Remember the time जब ब्रोस ट्रोल करता था कॉम में पीछे घूम के. हाँ I know. In the lobby. Go TWB go. Let's go भाई let's go. Relying on their IGL, yes that is true, but how much? Your main slayers need to step up at this point. They need to make sure that it's not just Extincts carrying everything on his shoulder. We need 3 more likes of 50 भाई कर दो. Come on यार. We still have 2 matchups pending. That is totally based on luck. Like बढ़ाओ यार. 100 like करते हैं आज की स्ट्रीम पे भाई. 6 घंटे की स्ट्रीम होने वाली है. We cannot give them to Vitality just like they've been receiving in the previous 6 rounds. Sides haven't flipped though, so TWOB going in for a very pacey hit. They'll be planting the bomb towards the A, and 40 seconds is the timer that's left on the clock. Indeed. 2 to 4. Zyro gets the pick. एक और पिक मिला. एक और पिक मिला. Flawless जा सकते हैं round. At least they found a little bit of a breaker for Team Vitality's momentum. 2v5 seems next to impossible to pull off, and now 1v5 just with the sniper in the hand too, and also almost gone for the knife from the back. हाँ वो पीछे से पंच मार रहा था. Extincts carrying. I wouldn't say carry. बाकी टीम भी परफॉर्म कर रही है bro. 2 मास्टर अभी डोनेट है, but still. Ignite और Zero 5 मैच पे. Important kills matter करते हैं यार.
अच्छा खेल रहा है एक्सटेंड्स, आई एग्री। Of the next round of एक्स मेंबर्स चैट मिस, क्या चैट मिस कर दी मैंने? हाँ मैंने पढ़ा, वो तेरा रिएक्शन भी दिया, हंसा भी उसपे मैं कमेंट पे। एक्स मेंबर्स की बोल रहा हूँ क्रिश भाई, करंट मेंबर बनो भाई, स्टार्टिंग एट ₹29। TW क्लच करेंगे। ओ भाई Vitality need to bring something up. कौन बचाई? जोकोस। चलिए तो ले गई TW भी। Joko's with the sniper once again. आजा बाहर आजा। All by himself. I guess the defending side is something that's really it's struggling. काश गॉडल के अगेंस्ट भी ऐसा परफॉर्मेंस देते। लेट्स सी भाई, अभी गॉडल के अगेंस्ट कल होगा जानी भाई। हो सकता है टेबल्स थोड़े से ऐसा रफ हो, बट टर्न तो नहीं होंगे। Look up to the upcoming round because this one's gone. स्पैंगल अच्छा आ गया था, बट कोई नहीं। Takes out the skull. चोक कर दिया। Equalizing the numbers. बस वो विगल वाली से कहते हैं भाई शॉट तो लगा था यार। That's exactly what we would expect from both of these teams. नहीं यार, TWOB on वो that प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट होता है भाई माहौल। Perfect unit in unison. They're going in for some pacey hits towards A with the post plant setup as well, which is absolutely perfect, winning out on all of those trades. Pre-firing on the important places, and if it ain't broke, no need to fix it. However, they do need to fix the भाई ब्रूस come on. lose them. Nice, ब्रूस पे फ्लैंक है। ट्रेड ले लिया क्या? नहीं। Mino gets traded out, even Bros gets traded out by ब्रूस भी ट्रेड हो गया। जोकोस अगेन 1v3। Fantastic job in replying back. Just the way भाई बेचारा 3 राउंड ऐसा हो चुका है जोकोस के साथ। कि भाई मेंबरशिप ऑन स्ट्रीम Warzone Mobile will launch on it is doable. As ठीक है भाई। always, it's just Joko's is left all by himself करो because भाई his team ऐसा। pushes up, बढ़िया। gets taken care of easily. पीछे से पिटेगा देखिए One जोकोस। man from TWOB is on the lurk, is on the flank. The man prone spotted. A beautiful पीछे से flick पिटेगा on the यार ये Cyro, but पिन कर Master दिया तेरा from the मैसेज। back wasn't expected. पैसे करता है, पैसे भी क्यों मरता है? क्यों पैसे आ नहीं रहे ना? Even the fans of Vitality were not expecting this as TWOB get the lead. पैसा And I really बॉक्स love के the थ्रू way मार that के लेके लाओ। going in for those क्या कह रहा pacey है? hits towards A. It worked out once, it worked out twice, it also worked out the third time. क्या? The reason for that is the fact ओलंपिया that yes, मिस्टर ओलंपिया they've got the हाँ। sniper coming in from Vitality. आ जाए। ओ But अच्छा। it's just that like they're down to only 4 members towards the side. सही So है। when the trade go back and forth, it ends up being in the advantageous side for TWO. क्या लग रहा है? Look at that hit again. They're going in for the exact same thing. Bros Vitality मर गया। losing onto an early member. Welcome with the hopper. Indeed. चुप जिगरप्रीत भाई। Oh my God. 30 नवंबर में बहुत है। ओह अच्छा, सही है यार वेरियस भाई, लेट्स गो। TWOB on the post plans. Vitality. Happy birthday in advance, looking forward bhai. to find a crack in that defense, and look at Burns. Expected a man to halt at the beautiful pre-fire to catch him. भाई इग्नाइट और अबिस तो साथ में घुस के मार रहे हैं। So the problem still keep on continuing. इग्नाइट फुल स्टेप अप कर रहा है भाई एसएनडी में तो। Taken down to a 1v1 where he can even इग्नाइट मस्त reply मार रहा back. है। And with this, we are moving on to the match. जिगर भाई क्या हो गया? पुली मोटोबाजी। I mean, if you're looking at like this 6 and 4, TWOB have not dropped a single round on their attack, and they can close things out right here, right now. And just like on all of those previous rounds, they're going for the exact same hit on towards the A side. We are Nice, going to be nice. heading into the barrage of fires in those bullets. Nice. Wow, I don't know. भाई जोकोस के स्टंट से मरा एक बंदा। Ladies and gentlemen, and once again, the shock and battle is something that really Mino in doesn't window. work out in Cyro's favor. मीनो इन वन वीडियो। Unfortunately, he takes an exit from the lobby or from this round. TWOB भाई on उल्टा नहीं हो over, गया they've established such a massive comeback. Vitality गया। in a big हाँ, shocker. वही। It's a big stunt for them. Nice, Can they Mino. recover from this stun? That's the question. A 1v1. 1v1 scenario. Oh, Master timing. versus the opponent, but it's not going to matter. Master's going to be the one to Nice. मास्टर भाई फिर से रेज हो गया। Sweep that was. वही तो। मास्टर लाइक Talk गॉड about a comeback. Guys, like कर दो, let's go. We need 2 more likes for the 50 mark and 2 more subs for 7.04k कर दो भाई। We don't care. Let भाई it be टेबल search फ्लिप and हुए destroy. We do हैं। HP not care. TWOB जीती थी अभी, आज एसएनडी वो जीत गई। TWOB just pulling out a कल wondrous opposite था। work onto that search and destroy. Yes, they were looking a little bit shaky when they were on the defense. We were seeing Vitality having a lot of control, but just the way they pulled their attacking rounds off was brilliant. And there was not a major strategy behind it, right? Because you were clearly seeing their attack was just based on one thing. That they are going to hit the side from 2 different directions. They're going to go in for that split. One from mid, a couple of people from mid, and a couple of people from the main. And that is exactly where they were getting the control from. And every single time Vitality
They were just all crunched up, being हो caught गया in the चैट pincer maneuver from चैट 2 2 मिनट देने में कुछ different खाने को लेके आया directions, बगैर just तब not तक being तो चैट able से to बात करियो आया मैं 2 He मिनट did. I mean, you can clearly see in the highlights as well. Yo, what's up, Vitality chat? on the attack, they were Chat unmatched, with and then TWOB on the attack, कहाँ they पे were इसकी unmatched. लाइव स्ट्रीम हो So I देखो guess the attacking side is really something that these teams favor to play on. X-Things though, man. I'm Wiggle7FTW. gonna give the MVP to that guy. Of course, and he has gotten the MVP in his team. 14 kills lined up for him from him. Burns and Vitality Burns, lose yeah, 6 they were rounds in a performed row. decently, but not exceptionally well. All Maybe right. that's why I guess Vitality sort of lost. I'm expecting this one to probably go all the way, and that is if Vitality are able to bounce back in the next one, because maybe, just maybe, it just feels like Summit would probably be the area for TWOB. I'm making a guess onto that one. However, before that, we'll be heading into the Crossroad Strike. So, we've भाई seen खाना this one खाने लेने yesterday. गया भाई वो We've seen a good performance from Vitality. We saw some good spawn traps coming in. The question will New streamer, lie in guys. the fact that बब्बे वो if पिन द चैट कर दो TWOB जल्दी are से able to break through that spawn trap भाई setup, मैं they would नेम be चेंज able to करने वाला हूँ lean चैनल on का a heavy punishment towards Vitality. बब्बे And if 7FTW they do that, they'll probably be putting themselves in the advantage, at least in terms of those life count. Now we know that both of these teams, they've been getting their first attacking rounds on the control, even though the map is kind of defensive. But there's दाल always भात this खाई वो flip that comes around. Whenever Vitality is on that defense, they go in for those spawn trapping plays. They always make sure that they are the ones who use their own operators in such a fashion Yes, that Jenny they bhai, go Jenny and bhai pincer is towards the two best. different directions, and that is a big problem. जेनी that भाई भी दाल TWOB भात खाते हैं has गाइस to अगर deal आपको नहीं with. पता Here we go, ladies and gentlemen. उनका फेवरेट Crossroads दाल भात Strikes है is on the way as control begins now. Vitality, they need to step things up considering the previous loss might just bring the pressure back on them. But Vitality, it's all going to come down to these starting few frag to sort of dictate the pace of the upcoming moments. Dictating the pace is where it all lies, as trades back and Yeah. forth, but in favor of Vitality well right done. now, as they got नहीं भाई, two picks for their BHAV own भाई, favor. E. 29 and 22 Bobby. is where we go, and first took a progress, worked in बब्बे quickly तो भाई towards the लड़की A का as नाम well. हो था भाई No operators to play with, so it's going to be just sheer gunpower and the utilities, nades, the flashes. You need to work on with them, and angle's been washed out for shots to the toes, working perfectly. Second of progress. If it gets logged in, it's going to be super problematic for TWOB. Exactly. Oh my God, what's going on? 15 to 26. TWOB are getting absolutely decimated and dominated by the players of Vitality. What's your IGN? Look at this guy, Burns. भाई from the भव्य back. ही He had IGN such a अभी तो massive अक्षो की flank. है He AX spotted all the OP players moving up in the front. Burns was just waiting for him to get up close and personal in अच्छा this रात को फिर आप moment. कुछ और खाते होगे जेनी You भाई did manage to समझ find at least गया one, but it's completely fine when Bros is popping off. You do not need to take matters in your own वो hands मैं भी खाता because हूँ Bros कभी has कभी got his जब team मिलता है covered. तो I did not expect the crossroad strike to go in this way. Yeah. 20 and 5. What? Vitality's definitely pissed because they were not looking forward to lose on the previous search and destroy. And now Vitality, they just want to name this entire game onto themselves. Look at Bros with this R9 shotgun. Bros has been the best shotgunner I've ever seen in my entire life in Call of Duty. Absolutely. I mean, this is the kind of aggression we saw from Godlike when they were up against Anthem. But this Vitality squad just running away with daylight murders like that. No trades coming in whatsoever, and a perfect pincer play. Watching all the angles. That's all you need to do in Crossroad Strike, and winning in their offensive round on a defense-sided map. Just a brutal way to start things off. संभाल लिया देख ले भाई इतना बढ़िया संभाला है एक सेकंड मेरे को कुछ प्रमोशन दिखी चैट में आते सर क्या सीन है That's snap कौन सी on his promotion? opponent. Master and Ignite as well. They tried their best to sort of return मेरे को themselves फिटाक back शेड to दिखा the fray, but then 26 to 26 is going to be the score. Look at Vitality. They know when खुद की प्रमोशन कर रहा था क्या कर ले चैट आगे एक्शन फेस के मन कर रहा the ball's now going to be rolling in the इसके मन corner. कर रहा है अभी दाल भात They're का क्या really मुंह साफ looking कर forward to लो make it quick. दाल भात वाल नहीं केले ठूस के हो अरे भाई अच्छी भाई डाइट पे तो ये सब खाते सर अभी चने वने कुछ तो बन रहे हैं वो ले आऊंगा बीच में जाके खाने इसे थोड़ी डाइट बोलते हैं फेस कहाँ गया आ गया वापस आ गया नोट ईट दाल चल नहीं भाई दाल चल नहीं the opponents, but TWO Where is NFTW? they're still in the fray.
trapping everyone in the spawn alone, but finally Ignite finding the crucial इन्हें openers तोड़ने for गया था नहीं TWB, भाई as they'll be locked इन्हें in the तोड़ने first गया था tick of इतने progress. जल्दी थोड़ी ना Now, वापस yes, आता it's work down clock, stopped at 46. इससे भी जल्दी वापस आता। As well as visibility in terms of the hunter killer drone, Bros making sure he's still in क्या the सीन है fight. मैच का पहला राउंड वाइटैलिटी जीती ओके That's a little bit of a stinger for him. भाई TW जीत गई TWB once again swinging back to life. पता है मेरे को As they मतलब spring देख के into गया the था वो action. हाँ 10-12 being the score. TWB. War Machine. Let's see what they can do. War Machine definitely pulled out, but how much damage can he be able to establish? That's the question. बाबा भाई यूपीआई पे 100-200 भेजो ना ब्लिंकेट से चिप्स मंगाने Return back with the War Machine. For how long? That's my question. यार मेरे से भाई 10 रुपए का नहीं मंगाया जा रहा कुछ। They lost the lead. This is not भूख लग रही तू मुझे मंगवा दे चिप्स कुछ। मंगा मैं जैनम को बोला भाई ये तेरा बर्थडे तूने पिज्जा नहीं मंगवाया। ब्रो गॉड वो चला गया ओ भाई इसमें भी 18 मार दिया है भाई Steal the lead away. Purifier pulled out. Multi kills with it. Now 3-6. बट ये राउंड जीत सकते हैं Clutch is possible. Alright, the Pretty Missile has been called in as well. Just so many utilities being dumped into this one. Yes, it is super competitive. That is true, but I think so. One हो गया। Missile was just an over investment. ट्रेड बचा सकते थे हाँ It might come down to bite them in the back. अनकॉर्पोरेट यूनिवर्स पे कौन तोड़ेगा हाँ वो भी बात है Because Vitality, they're having a ton चिप्स of मांग रहे हैं हाँ भाई utilities. Yes, एक्चुअली Abyss चिप्स has मांग got रहा his claw to हूँ work भूख with, लग रही है so भाई You're gonna see a couple of operators coming in from the side of केले खा के TWB तो आया as well, but मैं दूं केला अबे चुप लड़ the previous one. ओ गाली सॉरी Annihilator pulled out. गाइस देख लो एक्सपोज्ड बिगल एक्सपोज्ड नहीं यार गेम पे ध्यान दो गेम पे ध्यान दो मजा आता है लेकिन यार लंबी लंबी स्ट्रीम्स करने में चेक ओ भाई पागल वागल हो गए क्या एक एचपी बचा है वो मीनो 2 मारा भाई तो स्क्रिप्टेड है भाई सब लोग एक राउंड जीतते हैं फिर दूसरा सामने वाला जीतता है डिफेंस में सब जीत रहे हैं Definitely now it's going to be bouncing. डिफेंस में क्या अटैक में शायद सब जीत रहे It's going to make light work. मार 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 ओ 3 मारा कोलैट Previous one is doing the शिट exact कोलैट मारा वो नहीं भाई एक एक करके मारे पागल है क्या अबे लाइन अप हुए थे इसलिए बोला पता नहीं second deck of progress is being worked into टॉक्सिक बनाना है विगल एक्सपोर्ट फिर क्या पता वेट हो जाए नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है टॉक्सिक भाई टॉक्सिक की बात नहीं है यार मतलब मिसबिहेव कर रहे थे भवे भाई मैं तो केले की बात कर रहा था चैट लाइक कर दो 1 लाइक चाहिए 50 के लिए Vitality, can they lose this lead? Covering is swearing. Play a little bit more with the patience. छोड़ो यार अब तो निकल गया मेरे मुंह से अभी तुमने मुझे ऑफ स्ट्रीम नहीं देखा भवे को पता है ऑफ स्ट्रीम कितना भरते थे भाई कॉडम में तो जीते गए थे टीडब्ल्यूबी ऐसा क्या है टेड भाई आपको वहां से कुछ आ रहा है क्या सीन है पैसे आ रहे हैं but the time TW on the की तरफ clock से is still ticking. They can't go for 1-for-1 trade. Abyss with the claw. He needs to make a play, and a massive play out of it. That Ignite has been taken down by Mino. Will be quickly traded. Oh, but Abyss has been 7v3. Long range shot coming in from Burns, finishing him off. 28 seconds on the clock. Still 30 of progress not being worked upon. Extinct is the only one anchoring towards that A point. 7v1 जीत गया Vitality. And with that, the life count will deplete. Vitality wins it out again. Oh man, Vitality, all they need is one more round to seal the deal. Here we go, ladies and gentlemen. We straight up just jump in the next round over here. बोलोगे तो तुम जानते हो कि मेरा नाम ही टॉक्सिक है हाँ यार जेनी भाई मैं टॉक्सिक स्ट्रीम नहीं देखता ठीक है क्रिश भाई ऐसा कर लो यार क्या यार क्यों मजे ले रहे हो यार मैं तो शरीफ सा मासूम सा बच्चा हूँ टॉक्सिक नहीं टॉक्सिक है ओ भाई अबिस भाई जस्ट फ्रेंडली स्ट्रीम हाँ यार फुल फैमिली फ्रेंडली ऐसे में 2 सब्सक्राइबर और चाहिए यार कर दो यार कब से मैं बोल रहा हूँ शर्म करो यार करवा सकते हो यार इतना तो भाई मैं तो अपने जिम वाले दोस्तों से करवा देता ये भाई देखियो ये बंदे का 1 सब्सक्राइब मार देना ऐसा करके 2 मार दिया बंस Still gets 2, and those 2 are going to be so crucial because that's what's giving them the advantage. Spear in the hands of Joko. He finds a 3-piece. Almost could have found the 4th. 4th भी लेता. Abyss is barely alive on a sliver of HP. Even मुझसे शरीफ कोई नहीं है हाँ यार जेनी भाई सही बोला. So much trouble.
Once again, Vitality in that lead with just 3 lifelines. Can this keep Wiggle it going? Can TWOP crack under that pressure that Vitality is building up? And even the SMGs are something that's dealing so much damage. Vitality, they keep on moving up, keep on pacing up with that lead. 10-13, not a lot of advantage left. Vitality cannot rely on this cushion. Oh boy. 7 seconds remaining, not a progress made towards either of the control points, and that's going to be another fight being won. 10v7. It out, Ignite taken down, but the first take nice being bros. worked upon. R9 Oh. right up close and personal. Trade ले लिया बंस ने. But only 1. 5v9 is the situation, and first take has been locked in. Operator लगा लिया. 8v2. GG. 1v6. Impossible. The bodies are starting to hit the floor, and that's it. Vitality. जोकोस का लेट्स गो निकला वे. Nice. Spelling mistake. कोई नहीं आर्यन भाई समझ सकता हूँ. Skill issue. Brilliant. Skill issue भाई. English issue. In the series, they're up by 2-1 at this point. Let's go. Making a statement, just as we were talking about. Now, 50 लाइक हो गए दोस्तों. मुबारक हैं. 50 का 100 भी कर सकते हैं. अभी 2 मैचअप्स और बचे जो हम देखने वाले हैं. And even with the Annihilator this time, tried to 2-1 हो गया overall. Because Bros है ना? with the claw, his only job मजा is to आएगा. take control of whatever's in the mid. And when they are on the defense, my goodness, just look at that play. Outworldly, absolutely crazy. कितने मैच होते हैं? It's best of 5. तो 3-2, 3-1, 3-0 जैसे भी तुम जीतो. In total there are 6 teams. Each group has 3-3. हर एक ग्रुप से आज एक टीम बाहर हो जाएगी. फिर 4 बचेंगी. उनका कल सेमीज और फाइनल्स एक ही दिन होगा. Extreme Sniper ऐसा क्या? Just the final nail in the coffin. It all came down to the operator usage. Zyro with the 26 kills for himself. मैंने ना तेरे यहाँ आके तेरे को इशू बना देना है. अच्छा ऐसा क्या आर्यन भाई? Was not being able to pop off. आर्यन भाई फुल जैसे डोमिनेंट नेचर के भाई. आर्यन ने कितने साल के एक बार बताना मेरे को वैसे. Just doing an insane job into that. How old are you, man? Today it just seemed that maybe at least Who says match results will shuffle? I was saying, but let's see. Still have 2 maps. Still have 2 maps to left. एक सब्सक्राइबर बढ़ा चैट. कौन है वो नया बंदा? Let's welcome him. साथ में. Who are you? Thanks for the sub, भाई. Summit's going to be the one to kick things off with, and we know Summit's sort of like a close range map too. So you need Summit to away, Bhave. Oye, Bhave. Now will be in his full potential. Mic call, Bhave. Even the map's going to support his play. That is true. That is Bhave definitely इसी छोड़ गया. बड़ा बेशर्म है. R9 to utmost perfection. Whenever you're seeing him taking those fights, it's just up close and personal. And we have seen those shotgun plays. 15 max मतलब? क्या चीज़ 15 max? Talking about Summit, you have an idea about how It's my 7th ID. Krish भाई YouTube हटा देगा यार फिर तो क्या मतलब? But कोई नहीं. Thanks यार. Thanks for support man. Of the Summit Hardpoint between these two teams, Vitality and TWOB taking on each other as towards the first. Let's go. Fights going back and forth. Maybe not. TWOB finds भाई a तो good shotgun positioning map and है. they take the lead at least for now. इसमें तो परफॉर्म करना चाहिए हमारे ब्रोज भाई को दोबारा. Maybe from the main, but they've got to go in for some flanks and the pincer maneuver, which is not being allowed whatsoever as TWOB control all the choke points. Burn, he needs to make a play out of it. Will he be allowed to do that? That's the question. Again, that question will be answered soon enough, I guess. Burns and Bros, the burning Bros, the duo needs to activate. 15 max अच्छा उसकी एज गेस कर रहा था क्या? Already got the control, and once again, throughout 5.56. हारे नहीं भाई ये क्या कैलकुलेशन लगा वीरियस ने लोल. Getting the advantage out and over. Once again back in their 18 एज है. अरे वैसे छोटा है क्या फिर तू? आर्यन भाई छोटू हो गया. And that's what is exactly happening. आर्यन भाई तुमसे पूरा 1 साल बड़ा हूँ. Come on chat, one more sub कर दो भाई. Knight is stepping up at this point along with Burns. They're doing a great nice job. Mino 3 pick. pick. To find more because on the other side you see Abyss, you see Master. They're just not stopping whatsoever, and that's going to be another play. Ignite and Abyss. Oof. Combine it with Master. It's just a merciless play from their side. 36 and 5, and even more counting out nice. now. Joko's good for 2, but how many more can you get? The question. P2. To look at the answer. Abyss and Master, these guys are now starting to be such a big pain for the players of Vitality. छोटू ऊपर छोटा नहीं हुआ ये ना बात.
Let's go. But they still haven't really got the points control. As I say that, now they have managed to establish Nice Abyss भाई, Abyss full form में है. As a IGL is getting so much frags. So far, the close range is something that's their forte, I guess. Good retake towards P2 coming in from their side, and yes, they've been working it out really well. Last few seconds of scrap will be contested, maybe just from one person. भाई भवे को होना चाहिए, VC में मजा आता है यार. Submit है. Rotation coming in directly for TWOB, but Vitality, they do have an idea for that. As Claw has been pulled out perfectly, Bros, making sure that he tries to shut everyone down, but the spawn is just not in his control, and what a way to flip it out in such a crucial time. Exactly. Claw being pulled out from this guy. तुझसे भी छोटा है. फालतू 16 का है नो. क्या ये मैच का प्रेडिक्शन बताओ. क्या स्कोर रहेगा और कौन जीतेगा तुम्हारे हिसाब से? Master extincts. These guys are just performing up to the mark, and even Master once again. War Machine being pulled out. This man is now going to be looking for to line up the corpses. Prediction दो chat. What he's doing. Master 3K on the board. Damn, भाई Master. Someone needs to stop this team. Annihilator as well from Extincts. What's going on? ऊपर Evan. This team looks unstoppable. That is true. ये वाला Hardpoint का full control लिया. Bringing his weaponry out will be shut down, but the question is how long can Vitality और डायल go 250 forward with this, 185. because they do not have the spawn control. इतना है ना तू कौन मैं 19 का हूँ भाई. With the members, this Hardpoint is definitely lost. 19 का हूँ. Indeed it is. Shocking in the hands of Zyro. Let's see how 250 243. इतना exact कैसे बोल रहा है? Vitality. Look at them. Right 250 180. I believe TWB मैच जीत रहा है. Playing or winning the rounds With 250 to 200 or 220. To start holding the choke points, and that's what they're doing. And I don't know, over Vitality, they're bouncing back on the kill feed. Look at Mino. This man is popping off a triple kill too from him. But eventually, Mino तो Burns is भाई going to be मस्त the मार one रहा to है. take himself down, I guess. A beast. जोकोस दो मार दिया उनसे पहले. Nice. Double kill with that Sparrow. Good shots. That was a crazy shot coming क्या in. स्कोर था Yes, SND का? right, SND का 7. But the question is who will control the spawn? 7-4 था You शायद. need to have these spawn controls. Jokos and Mino says we're going to control And the Hardpoint TWB first won. as the Annihilator has been brought Karan out. bhai. Good shot coming in from him. Takes care of the one coming in from the cat. Exactly. Mino, Annihilator in his hands, misses that crucial shot, but his team has got his back, and he finds the second one. Mino looking forward to get the third jump one pick as well, दिया but मास्टर no, ने. unfortunately a jump peek from the opponent's going to get him. कास्टर में सेम चीज सोचते हैं एक साथ. मैं भी कास्टिंग कर सकता हूँ मतलब. But still the shotgun from Bose is something that's going to deal so much damage. Burns finds one. And now Vitality looking forward to gain that momentum, looking forward to keep on moving with the pace that they found themselves. Nice, Finally, bros. Vitality making a comeback inside this entire Good game. shots. The shotgun's now starting to click in. That is true, and they even अरे got the prediction entire तो scrap strong. pack हाँ भाई, themselves. exactly. 81-108 is the score difference, but और Vitality TWOB काफी is comeback where कर रही है they're वाले looking Hardpoint solid. में. The P1, they P1 have been decider है looking भी. relentless, threading in towards the P1. That's going to be the spray down coming in, ignited Master. Will Nice be able to ignite. take care of two, bro. In the meantime, will be getting a knife, but that is all he's going to get. Jokos finally Guys, make stepping sure up drop for a his sub. team as We need well. one more Hardpoint subscriber still जैसे तुम stays लेफ्ट पे देख सकते हो contested. for And finally we will see TWOB 7.04k. losing this तो one. कर दो भाई. Vitality, a crucial win Please. for them. Indeed, it's a Request है crucial यार. win. 109-92. Vitality slowly and steadily building up to that इतनी lead. मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए. Players of TWOP. मैच देखो फिलहाल कोई नहीं. स्कोर बराबर होने वाला है. Just happening back and forth. It's tough to keep track of that. But one thing is for sure, the points control is something. Nice one, nice one, nice one. भाई Vitality कर रहा है, comeback crazy comeback कर रहा है. Does not really have a lot of Flip हो ammunition सकता है left चीज. on that gun, but then turns around, slaps another man down. Wakes his TWOB का strong map है. Let's see, let's see. One man's not able to perform, the second one takes matter. Bros in दो his ले own लिया. hands. Vegas एक ले लिया. One point has been given to TWOB. Bros तीन ले लिया. Hard points. You can clearly see that Vitality. They won the match. भाई Bros 28 kill पे है भाई. Highest in the lobby right now. Bros हर मैच में highest kills मारा है. How much more can he get? That's the question. One, that is it. He's got to be happy with that one. Bros 7038 करता हूँ. करण भाई He killed himself. ऐसे मत करो यार, please यार. Joko's with a two-piece as well. Once again, keeping Vitality Vegas in the Burns. race. Purifier Kill was देखा there, देखा मैंने. but did not adjust his crosshair कम है, in time, काफी कम and that's why है. he got 8-8. taken out. But Sparrow Bros too cover was up कर रहा है, to be pulled out. honest. A lot of violence Bros और by Mino देखना. Zyro Bros on 30 the पे आ गया. opposite side. He's able to get so much down. War Machine as well is able to get so much value. Master just keeps on भाई staying lineup the पे same मार रहा है. angle. TWOP on the kill feed all over.
Bro लाइनअप करके मार रहा है. Stopping whatsoever. That's the name of Vitality, because again they were the ones who had the control in the early game, but a great comeback from TWB. Bros भाई. Wade's still going back. Burns भी shotgun निकाल लिया. Controlling the hill as of now. Scrap time. I don't think so TWB are letting them take it whatsoever, as we will be moving towards the P3 as well. Make sure to like That's going to be where the contest remains for the spawn, as TWB with those trades. Yet again it goes back and forth as Vitality finds the final few. Annihilator pulled out from Extincts. This man's favorite weapon, Annihilator. Nikal, Let's see nikal. how much can he actually annihilate inside Nice the one. lobby. One was found, the second one was found by his teammate. अरे टाइमिंग हो गया. खत्म हो गया इसका. अच्छा नहीं हुआ. Never mind. Needs to find at least a couple of more. Claw being pulled out by his teammate. मीनो भी पिक लेके रखा है. थोड़ा आगे आ जाए. Nice. Nice, दो मार दिया. Keeps it clicking up. Jokos finds one. The trades now Vegas पे हिल है. back and forth. TWB. Bro, Vitality वाले Hardpoint में थोड़ा lead ले सकता है. Something that's keeping the pressure on top of the players of Vitality. उन पे वो है spawn trap का control है. Vitality have the control. They are now closing up onto that lead. Nice Burns. Built up by the players of TWB, and as soon as the closure, as soon as the equalization is found on that lead, Vitality's confidence. Zero got 2. Zero got 3. Bruce got 2. Was boosting only for so long. भाई shotgun वाले सारे मार रहे हैं. Control of the spawn, and this Not gonna is lie. one of the most important hard point. Bruce, wherein you 36 need to take kills. control of the spawn whatsoever. However, bros! Oh my god! What a crazy flick coming in एक from और him चीज with नोटिस the कर. shotgun Burns in the weapon face. switch कर रहा है. क्रिश देखना. बीच में shotgun चला रहा है, बीच में switch plate चला रहा है. Maybe he's playing as a support for the point. OBJ के लिए. According to point खेल रहा है. TWB once again just gaining that lead, Nice, getting bros. that momentum. Vitality's just not able to find that sigh of relief. Nice, and that's bros. an Nice, issue. bros. But now the mow down from the claw. This guy, bros, is being such a big 40 kill मार दिया भाई He's being bros. such a massive nuisance for the opponents. पिछले हार्डपॉइंट में 65 मारा था. अपना रिकॉर्ड तोड़ेगा क्या? क्या लगता है चैट? It's definitely something that's helping them flow in क्या लग back रहा है? inside the entire game. But for how long can they sustain the control? वो क्या intense score देखो. Onto that lead. The Hardpoint is one of the most beautiful matchups, especially between these two teams, because it's always so close. Neck to neck. And just as you mentioned, 171 to 172 now, lead going back in the favor of TWB, as they're the ones who are controlling the pit. We're going to see how long can they do that. Chat अभी भी time है prediction change करना है तो. It's very much close. ये भी जाएगा 50 plus आराम से. Letting them end the objective whatsoever. This could have been way too close. भाई मीनो भी 31 पे है. Taken out. सामने भी दो लोग 30 प्लस हैं. Zero and Master. Back with 192 once again. The consistent leads just on top of them, and that's an issue. Vitality need to get the point control as fast as possible. And that's nice shots, Master. Zero भी operator निकाल लिया अपना. Zero 3 निकाल लिया. Wherever he thinks that the opponents could be. Does not really have a lot of bullets, or does not really have a lot of nades actually. Operators क्या clutch up कर रहे हैं लोग. Sam's was slaying Italy win. Let's see. Almost found the connection. Sam's को तो यार he needs rest. उसको दो उसका time ताकि वो stage 5 में perform कर पाए. TWB once again they find the flow. Absolutely, and now finally reaching up to those 220-point mark, 30 more seconds onto the hardpoint P1. It's going to be contested, but they know where the player is. They've got to move out, and again, trades back in the favor of TWOB. They found nice, the bros. opener, and this Bros is the 45 chance हो गए. for them to probably close things out. Yes, it will not end up onto this one, but the rotation is going to be super important. The pressure Come is on, Vitality, you can come back. 172 accumulated. Vitality needs to find a full Arey, stop Joko, to TWB's point control, because TWOB, they have been looking phenomenal on that defense, but something needs to stop them. Nice. 240, TWOB, Break मिला but late हो गए. They can smell it. I guess we're probably going to be going to the final map. There's a chance claw being pulled out by Abyss. And I guess if this man does find the mow down, it's going to be a massive issue. But no, instead, Burns, nice. They return nice back Burns. favor. Points control was once again back in the hands of TWOB, but I guess it gets denied by Vitality. They are keeping this entire matchup breathing. Absolutely, and yet again, Hill being contested by them, but no one's there. And Vitality nice. tries to jump in, but they will not get to find any kind of openers. 249 and finally reach the 250 mark. And it is going to be crazy TWOB making a crazy comeback. You wanted a 2-2, let's go. This is as bad as it could अभी होगा SND. 2-2, ladies and Let's go, bhai. Let's go. What an interesting matchup, bhai. TWOB making it look super competitive. मजा आ गया यार, अच्छा मैच था. You can clearly tell the players are excited. They're probably feeling that adrenaline मजा आ गया bro, मजा आ गया. through their veins.
I mean, you were jumping around here when you were seeing the match so close. We can already understand what a the match, players Chad, what would a be match. going through. All the utilities used up perfectly. War machines pulled out on point. Along with the Sparrow and Lilator Claw. Jeez, everything was just so on point for TWOB, and that P1 was where everything started for them, and also was the Nice है ना करण भाई, क्या crazy था भाई ये, और मेरी prediction सही थी ये मैच के तो, back and forth, मेरी prediction सही थी. This series is always so fiery, always good, so good, fiery. good. Once Kill again, count ladies and देखते हैं. gentlemen, we're going to be moving forward. Bros to the 47. decider between Team Vegas Vitality and TWOB. could Whoever have wins this done better थोड़ा, will be moving up the charts. but he was good at OBJ At though. least the elimination sword is not going to be looming on top of their heads. That is true. What's up Melodic, welcome to stream यार, कैसे हो भाई? What's up, what's up? Can make sure is the How are fact you? that guys, you are not watching the restream. COD Mobile में खेलता नहीं अभी Melodic, but हाँ, we are doing the watch party for the event. Permissions थी. Seen these teams go to कैसे हो भाई? the map. Now last time it was meltdown. बाकी जो भी stream में should drop a like and a sub. We need one more subscriber for 7.04k. करवा दो भाई. जैसे तैसे करवाओ, किसी को बोल के कराओ, जैसे मर्जी कराओ, करवाओ भाई. I don't know भाई, मुझे नहीं पता, चैट हो जाना चाहिए. ये मैच खत्म होने से पहले करवा दो. मैं गॉडल का चिकन भी आ गया, ऐसा क्या? मेरे को नहीं पता यार. I'm not following that. BGMI वाला thing. अभी फिलहाल तो. All good buddy. सही है. That is where you gave them the name. शायद में वेस्ट प्रेशर में आ गया. हाँ, बिकॉज उसके फ्रैक्स कम थे मे बी. Zyro gets the pick. SND है भाई ये तो. Good question. Vegas trades. Well, for now, Vitality, at least Vegas. Vegas SND में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जो भी बोलो. SND में बहुत अच्छा खेल रहे हैं. अभी देख रहा हूँ watch party सही है. Yes sir. Watching at home, do not gamble. Took me a second to realize what you actually. कर दो meant, chat, but like, yes, subscribe. I did realize that. That was a nice one. Gonna give you one for that. 4-on-4 situation, ladies and gentlemen. The dust now starting to settle inside the round. Come on Vegas, maar. Questions starting to pop up, but Extincts making the fog a little bit more clearer, and we can now see how the situation might be rolling in the future. Minute trades. Even Minio is able to return back with a piss taken down. 2v3. A 3v2 scenario. Vitality on a mad disadvantage. Not looking too hot. मैं भी हाँ वही end day पे देख लेता है कुछ भी ऐसा. Jokos needs to make a play. Officially मैं mostly follow up करता हूँ मैं आर्यन, but ये सब देखता Skyway के जो भी होते फिलहाल. Will be going in for the rotation. He finds the ball. आर्यन तो rio story होते हैं. Ooh, nice Mino. Gets a crucial pick. We were thinking Jokos would be Mino the 1v1. but Mino's like, fine, I'll do it myself. Wow. Crazy हो रहा है भाई. If you've got a player performing like that, well, you're not even going to need a sniper. And he's this man just played so well. Sneaked in behind the lines. अरे दिख गया इसको. Nice shot. Speak about sneaking in behind the line. I guess Extincts does it better. IGL versus IGL. Extincts has got a bigger brain, I guess. Yeah, Extincts IGL है. अभी है ना मेरे हिसाब से तो. Definitely bringing in the exact same. हाँ यार, I mean, मस्त मारा मीनो. Ground is shaking because the train is moving right past them. Probably give them a time to go in for a quick rotation coming in though. However, Jokos with the DLQ. Welcome back. DLQ पे. But no shots being connected whatsoever. Bros gets one. Nice, nice, nice. अच्छा है. That's one opener for them. भाई Bros आज क्या crazy form में है भाई. Can they convert? Only time can answer a question like that. Sniper being pulled out. And this is where it's going to be a little bit more interesting. VC आएगा कोई? Considering we've got a 4-on-5 scenario. All right. This is getting a little bit more tougher for the players of TWOB, considering they already have the lead, shot. but now the lead might be Zyro stolen away, and this is what's exactly happening. Zyro 3 ले लिया. A 1-on-2 scenario. Vitality having the Zyro का ace है अगर वो मार दिया. Keep on playing with each other. Keep on playing. Zyro का ace हो जाएगा around. अगर मार दिया. For the defuse, one man is sticking at Jokos. Stick ही He's not करेगा. going to be stopping anytime soon. Zyro in the back, and I guess that's it. Man इसको did चाल not करना even चाहिए था. bother to peek out. Vitality bringing क्या लग रहा है चैट कौन जीत रहा है? equal numbers, doing it perfectly. चैट 2-2 हो चुका है फाइनल मैचअप है 1-1 हो चुका है SND का स्कोर. व्हाट डू यू थिंक? चैट में जल्दी बताओ अपनी टीम का नाम एंड व्हाट्स द स्कोर डू यू थिंक? Great job. But these जल्दी ideas आई have वांट been 10 के 10 जो so देख रहा है सब एक बार very प्रेडिक्शन clutch, डाल so दो. important points. कम ऑन They यार. do it again, that is for sure, but all the others need to step up as well.
Slowly creeping ahead. Oh, क्या shot मारा है, क्या shot मारा है. Great shot. Extinct so quick with the reflex. Sniper clicks. Oh, timing, Jokos. Oh no, Joko's gonna find the equalizer, but no, scopes out in the nick of time. Timing, bhai, timing. Misses out on the opportunity. But still things are now 4v4 because Bros has got his back. Definitely did. Super slow round coming in from TWOB. So करण भाई क्या लगता है, कृष भाई क्या लग रहा है? But this time around they've decided to slow the pace down entirely. Master. Oh, क्या range थी भाई? Bros and Vegas gets the pick off their own abyss in the meantime, finding some equalizer on towards the other side. But the question is, how are they going to retrieve the bomb as it is being reinforced by the members of Vitality, and it's going to be super difficult to break through that setup, especially with a sniper in hand. 3v2. Vitality, you've got Vegas, Burns, and Bros. Extincts and Abyss on TWOP. But look at the shot. Bros. Clicks it. Nice one, Bros. Shotgun supremacy, bhai. Obviously, Vitality. Let's see, bhai. Let's see. Obvious तो नहीं हो रहा है क्योंकि close जा रहा है. But हाँ. Every single time. आपकी prediction तो मैं समझ गया. Doing the exact same thing yesterday. Train जा रही है फिर से. Exact same thing today. Ground is literally shaking as of now, especially for TWOB because they need to get the win onto this one. Look at this. Once again, we haven't really seen anything start just yet, anything ignite just yet. Vitality on the lead with just one round, but any of the round leads can actually mean so much to these teams and the players. Nice. Vegas finding a bit, 4v4. and then instantly a trade was over there, but still a 4v3 timing. Vitality could lose out that lead. Vegas मर गया उसके चक्कर में. Man number not exactly favoring Mino the भी मर गया players, नेट but से. TWOP, these guys are just hammering Jokos in down the players 1v4. of Vitality. It's not Nice shot, Jokos. What a quick shot that was. Sniper swings back into life as Jokos looking to find the second one too. Timing का scene है लेकिन TWOP playing a little bit more to the back, but that shot missed, and Extincts is not going to let him go. Time लेके मारना था, but वही है, time नहीं लेता. It was a sniper. Wordplay casters, हाँ भाई wordplay बढ़िया है भाई casters का. At least them 3 times. मस्त casters इस बार मतलब W casters. Times, but my goodness, that crazy flick up close and पता है train से player मर जाता है. हाँ I know train के नहीं पास जाएगा तो मर जाता है या नीचे track के. Jeez. I know. मैं भी first time वैसे ही मरा था मैप में. Zyro 2 ले लिया. Mino 2 ले लिया. Mino 3 ले लिया. Jokos 2 ले लिया. Bro क्या था ये? What? 3 मारा Mino 2 मारा Jokos खत्म. Why do these teams hate me so much? As soon as I say it's trades going in favor of TWOB, Vitality pulls out a 4K. ये क्या था? Second. Fastest round भाई. Ignite and Burns दोनों उधर से 0-0 पे भाई. They need to step up. Round was lost. थोड़ा है ना. Once again, the Oppers. Bros gets 2. Oh, Bros. Ball से कॉल मार दिया. But then Bros and Burns. The Burning Bros. Vitality. Burning Bros भाई. Sure that there's going to be a lot of pain and hurt being inflicted on the players. Master ने Bros को मारा. 3-2 being the 4v2. Clearly Vitality looking forward to carry on that momentum, carry on that advantage. And TWOB, it's getting way too tough for them to stop Master ले लिया 4v3. Another one found on the board. Now it's being taken down to 2v3. This seems doable out and over. The bomb is not in their control. Vitality Red on सोचा Vitality got beat. हाँ exactly. जेनी भाई लेकिन देख रहे हो 2-2 हो रखा है और कितना इंटेंस जा रहा है लास्ट मैच भी. मजा आ रहा है. घर पहुंच के आ जाना वीसी. अभी 2 मैच और करेंगे वॉच पार्टी. That shot should not have been missed. I2K वाले जो मैचेस हैं. 3v1 or 2. Oh no. Nice shot Vegas. Instant flick on Jokos मार दिया. Nice. Vitality gets another round on the board, ladies and gentlemen. 2 rounds lead. This is not going to be stacking the pressure on top of the players of TWOB even more. Vitality अगर ये जीत गई तो they are qualified क्योंकि I2K is a easy thing for them comparatively अभी. Just have to wait and see if in case that be. तो TWOB qualify होगी but उनका seed 2 आएगा. उनका गोल्ड से मैच लगेगा सीधा फिर.
Quick snipes. Oh, nice bros. दो मार दिया फिर से भाई. ये क्या है ये भाई? Again, just someone take away the hopper from his hand. R9 is something that is using perfectly. भाई हर राउंड 2 पिक निकाल रहा है भाई. हर राउंड 2 पिक निकाल रहा है बंदा. On to. I love No flawless but थोड़ा कर रहे हैं. हाँ I know. अब चोक मत करना. Exactly यार. Burns is the only man, and this man देखना अभी 1v3 बचा है. Take down all the 3 players single-handedly. I don't think expected peak था. He doesn't have any teammates to back him up, and that's why his position gets compromised. Good map awareness from TWOB. I mean 4-3 into the crosshair of the sniper. भाई मेरे को लग रहा है OT जाएगा. पता नहीं फील आ रहा है. Worrisome for him. OT जा सकता है चैट. ये OT जा सकता है. In terms of kills, Extinct and Zyro both on to 9. Slowly. I guess like करो यार. क्या कर रहे हो? 50 पे स्टक हो गया like counter. Minnow with 7. Like बढ़ाओ थोड़े. Also एक सब्सक्राइबर चाहिए. वो भी बढ़ा दो भाई. Jokos gets the pick. Joko shuts down Extinct's vitality. Look at this team. Oh my God! Even pros Jokos मार दिया एक और. Find a kill on the Ignite. A 3v3 scenario. 3v4. I mean, the bombs being planted too. That's never tell 6 round lose in a row. ऐसा क्या? Building up even more because TWOB needs to be quick. I didn't realize that. The shotgun in the close. It's gonna find him. Zyro. Good opening. Zyro को 1v3 एक मार चुका है. Start to good things. A 2v1 scenario. Vitality having the man advantage. All they need to do is just play with each other because this shotgun will try to isolate the duels. That is true. Switchblade in hand. You can try and go in for the spray transfer, but crossfire है. Crossfire है भाई. Looking forward to. They've got a sniper. They've got an AK to work with. Crossfire था. Kilo 1 for 1. Doing the trick. Let's go भाई. Let's go. OT नहीं जा सकता. Perfect job. OT जा सकता है but अभी 2 round चाहिए लेकिन है ना. Both of them 5 and 3 moving forward. Winnable for vitality भाई. One step away from the map point and also. ये push कर रहे हैं. Stack push कर रहे हैं. TWOB वाली शायद. Again the express. I don't know if anyone out there is feeling the deja vu, but I surely am. Indeed, man. 5v5. Nothing happening just yet. Just a little bit of scratches. Abhishek pick liya. TWOB trade. 3 piece. Vitality's not able to return back at all. 4v3. 4v2. 4v4. Vitality struggling to find those kills, struggling to find those bullet connections. Wins on bros, yeah, exactly. Clearly is not having a good time. Joko's in the 1v4. Finds him, shuts him down instantly. Vitality, it's all down to Joko's. What can a single man do with just a sniper in his hands? So much to live up to, ladies and gentlemen. So much भाई ये clutch कर ले भाई, मजा आ जाएगा. Movement हो जाएगा भाई का movement हो जाएगा. 4K or nothing. 4K to get his team closer to the victory. Bomb not in sight. He definitely is in the crosshair. Extincts. Finishing up the job. 5 and 4. Slowly creeping up. TWOB. They're not going to let them win just like that. And this भाई close हो रहा है. Another overtime that we might witness today on the Search and Destroy. TWOB, they mentioned this in their मैंने कुछ खाने का रखा है. मैं लेके आऊँगा लेकिन मैच के बाद. They're really going to make sure that they're going to win against the players of Vitality, but they can't if they give picks like that to Jokos. And once Jokos is activated, it's going to be tough to shut him down. Nice. That was, but then an instant trade-off between Vegas and Mino. Zyro in a 1v4. Vitality once again back in the swing of things. A 1-on-4 scenario, ladies and gentlemen, and also the bomb goes down. Vitality in a big advantage. यहाँ से थ्रो नहीं करेगा Vitality, मुश्किल है. Vitality, and then after that, Vitality needs to win one more. Finally, the B side hit came perfectly, and that to a perfect time. Nice shot. Good shot from Zyro. That's a good shot from the R9. But how can he find 3 more when they're all just playing at a very far distance? And the distance like that. Corner check नहीं करा. That's it. Yep, that is it. 6-4. एक round चाहिए Vitality को. It's going to be a knock on the door. To qualify. 6-4. Nice. Let's go. That's one V for victory. thing I liked in the last 2 minutes, right? First thing was definitely Vitality moving forward with the B hit time and time again. क्या लग रहा है chat? खत्म है? Got to take care of Extincts. They're gonna walk into his crosshair just like that. Though still. दो मार दिया. Find the openers. Extinct straight लिया. Extinct एक और मारा. Point straight. 2v3. Here to equalize things, right? A 2v3 scenario. 2v2. 2v2. But then 1v2. Extinct ने 1v2. Oh, what's going on? Vitality. भाई Extinct ने 2-3 बार करा है 1v2. अभी भी chance है. Pros is going for the bomb now. Once again, What's up Delta? Welcome to stream भाई, क्या हाल है? Ladies and gentlemen, Extinct मारा एक. Oh,
Extents finds Joe. 1v1. Where is the second man for Vitality? Bros, he did spot the man in the front. Bros has got his hands on the shotgun. He needs to bait out the first shot from Extinx. Extinx is not a person who's going to lose out. कल जैसे हो जाएगा 3-2 स्कोर पे जीतेगा. अरे ऑलरेडी 2-2 चल रहा है ब्रो. डेल्टा ऑलरेडी 2-2 चल रहा है. ये फाइनल मैचअप है. And also packs a lot of फाइनल experience. इस इंडिया. That is true, but I really love the adjustment coming in from Bros because of the fact that he कल जैसे हो गया वो अच्छा you were saying that ठीक है my bad. Extinx कर लेगा यहाँ मेरे को लग रहा है वाइब आ रहा है पता नहीं let's see. उसने 2 बार क्लच करा है. Wait, Bros. He's going exactly in the भाई दोनों का रीड सेम है. दोनों का रीड सेम है. Oh my god. A shotgun up against a sniper. Oh my god, this can be a big brain read. भाई. There's a reason why this man is the IGL of TWOP. He expected the A side hits. Can the sniper find the connection? No! Let's go bros. Nice try यार Extinx. उसका रीड अच्छा था. Ladies and gentlemen, it's going to be Vitality. Let's go. अरे वेजर भाई पीछे. वेजर भाई. No matter how hard you try. Nice. TWOP, they're just not able to taste that victory against Vitality. NTNT, yeah. And with this matchup, Nice try, bro. also secured. Next try. अभी इंटरव्यू देखते हैं उसके बाद जाते कुछ खाने को लेके आऊँगा. ब्रेक टाइम में कुछ खाते. एंड फिर we have I2K versus TWOB then Vitality versus I2K. Lined up. Let's go. Bros on top, yeah bro. Bros हर गेम मारा है. हर गेम, every match. Vitality and अगर हम बात करें या प्लेयर से तो चलिए आपसे शुरू करते हैं सर. ये तरीके की इंटेंसिटी इतना ज्यादा नेक टू नेक कंपटीशन क्या आपने एक्सपेक्ट करा था? मतलब स्क्रिम्स में तो देते थे पर मेरे को ये पता नहीं था कि लैंड के प्रेशर में इतना दे पाएंगे. बट आई थिंक कांग्रेट्स टू देम आल्सो कि इतना अच्छा खेले वो. आई मीन दे ग्राइंडेड सो इट्स वर्थ इट. ऑब्वियसली एंड इसी के साथ इसके लिए स्ट्रीम पे क्या इधर आना. आइए भाई ये क्या चल रहा है चैट. ये क्या चल रहा है. कुछ इनर क्या चल रहा है. क्या ऐसी खास बात रही है इस मैच में जो आप कभी नहीं भूल. भाईचारा बढ़ रहा है भाई. बर्निंग ब्रोस लेट्स गो. भाई अच्छा खेला लेकिन बहुत अच्छा खेला. ब्रदर आप एज ऑलवेज यार मुझे बता. कुछ भी नहीं था. ये तो कुछ भी नहीं था. ट्रैश टॉक. लेट्स गो. बाकी है. पिक्चर बाकी है. सही है. ये बताइए कि यार आपको जीत के कैसा चीरू बीइंग नॉटी. यस ये बहुत ज्यादा नेक टू नेक हो गया था और वेगस इतना कुछ नहीं बोलेगा आई बिलीव. लेट्स सी. क्या फील कर रहे हो अभी आप? I feel happy obviously. I mean it Basic didn't answer. go close, which we didn't expect. But it's good. We won. चलिए एक काम करते हैं आईजीएल से बात करते हैं क्योंकि भाईचारा आउट ऑब्वियस भाई. सवाल है बिकॉज़ आपको पता लग चुका है कि आप आगे जा रहे हैं. फिनाले में आप क्वालिफाई कर चुके हैं. फिनाले में आप खेलने वाले हैं. कैसा फील हो रहा है इंडिया के पहले लैन में आप फिनाले खेलने वाले हैं? टेल मी समथिंग. We are very happy and excited, especially to play Godlike again in finals and. भाई ने स्क्रिप्ट बता दी यार फिर से. They tried their best, I think. Yeah. भाई ने फिर से स्क्रिप्ट बता दी यार. गॉडल आ रही है सामने. हम बात करें अभी की. सुनीता ओपी है जी. वो कौन है? विनर आ चुके. ये वाली सीरीज बहुत इंटेंस गई थी. बहुत मजा आया. क्योंकि लाइक सैम्स को आने दो तब बताते हैं. ऐसा क्या? ये वाला लेवल यहाँ था. बात तो सही यार. सैम्स भाई फटाफट रिकवर हो जाए मजा आएगा. उसको भी देखेंगे लाइन में. Over to you, casters. Well, a kiss a homie moment, right? Just friends, and maybe that's why they've got such a good synergy. Bromance out That's there. Yeah, bromance. Love that, but seriously, Exactly, भाई. Casters मस्त है यार. A close series just like this, and who better opponents than TWOB up against Vitality? 2 times they played against each other, and both the times this has been the exact score. Exactly. But one thing was yes. said by one of the players from the side of Vitality, he said that we cannot wait to face Godlike in the finals. True. That means they're already so confident that they're going to move on forward towards the finals, right? I mean, Godlike are the ones who said on the day one, just give us the trophy. So yes, this kind of मजा आएगा भाई फाइनल also में. expected Exactly. of their arch rivals. Yes, Godlike. Yeah, they leaked the script. Why they leaked it? हाँ ना. But if this is the kind of performance we're going to witness from कोई Vitality नहीं. and even TWOB. तो गाइस मेरे को 2 मिनट दो. मैं कुछ खाने को लेके आता हूँ भाई. बहुत भूख लग रहा है. तुम देखो कंटिन्यू करो. जब तक इंटरव्यू वगैरह आते हैं मैं आया 2 मिनट में. ठीक है. I mean, we had bros just going on absolute fiery moments. This guy was feeling the heat of the moment. This guy was feeling himself at that point in time. And he was just, in general, doing a fantastic job, right? And speaking of that, right, we know with how Vitality has been looking like when it comes to their team play too.
one thing that now the players at TWOB needs to look forward to is how can they qualify and win the upcoming game, because that's going to be such a crucial one against the players of I2K. That is true. Now, yesterday they were able to win in a convincing fashion against I2K. We did see that happening. They have to repeat the exact same thing. Now, we saw in the Group A, right, how Godlike, yes, winning out on all of those matchups, easily qualified with a 4-0. But on the other hand, NS, they were down 2 maps and they made sure that they would be winning against Anthem in a 2-0 fashion as well. Yeah. So I think so we're going to see probably the same thing in this one, wherein TWOB might get the upper hand against I2K just because of the fact that they are the invited teams. Exactly. Ladies and gentlemen, before now, it's time for us to toss to a short break, because on the other side of this break is going to be the matchup between the I2K.
हाँ जी चैट, क्या चल रहा है? कौन कौन है? लेट मी नो कौन कौन है चैट। एक मिनट फेस कैम ऑन करता हूँ, बस मैच चालू हो जाए। इंडिया में भी टूर्नामेंट हो, फाइनल सिक्योरिटी होना ही है। हाँ, दैट्स द ट्रूथ। बट गाइस अभी मैच होगा I2K वर्सेस द वर्ल्ड ऑफ बैटल Snapdragon Pro Series powered by Samsung Galaxy is brought to you by Snapdragon Elite Gaming. Here we go. Samsung Galaxy S23 Ultra, Monster Energy, and कौन कौन है यार चैट? लेट मी नो कौन कौन बैठा है अभी भी। वेलकम बैक गेमर्स, वेलकम बैक। इंडिया खाने को ले आया, चोको पाई मिले भाई खाने के लिए मेरे को। यहाँ पे हमारा डे नंबर 2 चल रहा है। डे नंबर 2 में ग्रुप बी में ये हमारा सेकंड मैच होने वाला है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है वो भरी हुई है हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी, दर्शकों के अंदर भी। एंड मैं आपको ये एक और चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पे जो टीम्स आने वाली है वो मैचेस खेल चुकी है, कुछ टीम्स का पहला मैच भी जाने वाला है। लेकिन चलिए बिना किसी देर के हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारी पहली टीम को जो कि स्टेज पे आने वाली है। गिव इट अप फॉर टीम TWOB। PMGC देखना है ऐसा क्या? अभी चल रहा है क्या? सही है। यो व्हाट्सअप कीरा, वेलकम बैक। करण भाई बैठे। करण भाई प्रेडिक्शन गेम करते फिर से आ जाओ। 3-0 या 3-1? ऑलराइट गाइस, ऑलराइट। विनिंग तो पता है हमें है ही कौन है। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, वो ये है कि इस वाले मैच का क्या सीन है? क्या होने वाला है? हम I2K को वार्म अप देना है और कुछ नहीं। I2K का वार्म अप देना है। जिसको समझना था वो समझ गए। तो पिछले मैच में क्या आपका वार्म अप हो रहा था? मसाला। अरे वो कल प्लेऑफ्स में दिख जाएगा। वार्म अप का नतीजा कल प्लेऑफ्स में मिलेगा। हमें बहुत ज्यादा ही नजदीकी मामला हो गया था। कुछ तो बोलिए पिछले मैच मसाला। पिछला मैच था अच्छा था, सेम थोड़ी मिस्टेक्स थी, कल प्लेऑफ में नहीं होगी। कल मिस्टेक्स नहीं होगी, बिल्कुल सही बात बोली आपने। चलिए मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, हाउ आर यू फीलिंग फॉर दिस मैच? वार्म्ड अप। यस, वार्म्ड अप। ठीक है, ये बच चुके हैं। मास्टर क्या चल रहा है? भाई सही चल रहा है यार। पिछले मैच में क्या हुआ था? अरे थोड़ा सा इश्यू स्किल इश्यू थोड़ा सा। I mean, हम सबको पता है थोड़ा सा इशू आया जिसकी वजह से स्किल इशू कोई बोल रहा है ना चैट में पूछने के लिए। हो जाएगा ये वाला मैच हो जाएगा आराम से हो जाएगा। चलिए किसी ने I2K 3-0 लिख रहा है करण। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग प्लीज अपनी सीट्स पे जा। रीजन की टॉप 2 टीम्स हैं अलग ही बेस्ड। हाँ वो तो है ही। हमारी नेक्स्ट टीम PMGC का ना। हाँ टीम भी आने वाली है। 3-0 लेट्स गो। वेरियस बोल रहा है 3-1 लेट्स सी। पर क्या ये बात सच होने वाली है? नहीं, ये तो वो टीम इधर डाल दे बताएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इंट्रोड्यूस करते हैं हमारी टीम। लेट्स गो चैट, लाइक कर देना। वी नीड वन मोर सब यार, वन मोर सब, कम ऑन यार। एक सब्सक्राइबर और चाहिए भाई, जैसे तैसे करवा दो प्लीज। हम्बल रिक्वेस्ट चैट प्लीज। एंड लाइक्स तो बढ़ाते रहो, जितने तुम्हें बढ़ा दो। उसको तो 50 करने थे, जितने हो गए फिर हैप्पी। अल्फा भाई क्या लें? अब ये लोग इनके मुंह से सुनते कुछ ट्रैश टॉक अगर करते ये लोग तो। सर एक बात बताइए, क्या ये वार्म अप उनके लिए होने वाला है, आपके लिए होने वाला है? क्या चल रहा है? वो तो आप मैच देखोगे वो तो पता चल ही जाएगा सर, आपको पता लग जाएगा। हाँ क्या? कितने कॉन्फिडेंट हो आज के लिए? वैसे तो वी आर हियर टू एंजॉय द शो एंड वी विल गेट द फुल ऑफ इट। और बाकी तो इंडिया का फर्स्ट लैंड है एंड हमारे एंजॉय द शो। कॉन्फिडेंस कम लग रहा है बे। के लिए भी तो देखते हैं, मजा आएगा। आपको पता है ना कि आपके लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, डू और डाई वाली सिचुएशन है। बिकॉज अगर ये नहीं जीते तो आप यहाँ से घर वापसी का रास्ता पकड़ लेंगे। हाँ, दैट आई नो दैट यू नो। तो आप खेलेंगे भी वैसे ही। चलिए मैं एक प्लेयर जो कि बहुत मशहूर है टीम का, जो कि बहुत ही सुर्खियों में रहता है, लॉर्ड सनडांस जी से बात करते हैं। तो ऑलराइट, मुझे पहले तो ये बताइए नाम के पीछे की वजह क्या है? देखिए एक अमेरिकन फोक स्टोरी है। So Butch Cassidy and Sundance Kid, these guys are two outlaws, legendary outlaws. So I took that from
पक्का वहीं से लिया ना और कहीं से पक्का मेजर भाई लेट्स गो I wish you all the very best because ये इनको पता है एंजॉय कर लो हाँ मतलब वही है फाइनल्स तो गोल्ड होगा फिर All right, ladies and gentlemen, boys and अल्फा girls, भाई are you वेस्ट guys टाइम ready? मेजर भाई थोड़ा Are you कान guys ready? मेजर भाई I थोड़ा hear you guys. कान Come on, कान are you guys ready? माइक फट रहा है मेजर भाई माइक फट रहा है थोड़ा सा Let's go. Over to you, casters. लेट्स गो प्रोडक्शन थोड़ा माइक फट रहा था अल्फा बेस्ट थंब प्लेयर टर्न इनटू 3 फिंगर क्लॉ एंड रेस्ट को ऐसा क्या लेट्स सी चैट लेट्स गो प्रेडिक्शंस डाल दो 3-0 जो है सब डाल दो सब लिख दो 3-0 We did see even Tunisia coming up for the search and destroy, so that is a very good addition in the S&D map pool. मजा आएगा chat. I2K, but for now, since we already let's see speed run होता है कि क्या होता है पर मजा आएगा. Exactly, Extinct, Ignite, Master, Zyro, Abyss. In the previous game, we saw these guys perform. They tried their best, but once again, Vitality just a step ahead. Absolutely. ओके वन सब हो गया क्या लेट्स गो कौन करा तूने करा क्या अपनी कोई ऑल्ट आईडी से कि कोई नया मेंबर है कोई नया मेंबर है तो यार वेलकम टू द चैनल मैन 180-250 आई मीन या फिर नहीं जाएगा both the times we've seen 3-2 in between them, but for now we're going to also see the roster for the opponents of TWOB right now. It's going to be none other than I2K. Exactly, speaking about the roster, we've got Dope, the IGL, and also the star player, the playmaker, Legacy, Virus, Alpha will shoot flex. Sundance. Sundance needs to be the man this time to step things up because yesterday Dope was struggling quite a lot. That is true. I mean, Sundance कल बहुत अच्छा खेल रहा था, not gonna lie. Especially in terms of those skills and also the time over the objectives. When we were talking about the Hardpoint, yes, and also when we were talking about the control. And since we are already talking about Hardpoint, let's have a look at the highlights. Exactly. I mean, speaking about the highlights, you can clearly see. हो गया यार 7040 थैंक यू यार थैंक यू चैट मींस अ लॉट ऐसी धीरे 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 करके 8K 9K 10K एंड डन फिर सीधा 100K स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस मजा आएगा ये अच्छा क्लच मारा था इसने ऑलमोस्ट क्लच व्हाट्सअप शुभांकर वेलकम टू द स्ट्रीम मैन व्हाट्सअप कैसे हो यार 1M वो तो बहुत ज्यादा वो हो गया डेल्टा भाई बट हाँ ग्राइंड तो है ग्राइंड तो करेंगे अभी 7-0-3 कर दो तो करण भाई क्या प्रॉब्लम है कोई पर्सनल ग्रज है क्या यार ऐसे मत करो यार डोंट डू दिस मैन दिल से बुरा लगता है भाई what exactly कैसे हो शुभंकर भाई what's exactly in their mind is always revealed whenever they move into those playoffs. Exactly, ladies and gentlemen, and speaking about the playoffs now, it's time for us to move on forward towards the map beat-out. This will be a massive icebreaker as we're going to kick things off and take off once again on Hardpoint. Okay, we have some mid but शायद वहाँ तक जाएगा नहीं. Then we have firing range, वो भी 5th map है. First is takeoff, second is express, third is crossroad. Okay. I mean, we did see yesterday Hacienda being pulled up, and that was still being secured by TWOB. Yo, what's up, Viking? Welcome to the stream, man. How are you? Yes, we've still seen TWOB winning it. कल finals है, कल finals भी watch party करेंगे, मजा आएगा. I feel that maybe I2K would be able to pull off a miracle. Exactly. But Viking, oh no, ऐसा क्या? हम तो बढ़िया हैं, आप बताओ सब बढ़िया यार, शुभंकर भाई, all good man, all good. All you guys need to do is just go in the comment section. Permission मिल गई मेरे को watch party की, so I'm doing watch party today, tomorrow. एंड उसके बाद हमारा Warzone Mobile भी कंटिन्यू रहेगा इस चैनल पे. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ Warzone Mobile कंटेंट. कॉड मोबाइल का था पहले बट अभी वी आर स्विचिंग टू Warzone. तो या दैट्स अ ब्रीफ फ्रॉम माय साइड. लेट्स सी अभी जो मैचअप होने वाला है I2K वर्सेस TWOB, मजा आएगा. लेट्स गो. This is the exact phone that we are talking about. I mean, literally, this is the best performance in gaming. Really want me to expose him, lol. For all of them. And when we welcome Viking, what's up man? How are you? You know, it's going to be lightning fast in those response. We've also seen the processor working perfectly well with 120 FPS. Exactly. 120 expose I need to play codm. Delta क्या खेल रहा है आजकल? What game are you playing on? From the game completely, just like how some of these teams will be after today's day. But you know what? 42 हो गए यार. Let's go भाई. Who is sharing the channel or who is subscribing भाई? Just drop a hi in the chat as well. Come BGMI. भाई BGMI तो छोड़ दिया मैंने. That is true. Maybe you're playing campus battleground. Lol भाई. More of like a hacker ground. भाई बहुत hackers है उसमें. So much hackers.
in the way that we're already seeing these teams perform, even Anthem learning from their mistakes. When are you hopping into Warzone Mobile though, Viking? I2K can definitely step up on that gas as well. Exactly. Speaking about stepping up on the gas, ladies and gentlemen, here we go. Let's go. 3, 2, 1. It's going to be in front of us, and Meltdown is what we're going to step things on. Carry me night style. That is absolutely correct. मैं बीजे मार कभी कोई Warzone. Okay, okay. As of now, it's going to be भाई OG carry streams हाँ यार वो क्या दिन थे. will be making sure to 2019-20 times. coming in a good utility usage from Abyss. नहीं है hackers ऐसा हो नहीं सकता यार. मैं मान नहीं सकता बीजे में hackers ना हो. In his hand. We've seen a lot of times, you know, TWOB going. Bro, tire punctured today. I'd call it sad, bro. Straight back and forth. TWOB controlling the hill, and I2K do not seem to be finding any kind of entry point. TWOB controlling the point right now. The point flow is definitely over there. So for TWOB, भाई master nuke hook ना मार दे. या fry ना करते मतलब ज़्यादा ही. Their defense Let's see. has been looking pretty phenomenal. But for how long can they keep on sustaining? Master 3 बंदे मार दिया. Barraging in. Definitely are. Oh my god. Stun पड़ गया इसको. A weird spray coming in, but he was flashed out as well, so could not force him. And if I'll play Warzone now. Alright, fair enough. I mean, it's delayed for April now. Delayed till April. Getting a ton of points, more than So we have to wait. Out of it. Especially, it's one of the most. Hey, who is subbing, bhai? Let me know. So you know Who's the new one? Let me know in the chat. I saw just 4 subs went up. Oh, what? Nuke नहीं भाई, Pred missile. हाँ भाई, sorry. भूल गया था. Pred missile, bro. Pred missile. Yes. Of course, a little bit on that dominating side, but I2K is going to be the one to get their hands on that point. TWOB, they need Sundance as usually is fragging out. Let's go. It's only for so Good long for him. because yes, just as you mentioned, they're trying. This morning I didn't notice my back tire back losing and any forth, air finally and controlling the bike P2. and. Question is how sad, will bro. make sure to finish them off, and मस्त this खर्चा is हुआ the होगा way, तेरा. pinching them from two different sides. बहुत However, rarely आते हैं straight down hackers. Instinct अब wins it LB out भी yet legit है बीजे में. Exactly. पता नहीं यार. कॉम्पी में तो बहुत hackers हैं. Once again, it just feels like it's going to be a little bit Soft more tax वाले. than we expected because I2K, they're hitting back the players of TWOB quite hard. This is exactly what you mean by that, right? Sundance just being unstoppable, getting a couple for himself. Zyro will be the one to shut him down, with the trade is just right there. Nice one. Teams having the back of each Yeah, other. I took it playing good, bhai. अच्छा लग रहा है. Imagine they get a map. Even less now, less than 10 points, so that's what they needed. Scrap in their favor. Rotation coming in from TWOB though, so they need to catch them in that. Indeed, they need to. 37-36, I2K way too close. Even TWOB Yep, way too is close. way too close at this point. But eventually the connection gets found. Claw. Ignite shuts down the man, but so many kills out of nowhere is just flowing at the same time. Claw in the hands of Abyss. Can he line up the players? He does. Ooh. Finds the first one. It's quick mow down. War Machine in the hands of Master. Just waiting for someone No, to she will bend, but. No one's gonna come in from that direction because Claw is holding that Yeah, exactly. already, and they'll be making Plus, sure it's that risky, I everyone guess. is staying safe. Hunter Killers working perfectly for them. Oh, War Machine, there we go. Master finding a few for himself, and हाँ भाई चाहिए कि 2 लाइनअप में से Zyro will be finishing off dope with पता that, नहीं यार and इस Dope पे is no having no such a idea इस hard पे time करण in भाई this match. no idea. Only got 1 kill. Of course, Purifier being pulled out as well for the close range combats. I mean, officials ने नहीं अगर कुछ करा तो what can we do? चलो इस पे फोकस करते हैं यार. बीजेएमआई की बात क्यों कर रहे हैं हम? बीजेएमआई की बात कर रहे हैं भाई. बीजेएमआई भाई बीजेएमआई. This is not how close I expected things to go, but one thing is for Nice sure, one, Master. they've done the research. Definitely, and Annihilator being brought out from Extincts. You know that he's not letting anyone jump into the hard point. भाई इसका टाइम खत्म हो जाएगा. 1 more second and it's going to be active. That's the shot, perfectly landing only for so long as Alpha and Sundance will be moving forward with their picks of their own. Indeed. Abyss. I2K एक्चुअल में टेक ऑफ ले सकती है ब्रो. अल्फा में को याद है बहुत अच्छा खेलता था इसमें. Even Virus and all. Nirvana का ही तो लाइनअप है ये. Zyro got 3 though. Viking, what's your prediction for this series? 3-0, 3-1 or 3-2? And who's winning? I'm gonna go to take a shot and see how. Okay, Viking. Thanks for joining the stream, man. Thanks for joining the stream. Official ने कभी कुछ नहीं किया भाई. वही तो सीन है यार. Officials कभी कुछ नहीं करते तो. वही तो BT है. Hunter Killer found it. Ignite
Damming it up, catching all the Ignite people in Domara. those rotations, and this is exactly what TWOB are super good at. They catch the members of I2K in those rotations, but I love the fact that I2K are reading onto that one. They're also trying to win those gunfights while making sure that their TWOB flank is 3-1, always okay, on point. okay. Getting that pincer in towards the point Yeah, very is classic, their main no? move. However, since the new one is You're going to be talking about opening the up in the bike? next 2 seconds, let's see which one actually Yes, gets Royal the lead Enfield. to that. Exactly, Classic I2K with 50s. 64 and TWOB with 96. Annihilator. Oh, it's not really about to annihilate the opponent. What's the just score yet. right now? Legacy It's finds one 0-0. with मतलब that. the match Actually not. just started. Someone Legacy was I2K has versus been knifed. TWOB. Tough luck. Speaking of the points control so far. It's the first matchup. Not exactly in anyone's hand, but as soon as I say that, TWOB, they get the control over that. B1, definitely one of the most open. Hardpoint out there. Smokes are going to be super important, and that is exactly what all of these players are using. But a spray down from Oh boy, the Alpha, nice ramp, shots. Alpha. Good for one. Ignite shut him down though. So I guess you make sure drop a like. We are very close to 60 likes. Come on, let's get it done. Seconds. And it is TWOB who will probably be having the advantage onto that one. Rotation being called in for I2K. They're moving directly towards the second one. They've also got to control the spawn. So the Nice question is arrow. they're actually being spawned in the far end of the map. And that is Indeed. not a good news. TWOB with such a massive lead, even Claw being pulled out, just going for the random spams. Hoping to find some connections. Virus still on the top. क्या लग रहा है This chat? is where things are not getting 100 a little होगा bit कि too नहीं होगा ये balanced for बताओ. both of them. मेरे हिसाब से तो हो I2K जाएगा. Still considering they're on a disadvantage, so राइड पे चलते रहे बाइक पे. Purify from कर the back सकते is हैं gonna प्लान. strike down the man in the front. Master's gonna be the one to sort I'll of bring mine keep also. so सही much है. damage on the bay for the players. बाइक पे यार I'm not that I2K. confident अभी. But then TWOB, Going they just roads, you keep know. on hitting hard. I2K is just not able Still to find that sweet prefer. success. Look at the kill feed. Look. It's just TWOB all over the place. It was few months ago I That is would true, have and expected again, they're 3-0, not being but able to control now the spawn that they very just well, looks and like that's 3-0 because of Viper and Long-range Reveal. Sparrow. Lol bro. Zyro just making sure there's no one coming in from the mid. You're going to be Yeah, fair leading to enough. your own death if you move from there. But talking about death, and the nade is exactly what they need. 100 तो easy होगा ऐसा क्या? Let's see. 150 जाएगा I2K का. Let's see, let's see. TWOB will be getting the next 15 points for them. I also feel 100 तो हो जाएगा cross. Zyro. Maybe 120. Let's see, let's see. Oh, TW is now starting to run away with the lead. This is not too good. Sundance. उनको must lead मिल गई लेकिन. Definitely looking forward. उसकी war machine waste हो रही है सामने. Annihilator pulled out from the side of Extinct. But look at I2K, they're just playing so passive. nice I2K is not going for the peaks at all. I2K is not playing The offensive timing. at all. Instead, Nice defense is gonna flick. be the way to go. क्या flick मारा है भाई इसने? Oh, 3K. Almost Damn भाई, Extinct तो मार रहा है भाई. That is true, but 3 is the maximum is going to be Good allowed shots, to bro. get as Virus and Alpha. Viper will be under range. हाँ good पता है at मेरे को under winning range है all वो. those trades. इसलिए हटा दिया उसे. Still Yes, the yes. Hardpoint in there, control भाई वो लेकिन बहुत ITK, अच्छा खेलता है making Viper. sure Viper they भी do 5am not में था give भाई up हमारी on टीम में any था. further. 92, 156. 5am में It's था gonna हमारे be साथ. contested. They do not have members Codm falling India up League close. जो हुआ था ना उसके अंदर TWOB Viper हमारे साथ ही going खेला in था. for the rotation as well, Master. Hey, what are you Viper, doing here? Jesus, Dreams, मैं भवे. नहीं भवे नहीं था शायद. over being starting to I'm not sure भवे था या नहीं but हाँ. in lineup था. got the control established. Ryan वो था. Fallen. They're just not able to sustain that point control. Ryan Fallen And जो भी था वो. that's where TWOB comes in with the offense. It Actually, just we need division decimates that difference. defense Yeah, bro. completely. Absolutely. Decimating the defense is exactly what they're playing doing as so of good, now. bro. He's playing so good. 105. TWOB getting back in this hardpoint. Those scrap points are going to be super important. Legacy ने miss Let's hope करा. it does not hurt Got one. I2K too much at the end of the day because the next one is going to be opening up at the 3-second Let's timer. go, let's hit 60 Purify likes. right on the face. Legacy and Sundance with their weapons. I2K पे control है वाले हिल का. 100 plus हो गया. Where the entry points are and they know when they're going to arrive. Another 120 plus भी हो जाएगा ये वाले Yeah, P पे तो. well, the man just gets burnt to death. So that's extra crispy right there indeed. 176, ladies and gentlemen, on the board for TWOB, but now the points control going to be in the hands of I2K. But unfortunately, the damage is being dealt so much Nice from the players alpha. of TWOB. It's really tough to avoid all of that. I2K is just not able to win the gunfights, and that's a big point of concern for them. भाई Legacy Because look दो at 4 खा Extinct लिया Legacy. and even Legacy from the side of I2K. Now finally starting to Trophy, get a couple of kills lol. flowing up, but then always TWOB, they reply back in a stronger fashion. Extinct finds 2. Virus is there to try things out. 200 हो जाएगा ये वाले point पे इसका. TWOB, they just keep on replying stronger. अरे अब इस timing. Stronger they go. That is true. Casters Another भाई scrap casters time, 10 बहुत अच्छे हैं seconds इस बार. will be Best won out by casters TWOB. for COD Will Mobile be अभी के catching लिए. the rotation as well. In the meantime, They know what the I2K game is. They know only what they are invested one saying. member there. They're Also they are using good with the war machine. punchlines and stuff. Alright, भाई that's मस्त not a war casters machine, that हैं. was Even just our the host Major Beast भाई वो भी coming बढ़िया in, कर but रहे हैं. one thing is for sure that the operators इधर को are 40 going to bomb be हो super गया, important almost to them ready. Yes, as yes. they'll be moving on to the P1 yet again.
भाई ब्रोज लेकिन क्या खेल रहा था ब्रो 60 बॉम्ब देन एक 50 बॉम्ब ब्रोज वाज ऑन फायर वरना इंडियन कास्टर्स अरे दे आर इंडियन कास्टर्स आई नो नो ऑफेंस बट या these guys are also Indian Viking these guys are also Indian just completely abused by the players at TWOB and that's something that should not keep on happening. Look at TWOB. Necros is Indian and the other guy is also Indian. If this control's not going to be stopped, TWOB might just run away with the entire hard point. So I2K, the threat, the elimination sword just keeps Illumina top of their heads. Legacy misses by. Pulled out from Legacy. Looking forward to find at least a couple of connections. Got one. I guess even that. Misses one. भाई क्या चौकता है? Turnaround that was. Extinct Master. These two guys are working in tandem. My goodness, what a long. Yeah, they Indians. Accent से मेरे को भी नहीं लगा था Viking. Accent से मेरे को भी नहीं लगा था. The spawn was in their control, and this is exactly what I. But yeah, they Indians. They need this spawn, the near spawn, and they need to win this hard point whatsoever. Cannot give even a single. ये क्या था मास्टर? Lord, खराब लगा. Shuts him down, but look at this war machine. It's just dealing so much damage. Sundance from the far front just kept spamming those nades in there with the war machine, but eventually Extinct is going to be the one to shut down Sundance. Extinct, this man with the cost is on. Yeah, he has that accent, bro. But he is Indian. He's Necros. He used to cast BGMI as well. 228. Once again, the points are coming in. The account off the TWOB players. Ian Payne fixes. They used to cast BGMI for Overden. English casting. Their offense is looking pretty strong so far. As I say, the defense is impenetrable. The players of I2K, they find a crack. Absolutely, and the scrap time is being earned by them, and also they're winning the gunfights. Ignite finding an opener just with the. भाई इसका भाई इनके operators 10 more seconds of scrap time. No hit, but I2K के operators काफी waste हुए हैं bro. Legacy के animators, then these sparrows and stuff, उनके operators काफी waste हुए हैं. Sundance ने भी 2-3 pick निकाले, and yeah, मतलब उनके operators थोड़े कम usage में आए. That's the main reason they lost. Maybe. On the other hand, Extincts ने बहुत अच्छा usage करा है. देखो अभी भी. At this point, even they pretty much know that they've got the things in the back. GG. And that said, we even one step towards the point, and they've already taken it home. Viking, you should cast, and we will laugh. Yeah, bro. Let Viking cast. Yeah, exactly. Amazing contest, especially. I देखता हूँ if I can find his IG and show you guys. In that one, but it just all came down to those rotations and important gunfights. As soon as we saw TWOB bringing out those operators, it just worked out so very well for them, using them. Caster का IG है Necro, and his name is Neeraj Sangle. He is Indian, and yeah, he does the English casting. Brilliantly by TWOB, but things, connections were kind of missing from I2K's side. Even the claw not working out that well. Indeed. And then TWOB was just all over the kill feed, let's be honest. Yeah, there were a little bit of moments of brilliance even from the side of I2K, but not a lot compared to the players of TWOB. TWOB was just dominating the entire firefight most of the times. If you're going to try to go raw up against them, the players of TWOB made sure that they're actually punishing you. किसका IG ना उसका Instagram name बता रहा हूँ Necro, the caster. American accent जिसका लगा. हाँ 150 गया lol lol भाई. My prediction. Let's go यार Krish भाई, let's go. Have the control. 47 kills. क्या हो गया? करण भाई क्या हो गया? Followed by Extincts with 38. Master and Ignite. 37-35 onto their name. On the other end, Legacy with a solid 43. Yes, they needed the rest of the players to step up just a little partner हो भी नहीं. Kinda came down to those rotational battles. Not the partner anymore. हो गया almost excel. Will grind myself to get the Warzone Mobile partner, obviously, because that's my game. I'm very happy creating content about it. So yeah, great stuff. I feel very passionate about that game while creating content and stuff, you know. Yeah. Warzone Mobile में full मेहनत चलेगी. These guys, they definitely have made a नाम क्या उसके भाई नेक्रो रुको मैं तुम्हें स्पेल करता हूँ NEKROUU नेक्रो. ये क्या भाई करण भाई क्यों कैंसिल करवाने वाली बातें करते हो यार. One thing is for sure, I2K once again will have a big challenge to deal with, and now that the snappers are pulled out, he misses that initial shot. नहीं यार वो बात नहीं है. Abyss has got his teams back with a 2K. I got a mail कि भाई तुम कॉडम का कंटेंट बनाओगे तो तुम्हें पार्टनर रखे. मैंने कहा भाई मैं नहीं बना पाऊंगा, सॉरी,
I don't find things interesting अभी. Warzone का मैं बना सकता हूँ अभी से बीटा से. If you guys can help me with that. तो उन्होंने कहा नहीं, जब आएगा तब देखेंगे. मैंने कहा ठीक है. And yeah, उस टाइम मैं Apex कर रहा था. Okay, yes भाई. ये राउंड में क्या हुआ ऐसा? क्रेजी हो गया. अब इस 3 मारा इतना पता है मेरे को दिखा. ठीक है. चैट इसके बाद वाला मैचअप भी हम वॉच पार्टी करेंगे. I2K वर्सेस वाइटैलिटी स्पीड रन. तो लेट्स सी बोला कैसे जाता है. अरे यार करण भाई ऐसा मत करो. ये भी स्पीड रन चल रहा है. देखना ज़ायरो क्या घुस घुस के भर रहा है. खत्म 3 मारा है. हंस रहे हैं भाई वो. क्या सीन है? क्या सीन है? मैं ओरिजिनल का करना चाहता हूँ. करो डेल्टा भाई. डे 1 से मेहनत करो तभी मजा है. और साथ में कोई नहीं है. साथ किसी का नहीं चाहिए होता भाई. मैंने भी अकेले स्टार्ट करा था. धीरे धीरे लोग मिलते हैं. अभी मैं वॉच पार्टी कर रहा हूँ. अकेला कर रहा हूँ. बीच बीच में माय फ्रेंड्स कम. हम बातें करते हैं, चिल करते हैं. अच्छा रहता है. अभी कोई भी नहीं है बात करने के लिए. आई एम वेरी अकेला हूँ तो भी आई एम चैटिंग विद चैट. तुमसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ एंड वी आर वाचिंग. तो अकेले ही होता है भाई काफी चीजें. यू हैव टू डू अलोन. मेरे को तो एपेक्स मोबाइल के लिए साइड तक या एग्जैक्टली ब्रो. एपेक्स मोबाइल होता तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं. इट वाज द बेस्ट गेम ऑफ दैट ईयर यू नो. अल्फा गेट्स 1. Now it's a 1-on-2. Let's go Alpha. Alpha KRM निकाले तो मेरे को लग रहा है भाई वो अच्छा खेलेगा. It's going to be very difficult. He was one of the best KRM users back then भाई. अभी भी I don't know. तन्हाई. So he would have an idea. तो अभी भी अकेला हूँ. सैड भाई. क्रिश भाई us by us. Just looking at the opposite way at the perfect time. By guys, make sure to drop a like and a sub. We need 6 more subs for 7.50. हो सकते हैं तो बढ़िया, वरना रात की स्ट्रीम पे कर लेंगे और क्या. Definitely going for that plant. No one to contest for it. Still Ibis checking things out, moving backwards. He should get the Q. 44 seconds on the clock to work with. Yep, indeed. TWOB, they've already got a rounds lead, but maybe this is where the chance is to try and capitalize and maybe stop the momentum. I2K, a 2v1 scenario. 7-1, 7-0. Abyss still just running around in the outskirts. He's got his hands on the nade. Maybe he's going to be looking for round difference. कितना लग रहा है तुम्हें? Chuck that nade in. And yes, that's what he's trying to do. If the nade's going to find the connection, everything will be right there. But no, the repositioning for the players of I2K is brilliant. Legacy still in there. And he creates an angle, catches Abyss off guard. Anti Abyss. Abyss had a decent idea. He threw up the nade as well. It was actually the correct read coming in. Warzone Mobile, you can ask people on our server to play if you want. Unfortunately, it was लोग मिल जाएंगे देखो. 7-3. Let's see. 2-1 हो गया फिलहाल तो. 7-2-7-3. Okay. Finding the opener, Alpha quickly trading it out. Alpha full घुस रहा है भाई अभी तो. Exactly. Look at this. Oh, Extinct. Initially, I thought it might just be a whiff, but no. Then later on, Extinct's nice shot. To sort of readjust quickly enough. A quick scope to our dope as well 2v2. to shut him down. I2K with a man disadvantage. 2v2. Or at least it's a 2v2 equalizer actually. That was. Sundance. Yeah. Look at this. Sundance looking forward to pull things back, and he actually does find one. Now it's a 1v2. TWOP in a wall to trouble. Master finds one. Now that's going to be an equalizer inside this round. 1v1 scenario, ladies and gentlemen. Master versus Virus. Can TWOP pull this back? Because they have been stopped and tracked, and it's a big issue for these guys. Nice, Master. He finds that headshot. कैसे हंस रहा है बे? कैसे हंस रहा है भाई? One shot is what he needed. The spray down was not pretty. Movement was good. But apparently he would be the one to connect the first shot, and Dope is just not having a good कैसे हंस रहा है बे Master? Sundance and Legacy are the ones. Whiff कर दिया था actually वो. Last में headshot connect कर लिया. For the team, but how long can they do it for that? Make sure to drop a like and a sub. You can also be a member to the channel to support and get some exclusive perks. So make sure on the board. You get the membership if you want. Look at this. Starting at ₹29. scenario, इतना तो तुम अपने चिप्स पे खर्च देते हो.
The players of I2K, all the 4 players Warm play up together. I कर like रहा है this. ऐसा Teamwork makes the पता नहीं भाई dream work, पता and नहीं. this is what these guys are believing in. But a 3v4 can be too easy to pull off, especially considering how I2K has been struggling. Sniper is तुझे there. दिखा बस उत्तू सा लॉल. Mistakes. Does not check the right angle, and this is where Master tried his भाई best मास्टर to चोक bounce कर back, दिया. but it's too ले लिया tough. बे I2 के राउंड ले लिए. I2K finally winning out all those trades in that chaos. Doing it perfectly. राउंड ले लिए भाई राउंड ले लिए. That's a cool skin of Locust though. Really love that. शांत It's क्यों not कर just about the skin, you would also need to find the picks. And honestly, slowly and steadily, that's OG Alpha coming up. Let's see भाई. Alpha shotgun और KRM better love story. But shut down कर दिया. And then TWOP, I don't know, Extremes के there's scope just में आ going गया. to be a massive wave of eliminations that just hits the players of I2K. The sniper is trying his best to at least find one. So many shots missed. This is embarrassing. Oh, he was actually trying to go for the punch. तेरी तो बंदी भी नहीं होगी जो मैं बोल सकता हूँ कि भाई बंदी के रिचार्ज में उड़ जाता होगा पैसा. 4 and 2. कोई नहीं. Sides will be switched at this point. लिखा था मींस रैली लिखा था सही है. But membership तो तुम ले ही सकते हो मतलब. A good setup towards Up to the you. side. Starting at rupees 29. That's it. So let's see if they तुम्हारे भी actually कुछ नहीं जाएगा 29 pull it से. off or not, because TWOB just need 3 more rounds while I2K, they're trailing by 2. They need to bring things forward. Another snipe shot. Oh my goodness. Sundance. Sundance wife will will to open things off this time, but Dope as well is going to be backing his teammate up. Dope finds that dude. Zero मार दिया एक. 3v4 scenario, ladies and gentlemen. TWOP though, looking forward to make a bounce back, looking forward to make a comeback inside this entire round. Utilities tossed up front. Sundance, he's locked in and loaded. He's still focused. Legacy from the top. क्या लग रहा है Looking forward chat? to find at least a couple of the snipe angles. 7-3 लिखा था कोई. 7-2 7-3. I mean, वो भी 7-4 वाली vibes भी आ रही हैं. everyone with the KRM as of now. Virus quick for Virus one. दो मार Oh दिया. my God, for second. What? The Fnac is just striking down the players in the front. And well, that's it. TWOB. Damn, Virus भाई फॉर्म में आ गए. 4-3. मार रहे हैं Virus भाई. This एक way, सिंग देना चाहिए. I2K will be able to creep forward slowly and steadily. That is exactly what they need to do. That was a very good retake coming in from their side. Flooding in even inside the train. That was brilliant. The readjustment coming in from it was that was perfect. brilliant. And if that is the way that they can try and pull things off, I believe we'd probably be even witnessing maybe an overtime if TW will pull off 2 rounds. But that seems difficult with the spray down that's coming in. I2K down to a 2v3 though, but it is very much possible. Indeed. Alpha on top. Let's see. Now Let's speak see. about possible things. दो बचा है Got बेचारा ITK एक किल है sports in the इसका. front, especially with the man disadvantage. TWOB, मुश्किल है. everything working well for them. Dope is going to be the last player. He's supposed to be the star player. He hasn't really been able to perform that well so far for the team, and once again he gets strike down. अच्छा राउंड निकाला था I2K ने बोला तो स्मूथ राउंड था काफी. But TWOB, they're maintaining that consistent 2-round lead. Let's see. 7-3 or 7-4 chat. Consistency is what matters every single time. OT तो मुश्किल लग रहा है यहाँ से मेरे को. TWOB is not letting it go whatsoever. No matter if they're on the defender side or the attacker side. और ये शॉट. Try to stay on top. ये शॉट मारता ना मस्त रहता. They're also able to pull off a search and destroy map. That too against Vitality. So you already know that. Super solid onto that one. Again, shots fired. Just a warning coming in back and forth. Slow pace. Super slow setup. Stream lag हुई ना इनकी? They want to try and work around the map. Try and found a pick or two and takes things maybe. Could be able to get it. Oh, Zyro starts it off. OT तो नहीं होगा possible. 7-5 जा सकता है. वही exactly. OT तो मेरे को भी नहीं लग रहा. तो मैं 2x कर देता हूँ. हम काफी पीछे हो गए हैं. And that's the bodies of I2K. If TWOB wins this round, this will be massively established, and I highly doubt I2K will be able to bounce back or make a comeback. 6 and 3 is the situation. 6-3 हो गया. Consecutive rounds and the defensive setup is just Start हो गया. penetrated so easily by TWOB. They went in for a pacey hit for a couple of times. They faced some retaliations. They just decided to slow every single thing 6-3 हो गया यार. Controlling those high grounds, making sure that they control all those choke points, utilizing that perfectly.
second for that visual, though it was missed, but on the other end, Dope has been taken down yet again. Super hard day for him. Indeed. डोप बेचारा एक किल पे बैठा भाई, जो उनका आईजीएल वो करके गया था, माइक पे इंटरव्यू देके गया था. सैड यार. As long as things don't get रिवॉल्विंग होता है क्या? Imagine. भाई. Imagine if that finds the connection. He got the hit marker on one of them. That was the reason he went in for other few spams, but could not find that connection. रिवॉल्विंग लगता तो मजा आता. Oh, शॉट लेगेसी. my God. A Nets भी मार दिया. from Legacy. And even Ignite trades. Ignite भी किया. Now starting to be a pain in the foot for Abyss the players 1v1 of TWOP. But then Abyss returns back. He needs to go for the defusal, man. TWOP. The diffuser is going to be super important. He tries to maybe go and bait it out. Lord. Watching in the heaven, and that's where he is sent. Screw up, a big screw up. TWOP 2-0 so far in the series, ladies and gentlemen. Looking forward to make it 3-0. भाई वाईटी मोबाइल में तो फीचर आ गया है, बस स्क्रीन के राइट साइड टोटल 2x हो जाता है. हाँ देखा मैंने, राइट और लेफ्ट बोथ साइड. यस 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 देखा मैंने, वो देखा. वो 7-3. हाँ भाई 7-3 हो गया. ये 3-0 है क्या चैट? 3-0 है कि 3-1 है? क्या लग रहा है? 3-0 की 3-1? Because things just look super difficult for them. Indeed. Especially as you do take a look at the highlights, right? At the start, it was a little bit of a back and forth, but then later on, TWOP just established that 2 rounds lead, and that's where everything was screwed up. Then later on, that 2 rounds lead was converted to 3. कल फाइनल्स की भी वॉच पार्टी करेंगे चैट, वाइटैलिटी वर्सेस गॉडलाइक. लेट्स सी कैसा रहता है वो भी. प्लेऑफ्स भी होंगे उससे पहले, थर्ड फोर्थ के लिए. Things can be way too difficult for you. But I believe TWB can also fight back. By TWB can take that second position. First तो तुम्हें पता है गॉडल है, हमें भी पता, सबको पता है. Second could be TWB और Vitality. टफ जा सकता है. Alongside with Legacy and Sundance, so doing an exceptional job onto that one. But first prediction always better than later calculations. Yeah, exactly भाई. तो तुम्हारी first feeling होती है वो सही रहती है हमेशा. देखते ही बोला था 3-0 मैं तो. अच्छा अब ये बताओ I2 के वर्सेस वाइटैलिटी क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? वो भी 3-0 होगा? I2K, there's a clear sign of worry on their faces because they know the elimination looms on top of their heads. वायरस भाई थोड़े से बीटी में है. To bring themselves back in this series. Comeback possible. ये लोग चिल कर रहे हैं भाई. Really low. ये लोग फुल चिल मार रहे हैं. There's the parallel out there. TWB just फुल चिल चल रहा है. Look at all those lads having fun, dancing around. फुल चिल चल रहा है भाई इनका तो. Major to dance around. I don't think so that's going to be happening. I don't think the Major Beast is going to be dancing anytime soon. 10 मैच करो तो भाई 10-0 ऐसा क्या? The upcoming game should be locked in and ready too, ladies and gentlemen. 250-0 7-0-3-0 250-0 बोल रहा है तो भाई हो ही नहीं सकता. Will it be the time for 250-0 हो ही नहीं सकता करण भाई. 250-0 तो मुश्किल है. TWB put the final nail in the coffin. We're going to be witnessing 250-0 तो मुश्किल है यार. TWB are going to win this one and qualify. 3-0 होगा वो मान सकता हूँ without any doubt. या 3-0 without any doubt. मसाला दे रहे तो हाँ क्या? अबे oh my god, TWB already off to a fiery start. भाई स्पीड रन कर रहे तो. Even I2K is actually able to bring themselves back in this. Ignite भाई क्या सीन है? कल भी इसमें पेल रहे थे मैप में. Exact जो भी स्ट्रीम में make sure drop a like and a sub. We need one more like for 60. Come on. कोई एक बंदा जो like नहीं कर रहा like कर दो. कर दो भाई. आ गया क्या? भाई तूने TWB और Vitality देखा? तेरा मिस कर रहा था भाई मैं तेरे को. भाई उसमें सबमिट वो था, सबमिट हार्ड पॉइंट. इतना इंटेंस गया ना भाई दोनों का मैचअप, मजा आ गया. लास्ट के अंदर भी मतलब बहुत अच्छा एसएनडी था. अच्छा TWB मतलब कितना मतलब TWB हारी जीती. TWB हार गई लेकिन लास्ट का भी बहुत इंटेंस था. एसएनडी तक पहुंच गए थे फुल. 3-2 हो गया. 3-2 हो गया हाँ. बट वही ये लोग तो क्वालीफाई हो गए. I2 की स्पीड रन हो रही है. 2-0 हार रही है अभी. थर्ड मैच 3-2 हुआ था. हाँ 3-2 हुआ था. अभी I2 से 3-0 जीत जाएगी TWB, फिर वाइटैलिटी जीत जाएगी. अच्छा ये सीन चल रहा है फिलहाल. इग्नाइट कल सबको मिल ही कर रहा था. हाँ मैं देखा था. इग्नाइट भाई पेल रहा है. So many tools, utilities, gunpowder,
only to move out of this एटुके के अगेंस्ट खेला है गॉडल अभी तक नहीं अभी ग्रुप शफल नहीं हुआ यार ग्रुप शफल होंगे भी नहीं दोनों ग्रुप से एक टीम गायब हो जाएगी उसके बाद ग्रुप शफल होंगे वो वाले ग्रुप से एंथम बाहर हो गई इसमें से एटुके बाहर हो गई क्या कह रहे हैं 3 किल है भाई अल्फा अच्छा स्टार्ट ही हुआ है तो स्टार्ट हुआ objective has been lost but it's not going to matter ladies and gentlemen डोप भाई थोड़ा सा वो खा रहे थे लास्ट गेम एक किल पे थे एसएनडी में शिट objective lost but round 1 एसएनडी कैसा गया एसएनडी कह रहा हूं मतलब 7-3 lights work yeah in the कौन सा मैप था एक्सप्रेस वो ट्रेन वाला good resistance as well as the numbers on the board अभी इनका फोर्थ मैप समिट है पता तेरे को समिट हार्ड पॉइंट बट वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं पहुंचेंगे ही नहीं भाई वही तो कल भी यही हुआ था बेचारों के साथ और फिफ्थ मैप वो था फायरिंग रेंज एसएनडी भाई कुछ तो कर दो यार कुछ तो अच्छा सा दिखा दो यार एक मैप जीत जाए ना तो भी कुछ होगा यार 25 to 24 just one lifeline lead अभी क्या है उस ग्रुप से एंथम बाहर हो गई इसमें साइटो के बाहर हो जाएगी फिर मैच होगा क्या बोलते हैं उस ग्रुप के 1 वाइटैलिटी जीत गई ना तो अभी क्या है होगा गॉडल वर्सेस टीडब्ल्यूबी और वाइटैलिटी वर्सेस एनएस उनमें से जो जीतेगा वो अपर ब्रैकेट फिर नीचे वाले लोअर ब्रैकेट ऐसा कुछ सीन है मजा आएगा कल के मैचेस भी देखने में टूट फाड़ रखे भाई ये तो क्या है वन साइडेड मार रहे भाई फटफट स्पीड रन मार रहे हैं कि भाई थोड़ा रेस्ट करने को मिल जाए अभी अगला I2K का वापस होगा ना I2K वर्सेस इसका वाइटैलिटी भाई उसमें ही दिख जाए कोई अच्छा सा मैप क्लोज रेंज वाला वही उसमें भी ब्रोज है ना ब्रोज मारेगा ब्रोज वर्सेस अल्फा होगा doable for I2K but they've got to win these fights that's the thing they've got to get more than one trade each and my goodness 5v9 is the situation 13 seconds clock has been locked down tick being made towards the B एक बंदा मेरे ट्विटर पे लिखता स्टॉप प्लेइंग कॉडम एंड वॉच पार्टी कॉडम वो टॉन्ट मारा कि तू कॉडम छोड़ दिया एंड वॉच पार्टी कर रहा है अभी मैं लिख दे एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग एक्सेप्ट कर लिया मैंने हां मैं वही कर रहा हूं and actually might just be able to isolate the duel as well at this point in time. I2K, they need to start isolating the duels, but it's too much to ask. TWOB, they win the second game too. देखो कास्टर की फोटो भेजू अपना भवे इंस्टा देख for sure is true. So I still have hopes for I2K. Embers, yes, जो अभी but they कास्ट कर might रहा है turn into a wildfire. But these players English have test to पे find their footing no matter what. This is the last chance for them to do it. Claw being brought out as well. Early trade on coming in. Trophy systems used up, taking a lot of those utilities damage. Amazing spray. SPS still gives the opening to his team, and also the life lead early on will be traded just as quickly. Legacy with the Annihilator gets 2 of them, but how much more value can he find as he'll be shut down? कितने ट्राई करोगे नहीं होगा ठीक खत्म है यार War Machine pulled out. बॉडी शूट कर रहा है लेगेसी ऐसा क्या मैं नोटिस नहीं कर रहा मैं मेरे फोन में ध्यान था इंस्टा देख रहा था 21 to 22 भाई बॉडी शूट कर रहा है लेगेसी भवे least lives left and look at this Confidence I2K ये once भी again starting to lose out on the number. This is not too good. They're not able to find the equal tradings. 18 to 20 still in a disadvantage as I2K. 8 points being captured a little bit, but for how long? That's my question. Look at Sundance just dancing around that corner, just peeking over and over again. Repositioning is something that really is going to matter. But the problem is, TWOB are always just out-positioning the players of I2K. But this one is getting super close. कितना क्लोज हो जाएगा वो 13-13 गेम depleted completely. But the life count 12 and 13 super close. Dope and Alpha winning a crucial trade for themselves. Hunter Killer working in their favor as of now. The score streaks being brought in too. 25 more seconds to work in. Another spray down. Legacy wins it out. And now he's controlling the stairs. Hold on, this seems like भाई ये राउंड जीत सकती है I2K देख TWOB might just lose out on this one. This is not too good. It's 6 still. Oh, now it's 9 to 5. 10 seconds. Too close to comfort. Not a lot of time left, ladies and gentlemen. क्या आप किसको करना है TWB को pushing up and start taking these battles. Can they actually win it though? TWB को time left. The time's running out on the clock. ये ले रहे हैं frozen on to 8 seconds.
2-1 हो गया बे ये वाला राउंड Some amazing trades coming in for I2K. इग्नाइट का 1v8 है But, मुश्किल है goodness, wait a second. 3 seconds on the मुश्किल है। clock still. Just a 1v7 was almost impossible. हारने के बाद भी बॉडी शूट अरे मतलब क्या ही कर सकते हैं भाई यहाँ से मोमेंटम बन गया था मजा आ जाएगा यार हाँ बे Could we do it? इमेजिन I2K. Once again, now we're looking forward to light up things. देखा कैसे आगे वाले को पुश करवाया और खुद प्रीफायर Fiery start to this round. 29 to 29. Out and over. I2K just always manages to find the trades. It's crazy, even though in kill feed he सनडांस तो बहुत बढ़िया खेल रहा है वीआर अपने टाइम पे भी ये वही चलाता था ना आरपीके आरपीडी और वो चॉपर थोड़ा सा पैसिव था ये मतलब एंगल लेके खेलता था सही है यार कैरी फॉरवर्ड कर रहा है वो चीज अभी तक तो अपना गेम प्ले है वही मतलब अभी तक वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है और कंसिस्टेंट है उस चीज में मतलब गुड वे में ही बता रहा हूँ मैं भी 20 किल पे है भाई वो अकेला अपनी टीम में से 20 किल है भाई इसके वही 23 to 21. How is वायरस मत बैठा है भाई यही तरीका इनका अगर ये इस तरीके से खेले ना हो सकता है अपना गेम प्ले समझना जरूरी है भाई एग्जैक्टली अब वो देख टीडब्ल्यू देख बॉडी स्टैक कर रहे हैं देखना ज़ाहिर अभी साथ में घुस-घुस के 2-4 मार रहे हैं उस साइड से इग्नाइट अलग मार रहा है ओ भाई वायरस 2-3 मार दिया TWOB are trying to build a cushion for themselves, but since the operators need to be brought in from both of the sides, as they've got at least 12 5 versus of them 13. combined, so might as well. भाई ये मैप जीत सकता है ब्रो मजाक सेट के would need to do a lot हो of जाए भाई हो जाए 11-11. It's too close. 27 कौन सा फोन है 13 Pro Max या 14 मेरा 13 Pro Max ओल्गर एंड ऑल हाँ ओल्गर चलाता था थोड़ा थ्रो हो रहा है अभी क्योंकि इन्होंने ऑपरेटर निकाल लिया था सेकंड में 6 to 10 6 to 4 खत्म 6 to 9 हो गया जीजी भाई जीजी है बाबा ऐसा होप देख के वो कर दिया होप देख क्या क्या कह रहा है होप देखे होप टिल्ली हाँ लेट्स गो चैट गाइस जो भी सिंपली मेक श्योर टू ड्रॉप अ लाइक एंड अ सब हम 6 घंटे से स्ट्रीम कर रहे हैं वन ऑफ माय लॉन्गेस्ट स्ट्रीम्स Exactly, ladies and gentlemen, we need to go to the stage and see what the players of TWOB have got to say. भाई स्टेज के बीच में जाके बॉडी शूट करने लग जा भाई मजा आ जाएगा गुर 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 इमोट करने लग जा भाई मैं होता मैं रियल लाइफ बॉडी शूट करता भाई अभी मसाला आने वाला है पक्का मसाला आने वाला है वो करके भी दिखाया आपने अब 3-0 कर चुके अब आपको पता है आप कल फिनाले में खेलने वाले हो किस तरीके का आपका कॉन्फिडेंस रहने वाला भी कॉन्फिडेंस तो है भाई आज एक आध दो मिस्टेक हुई इसके सिवाय हम कॉन्फिडेंस है कि वी कैन पुट अप अ ग्रेट फाइट तो कल देखेंगे प्रैक्टिस करके आएंगे जो मैप मोड हमको पसंद है वगैरह वगैरह वो देख लेंगे कल प्रॉपर प्रैक्टिस करके आएंगे जीतेंगे भाई कल चलिए जीतेंगे ये तो इन्होंने बता दिया लेकिन प्लेऑफ्स की तैयारी आपकी तरफ से कैसे चल रही है सर बिकॉज़ मुझे पता लगा था आपकी तबीयत भी खराब है उसके बावजूद आप जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हो तभी सोचो इग्नाइट भाई थोड़ा स्लो किया कोई नहीं है वैसे तबीयत खराब का कुछ फर्क नहीं पड़ता यू नो हो सकते हैं डेल्टा तबीयत बफ मिला इनको तबीयत बफ बोलता है होता है आई मीन जिनकी तबीयत खराब होती है कभी कभी ज्यादा बढ़िया खेल लेते हो आई डोंट नो हाउ तो अभी आप सही हैं एक्चुअली भाई बात तो सही बोली मेजर ने लाइक I2K का वार्म अप मैच के बाद बहुत अच्छा लग रहा है उससे थोड़ा वार्म अप हो गए हैं लेकिन चलिए अगर बात करें कल के मैच की प्लेऑफ्स के लिए आप तैयार हैं हां हम सब तैयार हैं कल के लिए कल बहुत इंपॉर्टेंट है जी हां कल भाई मस्त ऐसा फिंगर स्लिप उतारते इंटरव्यू दे रहा है जरूर से है हां मतलब हां ठीक है ऐसे सही है एंड अभी के लिए अगर हम बात करेंगे डेल्टा भाई कराओगे तो हो जाएंगे अभी जीत का जश्न मनाएंगी बैक से जाके मुझे पता जरूर से है लेकिन अभी मैं अगर बात करें हमारा एक और मैच जो है वो रह चुका है वो रह रहा है और उसके लिए हमें बताएंगे हमारे कास्टर्स Exactly, Walt. Still, one more series is left, my friend. But before that, we also need to take a look at the अगर मेजर देखे ना game, right? Because that's something उसको बोलियो we need to find out how exactly the previous matchup went down, considering it was control. I did not even expect that's a good question. TWOB to actually drop one map of control or one round of control, but they actually did. भाई known for KRM मतलब करना चाहिए अभी तो तुम्हें पता है कि तुम बाहर होने वाले हो तो अपना बेस्ट वही गन चलाओ ना किल्स उठाओ 30-40 किल मार के आ जा भले हार गए मैप क्या फर्क पड़ रहा है to pull off even a single map is definitely going to be अभी कहां a little bit of a mental barrier for them to move on from. However, just as you mentioned, KD सबके अच्छे हैं for all of the stats, it's right in front of us. Sundance 22 and 20.
leading in that kill department. So you already know that he had a lot of presence. Indeed, he did have so much presence, ladies and gentlemen. I mean, especially speaking about I2K, with how they were trying their best to sort of bounce back inside control. You can clearly see the amount of effort these guys are putting in. These guys were also trying to get a lot of these trades. Last matchup for the day, I2K versus Vitality. We saw V for victory. Always just going for those quick eliminations. As soon as one of the players of I2K was dropping down, they were making sure that even the players of TWOB will be suffering. That is absolutely correct. And the fact that, you know, even on the kill feeds, we were continuously seeing TWOB. It was I2K somehow trying to slowly manage that life count. And that was one thing I was really impressed at. However, they have to focus on the next match that will be coming in front of us. Yes, it will be in a while, but V for victory. Another mountain to climb. Now the matchup is going to get even more tougher. True. And for the players of I2K, I hope they've gotten their hands warmed up, because Vitality is one of those teams that's not going to have any type of mercy on you. We saw them play against the players of TWOB, of course. It was quite a competitive series, but Vitality, at the end of the day, they kept that momentum rolling. They kept that ball rolling for themselves. One thing is for sure, Vitality has already qualified, so that's not going to be an issue at all. But we really need to see, can I2K at least win one series before they take a leave from this entire Dreamhack? With that being said, ladies and gentlemen, it's time for us to toss to a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. चाहिए ब्रेक चल रहा है चैट हम भी ब्रेक ले लें थोड़ा बैठे हैं इधर 2-4 केले और खा ले जाके जा आ गया चौको पाई लाया हुआ है मैं अभी तो चौको बैठ ठूसूंगा रुक इसके लिए तो फेस कैम क्या ही बंद करना और बताओ चैट लास्ट मैच की प्रेडिक्शन बताओ 3-0 कि 1-0 में ही सरेंडर मजाक कर ओह शिट क्या हुआ क्या खा रहा है चोको पाई लोटी चोको पाई गाइस जितना तमीज से भी आपको स्ट्रीम पे दिखा रहा है ना खाते हुए इतने ही बुकड़ नीचे रख के उतना ही ज्यादा वो है ये उतने बुरी तरीके से खाता है कितना डिले में पे डिले 10-15 सेकंड का ही है तेरा स्ट्रीम ठीक हो गया त्यागी बोल रहा है 0-0 ठीक है भाई नहीं यार I believe in I2K भाई that they will get 3-0 that they will get 3-0 Bye guys, if you are new to the channel, make sure to drop a sub. We need one more sub for 7045. Okay, you can also be a member to the channel to support. कुछ और देखिएगा तब तक कुछ लगा ले बढ़िया से 1 मिनट में गॉडलाइक के मैच देखता भाई तब तक एक आधा बैड की होगी Start to work yourself back in the game. All right, sorry. जब तक ब्रेक है तब तक ये मैच देखते हैं And with the lead like this, you can take those deep route subliners. This is now 3 कब का लेकिन ये मैच Hydra picking up the two-piece, locking down the 4 महीने पुराना है तो and running that score up. This is a perfect game so far for 5 मिनट है अभी चैट तब तक सोच रहा हूँ सीडीएल का एक मैच देख लेते हैं Watching the pipes, can Insight get two? No.
Guys softening up the attackers. It's a bit of back and forth. The trades are nearly done. Pixie Opa. stays alive. Kleenex backs him up. But look at that minimap. New York subliners so close to the hill. And this was the entire thing that happened when they played the first time around of Bhai, also आज ने keeping the बता pressure लेकिन on this hill to force the back spawns and being free on the rotation. Now granted, P4 has been great from Toronto, but right now it is just such a massive अरे अरे वाटर फाइट such a long way to गाइस देख रहे हो पीसी और मोबाइल में क्या डिफरेंस आ जाता है भाई प्ले स्टाइल ग्राफिक्स वगैरह तो चलो है ही Hydro could call them off so far. Movement and Fantastic stuff. work from the subliners. Here comes the 100-point mark. Kismet in control of the new hardpoint again. Chance. They तेरा have मेन taken क्या out हुआ है non-stop. New वालों York have में finally और been forced off आइसोलो of का it. मेरा मेन योरू है योरू I mean, this is the only hill एंड मेरा अनलॉक तो नहीं हुआ है सो it अभी looks like they have set themselves up once again. You're down by 70 points, but a stronghold here. You at least start to work yourself back in वो the मैच का game, क्या but सीन an चल रहा 8 है kill already, so it's a 4v3 around the point. और बताओ भाई विगल क्या मारा तूने आज जिम में? आज लेग्स सैटरडे था ना ओ शिट लेग्स मारे क्या तूने? यस सर अभी कल दुखेंगी टांगे सो के उठने के बाद क्या क्या मारता है? लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन और लेग रेजेस एक्सटेंशन प्रेस फिर हिंजेस फिर स्क्वाट्स फिर काल्व्स अच्छा मतलब सीक्वेंस में नहीं बताया बट सारे बता दिए मैं बोलने वाला था कि कोड इतना अच्छा क्यों दिख रहा है अरे वो सीडीएल लगा दिया था तो 1-2 किल के लिए नेक्स्ट मैच अब स्टार्ट होगा 3 मिनट में भाई 7 बज जाएगा ये मैच खत्म होने तक और हमें शायद 6.5 घंटे की स्ट्रीम हो जाएगी फिर उसके बाद रात को भी उसके बाद रात को भी स्ट्रीम करनी है हाँ Warzone मोबाइल की 2 घंटे में भाई कोई नई गेम कर ले जिसमें हम भी खेल लें यार और कोई नई गेम है ही नहीं ना वही तो दिक्कत है तो Warzone नहीं खेल रहा और क्या फिर उसका क्लैश ऑफ प्लान कर लियो एक दिन उसमें साथ में कैसे खेलेंगे वो बता कोई साथ में एफपीएस खेलेंगे तो बता मैं तेरे पे अटैक करूंगा तो मेरे पे अटैक करियो और क्या ये कर ले स्टैंड ऑफ खेलने स्टैंड ऑफ खेल सकते हैं ये स्टैंड ऑफ अच्छा हाँ वही CS:GO टाइप है हाँ CS:GO मोबाइल टाइप है बहुत दिन हो गए उसको खेले हुए भाई इसमें जैरो भी नहीं है यार है जैरो है इसमें तू वो खेलता होगा क्रिटिकल ऑप्स खेलता होगा क्रिटिकल ऑप्स में भी है शायद पता नहीं भाई है तो फिर खेलेंगे जरूर वो तो बढ़िया गेम है मतलब टाइम पास के लिए खेलता रहता हूँ कभी मस्त है भाई इतनी मेहनत डेटा स्ट्रीम यस 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 भाई मी बैक वेलकम बैक डेल्टा गाइस वो भी स्ट्रीम में मेक श्योर ड्रॉप अ लाइक एंड सब यार शेयर करो स्ट्रीम को 60 लाइक नहीं हो रहे यार 1 लाइक चाहिए कम ऑन 1 लाइक जैसे तैसे कर दो भाई एक मिनट 40 सेकेंड एक गाना गा दे चल विगल नहीं यार गाने के लिए मत बोल ना नाचने के लिए बोल उसके अलावा कुछ और नहीं मैं नाचने के लिए रेडी हो अगर लाल सुपर चैट आएगा इसे देख अगर वो कर दे थंबनेल पे जैसे मुंह बनाता है ना वैसे वाले बना दिया भाई रुक जा देख क्या रुक जा बाबे देखेगा 10 सेकंड के डिले पे आए ये कैसा मोटा भाई ये थोड़ी है आगे आगे भी है इसके अच्छा रुक जा ऐसे टाइप के एक ही तो मुंह बनाया भाई तूने घटिया सा वैसे वाला मुंह बना देख मैं तुझे भेजता हूँ मैं बताता हूँ कैसे वाला हाँ ये देख अपनी ना अपने चैनल की फर्स्ट वीडियो देख अपने चैनल की फर्स्ट वीडियो हाँ उसने वीडियो में देख उसका थंबनेल देख फर्स्ट वीडियो का थंबनेल हाँ Warzone Mobile स्क्रीम हाइलाइट मतलब लेटेस्ट वाली मतलब फर्स्ट नहीं लेटेस्ट ओह अच्छा अच्छा The Snapdragon Pro Series powered by Samsung Galaxy is brought to you by Snapdragon Elite Gaming. उसी टाइम बनते हैं भाई जब ऐसा मन में थंबनेल की इमेज बन जाए ना Monster Energy. एक मिनट रुक जा एक तो ऐड आ गई यार फिर
आगे चालू हो गया, चलो वेलकम बैक। यस, मेरा नाम मेजर बीस है और आज मेजर भाई अल्फा से पूछ लो शॉटगन का मैच स्टार्ट होने वाला है, तो अपने आप का जो आगे मेजर भाई बार है थोड़ा सा संभाल के रखिए, बिकॉज़ आई एम प्रीटी श्योर कि ये वाला मैच भी इसमें आगे मतलब कास्टिंग पे होस्टिंग में। एंड अब हम बात करेंगे पहली टीम की जो कि अभी मंच पे आने वाली, जो कि अभी आई भी थी, बोला था मतलब ऐसा चैट में अगर होंगे तो कॉम्पिटिशन होगा, नया एक इवेंट होगा, देखते हैं वहां पे क्या रहने वाला है। सो गिव इट अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू टीम I2K Esports। I2K versus Vitality, V for Victory। जो भी लोग ग्राफिक्स क्या मस्त बनाया ना, है ना बाबे? पता है इनके फोटोशूट वगैरह भी हुए हैं, तो पता है एक दिन पहले सबके फोटोशूट भी हुए हैं प्लेयर्स के, सिंगल हाँ सिंगल टीम वीम 2-3 पोज में, तो ऐसा फोटो के लिए वो भी यूज कर सकते हैं लोग, बाद में इनको मिल जाएंगे फोटोज उसकी। ऑलराइट जर्मन, पहला लैन आपने खेल दिया, आपने एक्सपीरियंस करा, आपका एक्सपीरियंस अपने हिसाब से ये डोप के अंदर क्यों चिपकते हैं भाई, ये किसी और को आईजीएल है, पहला लैन था मेरा भी और मेरे डोप आईजीएल का भी, ठीक तो हमने काफी एंजॉय करा एंड टू बी आईजीएल्स की क्वेश्चन करते हैं यूजुअली स्टार्टिंग में, यू नो दैट ऑलरेडी, और हम लोग पूरा अपना ट्राई करेंगे, लाइक वी गिव आवर बेस्ट टू एवरीवन। या अपना बेस्ट अभी भी आप देने का सोच रहे हैं, वो जो कि देना भी चाहिए, लेकिन चलिए अगर हम बात करें गाइस, आप लोग का भी पहला लैन था, क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए? बस ठीक है, अच्छा लग रहा है। अल्फा पे आएगा, ये आएगा, क्या रहने वाला है? अल्फा पे कुछ तो आया भाई, क्रेजी देखने अपना बेस्ट देना है खेल में। हां प्रॉपर शूट होता है, लेट्स गो। यार आपको तो मैं शॉट गनर के नाम से जानता हूं, कोई टाइम था कम्युनिटी में अल्फा के आगे शॉट गनर पूछा लेट्स गो, अभी भी मैं देख रहा हूं वही लेट्स गो आगे फॉरवर्ड करिए, अलग-अलग गेम गन्स जो है आप प्रेफर करने वाले हो? थोड़ा गेम में चेंज है, शॉटगन के साथ SMG एंड आई स्विच टू 3 फिंगर, बट अभी हमारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था बिकॉज ऑफ हमारे स्टार्ट सब कुछ अभी उतना अप टू मार्क नहीं है, अभी हमने लैंड में देखा, बट वील वर्क द नेक्स्ट टाइम। ऑलराइट एंड इसी के साथ अगर ढंग का जवाब दिया भाई अल्फा ने, जेंटलमैन आंसर दिया, मेरे को लगा कुछ तो एक्चुअली करेगा। लैंड टूर्नामेंट के लिए अरे मेरे यार देख लेंगे, मैं चलाना नहीं चाह रहा, मैं वो नहीं करना चाह रहा, तो थोड़ा एग्रेसिव बोलेगा। हेला एक्साइटेड, सॉरी हेला एक्साइटेड, एंड आप? एक्साइटमेंट तो है बिकॉज अभी एक्सपीरियंस नहीं था, अभी एक्सपीरियंस भी आ रहा है धीरे धीरे करके। इस टूर्नामेंट का बस एक चीज था, बॉडी शूट करने का एक्सपीरियंस जा रहा है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है प्रॉक्सी नहीं है यार, वो तो उसमें है ना, वो तो एंथम है। सो लाइक नेक्स्ट उसमें तो हम लोग ये वायरस है, अच्छा करने वाले नहीं लेगेसी है, हां करने वाले हैं। आपका डिवाइसेस ये जो आपको मिले हैं, क्या नाम है, हमारे सैमसंग गैलेक्सी, इस पे खेलने का, सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा पे खेलने का एक्सपीरियंस आप लोगों को कैसा गया? भाई जेन्युइन मत बता दे बस कोई, रियली स्मूथ, द डिवाइस इज रियली स्लीक, भाई घटिया बोल रहा है, लैग कर रहा है। हां डेफिनेटली भाई ने तारीफ करी है एक्चुअली, वर्थ डिवाइस टू बाय एंड प्ले कॉड मोबाइल ऑन, ब्रांड फ्रेंडली है बंदा। इस बारे में बताइए आप। लाइक 120 FPS ज्यादा मोबाइल फोन्स देते नहीं है, लेकिन सैमसंग दे रहा है, तो इट्स अ बिग थिंग। Thank you so much guys, thank you so much। अल्फा देख कैसा है, go back to your seats and thank you so much and I wish you all the गया ही नहीं वो जानबूझ कर। and अब बात अल्फा फुल शू फ्लेक्स कर रहा है, ऐसा क्या? हां भाई अच्छे जूते हैं, क्षणों में आने वाली है। and ladies and gentlemen, boys and girls, give it up for team Vitality। लेट्स गो, V for victory। हां मैंने बोला ना, हमारी स्ट्रीम देख रहे थे, मैं बोल रहा था पहले, बीच में आए भी तो थे चैट में क्वेश्चन पूछने मेजर भाई। हां ये मुझे याद आया, ब्रो से पूछो भाई अभी क्वेश्चन कि भाई क्या खा के आया है, भून रहा है भाई ऐसा टॉप जी वाइब्स। मैं भी गंजा हो जाता भाई, ऐसा हेयर स्टाइल कर लेता हूँ मस्त एकदम, है ना, मस्त लगे मेरे को भी। कितना प्रिपेयर लग रहे हो आप अभी इस टूर्नामेंट की? अगर इस वाले मैच की बात करें भाई इधर तो सब जूते फ्लेक्स कर रहे हैं वाइटैलिटी में, बहुत पहले से ही चल रही हैं, सबकी चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी चल रही है, बस किसकी प्रिपरेशन अच्छी है वो देखना पड़ेगा। राइट एग्जैक्टली। एंड आप बताइए सर, कोई ऐसी टीम जिसको आप मतलब चाहते हो कि यार इसके साथ मैच हो जाए, फिर देखते हैं? ऑलराइट सामने खड़े हुए गॉडलाइक के सारे प्लेयर्स इशारा करा गया एंड आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, बस खेलना चाहूंगा, अभी खेलना चाहेंगे अपना, बोल के नहीं करके दिखाएंगे। क्या बात है। एंड आप सर मेरे को ये बताइए कि आज मैं मुझ को पता तो और क्रेजी इंटरव्यू देता भाई, कुछ भी बोल। ए गॉडल के बंदे दिखाए। ऑलराइट सामने खड़े हुए गॉडलाइक के बैक स्टेज का कुछ दिखता है, एंड आप कुछ बोलना चाहेंगे?
कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, बस खेलना चाहूंगा अभी। खेलना चाहेंगे अपना बोल के नहीं बैक करके स्टेज दिखाएंगे। के दिखाया एक सीन क्या बात देखते है, क्या बात है। हैं। अच्छा गुरवीर सिंह वेलकम अब टू स्ट्रीम, क्या हाल है? ओके गोस्ट अच्छा एनएस वाला है। मेरे को ये बताइए ये गॉर्जरियन का बंदा है इस वाले गाइस। मैच के अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके दिखाने वाले हो या अभी मीनो ने भी बताया था Just chill gameplay, not the usual. The usual, let's go. Wizard Trunks Jordan वाले ब्रोज है, हाँ। वो पक्का हो चुका है। अब प्लेऑफ्स में सही है। एक लेवल और ऊपर होने वाला है। व्हाट्सअप गुरवीर भाई कैसे हो? इसके लिए प्रिपरेशन आप लॉन्ग टाइम यार। कर रखी है या आज कर नाइक ब्लेजर्स हैं। तेरे को मस्त एकदम इन्फॉर्मेशन है डेल्टा, सही है यार। यू आर अ स्नीकर हेड। बढ़िया। थोड़ी करके रखी है, बट सेइंग गॉडल प्ले ऑफ कोर्स उनके मैचेस देखेंगे, वॉर्ड्स करेंगे एंड सी हाउ इट गोस फ्रॉम देयर। अच्छा इंडिया का पहला लैन है, आप इंडिया के पहले लैन में प्लेऑफ्स में क्वालीफाई हो चुके हो, अपने फैंस को कुछ कहना चाहोगे आप? Just keep supporting us, keep loving us, and also love the underdog teams. They're here. Let's go. Let's go guys, let's go. Thank you so much for the interview guys. आप लोग अपनी सीट्स पे जा सकते हैं। मिसिंग मून उन्होंने इसी के सपोर्ट साथ किया अगर था बात करें तो यहाँ इनिशियल फेज हमारी से। दोनों अरे टीम तैयार हो चुकी है। लेट्स गो। मून अभी बिजी है आईएलएल, बट हाँ सेटल डाउन हो रही है एंड अपने माइट श्योरली कम बैक सून, मे बी इन अनदर गेम या वैसे। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हम ये लास्ट मैच भी विटनेस कर ले और देखें कि एक्चुअली में क्या होने वाला है। निकरेट तो हूँ बट जॉर्डन एक ही है। अरे अरे मेरे पास भी एक ही है। The players ready, ladies and gentlemen, and this is going to be the last series of the day. How excited are you? Super excited, to be honest. Again, the qualification Yo. does not depend on the Yo. line as of now, but Let's all's go. well that ends well. That is the motto of I2K. Guys, with which फट they will फट be moving forward in the सब्सक्राइब और लाइक कर दो। Exactly. Tomorrow the playoffs are going to be 7050 कर देते हैं यही स्ट्रीम पे भाई। 6 घंटे से स्ट्रीम कर रहा हूँ भाई, थोड़ा सा सिंपैथी दे दो। व्हाट्सएप सरदार जी वेलकम टू स्ट्रीम, क्या हाल है? बोले यस भाई इंटरेस्टिंग मैप्स हैं। फायरिंग रेंज और वो समिट या स्टैंड ऑफ भी। स्टैंड ऑफ भी चलेगा। गाइस प्रेडिक्शन डालो जल्दी चैट में। Whom do you think will win? And क्या स्कोर लाइन होगा? One of the statement by I2K, they mentioned that they've got nothing to lose, and you know that it's going to be super difficult to face off against someone who's got nothing to lose because they're going to give in their all. Exactly. बात तो सही बोला कास्टर ने। 3-0 let's go। तो क्या वर्ड प्ले कर रहे बे? Damn। ये कौन है? ये कौन है? लूसी भाई आप हो ना? वाइटैलिटी वर्सेस I2K लास्ट मैच ऑफ द डे। मैं सुबह से वॉच पार्टी कर रहा हूँ, कल फाइनल्स भी करूंगा। फाइनल पे आएगा तो आ जाना। सोच रहा था भाई कितनी देर से वॉच पार्टी कर रहा है। हाँ भाई मेरे को परमिशन मिले तो पूरा खींचेंगे भाई। लूसी भाई मैं क्या कह रहा, कल फाइनल्स तो करोगे ना वॉच पार्टी? आओगे ना साथ में कि क्या सीन है? कल हाँ भाई क्योंकि गोल्ड का लाइनअप जो स्प्लिट हुआ है उस हिसाब से मजा आएगा। शायद वाइटैलिटी गोल्ड इंटरेस्टिंग होगा। देखते हैं भाई। बता दियो। At least one map and then move on to the second map. Let's go chat, last match for the day. Prediction डाल दो chat में। 3-0 बोल रहा है डेल्टा। हो सकता है। भाई तो ब्रोज की शक्ल देख के मुझे वो याद नहीं याद आ रही है, मेरे को पहले का ये। हाँ भाई तो बोला 65 मारा है ना लूसी भाई बताओ ब्रोज R9 से 65 किल्स एक मैप में। R9 नहीं भाई, आप बताओ सब बढ़िया है। ब्रो यार हमेशा सॉलिड प्लेयर था। मैं स्टार्टिंग से आई नो क्रिश भाई लेट्स गो भाई, दैट्स द सपोर्ट भाई। मैप्स आ गए, मैप्स आएंगे अभी, हाईलाइट आएंगे पहले कल के, फिर मैप्स आएंगे। भाई ये वाला मैप तो ना हो, ये वाला भी ना हो यार। डेल्टा भाई नाम भूल गया मैं कौन से बट है भाई ने वो किया था गिफ्ट। Highlights coming up from yesterday. Vitality, yes, a very dominating performance. सैम्स की पिक रिमूव की, वो इसलिए करी होगी because he's not playing ना। Few crucial gunfights. वो सीधा अभी वो स्टेज 5 खेलेगा probably. Hope he recovers. Pretty much yesterday, as you mentioned in the highlights. कौन जा रहा है स्टेज 5 खेलने? Vitality Godel. I did not expect Vitality. उसके बाद कुछ तो चाइना मास्टर्स भी हैं शायद, उसमें सिर्फ Godel है। I'm not sure, पता नहीं क्या सीन है उसका। Nice, yes sir. What do you expect? They ended up winning things. Absolutely. Again, Vitality doing Vitality things. Both the teams undefeated. Godlike in Group A, Vitality in Group B. So of course, everyone would be looking forward to the matchup that's going to happen in the playoffs, but focusing on the maps right now. And maps are coming in guys. Living में इसलिए no pick किया है exactly. On 3 different maps, right? It was Arsenal. Alpha भाई KRM निकाले तो मजा आएगा, थोड़ा entertaining रहेगा। Alpha भाई कह रहा भाई close range मैप डाल दियो ना, टूट फाड़ दूंगा। But here we go, ladies and gentlemen. Now it's time to move on towards the map feed on. I think Sam not playing in stage 5 as well. Oh भाई, that's sad then. Map आ गए। Oh भाई, submit पहला map. Let's go. I love it.
चलो भाई सबमिट भाई फायरिंग रेंज बैंड है आई गेस नहीं पता नहीं कौन चल रहा है क्या कह रहे हैं 5 मैच होंगे बेस्ट ऑफ 5 जो 3 जीता पहले हार्ड पॉइंट देन एसएनडी देन कंट्रोल देन हार्ड पॉइंट देन एसएनडी ये देख के अच्छा लगेगा अब थोड़ा इंटरेस्टिंग सा हो रहा है एनर्जी से यस अभी होगा R9 और KRM से R9 होगा मजा आएगा गॉडल ओनली इन CDFI मतलब वो चाइना मास्टर्स वाला सीन ना ओके एंड स्टेज 5 में दोनों टीम्स है राइट क्रिश चैट प्रेडिक्शन डालो फटफट और स्कोर 100 से ऊपर जाएगा कि नहीं ये भी बताओ भाई जाएगा इसमें तो बहुत टक्कर जाएगा देखो जितना लग रहा है लेट्स गो using this phone at this point. अच्छे मैप्स हैं exactly. The exact same thing that I have in my hand, right? Wow. And I'm also using it. It's such a brilliant Bro, फिर से R9 हाँ भाई. It's a huge shout out. Thank you so much to Samsung for very great device. Chat बहुत अच्छा device है. देख रहे हो chat? ये तो iPhone है. Got the latest Snapdragon अरे भाई Samsung S23 का कैमरा in these devices. Definitely raising the bar of gaming phones. So this is exactly gaming तो पता नहीं कैमरा अच्छा people. Even I'm going to do exactly the same thing. Level up your game because with epic phones comes epic gaming. सही बात है. Ladies and gentlemen, now also one. सही बात है जब ये हम iPhone चला रहे भाई. मास्टर्स में 1 slot and WC में 2 slots अच्छा सही है. Let's go V for victory. And I guess we should hop inside the game as well. बर्निंग ब्रोस मजा आएगा चैट लाइक कर दो दबा के ठीक है 70 लाइक खींच दो भाई आज मजा आ जाएगा मौज हो जाएगी कल फाइनल्स की भी वॉच पार्टी स्टार्ट हो गया लेट्स गो शॉटगन दिखाओ अल्फा KRM चला रहे हैं एंड ब्रोस R9 चला रहे हैं लेट्स गो भाई हो गया भाई best of 5 match for the evening. Vitality up against I2K. Let's go. बहुत दिन बाद लास्ट में कुछ तो अच्छा देखने को मिल रहा है. चलो भाई खेल दो. रोज पेटा जाके. बॉन्स भी शॉटगन चला रहे भाई. लेट्स गो अल्फा. लेट्स गो अल्फा. ये तेरा मैप है भाई. पेल भाई. Can Will Vitality actually try to get something done? Come on यार अल्फा 40 किल मिनिमम. नहीं इसमें होगा भाई मैं बोल रहा हूँ ना इसमें कॉन्फिडेंस है सब मारेगा. अरे इनको कुछ हारने भाई नहीं absolutely correct on that one. All the 19 points are in their favor. भाई कुछ नहीं करेगा अल्फा के बस नहीं भाई मैं थोड़ा नेगेटिव बोल रहा हूं लेट्स गो find some trades onto the P1 but they're not just being allowed to do anything. My goodness, a perfect paint from the Vitality पिट रही है अगर देखा जाए ना Vitality पिट रही है इसमें लेट्स सी मैप पिक लेकिन Vitality का तेरे को पता है ना मेरे बॉल भी उल्टा हो रहा है भाई मैप पिक लेकिन Vitality का तेरे को पता है ना Vitality उठाया संबटा Vitality भी चाह रही थी कि अल्फा निकाले क्या हाँ भाई को देखा दिखे भाई थोड़ा that is true but I love the fact that now Dope is also feeling comfortable right he was not able to find some amazing kills in the previous game चल अल्फा मार he's the one leading on the bows in the charts अल्फा मारेगा लेट्स गो मारा दो मारा that's true but still the P2 has opened up and I2K are the ones to मैं अल्फा को स्पेक करो यार 3-4 मारते हैं exactly speak about the control अभी उन्हें पता नहीं है ना अल्फा का जब मारने स्टार्ट करेगा तब But once again, they नहीं ब्रोस जब मारा था ब्रोस को भी नहीं मारा था इतना. Vitality quite stubborn. They don't want to let it go. And also they keep on fighting against the players of I2K, but you got to give it to the players of nice I2K, bros. man. They're making it quite tough for the players of Vitality. The struggle is clearly visible from them. The previous shot was missed, but the second one finds it. Yeah, that is true, but still, that is not something you need to whip in this situation. I2K will be able to capitalize onto that one. However, Hardpoint still being contested. 20 more seconds remaining, and your back is not watched out for. Burns is just going to burn it up again, finding it another one, doubling it up, and now they're controlling the scraps at least, so that's going to go in favor. Chat score बताओ क्या लग रहा है? Stop that. If in case they want to make sure that they've got the lead, but maybe they're just going to give it up, rotating towards the next one. Oh my God, Alpha. Alpha, nice. With the shotgun, of course, Alpha dominating things. Vegas in the front. The shotgun shot was taken. Unfortunately, it's way too far away. इसको तरीके तो बताए थे. It's going to be there. The bullets are not going to be more enough to connect them. Nice bros. दोनों तरफ से शॉटगन बजा रहे भाई. ओ भाई 4 खा गया. What a pop off that was with Sparrow.
This guy पांच मार गया single-handedly manhandling Vitality for a couple of seconds. Gets a 5k there and still has थूत not भर दी भाई, ये से कहते हैं रियल थूत भरना। has been brought out by pros. Tries to find something more, Sundance will be able to shut him down. But the 250 150 200 okay let's see will be able to reinforce that hard point. अल्फा मार, ये देख कैसे जायरो से वो कर रहा है शॉटगन। Is good for 2 and they are moving forward. और बॉन्स ने भी जवाब दिया भाई। War machine pulled out by this guy. And once again, Burns is now starting to deal so much damage against against the the opponents. 38 to 56, I2K getting the control established, but Vitality once again just stealing it away like the thieves in the night they are. I2K ये देखो भाई, देखो दो मारे, तीन मारे। A 4K. ये होता है क्या The full stop flows in. गरीना पे तो यही चलने वाला ब्रो, गरीना टीम्स तो यही चलने वाली। The entire series. Exactly भाई। इनको सबमिट खेलने ही नहीं मिला भाई, वरना इतना अच्छा खेलता है टुके वाले। ये देख वायरस। भाई किल फीड में टुके भर रही है। भर रही है भाई, सच में भर रही है। और देख कंपटीशन भी है। वही तो। ये मारा। अल्फा ने मारा पलट के। नाइस अल्फा पेल भाई पेल। 19 किलो होगा ना शायद, 19 किलो है। अल्फा के 13। मीनो के 16। लेगेसी के 19 है अभी हाईएस्ट सर्वर में। Kill feed is being filled by the players of I2K. Shotguns are something that's causing so much issue for them. सही बोला कास्टर ने। Hands of Alpha, you already know this guy is just not stopping at all whatsoever. देखा ये हुई ना बात भाई, ये पता है सबमिट स्टार्टिंग में मिलता ना इस बंदे का और कॉन्फिडेंस अच्छा रहता। अब इनको लास्ट में मिला है। या व्हाट्सएप स्मोक वेलकम टू स्ट्रीम भाई, व्हाट्सएप क्या हाल है? दूसरा कौन बोल रहा है? भवे। This is something I'm not really able to get my mind wrapped up around, but I2K, one thing is for sure, this team is playing like men unleashed. All the 5 players playing together. Team synergy seems on point. एयर का मैप नहीं है, दैट्स व्हाई सेंडेंस पीछे है या बट स्टिल लेगेसी भी एयर ही चला रहा है, सेंडेंस भी एयर चला रहा है। भाई सेंडेंस मार रहा है थोड़ा बहुत। हां अल्फा मार। ब्रोज ने अच्छा मारा है वाला। Even Burns, he starts to burn down his opponents. Absolutely correct, but again, भाई लीड देख no I2K पे they can try and हां है, मैं बता तो रहा हूं, स्टार्टिंग से ही पकड़ रखी है उन्होंने will be shut down just as quickly. अल्फा मूवमेंट तो दे दिया था, शॉट नहीं लगाया वाला। back and forth 70 and 110. कौन है वो? he was my teammate भाई। 70 and 110 as you mentioned, it's the score, but it keeps on ticking. VC में पूछ रहे हो ना? VC में हां। The score, the more better Vitality is going to feel. Nice. on the board, I2K. और इसको पहले वो राइट साइड वाले ने दिखा भाई। हां राइट वाले को मारना चाहिए था। They clearly mentioned this on the interview as well, that they're going to give it all they've got because they've got nothing to lose, and that's how they're playing like champs. स्टार्टिंग से एटीट्यूड से खेले ना लोग, नथिंग टू लूज वाला भाई बहुत अच्छा रहता है। Where was he in the previous series? His team needed him, but right Alpha now he's gravity stepping vortex up चला रहा है ऊपर से। definitely, and just Let's as I go, mentioned, ending things on a good note is what matters. 119 to 85. Hardpoint's going to open up in the next 4 seconds. मार अल्फा मार मार मार। Trades did go in the favor ये जो बैकग्राउंड में आवाज आ रही है ना, स्काउट यहाँ कोई आया है उसमें मीटअप में। हाँ स्काउट भाई गए ना आज मीटअप के लिए, तो उधर बैकग्राउंड में मीटअप हो रहा होगा इसलिए हल्ला हो रहा है। कल मॉडल आएगा। Connections found, beautiful shot. He gets the first one. Oh, legacy bhai. A quick snap onto the second guy. It's time to show your legacy, bro. Let's go. Make your legacy. Alpha मार, Alpha क्या कर रहा है भाई? उधर मार रहा है। 40 मार, 50 मार भाई। That is true. Only one operator on the east side. Mino and Dope are the ones who are having it. Alpha also trying to reinforce. Oh, nice shot. एक और मारा। Nice. एक और मारा। Will be getting those scrap points in their favor. क्या दो मारा वो? मार दिया दो। हाँ दोनों को मार दिया। Straight out, not that pretty either way. अरे कास्टर लास्ट सेकंड पे स्वैप कर दिया वो, मतलब जो वो आपने क्या किया? मेरा कुछ सीन बढ़ गया था यार। डेल्टा आई हैड प्लान्स टू गो, बट वही है मैं नहीं गया तो इसलिए आस्ट कि मैं वॉच पार्टी कर लूँ, तो यू नो अगर मैं जाता तो मैं व्लॉग्स बनाता मस्त। प्लेयर्स अल्फा अल्फा सबके मजे लेके आता भाई, ऐसे उनके इंटरव्यू लेके थोड़े। नाइस शॉट बे अल्फा, ऐसे ही खेलना है। Holding the chokes is name of the game, and as of now Vitality reinforcing the hard point because they've got the Vitality full वो हो गई अभी, कॉम्पैक्ट को सीरियस खेल रही है। Use of utilities. Dope is good for one with the Sparrow, but will be shut down. अरे मीनो 3 शॉट मिस कर दिया भाई। Legacy.
Oh, what's going on? Nice legacy. 155 points. I2K. Submit में अच्छा लाइनअप है ब्रो इनका. Lead being accumulated. I2K really just making a stark statement. If they do take down Vitality, ये बात सच है. ये सबमिट पे रिलायंस अभी अल्फा पे. सबमिट में क्या? अल्फा पे रिलाय है ये I2K वाले. नहीं नहीं लेगेसी 36 मार दी भाई. 27 36 36 अरे भाई अल्फा 26 पे. अभी सर्वर में सबसे हाईएस्ट किल्स लेगेसी के चल रहे हैं 36. बट टेरिटरी में किसी का भी नहीं हुआ 30. 162 to 126. I mean, I2K बे कंट्रोल ले लेना उन्हें are on top of their performance. Power of the Samsung Snapdragon. I2K मैप खींच ली बे. In the Samsung Galaxy S23 phones. Out there, 120 FPS on their phones right now, and maybe that's helping them. 3-0 से ऊपर जा रहा है chat. That they need. But we Vitality is an experienced team. देखते हैं if they can come back. Chances हैं. And my goodness, Sparrow जो कुछ खा गया एक बार तो पूरी टीम. takes himself down as well. Not a very good use of that ability, but still catches the rotation in the mid. Rose and Burns finally stepping up. The operator usage is absolutely perfect coming in from their side. But क्या लग रहा है chat? कौन जीत रहा है ये वाला particular map? Takes two before falling. Why does not It's step close up for enough. his own team? They're still contesting the hard Chal point Alpha. though. Exactly, 172. As you mentioned, still contesting the hard point. And Team Vitality just not able to get that glimmer off the point anymore because the lead is being maintained consistently. By the players of Vitality. Look at this, what's going on? I2K on the kill feed, they were all across the board. Eventually, Vitality once again they started lay the foundation down, and I guess Vitality, the defense is now close होने वाला है score. Vitality बोल दिया कृष्ण भाई ने. Let's go कृष्ण भाई. कम बैक आ गया भाई. अब तो इनका Vitality वालों का भाई Vitality जीत गई भाई. भाई P1 कंट्रोल अगर ले लिया ना I2K ने तो निकाल सकते हैं. और हिट मार कर दो हिट मार. भाई खराब लगा भाई. बट ये फुल एडीएस खेलता है ना, मतलब फुल एफआर खेलता है. एडीएस करता तो मार देता वहाँ पे पूरा. नाइस शॉट. Perfect Alpha has been insane with this KRM. कास्टर ने फाइनली तो रियलाइज करा भाई. लेट्स गो प्लस वाइटलिटी. लेट्स गो स्मोक भाई. You play Valorant as well? I saw a guy named Smoke in my match yesterday or day before yesterday. पार्टी जीतेगी बट मैं अल्फा की साइड हूँ. सेम अब तो सारा Vitality पिटे जा रही है भाई. मैं खुद अल्फा की साइड हूँ. I know Vitality will win but overall. बट ये मैप अल्फा का है. ये तो भाई के लिए इतना तो है भाई. मार रहा है तो मार रहा है. देखो मार 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 मार. नाइस. मीनो ने 3 मार दिए. For both of these teams have been shut down brutally. मीनो का एनिमिस हो गया. 2 बार हो चुका है मीनो का एनिमिस. 170 accumulated, I guess. Even Guys, do somebody make sure drop a like and a sub. 200 marker. War Machine pulled out. The damage is of course going to be inflicted, but Vitality they बढ़िया भाई. दो मार दिए. It's such a great fashion. Vitality से मैप ले रहे ब्रो ये. देख मार रहा है. अल्फा ऊपर से मार रहा है. मारते. Kills are also going to be there from Vitality. 224 172 देख रहे हैं. वही तो कह रहा हूँ. मैप ले गए ऑलमोस्ट. It's just impressive. डोप 43. लेगेसी. ओ हाँ डोप भाई. डोप भाई तो अंडररेटेड निकले बे. 46 मार दिए. मैं भी नहीं देखा. लेगेसी 44 डोप 46. Alpha 33. I2K can actually win this. Mino 41. This is the first time they'll be having the spawn control in the P3, but again, we will see Vitality trying to double it up, and yes, that's Vitality ने wipe कर दिया. कर दिया. Spawn change कर दिया भाई. मुश्किल है. Burn will be having kill feed पूरी I2K की. हाँ I know. They'll be able to take control back. Sparrows being brought in by Jokos. इसका ये जो 2 ऑपरेटर्स खोले हैं ना Vitality के, ये important है अभी. It's all empty snow. ये चुप कर दिया तो जीजी है. With the control of the hard point, now the point flow is momentum back भाई. नहीं वायरस क्लच कर सकता है. क्लोज. ओह मुंह पे शॉट गन. अरे लेगेसी भी गया भाई. लेगेसी भी एक हो गया. And Vegas, they're trying to keep this team in the contention, in the run. Oh, Vitality's actually going to fight. अल्फा ने एक मारा. The shotgun's doing so much damage. अरे भाई वो पता सीधा घुस गया कि पहले सामने वाले देखो. Instantly seals it up. 2 मार देता ना वहाँ पे क्लियर हो जाता. ले ली भाई. लीड ले ली. स्पॉन्स ले ली भाई. Finally Vitality after trailing बट
बट अभी भी पता है P4 तक जाएगा ये। नाइस, ओ 3 मार दिया, नाइस अल्फा, लेट्स गो। पर चल नेक्स्ट के लिए हो गया, नेक्स्ट के लिए हो गया, नेक्स्ट के लिए हो गया, वही नेक्स्ट तक फॉरवर्ड हो गया। अब देखते कंट्रोल किस पे है। कंट्रोल I2K पे स्पॉन है, I2K पे स्पॉन है, कंट्रोल है, I2K पे सेटअप है प्लस ऑपरेटर है। डोप, लेट्स गो भाई, मार ले। So moment to shine भाई। Oh my God, what a comeback from Vitality that was. They rose up from the ashes right there, but I2K. मार 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 मार। Appreciate this team even more because मुंह पे फटा उसके। चल ठीक है, अल्फा 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 मार 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 मार, क्लोज जा रहा है, क्लोज जा रहा है। अरे भाई वाइटलिटी 2 भाई भाई कितना क्लोज जा रहा है। अरे मीनू 2 मार दिया भाई। लेगेसी घुस गया, लेगेसी कम ऑन कम ऑन कम ऑन मार दे। ब्रोस ये देख जो कुछ भी आ गया था भाई। इट वाज क्लोज इनफ। ऑपरेटर हट गया। हां यार, ऑपरेटर वहां पे निकाल लेते हैं ना लेगेसी। जो कुछ सर पे हां पता है, देखा पूरी टीम लेके अल्फा भाई, बहुत क्रेजी खेला। हैट्स ऑफ यार। देखो टीम जैसा भी खेली हो, आई नो लेगेसी और डोप भी अच्छा खेले, बट भाई अल्फा का मैप था समिट, इतना मेरे को पता है और वो परफॉर्म कर रहा है। अगर स्टार्टिंग में वही स्टार्टिंग में अगर सबमिट आए होते तो अल्फा का मोमेंटम और सही रहता शॉटगन पे। स्टार्टिंग से उसने चलाई नहीं शॉटगन क्योंकि आए नहीं उसके मैप्स, बट वही यार, वेल प्लेड I2K, मतलब इट वाज अ गुड गेम। I2K की जो टीम है Just really love to see the मजा आ गया because you saw Dope stepping up. You अल्फा को गिली चुमी बोल रहा है लॉल। नाइस यार, अच्छा खेला। He is just manhandling the चैट देखो ना, देखी मैंने। Jokos in the meantime on the other hand was a कौन सी चैट कह रहे हो, मतलब उसकी देखूं मेन स्ट्रीम की? नहीं यार, उसमें टॉक्सिसिटी कुछ आ गई तो फिर आई डोंट वांट टू रीड इट अप, छोड़ो ना। Making sure that they had the control for the entire game. That's something I've seen first time in these 2 days. Done by मजा आ गया। team. Oh man, I'm not gonna lie, I need to catch a breather. Everyone had to. I mean at this point, even the viewers on YouTube can pretty much just notice the difference in my voice. Exactly भाई, डोप 51 मारा। डोप क्या हाईएस्ट किल्स हैं सर्वर में? I'm just starting to lose it. But look at Dope with 51 kills on the board. Legacy with 49. Oh my God, Dope. Indeed, that was a dope performance from this guy. Where was this Dope? We needed you, man. Exactly, bhai. We needed you, bhai. And yes, guys, the scoreboard has not been flipped over. It's not mirrored or anything. Bhai, submit to map hai, bhai. Literally Dope just demolishing Vitality. Oh, ये भी सही है, yes. We've been singing the praises of I2K as if they've won the map. It has been Vitality to make that comeback. And I also want to bring the attention back to the same point that even though the entire match was in chaos, you saw the operator usages, you also saw those KRMs coming in, especially in the hands of Alpha. Vitality did not lose their cool even till the last minute because they knew Alpha ko kar diya, one or two good hardpoint rotations for them and 1 or 2 good spawn controls coming in and they would be able to flip everything back up. And this music again, please send me the name of the playlist production out there because we will भाई मिल now जाता be थोड़ा बहुत तो into the search and destroy. अपन भी KRM ही चलाते हैं, मतलब एक्चुअल में देखा जाए यहाँ में स्नाइपर चलाते हैं KRM। तेरा तो कंफर्म KRM था। मैं R9 चलाता, तू KRM चलाता, मैं KRM चलाता। मैं स्नाइपर पे भी हो सकता था, मतलब डिपेंड करता है। तेरा तो कंफर्म शॉटगन पे तो भरता। Meltdown is the name of the map and again just अबे ब्रोस जाके 2 काट दिया। maybe winning this one. Bros Vegas are shutting your hopes down right भाई off ब्रोस the bat. जाके 2 काट दिया सीधा। With the sniper in hand. Seems nigh impossible though. Tries to go in for the first shot, misses it. Hey yo, wait. Hey yo, what? Minio? That's not where he ब्रोस की शक्ल देख भाई, 2 जाके काट गया वो। लबाओ भाई। They're really here to make some light work. और भाई बर्न्स ने उल्टे पहने हुए थे ईयरफोन। You can look at Vitality's faces. उसने अभी चेंज करे। ऐसे चेंज करे उसने। लॉल भाई। Shouldn't be struggling. That's what we thought. भाई ये फिर से जाके काटने वाला है। ये ट्रोल कर रहा है भाई। Things do not happen in the exact same way. ट्रोल करने के उसमें खेल रहा है। मर गया। अल्फा मार दिया। Think about them as Alpha yet again with the KRM up close and Come on Alpha. ओए 2 हिट मार्क। Says no burns. अभी देखा? He's got a solid aim for that switch. नहीं देखा क्या कह रहा है? 2 हिट मार्क आए फिर से अल्फा को बेचारे को। शॉटगन चला रहा था। हां। Yo, what's up, Master? Welcome to stream. क्या हाल है? Guys, you should make sure to drop a like and a sub. Maybe Dope can pull off a dope clutch. रात को Warzone Mobile की भी स्ट्रीम करेंगे if I have that much energy तो। For Vitality, they're the defenders and all their. और भाई 7 घंटे की स्ट्रीम होने वाली है, मजा आ गया लेकिन।
लास्ट का जो ये सबमिट था दैट वाज वर्थ इट भाई। All he needs to do is just hold on to that bomb and look at this guy. Position tucks himself. ज्यादा बियर ने ले लिया लॉल। And as soon as Burns is going to walk in, the real problem's going to start. Vitality Burns versus You won't hear it to be dope. Okay. jogging cues, right? So that's one good thing for him, but the rotation timing is just so brilliant from Dope. Like subscribe करो। We need 4 more likes for 70 कर दो भाई। This is exactly what he needed, but nonetheless, Burn is also making his way towards the side. He can मास्टर भाई 7 घंटे होने वाले स्ट्रीम को। Right at the time of plan, Dope. रात को भी करेंगे फिर 2-3 घंटे की देखते हैं अगर सही रहा तो। A lot of space to clear. That's going to be Burns who sees him first, but Dope with the adjustment. Dope takes it. A one-on-one clutch. Turn on खा लिया बे Burns। Calm, cool, and collected, and he takes it. क्या लग रहा है चैट, क्या लग रहा है? 1-1 being the scoreline. Team Vitality, I2K. Oh man, I guess this is really going to be a nail-biting series. It better be, man. It better be for all the fans out there, not just for Vitality, even for I2K. They're making a statement at this point, and if they take them down, that's going to be everything. Good spray down coming in. Last bullet not connecting, but seems that a quick retake. Shotgun diff. Let's see. Alpha. Alpha मार दिया. God, you can't win against a shotgun like that. Indeed, you can't. Oh, but look at this. Tough luck. Oh my God, Vitality. Nice, Minu. Good read. Yeah, well, they're just gonna try to win things on their firepower. पवे है इधर? हाँ हूँ यार, रेडी हो रहा था जिम के लिए। ओह अच्छा ठीक है मेरे को चला गया इसलिए पूछ रहा था। ये मैचेस देख के जा रहे हैं कि जा रहे हैं? Vegas with 4-1, Dope on the other side with 4-2. Burns हाँ 5-10 मिनट का तो देख के जाऊँगा। ठीक है। One more person on the side of I2K to start stepping up. कंट्रोल में तो वाइटैलिटी शायद ज़्यादा बेटर खेलेगी। SND अगर I2K जीत गई तो लंबा जाएगा फिर। Oh my goodness, he could have found the best possible timing coming in. भाई ब्रोस का फ्लैंक might be good for at least 1 or 2. Legacy in the meantime. Oh my God, knives in hand for both of them. Weapon being brought out. R9. Good for one with the rotation coming in. Nice. Oh, tough. और hit mark. And now just make that do a 1v4. What can they I2K जीत गए round. Nice. I2K once again they take it. 2-2. Let's go. Back and forth, things are going. Vitality should be having this round in their hands if that's how things are. Alpha just looking at the audience, giving a small smirk out there because he knows what's happening. He knows that there might be a big upset Control standoff है on the way. मेरे हिसाब से तो वो है crossroad, पता नहीं standoff है तो KRM चल सकती है भाई. Time around, maybe moving in towards the A. Control? हाँ शायद standoff है, chat में कौन बोला? Getting into a भाई फिर तो मजा आएगा. Oh, Bruce nice. क्या flank लिया भाई? That's another timing. Gets a 3 for himself and Dope 3 मार दिया. tries to find a trade but damn. He's got an ace on nothing. भाई एक राउंड ये लोग स्पीड रन मार रहे, एक लोग ये मार रहे. 1-on-4 situation. Dope by 1v4. The scoreline being tied up, and because of that, maybe nothing can be done over here once again. बहुत गंदा मारा भाई. Dope ने शायद कॉल आउट किया कि अल्फा तो घुस जा. मेरे को जितना लिप रीडिंग में समझ आया. Let's see. And because of that, ऐसा कुछ तो भाई घुस के मार दे अल्फा. And if this keeps on going now, I guess I2K is going to be the one to take the round. If this keeps on going, भाई मैप भी तो हम दिखा रहे, समझ नहीं आ रहा. वही तो. 3 and 2. Alpha देख कहाँ दिख रहा है. Not giving up the lead, so that's one good thing happening for them. Joe goes with the sniper though, up close and first. Dope could not find the time. Dope पे push पड़ गया. Alpha ने एक मारा. मारा. But Sundance and Alpha making sure that the numbers are in their favor. Oh, 3v4 scenario, and considering we've got once again Mara, Mino Alpha on the down. screen, the IGL of the team. 3v2, I2K kill. It's a 2v3 scenario out of nowhere. What can he try to do? Kilo 1-for-1 pulled out in his hands. Going for the plan. बढ़िया बहुत अच्छा. Nice. I2K now they know the pressure is going to be on the players of Vitality, so everything's going to be looking good for them, at least for now. All they need to do is keep on holding the choke points, and that's what they're doing. There are many choke points to look to. You know, you've also got to send in one person for that flank, and that is what they're trying to do. Legacy in the meantime, and hold one. He might have got a pixel. Oh, what a shot! Mino ने एक मारा. Definitely going to be nice read भाई. अच्छा read था Legacy का. Nice. Good read. I told you. This is what's happening. Back and इस पे वाले ने मैप क्यों हट कर दिया? After update शायद हट गया. मैंने सुना था किसी को चैट में बोलते हैं. Switched up. Let's see. Let's see. Hey, Joe, be sure to make sure to drop a like. Like 69 likes, 3 more likes to go. Breaking this back and forth.
That's a cool samurai dress, by the way. But yes. भाई भी तो जिम जाएगा ना? Forward, slowly and जाते steadily. जाते Either way, देखूंगा, वहाँ बैठ के भी देख लूंगा। वहाँ पे जाके 5 लोगों से तेरे को सब्सक्राइब कराना है, तेरा टास्क है। लेट्स गो। करा दे भाई, ट्रेनर वेन से करवा दियो। ब्रोस 2 मार दिया बातों बातों में। गेम खेलता है फोन पे, जिम में जाता। नहीं भाई ऐसा तो बोल ही सकता भैया 2 मिनट अपना फोन देना। YouTube खोल के इजी। Oh my God! Vitality. Come on, Bobby, bhai. Domination out and over. Then what's going on in the upcoming rounds? Yeah, let's go, Bobby. Legacy, one man standing. Oh, nice shot. Can he go for the second? Yeah, go for the second one as well. But gets Crossfire denied. 2 players to deal with, man. Next to impossible to pull off a 1v5. 6 सब्सक्राइब हुए तो 7050 हो जाएंगे। चैट में बंदा कह रहा है भाई भाई 5 का 6 कर रहे हैं चैट वाले। 6 करवाओगे तो 10 सब्सक्राइबर हो गए तो 7050 हो जाएंगे। It was the round for Vitality. 7.05 के। And with the way that the timeline has been going, it should be I2K winning in this one. Let's go. Defensive setup this time spread more towards the. तेरे को याद ही नहीं रहेगा। मेरे को पता चला। You have to try or play for 1 or maybe. तू भूल जाएगा जिम जाके तो जिम का हो जाएगा। तो जिम जाके जिम का हो जाएगा। मोटिवेशन ले जा रहा हूँ every single time. This bro is moving. आज आम से ना tunnel and catching people off guard just like he's going to do. मोटिवेशन क्या चाहिए भाई? मस्त एकदम पंप इमेजिन करने के बाद का। Oh, they managed to equalize things. Now it's going to be a 3v3 scenario. भाई मीनो 2 मार दिया। मीनो 3 मार दिया। Single-handedly takes him down. Bro, मीनो Oh my God, a 3K from Mino. क्रेजी भाई। उंगली चटका रहा है। हाँ भाई। It was a solid IGL play coming in right there. भाई मीनो भुन रहा है। Said I'm not just भाई your तो बताए IGL. डिफेंस में अटैक करना चाहिए मेरे हिसाब से। I am your daddy. I2 के I can वालों also frag. कास्टर बहुत है भाई। Now 5-3 being the scoreline. Vitality. Let's go, 2 chat. rounds lead. I2K might just be back into pressure. क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? Burns kicks things off on a great note. अंग्रेज बुलाया क्या? हाँ अरे इंडियन है बट सबको लग रहा है वो अंग्रेज है क्योंकि उसका एक्सेंट वैसा है और एक्चुअल में जो अच्छे फैक्ट्स वाली कास्टिंग कर रहा है इनको नॉलेज है भाई गेम का। यार ये बेस्ट मैप है मेरा फेवरेट मैप। भाई वही तो बेस्ट एसेंड ही होता है इस पे ए साइड पे जाओ भाई क्या स्नैपिंग। भाई मैं इसमें शॉटगन चलाता जैसे भी अल्फा चला रहे हैं अल्फा ये लोग मैं और भवे दोनों शॉटगन लेके घुसते थे आरएनटी के टाइम पे मैप था हमारा हम लोग दोनों आरएनटी में थे ना साथ में। लेगेसी भाई क्या पता ये तो थोड़े बड़े आदमी हैं उस टाइम पे। This is going to be I2K moving कौन? forward with the 4. ये लूसी भाई तो थोड़े बड़े आदमी थे ना उस टाइम पे। And with the way the timeline was broken, I think maybe I2K would be able to pull this one off. Their defensive setup was very good in this time around. हाँ एक्स लूसी अरे मुझे अच्छे से याद है पता क्या था मैं दोस्त के साथ आया था। अच्छा Vitality though. वो लूसी का दोस्त था वो हेक्स में था जब ओ फोड़ दिया हाँ। Wait a minute. तो हम ट्रायल देने आई थी पूरी टीम। इसने बताया मैं कौन सी टीम बनाया इसने बनाया मैं कोई पता नहीं ट्रायल टीम होती है एकेडमी लाइनअप wants to go in for a very long rotation. He's going to catch one person, but would not be able to finish Minio off as he wins his own battle. वहाँ से मैं पता चला लूसी नाम का भी कोई कीड़ा है। कीड़ा बोल दिया भाई। और भाई लूसी उस टाइम पे codm की ओ भाई अल्फा क्या मारा है? Damn भाई नाइस। The struggles can be 3v1 वेगस considering मुश्किल है। 3-on-1 Vitality, I guess the lead that they made डिफ्यूज हो रहा है वेगस भाई। Compromised and capitalized. All the players on the side. अरे Finds the first. Too tough to frag the second guy. Alpha with the KRM, right? Is continuously अल्फा में कह रहा हूँ ना भाई अगर ये डे 1 से KRM खेल रहा होता ना भाई मार रहा होता। the best shotgun. जीतने का पता नहीं किल्स तो बहुत होते भाई के। Hands on your fingers. How well भाई ओटी you're जा able सकता है to बे। utilize. लूसी तेरे को पता है ना वो टी वाला सिस्टम अभी आया है। Still seen people using the LK20. भाई ओटी जा सकता है। And we've also seen people go with the kilo 1-for-1. Now yes, having other मेरे को शायद स्टेज 5 की भी वॉच पार्टी की परमिशन मिल जाएगी भाई। कर लो यार स्टेज 5 कर लेंगे। Might as well be easier. Warzone Mobile का अपडेट डिलीट हो गया यार। One on towards the head if that's possible. Though 5-5. बाकी कोड The देख लो opener यार was in favor of पीसी कोड है। Jokic. Dope taken वही care of. पीसी कोड कर लेंगे थोड़े टाइम। मॉडिफाई 3 भी आने वाली है। Equalizes the numbers. 5 दिन और खरीद रहा है। पैसे नहीं यार जुगाड़ बिठा रहा हूँ जुगाड़ बैठ नहीं अपने हैं फिलहाल। कितना हो गया उसका यूट्यूब रेवेन्यू बचा कितना? वो तो हो गया ये मंथ आ जाएगा बट वो ये तेरे को पता है कहाँ जाएगा वो। But I guess
Now the उस हिसाब से अगर कुछ बनता तो देख लेंगे। The shotgun up close and personal is of course going to be dealing so much damage. Now the situation अभी नवंबर में रीसेट हो गया, 0 से स्टार्ट होगा मतलब ऐसा। Pressure on Vegas. Fights the first, the second. Nice one Vegas. Vegas with a double kill to save the day. And this is the time. Vegas को तो कैसे इंडेक्स से एम करता है ना? Absolute perfection. अबे तूने देखा पिछले मैच में जो बैरल रखे हुए थे ना वहाँ पे ब्लू वाले, वैसे बैरल वाली स्किन थी, गोल्ड स्टील ब्लू करके स्किन थी एक लाइन उसमें AK-47 स्टील। हाँ याद है, कौन सी कह रहे हैं? और जब ये मैच था कॉम्प में तब वो मुंह पे नेट फाड़ दी। तू क्या बोला? उस टाइम पे वो था और इस मैप पे हम लोग RT50 स्पैम करते थे, उधर जाके बैठ जाते 20 उधर से एक बंदा बैठा था, एक बंदा RT50 की भी स्किन थी ना उसकी ब्लू वाली। हां उसकी स्किन ब्लू वाली स्किन थी, राइट याद है ब्रो। मैप में वही चलाते थे। 1v2 in a 1-on-2 scenario. इतनी बार क्लच किया ना इस साइड से और सीढ़ियों पे चढ़ के इस साइड से एक्सपेक्ट कर रहे हो स्नाइपर चढ़ने या इन लोग हमेशा वो साइड चढ़ के दो बंदे खोलो फिर नीचे कूद के इस साइड चढ़ के खोल दो, काम करता हूं। लॉल मेरे को परमिशन चाहिए कैसे लो डेल्टा नॉर्डविन वालों को ट्राई कर अप्रोच करने का, या कोई भी ऐसा पर्सन वहां पे, तो यू हैव टू आस्क देम। मतलब करने को तो अभी लगा ले, कर ले स्ट्रीम, बट वही है फिर कॉपीराइट आ गया तो आई डोंट नो। मैं तो पूछ के कर रहा हूँ तो मेरे को नहीं आएगा। ब्लेजी दिखा, ब्लेजी दिखा, तेरे को भी दिखा था ना? मैं तेरे को दिखा था ना वो राइट उसमें बैठा था TWB के पीछे शायद, याद नहीं है मुझे। वो ये तो कहा था कि मैं जा रहा हूँ इसमें, मतलब अरे नहीं मेरे को उसमें दिखा प्रोडक्शन में पीछे इनके कॉडम वालों के जो पीछे बंदा खड़ा है ना तो हेल्प देम आउट, उसमें ब्लेजी दिखा मेरे को। मैंने फोटो भी खींच के डाली है उसमें लीडरशिप चैट में, देख वो ब्लेजी है ना शक्ल से, मेरे को जितना पहचाना वही था शायद। सीजन 4 विद रीपर एंड डेविड मेंसन, किस चीज़ का? अरे स्टेज 5 के लिए, स्टेज 5 के लिए तो पता नहीं, मेरे को भी कंफर्म करना पड़ेगा परमिशंस वगैरह, बट या मोस्टली आई विल गेट। ऑल्सो गाइस जो भी सुपर मेक श्योर ड्रॉप अ लाइक एंड अ सब। अभी कौन सा मैप है? अभी होगा स्टैंड ऑफ कंट्रोल, अगर वाइटैलिटी जीत गई तो जीजी खत्म, कल मिलते, और अगर नहीं जीती तो एक और 2 मैप और चलेंगे फिर। कल होगा फाइनल्स, 4 टीम है, प्लेऑफ्स के फाइनल्स होंगे, फिर उसके बाद टीम फाइनल्स होंगे। And in this one, we are seeing Legacy being on top. True. Just imagine. Legacy 14 kill मारा इसमें. Just fragging one same map. Maybe the next one on standoff is going to be that way. I mean, speak of vitality. Bros by full monster. Do you think? Steel blue, हाँ समझा. Or the upcoming rounds could be won. कि वो सीजन में आई थी यूमीन है ना? If control is won, क्या लग रहा है लूसी भाई? क्या प्रेडिक्शन है ये मैप की? नहीं मतलब ओवरऑल ऐसा वो जो वो है ना स्कोर 3 राउंड का होता है ना कंट्रोल, वैसा कितने राउंड ले सकते हैं आइटो के? मेरे हिसाब से 3-1 होगा, एक ले लेगा आइटो के, तो अपना बताओ। इसमें भी क्या रहा है? इसमें चला रहा है अल्फा क्या रहा है? हाँ इसमें चलाना चाहिए भाई, लेकिन ग्राइनी कंट्रोल के लिए इजी रहता है। किसको बेटर पता भाई? 3-1 हाँ मेरे को भी वही लग रहा है। Finding some crucial picks. Vegas doubles it up as well with zone. And they're trying to work their progress towards the 2-3 okay. Let's see. Oh Jokos. Here we go once again 23. लुशिया ऐसे स्नाइपर बनो रिस्पॉन में पीसी में जब करते हो। यार हम करते थे ना जोकोस वो थे भी नहीं गेम में। ओ भाई ये देख लो, अब तो जब भी थे चल वो हो ना हो उस टाइम अच्छे स्नाइपर एक का मूनस्कोप टियर 1 सर्किट में करता था। ओ शिट, मतलब तब करता स्नाइपिंग जब सामने वाले इतने नहीं चला रहे थे। Oh shit! Virus making sure that he is jumping back to shut him down as well. Virus and Dope. Alpha निकालना यार क्या रे यार? Spawn control game. We'll just have to wait and see if that actually works out or not, because Alpha on the other side of the things is doing his Alpha things, right? Switchblade में मार रहा है वैसे। Really was hoping he would be on that one. Oh my god, look at vitality. Vegas and Burns with a 2K कल का टाइमिंग पता चला किसी को तो बताना। चैट तू क्या कह रहा है?
but I2K is उनका trying their qualify best नहीं to हुआ win क्या the round? duels as अरे well. उनका but on the roster changes kill का कुछ feed, सीन हो गया था। It's just Vitality dominating through. लाइक अभी जो पल्स एनएस में खेल रहा है वो शायद उनकी टीम में था एंड लास्ट मोमेंट पे पल्स एनएस ज्वाइन कर लिया, कुछ ऐसा सीन था, पता नहीं, आई डोंट नो। इस वजह से उनका रोस्टर क्वालिफाई नहीं हुआ क्योंकि रोस्टर चेंजेस हो गए तो उन्होंने अलाउ नहीं करा, कुछ ऐसा सीन है, पता नहीं, नॉट श्योर। 6-9, consistent advantage though. Absolutely correct. मौका होता तो मजा आता, लैंड पे ऐसा वो होता, समझ रहे, मसाला मिलता। Lead one player from I2K to survive 3v7. ट्रैश टॉक वगैरह बहुत होता। Super difficult to pull off as already A is being taken down. Could add additional time, but they do not. भाई बेचारे मीनू को किल नहीं मिला लास्ट वाला। Now the first one. 1-0. थक गए भाई ये लोग भी, देख। See, second round on the board, Vitality. Got to try and go in and take control of that A, but we've seen Vitality going in directly towards B, right? We've seen that multiple times happening. Trophy systems dropped in, making some progress towards the A. They've got to control the house. लेजी तो मेरे को दिखा था, मैंने डाला डिस्कॉर्ड चैट में, देख। Sundance Legacy finishing both of them off. Jokers in the meantime, still making sure he's getting some trades out there. Nice. Oh, 26-26, and this is रात को तो कॉडम करेगा, मतलब वो कॉडम करेगा मोबाइल The lives are running out. करने को कर लेंगे, तू रहेगा तो बता। But even they're making sure that even Vitality is going to be suffering with them. Sparrow being pulled मेरा out सीन from ऐसा this मेरा guy, करने का मन Jokos. इसलिए नहीं है क्योंकि अभी अपडेट नहीं आया है। Still looking forward to get the connections. Vitality, look at him, he finds one Alpha. Sparrow kill. I don't think Did he get customs the होंगे second one though? Alpha, क्योंकि he's- अपडेट नेक्स्ट वीक डिले हो गया। ओह अच्छा मारा अल्फा। And he actually does that. I दो love मार the दिया। fact that he actually threw out his trophy system first, making sure that even if the shot was fired from the Sparrow, it would be stopped right away. Life count still just one difference. Second of progress made towards A already. Finally, Yeah. I've been allowed to say that. I was waiting for that. Oh, so Alpha long. actually gets him with an 8, and then even Dope is trying his best. Wires with a 2K. Dope कौन है? अगर आज चल रहा है Sundance from the back, he's got his क्या? back. Claw being Dope pulled कौन है? out. अगर From the आज side of नहीं Virus नहीं finds the नहीं, first. दूसरा डोप है। Can find the 17 to second? 12. अजराज तो छोड़ दिया था। Disadvantage. I2K. They just keep on leading up when it comes to the निर्वाणा का lives. लाइनअप है, जो भी 10 आई2K to का लाइनअप है ना, 16, निर्वाणा करके एक लाइनअप Lives होता था। advantage. And a brilliant spawn trap coming in as well, Dope utilizing the virus, claw to utmost Alpha, perfection. And my goodness, look at that. इसमें एक spray एस से down. बंदा होता था, मैं Legacy, नाम भूल गया Dope उसका। making sure that lead is increasing संतोष further in संताश terms of पता that नहीं light कैसा count. नाम का, वो भी एक Two शॉट takes गनर of था। progress towards the A, but बवे को that's याद होगा, all बवे है that इधर, Vitality ठीक है। has able to manage. आहू किसकी बात कर रहा है? वो जो इनका आईजीएल टाइप नहीं होता था, केआरएम चलाता था, संतोष संताश, क्या नाम था उसका? एस से। क्या नाम, कौन सी टीम की कह रहा है? निर्वाणा में ही था, याद कर वो। They win this, it will be 1-1 inside control. अरे नाम तो याद आ आईजीएल रहा करता, है। आज मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। शंतान, हाँ शंतान, डेल्टा ने बता दिया। शांतन भाई, हाँ। बेचारा वो भी नहीं हो रहे, हाँ भाई। वो सनडांस की जगह है, मतलब चेंज हो गया क्या? सनडांस क्योंकि वो लाइनअप में था, तेरे को याद होगा तो, टर्मी वाला लाइनअप जो नहीं था, टर्मिनेटर टर्मी वाला, सनडांस उस लाइनअप में था। That's not possible at all. 1-1 हो गया भाई, I2K निकाल ली ग्राउंड। Perfect display of defense coming in from I2K, and I love the 2-3 fact बोला that था, they 2-3, remembered let's see. just to go in for that spot 2-3 में जीतेगा कौन, ये बता? able to pull it off as well. Fidelity, Yes, of Claw course. was being Of invested course onto that होता one, है। but 2 protons, that is हाँ, exactly 2 what you protons भी want. था एक। You want the numbers advantage to वो stay 7C में with your था। team, making sure Born to kill। शांतन को ना हमेशा इन्होंने साइड में रखा है। हाँ, शांतन बेचारा बहुत शांत वो था, पता है, Annihilator's out. शरीफ सा था। Finds one. भाई वो हर किसी का मैच स्पेक्टेट करता था, हर किसी का। हाँ, वो तो मेरे को याद है। From this guy, but still no connections found. So तू that's रैंक an खेल issue. रहा होगा War तो भी Machines बीच now बीच में start स्पेक्टेट off करता so था, much. फिर एग्जिट कर देता था, देखता था रैंक का तो। वही तो भाई, पता नहीं कितना टाइम था बंदे में। Jokos so low. Legacy finds himself a 2K. Vitality once again makes a swift Jordan return बहुत back late आई inside the कॉम्पी fray. में। The पहले सब लोग Annihilator is something राइफल, एक that राइफलर will होता था, need to shut स्नाइपर these और players down. दो The front lines दो look at SMG, this. हाँ। So close the shots are. शॉटगन का प्ले जो है ना गरीना में बहुत है भाई, अभी भी बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली। बहुत लेट है। पहले सारे जितने लाइन अप थे। हाँ, गरीना में भी पहले मैंने देखा था, हेवन स्नाइप करता था, बाकी 2 SMG 2 यार। व्हाट्सअप शंतानु, वेलकम टू स्ट्रीम, क्या हाल है? शंतानु भाई, आप वही शांतनु क्या जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो निर्वाणा वाले लाइनअप में थे? भाई देख ले, यहाँ पे भी स्पेक्टेट करने आ गया। वेलकम भाई, वेलकम टू स्ट्रीम भाई, शंतानु भाई, क्या हाल है? आप नहीं खेल रहे भाई? मेरे को लगा आप हो गए, लेगेसी मतलब सेम लाइनअप में थे ना आप लोग सब। ये भाई एनवी वाले, हाँ निर्वाणा।
And now Vitality, oh no, they're just losing out. भाई Vitality की life कम है. Dope and Alpha, even Sundance, every single Imagine player I2K from the map side जीत of गई. I2K is actually clicking in together. जब And भी कौन सा that's अच्छा why मैप है next? Vitality's been struggling so much. क्या कह रहा है? They're just not able to win those duels. 14-11. जब भी कौन सा next मैप अच्छा है, खराब ही है. हाँ, वो तो है. Can be swung back in the favor. भाई 3 मार दिया. 8-14, make that 8-13. Oh my God, Vitality, they're losing नहीं भाई so जोकिंग जोकिंग लॉल नाम लिया और शांतन हाजिर है. अच्छा आप अलग हो क्या शांतनु भाई? फिर ठीक है. ओह क्या मूवमेंट दी ब्रोस ने. You need to give them at least half a second to go in that spawn mode. That was a nice try indeed. 1v11 and that's I2K that won it already. B been taken care of. And they're up to 2. Oh my God, are Vitality actually gonna drop a map? Imagine. Against I2K, if that does happen. Against Rubishan, make sure drop a like and a sub yaar. Let's go. To every single person that's even in the chat. Oh my God. I just want to say, आप all अलग हो ना of the शांतनु. people Okay out there welcome यार. who were waiting to see the interview of Vitality, maybe you've got to wait for a map longer. As Dope pulls out the spell, make sure you utilize it perfectly. Mino on the other hand, with that gun, pretty call it Alpha from के parade से 2 मारा. as well. Virus with the claw, every single piece of utility being dropped. I2K finish कर सकती है भाई ये मैप. ले सकती है विन. लाइफ एडवांटेज भी इन पे. लूसी 3-1 हो गया जो मैं बोल रहा था बट I2K जीत गई. I believe. I see for them. देखना भाई. I don't think so Vitality can bounce back at this point because the lead Map is drop just हो way गया too भाई big. Vitality का. They're actually going to win a map against Vitality. खत्म करूंगा ये मैच. You mentioned हो जाएगा 3-1 हो गया तो. You left speechless. 12 versus 22. That we might take things off at takeoff, and I believe that is a prophecy out there because I2K. Okay शांतनु भाई, thanks for joining भाई. It's just brutal at this point. तारा मैं शिमन. Okay Delta. Thanks for tuning in भाई. So we are actually going to take things off at takeoff soon. मेरे को भी लगा था 3-0 हो जाएगा फटफट खत्म हो जाएगा. मैं भी थक गया हूँ. But I guess एक और मैप देखना पड़ेगा. एक राउंड ले गए भैया तो. एक राउंड क्या जीत ही गए. मैप मिल गया इनको ये वाला. Dope will not allow that to happen. Virus as well trying to double things up. Bro's good for 1 but down to a 4v17. 26 more seconds to work with. They've got to stop the clock. मैंने ये इमेजिन नहीं करता कि कंट्रोल में लोग मैप ले लेंगे. Next to impossible. 3v15. Every player needs to take down 5 of them and now down. भवे सोच अभी ये SND वो हार्ड पॉइंट भी जीत जाते हैं जो इतना क्लोज गया और ये कंट्रोल भी जीत जाते तो भाई I2K एक्चुअल में इनको वाइप कर सकती थी लाइक ओवरऑल पे. तूने हार्ड पॉइंट देखा था लूसी का? अगर एचपी जीत जाती ना भाई अभी 2-2 हो रहा होता. भाई हार्ड पॉइंट में लूसी सिर्फ 7 पॉइंट का गैप था. 243 to 250. उफ सैड. इतना नेक टू नेक था स्टार्टिंग से. I2K पे लीड थी बट थ्रो कर दी थोड़ी. नाइस सर मैप मिल गया इनको. अल्फा बोल रहे थे बजने का मौका मिल गया बजने का. बजने का. लेट्स गो भाई. भाई मजा आ जाएगा. 2-2 हो गया तो और 2-2 हो जाए तो मजा आ जाएगा. मेरी स्ट्रीम और लंबी हो जाएगी लेकिन. ये क्या मार दिया हाँ ना. For this map, I must say, all heads must bow. I2K have displayed a sheer tenacity and look at the way they played. Reminded me of the way Godlike was doing on that standoff map, just brute forcing their way. Even on the raid, they displayed the exact same thing, going in for those proactive plays, using those operators to try and get some early picks, early leads, making sure that they've got that momentum. Bangs on the table and they do. भाई लेगेसी 34 मारा है कंट्रोल में. Scoreboards in front of us, ladies and gentlemen. Bros, Burns, Vegas, and Mino. 23-28 with the assist of 3. Burns as well with 19. You've got Vegas with 15 and Mino with 11. And then you move forward towards the opposition, which is the I2K, the winners of Control. 34-24. Dope as well with 19. Every single player from I2K has performed and risen up to the occasion. Everyone now just focus down on to the next one as we will be taking things onto the hard point on the map of takeoff. क्या लग रहा है लूसी 2-2 की 3-1 पे जीत गई वाइटैलिटी. हेलो लूसी भाई आवाज आ रही? Make another upset.
That's what I want to ask you. Is it possible that we might see the greatest comeback in the best of 5 series of both the days that we've had thus far? I highly doubt. No. Ouch. Vitality for them. This was a जिम reality जाते check. जाते देख रहा हूँ स्ट्रेट सही है क्या लग रहा है भाई 2-2 की 3-1 वाइटैलिटी जीत जाएगी ये 2-2 हो जाए भाई 2-2 हो जाए इंटेंस हो जाए थोड़ा मजा आ जाएगा That is definitely आ गया true. चलो One thing is for sure, they were getting really complacent. भवे ने बोल दिया तो अभी 3-1 ही होगा It's going to be in a 3-0. But I2K made sure that they're punishing Vitality for every single overcommitment they were making. भाई 3-1 हो जाए Here we 3-1 go, हो ladies जाए and gentlemen. Soon enough, we're going to be stepping in. लेट्स सी भवे भाई भाई Dreamhack make sure drop a like and a sub. It's going to be the decider of everything, ladies and gentlemen. Here Let's we go, ladies and gentlemen. Hardpoint in front of us. Take off is what we're going to start off with. Hardpoint take As off. we step our foot onto it. Take off में I2K अच्छा खेली थी TWB के against भी. Oh my goodness, what? That's the spray down through the angle. भाई Legacy 3 मार दिया 4 मार दिया Legacy. Legacy is just on a spree right now. भाई क्या हो गया इसको एकदम से बहुत मार रहे तो But then later on, still got the players of Vitality looking forward to find that sweet success. Vitality playing together. Virus दो मार दिया. From Virus finds 2. Nicely done. Joke was able to return the favor back, but I don't know if you're I2K. It's just their players all across the kill feed. Vitality's getting countered so hard. Spawns all over the map coming in from their side, so just not being able to reinforce the hard point properly, but they've still got that lead, 12-7, and they'll finally be stepping into that one as again jumping through the ramps. Alpha gets one, moves forward, trying to take control of that spawn. Jokos will still punish him for that Sundance not being the anchor as of now, but definitely has got a possibility to do that for the next few hard points. Indeed does have the possibility. 20-9, 20-10. Vitality starting to accumulate the points. Nicely done. Look at the amount of points these guys are able to accumulate. That's quite solid. And even add on a couple of more kills at the top. It's going to be like the top of the cake. I2K Esports. Some solid stuff from them. मैं कह रहा लूसी 2-2 की 3-1 ओवरऑल वाइटल जीत जाएगा ठीक है जस्ट सिंग TWB का क्लोज गया था I2K के साथ ही वाला मैप TWB कौन है TWB आइडेंटिकल एनिमी जो था ना बेस मास्टर members, and in the meantime Burns Zero finding the crucial opening that his team needed, and finally Vitality will be caught up on those points. That's a good catch-up coming in from their side. 21 seconds to work with. So scrap time will also go in their favor. I2K have decided that not going for the contest. Already setting up for the next hard point. That's a long range shot coming in from Jokos. Good one. Legacy shut down. क्या कर रहे हैं? अच्छा खेल रहा है न्यूमॉस. अच्छा खेल रहा है मास्टर तो 50-60 मारा है बीच में. Burns is going to be in the front, and even Burns 18 प्लस हो गया ना अभी पहले बीच में 18 प्लस नहीं था वो. वाइटलो हारेगी पता नहीं. Let's see. So many things just happening back and forth. Proof this is scripted. Bhave best conspiracy theory for a reason. Exactly, bhai. Good barrel kill. Lol, bhai, Karan. I guess distribution में should drop a like. 69 likes कर दो. क्या तुम्हें क्या लग रहा है? 2-2 की 3-1. त्यागी ने लिखा Vitality हारेगी ये मैप. Let's see. Alpha 2 मार दिया. मार तीसरा मरेगा. 30 गिरा गया. Just out of nowhere, dominating the entire point. Even the war machine was pulled out. It was able to get a 2K. Not stopping at all whatsoever, and I2K winning on all of those trades, controlling this P3, making sure that they've not given the advantage over to Vitality. Will be catching up on all those points and will get the lead as well in their own favor. But in the meantime, again, he's basically on a spree of finishing himself off. What's that? Watch out for. I mean, he's already finished himself off 5 times. क्या कर रहे हैं? Samsung पे खेल रहा बंदा है. सारे Samsung पे ब्रो. स्पॉन्सर है. हाँ. और एक ऐसा सीन है कि गॉडल वाइटैलिटी पे पहले से सैमसंग था क्योंकि उनके ऑर्ग्स ने इनको दिलवा दिया था एंड इन सबको इवेंट से एक दिन पहले मिला है तो आधों को टाइम भी नहीं मिला एडजस्ट करने का. सेटिंग वेटिंग में तो चेंज करनी पड़ेगी. वही कह रहा हूँ ना. तो वाइटैलिटी गॉडल को पहले मिल गया था क्योंकि उनके ऑर्ग्स ने खरीद लिया था. स्टेज 5 में भी सेम डिवाइस है क्योंकि सैमसंग स्पॉन्सर है. S23 अल्ट्रा है. Of the opposition team, and I2K have secured the lead. What's going on? अच्छा शुभांकर वेलकम टू स्ट्रीम. क्या हाल है? तू भी जाके खेल भाई. अरे Warzone Mobile आन दो भाई. ऐसे ही दिखूंगा तुम इसी स्टेज पे मारते हो फॉर श्योर भाई.
You make a cluster and भाई लेगेसी कितने किल पे 22 किल पे है भाई वो पूरी लॉबी के डबल किल्स पे है एवरेज किल से 8 किल मारे एक साथ भाई क्रेजी ब्रो लेगेसी कुछ भी पागल हो गया भाई ये स्नाइपर है इनका तो मार रहा है इतना बरोबर के थैंक यू यार Exactly. Vitality. नहीं दिलवाया था और ने सबको साथ में मिला था तूने तो बताया क्रिश कि इनको पहले मिल गया था के थ्रू They're giving such a tough fight to Vitality. This is something I would never पता see नहीं coming. स्नाइपर प्लेयर हमेशा Vitality गन is known से to डिफरेंट pull off a खेलता last moment clutch in the Hardpoint. इसके पीछे होती है आप मूवमेंट होता है एआर खेल रहा है वैसे वो एआर खेल रहा है लेगेसी जैसे 26 kills already. No one even comes close to him. Be it I2K or Vitality doing just a brilliant job as now again trades going back and forth just as you mentioned. It's the P1. ये जो ट्रिपल लाइक एंड सब मैंने कहा का तू नहीं लिखा हेलो हेलो नहीं लिखा लेगेसी नहीं लिखा हेलो हेलो बोल बोल some kind of funnel maybe. 2-2 हो जाएगा मेरे को भी लग तो रहा है साहब and I2K got their Sentence तो मार दिया perfectly clear as of now. They just want to win those. दूसरे बताया था अच्छा ओके हो सकता है कृष्ण भाई थोड़ा कंफ्यूज हो गया के से And also the next points controls being established by the players. क्या लग रहा है चैट 2-2-3-1 जल्दी बताओ bounce back just when you're going to start to lose out the duels. Losing streak पे फंस गया Vitality. From the back when man was trying to pull in but then Burns अगली वाला हार गया तो slide and shut down. क्लीन स्वीप हो सकता है फिर मतलब बस रिवर्स स्वीप Once again swing back to life. 84 to 122. Vitality. मुश्किल है बट क्योंकि Vitality Virus finds another pick. Look at what's going on. Aminio gets a 2-piece. And even Vegas returns back, but the Annihilator was something that could be an issue. But the War Machine is Legacy 30 मार दिया भाई नहीं वेगस एसएनडी में तो बहुत अच्छा खेल रहा है ब्रो रिस्पॉन्स में थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो रहा है ना एसएमजी चला रहा है अपना गेम मावे नहीं कर दी थी गॉर्डन अरे कोई नहीं शांत रहे which could be contested by I2K whatsoever. Right up close and personal in the face. जो कुछ कर रहा है उसमें दो स्नाइपर भी फिलहाल वाइटल पे लेगेसी 30 मार दिया भाई पूरी लॉबी अभी 20 किल तक टच नहीं हुई ढंग से और ये 30 मार रखा है लेगेसी मेकिंग अ लेगेसी करण भाई बोल रहे 2-2 ग्रीश भाई बोल रहे 3-1 ये क्या देख रहा है 2-2 एनएच की ये मेरे को भी लग रहा है मेरे को भी लग रहा है 2-2 लेट्स सी बाकी वाइटलिटी लीड ले ली है बट स्टिल लेट्स सी The Sparrow is of course dealing so much damage from the side of I2K. Dopey bhai. The man who has been being a menace with the Sparrow. लेगेसी कब से लेकिन 30 किल पे है भाई clearing that entire side right he's got the vision of Vegas as well goes in for the preemptive shot from the Sparrow हुआ gets फाइनल 31 हुआ but Mino on the other hand the solid spray down Virus Claw using it अरे perfectly timing trying to make sure to stop any kind of push coming in with the Purifier has also been shut down Burns not gonna burn away so easily Chat जो भी सुन make sure drop a like and a sub still over there in the front line it's an intense matchup between I2K and Vitality they've got the control and they're going to keep on running away with it. It seems like a marathon at this point because it's just so much back and forth. And Vitality, once again, they're going to start to win out on these fights. But as soon as I say that, it's a spree of kills just hitting the players of Vitality. I2K dominating through. What's going on? Vitality Interview में मजा आएगा. What's up, Diablo? Welcome to the क्या हाल है? But still, the स्कोर क्या क्या है स्कोर ऐसा है अभी 2-1 चल रहा है वाइटलिटी विंस दिस तो वो जीत गई I2K बाहर हो जाएगी टूर्नामेंट से एंड अगर I2K जीत गई तो 2-2 हो जाएगा फिर 3 के लिए मैच होगा एंड I2K अगर ओवरऑल भी जीत गई तो भी वो बाहर हो जाएगी That will be traded up. I2K 155, Vitality 154. So गॉडल अपने ग्रुप में 4-0 टॉप पे देन एंथम 4-0 लॉस बाहर एंड एनएस 2-2 super important and I2K और इस वाले ग्रुप में TWO भी 2-2 another spray down वाइटलिटी का भी चल रहा है और I2K 3-0 हार चुकी है utility is being thrown in वाइटलिटी का 3-0 विन चल रहा है be getting those shots and तो वाइटलिटी का 3-1 हो सकता है या 4-0 हो जाएगा लेट्स सी oh no look at Burns with a 2K मतलब I2K और एंथम बाहर है चाहे जीते हारे और कल प्लेऑफ्स होंगे इन चारों के जो बची हुई टीम्स है और कल ही फाइनल्स होंगे तो वही तेरे को बोल रहा था अगर तू फ्री होगा तो आज ये फाइनल्स में इंटरेस्टिंग होगा थोड़ा और कौन से गेम्स में हो रहा है
CS:GO, Clash of Clans, फिर एक और कोई हो रहा है टेक्कन या पता नहीं कोई गेम का। वैलो नहीं करा रहे, वैलो नहीं हो रहा शायद, वैलो का वो हो रहा है अपना BYOD, मतलब आओ खेल लो मजे के लिए। और BGMI का हो रहा है, TVS विक्टर करवा रहा है। स्काउट भाई भी खेल रहे थे बीच में। अभी फिलहाल स्काउट भाई कुछ तो मॉन्स्टर के उसमें बैठे हैं, वॉरजोन का शूट है उधर, कुछ तो कॉड के वो बना रखे हैं मॉन्स्टर के उसके बूथ के साथ ना, कॉड के कैरेक्टर्स वगैरह मर्च वगैरह लगा रखी है क्वालिटी अपनी। और का क्या खबर है, TW भी तो अभी वो चल रही है 2-2, दे क्वालिफाइड फॉर टुमारो। CS भी हो रहा है, हाँ CS भी हो रहा है, CS2 make it a 3 as well. He's actually on a spree of 4 in total. And the clock is going up, making sure that he's crouching down perfectly. ने भी काफी फिक्स हो गए बग्स तो, उसका वॉरजोन वाला सीन है, लेकिन बग्स का तो आते हैं तो जाते हैं, नए बग्स भी आते हैं। अगले हफ्ते ला रहे हैं वॉरजोन का फिक्स। अगले हफ्ते अर्ली लाएंगे, उसके बाद यही महीने एक मेजर अपडेट भी आएगा, और लोग कह रहे हैं शायद वो मॉडर्न warfare 3 से लिंक करने वाला अपडेट है कुछ, नॉट डायरेक्टली लिंक बट इनडायरेक्टली, मतलब जैसा क्रॉस प्रोग्रेशन बंडल वो सब मूवमेंट वगैरह शायद बाद में लेंगे। क्या डाल सकते हैं? गन्स डाल सकते हैं आई गेस। देख मेरे हिसाब से गन्स बंडल्स वगैरह सब डाल सकते हैं, मूवमेंट नहीं डालेंगे इतनी जल्दी आई फील। मूवमेंट इतनी जल्दी कभी भी नहीं डालेंगे, मूवमेंट गेम पूरा बनाना पड़ेगा फिर से। आई डोंट थिंक, क्योंकि थोड़ा बहुत नर्फ बफ तो कर सकते हैं मूवमेंट को अकॉर्डिंगली। नर्फ बफ नहीं होता मूवमेंट, बहुत सिंपल चीज है, देख हर मूवमेंट तुम्हें वो डेवलप करना पड़ता है। अगर तुम गेम डेवलपर हो, कार्डियो करते करते वॉच पार्टी लेट्स गो। बोल लूसी, इतना वो नहीं होता है मूवमेंट, लाइक स्पेसिफिक होता है कि बंदा कैसे मूव करेगा, जो कंप्यूटर पे मतलब तो ऐसा स्लाइड कैंसिल नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। ओके लेट्स सी, जैसे अगर जो वॉरजोन वाला मूवमेंट है ना, तो इसमें नहीं ला सकते हो जो कॉडम है, क्योंकि इसका डेवलप अलग उसका है, बेसिक डेवलप more seconds of scrap time. सेम चीज जैसे ये स्लाइड कैंसिल जो इसमें चीजों को तुम उसमें नहीं ला सकते हो, जो उसका मूवमेंट है वो स्टिक करेगा, पूरा रिवर्स करना पड़ेगा गेम को बेस से बिल्कुल। मे बी क्या पता इन्होंने थोड़ा बहुत अप्रैल का टाइम लिया तो इसीलिए लिया ताकि रिवर्क कर पाए बीच में। I don't think so. वो ऐसा नहीं है, वो 1 साल लग जाएगा भाई करने में ऐसा। हल्का फुल्का चीज नहीं है, ऐसे होता है ना कि पूरा इंटरेक्शन नहीं करता ग्राउंड से, ट्रैकिंग वगैरह, हाँ सब कुछ चेंज हो जाएगा ना फिर। भाई क्लोज हो, बातों में मैच क्लोज हो गया। It is highly possible because 2 कंट्रोल है, really creeping up 31 seconds and Vitality are now jumping in तीन मार towards दिया, the Hardpoint but denied everything. Burn is good for 1 but only for 1 because Legacy is still standing there. Purify 3 मार दिए फिर साइड ने 4 मार दिए, right now they're running away with the 5 मार दिया अल्फा भाई, 3-4 मार दिया लाइन में। 19 more seconds, I don't think पूरी किल फीड में I2 के मार रहा है। It exactly will be what Vitality need to ब्रो 2-2 हो रहा है चैट, लग रहा है 2-2 हो रहा है Vitality just needs to play with Unity. They just need to play together. भाई 2-2 हो रहा है। Vitality's been struggling ब्रेक आया फाइनली, because the team play from the side of I2 के नेक्स्ट पे चली गई है। 243 is going to be the full stop, but now everyone's इनको मिल जाएगा 7 सेकंड तो। pop up on the point. The first ओ ये एनी चोक नहीं करना था भाई, ये एनी चोक नहीं करना था, गेम पलट गया भाई। वो एनी चोक नहीं करता तो विन था ब्रो, इन्होंने फिर से दिया भाई, एनी चोक कर दिया, फिर से 7 पॉइंट से रहेंगे। डोप कम ऑन डोप भाई, कवर दो इसको, 1 पॉइंट 5 पॉइंट से रह गए। वेल प्लेड यार, वेल प्लेड है, टोके नाइस ट्राई। अबे सबने तंगी ले रखी सब में पजामा पार्टी चल ली भाई। 3-1 ब्रोज ने अप्रिशिएट करा, चलो बढ़िया। अभी मेजर भाई आएंगे मसाला देने, लेट्स सी। Indeed, crazy. Ladies and gentlemen, so much to talk about. ठीक But I guess all those रात को आएगा ना? questions will be answered on the stage. वेल प्लेड Oh my goodness, oh my goodness. कितना
इतना ज्यादा नेक टू नेक कंपटीशन में यहाँ पे देखने को मिल चुका था। एंड वाइटैलिटी से मैं मीनो आपसे ही जानना चाहूंगा मैं, ये इतना आपने एक्सपेक्ट करा था इतना नेक टू नेक जाने वाला है? नॉट एट ऑल, हमने थोड़ा भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। सो कुडोस टू I2K फॉर द एग्जैक्टली, आई मीन उनको कंग्रेचुलेट, मेरे को उनको भी करना चाहिए, लेकिन कंग्रेचुलेट टू यू एज वेल, क्योंकि आपने जो खेला प्रेडिक्शन ऑन टॉप। हां वे क्रिश भाई वापस आए हो, वापसी करिए। बट भाई क्रिश भाई 7 सेकंड का गैप था, 5-7 सेकंड का। कंट्रोल बोर्ड में मैं जानना चाहूंगा वहां पे क्या दिक्कतें आ गई? आई थिंक हमने हमारे साइड से बहुत मिस्टेक्स करी थी, हमने गन फाइट्स लूज करे बहुत सारे। तो आई थिंक मैंने भी अपने गन फाइट्स लूज करे थे, तो आई थिंक वही हमारा वीक पॉइंट था मेनली। चलिए, मतलब आपको अपनी गलतियां पता लग चुकी हैं, कंट्रोल हो गया, लेकिन ये जो अगर आप बात करें हार्ड पॉइंट में भी बहुत नजदीक लाए, वहां पे क्या गलतियां लगी आपको? आई थिंक हमने इनको बहुत अंडर एस्टिमेट करा। सो कुडोस टू देम, लाइक नेक्स्ट लेवल उन्होंने परफॉर्मेंस दी हमारे आगे। एग्जैक्टली, I2K की भी यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी। कुडोस टू I2K एज वेल, बेहतरीन तरीके से खेलते हुए आए हैं। एंड अभी के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये था हमारा आज का लास्ट डे। कल फिनाले होने वाले, कल प्लेऑफ होने वाले हैं। हमें वो चार टीम्स पता लग, कल भी वॉच पार्टी करेंगे चैट, जो है मेक श्योर कल भी आना, करेंगे फाइनल्स की वॉच पार्टी। ऐसी प्रेडिक्शन गेम रखेंगे अपना और मजे करेंगे। हमें कल विजेता I2K बाहर, यस I2K बाहर, एंथम बाहर। स्कोरबोर्ड आएगा तो मजा आएगा, एक बार स्कोरबोर्ड देखते। विनिस विन नो मैटर द सिंगल पॉइंट। या आई नो कृष्ण भाई, अच्छा प्रेडिक्शन था, अच्छा था। डू वी हैव द ओवरऑल पॉइंट टेबल? लेट्स सी। The score line is definitely not close, 1 and 3, but everyone who saw that match, we as casters know how close Good game, yes, yes. every single तू जीजी क्यों लिख रहा है डियाब्लो? मैंने स्टिकर्स बना रखे हैं इन चीजों के। इफ यू आर अ मेंबर तो यूज करो भाई स्टिकर, ये वाला जीजी डालो। Look at the amount of kills. वाइटैलिटी विन करेगी शायद, नहीं यार गॉडल भी है, 58 bomb being गॉडल इज dropped ऑन by नेक्स्ट लेवल। Dude, I2K बट इट वाज फन भाई, 7 घंटे का स्ट्रीम, इट वाज वर्थ इट। इतने टाइम बाद कॉड मोबाइल खेला नहीं, बट देखा तो मजा आया। TW सेकंड नहीं यार, TW भी थर्ड आएगी, थर्ड या सेकंड में से कुछ हो सकती है, बट गॉडल फर्स्ट है। एंड या मजा आया, बट मजा आया चैट, मजा आया गाइस। जो भी अभी तक स्ट्रीम देख रहा था, जस्ट एक बार चैट में कुछ लिख दो सो आई कैन वेलकम यू गाइस एंड थैंक यू गाइस कि भाई इतनी लंबी स्ट्रीम तक सपोर्ट करा, मजा आया, है ना? मजा आया, बट हाँ देखते पॉइंट टेबल आता है तो देन विल हॉप ऑफ। It was our first land. There were some jitters. There was definitely a lot of pressure, but at the end of the day, this is the kind of way they can perform in terms of in front of vitality. उनकी टीम तो भाई बहुत बढ़िया। Some of their operator usage, it was literally like godlike, and even better. Exactly, but let's move on forward and take a look at the leaderboard because it's going to be quite an interesting one. Neutrino, Learn, Abyss, Skull Guy, and Trunks. A couple of teams that has been eliminated too as well. I2K from Group B. मजा आया। ये आया पॉइंट टेबल गाइस, एंथम गई, I2K गई, TWOB and NS qualified. Still doesn't get a ton of rounds out there, but I still want to sing the praises of Godel and ये तो भी Godel versus the second seed होगा, ये देखो we will have a look at the teams who will be moving forward tomorrow. Godel versus TWOB, NS versus Vitality, TWOB अभी वो आएगा। ये क्या आया, ये क्यों आया? मेरे को नहीं देखनी ऐड, मेरे को नहीं देखनी ऐड। हाँ ये ब्रैकेट्स आ गए गाइस, देख लो, देखो अभी गॉडल TWOB में से गॉडल विल विन हियर प्रोबेबली, वाइटैलिटी NS में से वाइटैलिटी विन हियर प्रोबेबली, एंड यहाँ पे जो हारेगा उनका लूजर ब्रैकेट यहाँ पे होगा, एंड उनमें से एक टीम बाहर हो जाएगी, एंड यहाँ से जो हारेगा वो नीचे आएगा, उनमें से फिर एक टीम बाहर हो जाएगी, फिर बाकी दो का फाइनल्स होगा। तो प्रोबेबली गॉडल यहाँ पे जीतेगी और वाइटैलिटी यहाँ पे जीतेगी, इज व्हाट माय प्रेडिक्शन। फिर गॉडल वाइटैलिटी में से गॉडल जीतेगी फाइनल्स, वाइटैलिटी इधर आ जाएगी, फिर NS और TW में से TWB जीतेगी, TW में से वाइटैलिटी, इंटेंस मैच होगा, जो जीतेगा वो गॉडल के साथ खेलेगा एंड देन गॉडल जीत जाएगी, इज व्हाट माय प्रेडिक्शन। गॉडल फर्स्ट, TWB और वाइटैलिटी में से कोई सेकंड, एंड फोर्थ टू NS, दिस इज माय प्रेडिक्शन। लेट्स सी, बाकी कल मिलते हैं, ये मैचेस देखेंगे। अगर ये टाइमिंग बता दे तो थोड़ा मैं अकॉर्डिंगली कर लूँ अपना प्लान, तो मजा आ जाएगा, है ना? हाँ कल का टाइम बता दो यार, नहीं बता रहे? थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग हो गया, भाई ने बोल दिया थैंक्स फॉर सेकंड तो वॉचिंग, ठीक है?
तो ऑलराइट गाइस, दिस वाज इट फॉर टुडे स्ट्रीम। मज़ा आया मेरे को। एंड या इंडिया ऑन टॉप भाई, कोई भी जीते तो इंडिया ऑन टॉप भाई। इसके बाद स्टेज 5 के लिए गुड लक टू एवरी टीम विच इज़ गोइंग, फिर मास्टर्स के लिए भी गुड लक टू गॉडलाइक। एंड या मिलते हैं कल विद द फाइनल्स वॉच पार्टी इसी चैनल पे। सुबह जब भी लाइव हो जाएगी उनकी स्ट्रीम, मैं भी लाइव आ जाऊँगा। एंड सब लोग आना भाई, मज़े करेंगे, ठीक है। चलो एक बार सबके नाम ले लेता हूँ। बाय क्रिश भाई, बाय डियाब्लो, बाय त्यागी द लॉस्टेड, देन बाय करण भाई भी होंगे आई गेस, बैकग्राउंड में कौन होगा। बाय डेल्टा। एंड या बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मिलते हैं कल, पीस आउट।